दोस्तों ईपीएफओ एपीएफसी एंड ईयू एग्जाम की प्रिपरेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, क्योंकि इस कंपोनेंट से एग्जाम में अराउंड 15 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ टोटल 120 क्वेश्चन। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि भाई ये कंपोनेंट हम अपनी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन में प्रिपेयर ही नहीं करते हैं। और दूसरी दिक्कत कि भाई इस कंपोनेंट का कोई ऐसा सोर्स नहीं जिसको फॉलो करके हम एग्जाम की रिक्वायरमेंट मीट कर पाए। तो आपकी इसी दिक्कत को दूर करने के लिए हम लाए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियो फॉर आईआर एंड लेबर लॉ कंपोनेंट। ये वीडियो का पार्ट 2 है जहां पर हम लेबर लॉस को अच्छे से कवर करने वाले हैं ताकि आप एग्जाम में लेबर लॉ के क्वेश्चन को अच्छे से डील कर पाओ। तो वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एपीएफसी और ईयू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इन एग्जाम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे चाहते हैं तो आप लोग हमारी कंप्रेहेंसिव गाइडबुक डाउनलोड करना ना भूलें, जहां पर सारी इन्फॉर्मेशन तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को डिकोडेड सिलेबस और सॉल्व पीवाईक्यूज मिले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारी प्रिपरेशन के। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के नीचे आपको लिंक दिया गया है और गाइडबुक आपके लिए टोटली फ्री है। तो अब एंजॉय करिए इस वीडियो को। Hello friends, welcome to EduTap and welcome to the series that we are starting exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 एग्जामिनेशन, जिसका नोटिफिकेशन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्च में। उसी के लिए हमने ये सीरीज लॉन्च किया है जिसमें हम लोग करेंगे डेली 15 MCQs। ओके, तो उसमें जो भी टॉपिक हम लेंगे उसी के जो प्रिपरेशन होगा ऑल दैट विल बी डूइंग इन द फॉर्म ऑफ MCQs। बहुत एक्सक्लूसिवली, बहुत डिटेलली हम लोग ये करने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे? आज के सेशन में हम लोग कर रहे हैं लेबर लॉस का ही टॉपिक है। सबसे पहले पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, जिसमें 2 पार्ट्स में हम लोग करने वाले हैं। तो इस सेशन में हम लोग करेंगे 15 क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेशन में पार्ट 2 में हम लोग करेंगे अनदर 15 क्वेश्चन, सो दैट जितने भी उसमें सेक्शन है, जो 17 सेक्शन है, वो सही से हम लोग कंप्लीटली अच्छे से रिवाइज कर सके इन द फॉर्म ऑफ MCQs। So the first question that comes here is, what was the underlying objective of introducing the Payment of Wages Bill 1933 in the context of labor reforms in India? हमने अभी बोला है कि पेमेंट ऑफ वेजेस बिल 1936 एंड यहाँ पे 1933 है, तो मतलब उसी के हिस्ट्री के बारे में है ये। 1926 में ही द देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज अ ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया था कि वाई देर आर लॉट ऑफ डिलेज इन द पेमेंट ऑफ वेजेस इन इंडस्ट्री, उसको हम लोग किस तरह से रेगुलराइज कर सकते हैं, उसी के लिए उन्होंने कुछ रिसर्च रिव्यूज वो सब करके कुछ मटेरियल इकट्ठा किया। ऑल दैट दे हैव पुट बिफोर द रॉयल कमीशन ऑन लेबर विच वाज अगेन अपॉइंटेड इन 1929, जो 1929 में अपॉइंट हुआ था। तो उन्होंने पूरा अपना जो भी समझा है उसको अच्छे से रिपोर्ट रीड करके उन्होंने एक रिपोर्ट दिया था, बेस्ड ऑन विच 1933 में पेमेंट ऑफ वेजेस बिल आया था। उसके बाद का स्टोरी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग करेंगे। सो हियर इन दिस केस द मेजर ऑब्जेक्टिव फॉर दिस द पेमेंट ऑफ वेजेस बिल 1933 was to mitigate delays in wage payments and safeguard industrial workers' right in wage disbursement. Okay. Yes, the next question here comes is, which of the following statements accurately describes the role of the Royal Commission on Labor in the legislative development of the Payment of Wages Act 1936 within the broader context of labor reforms in colonial India? तो हमने इस यहाँ तक डिस्कस किया था कि रॉयल कमीशन ने अपना वो जो भी रिपोर्ट है उन्होंने सबमिट किया था, बेस्ड ऑन विच पेमेंट ऑफ वेजेस बिल 1933 को टेबल किया था। ओके, बट आफ्टर दैट वो पास नहीं हुआ वो बिल। सो व्हाट दे डिड वाज, उसी based on the same principles a study group was formed, and that study group based on the same principles of the payment of wages bill 1933 उन्होंने एक नया रिपोर्ट, मतलब एक नया बिल उन्होंने टेबल किया था, and that was the in the form of act it was passed, and that was the Payment of Wages Act 1936. So here in this case the correct answer is B, that is only 2 and 3 are correct. The commission identified systemic wage related grievances including delays and unjust deductions, which led to the drafting of the Payment of Wages Bill 1933. Okay,
कौन सा? Based on the Royal Commission. And the commission emphasized the need for the industrial tribunals to resolve wage disputes, influencing the provisions of the Payment of Wages Act 1936. लेकिन उन्होंने डायरेक्टली इस एक्ट को, दैट इज पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट को टेबल नहीं किया है. ठीक है. Now comes the third question. Which of the following accurately reflects the key modifications incorporated into the Payment of Wages Bill 1935 in contrast to the Payments of Wages Bill 1933, considering the historical context of labor reforms under the British colonial rule in India? So अभी तक हमने सब कुछ डिस्कस किया है. So I expect you all to answer this question without any hesitation. यस आप ट्राई कर सकते हो इसको. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है द 1935 बिल मेंटेन्ड द सेम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द 1933 बिल, बट ये हमने क्लियरली डिस्कस किया था in the earlier question, but underwent significant revisions to address earlier criticisms, especially regarding the structure of wage payment procedures. कुछ कई सारे reasons थे because of which the 1933 bill was not passed, and उसी से उन्होंने नया बिल, नया जो 1935 का बिल है उसको लॉन्च किया था, बट अगेन विथ ऑल द learnings, but the principles, fundamental principles were the same जो 1933 का बिल था उसी के बेसिस पे था. So here comes the next question. In the context of the Payment of Wages Act 1936, particularly under section 2, which of the following accurately defines the scope of the term appropriate government with respect to the regulation of wages in the oil fields, taken into account the legal and administrative framework of the colonial India? उस टाइम के colonial India का जो भी legal and administrative framework है उसके हिसाब से इन्होंने जो द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 है उसमें सेक्शन 2 में क्लियरली कुछ डेफिनेशंस दिया था. वन ऑफ दोज इज द व्हाट एग्जैक्टली इज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जहां पे भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन फ्रेम करेगा, किस तरह से होंगे. तो उसके लिए उन्होंने हर जगह पे एक वर्ड दिया है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है, दैट इज वाज द क्वेश्चन हैज टू आस्क. ओके, सो इससे पहले जो हम लोग देख रहे हैं जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, ये एक्चुअली ऑफिशियली इनैक्ट हुआ था एंड बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 23, 1936. ओके, उसी के बेसिस पे 17 सेक्शंस इन्होंने दिया था एंड उसमें सेक्शन 2 में एक्सक्लूसिवली डेफिनेशंस दिया था. सो कमिंग बैक टू द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, so it is B, the central government, which is, this can be considered as the appropriate government, which is entrusted with the responsibility for regulating wages in strategic industries such as oil fields, mines, railways, given their national importance. And फिर बाकी industries का कौन रहेगा, बाकी सब industries का रहेगा state government. Okay, so coming to the next question. Consider the following statements regarding the definition of wages under the Payments of Wages Act. जैसे मैंने बोला था सेक्शन 2 में एक्सक्लूसिवली डेफिनेशंस दिया है उन्होंने. एज पर दैट, traveling allowance or the value of traveling concessions under explicitly included as part of the remuneration under the employment contract is excluded from the definition of wages. Remuneration for overtime work or holidays is included as part of wages irrespective of any separate contractual stipulations. Monetary compensation payable under the employment contract, including salary, allowances, or any form of payment, is considered wages under this act. Additional remuneration such as bonuses is included in the definition of wages as long as it is explicitly stated as part of the employment contract or settlement. So यहाँ पे जो wages, अगर wage बोलेंगे, okay,
इसमें जो अभी हमने मेंशन किया है, एवरीथिंग दैट इज मंथली, दैट इज मॉनिटरी कंपेंसेशन, इट इंक्लूड सैलरी, अलाउंसेस, एनी अदर फॉर्म दैट इज पेएबल टू एन एम्प्लॉयड पर्सन फॉर देयर वर्क दैट दे हैव डन, उन्होंने जो काम किया है उसमें ये सैलरी, अलाउंस और एनी अदर फॉर्म जो अगर उन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है, सो देन दैट वुड बी provided, which includes remuneration payable under any award or settlement, अगर कुछ हुआ है कोर्ट से वो इसमें इंक्लूड होगा, एंड ओवर टाइम वर्क किया है उसने या फिर एनी लीव पीरियड में उन्होंने वर्क किया तो वो इंक्लूड होगा। एडिशनल रेम्यूनरेशन, उसको हम लोग बोनस भी बोल सकते हैं, कुछ और भी तरीके से। कई बार ऐसा होता है कि बोनस की जगह पे वो बोलते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा सर्विस, वैल्यू एडेड सर्विस टाइप का कुछ ऐड कर देते हैं, वो भी वेज ही कंसिडर किया जाएगा। एंड ऑल्सो अगर कुछ टर्मिनेशन हुआ है एज पर द लॉ एंड अंडर द लॉ, इफ अगर बोलते हैं कि कुछ अमाउंट इसमें पे करना पड़ेगा, दैट ऑल्सो विल बी कंसिडर्ड एज वेजेस ओनली, और कोई करंट लीगल स्कीम में है। एंड बट इट डज नॉट, वेजेस डज नॉट इंक्लूड any bonus that is not forming as part of the remuneration payable, अगर उसके remuneration इसमें नहीं आ रहा है तो that would not be considered household accommodation या कुछ और amenity या फिर any contribution paid by the employer to the provident fund, gratuity, ये सब wages में include नहीं होंगे, बिल्कुल अलग रहेंगे। So यहाँ पे all these statement, यहाँ पे traveling allowance also is not as part of the wages, that is true. So hence all these statements are correct in this case. Next question हमारा आता है, under the payment of wages Act 1936, the jurisdiction of the central government as the appropriate government applies to which of the following industries? Select the correct answer using the codes below. ये हमने दिया है आपको options और ये आपके codes है, और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट आता है मेजरली, उसमें जो इंडस्ट्रीज आते हैं वो हमने डिस्कस किया था, एंड रेस्ट ऑल विल फॉल अंडर द स्टेट गवर्नमेंट. सो इन दिस केस only the air transport services along with oil fields, mines, etc., that comes under the central government. The rest, like your textiles, food processing, pharma and everything, that will fall under the state government. So in this case the answer is C, only 2. Okay. So next question हमारा आता है, under the Payment of Wages Act 1936, the responsibility for ensuring the payment of wages to employed persons lies with which of the following? किसकी responsibility है payment of wages करना, जो पेमेंट करना है वेजेस का, एंड दिस एक्सप्लिसिटली कम्स अंडर सेक्शन 3 ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936. सो इन दिस केस ये सोल रिस्पॉन्सिबल रहता है, यस इट इज द ओनर और द एम्प्लॉयर ओनली, ओके, वही तो है ओनर, तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, बट यस वो किसके थ्रू कर रहे हैं, जैसे फैक्ट्रीज हो गया तो मैनेजर, या कुछ इंडस्ट्रियल या अदर एस्टेब्लिशमेंट्स है तो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर दिस, और अगर रेलवे से तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन और एनी पर्सन नॉमिनेटेड, एंड अगर कॉन्ट्रैक्टर है तो जो भी पर्सन डेजिग्नेट किया है कॉन्ट्रैक्टर ने, वो ये सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे मेजरली पेमेंट्स के लिए, बट अदरवाइज ऑन द होल ऑन द टॉप कौन रहेगा, दैट वुड बी द ओनर और द एम्प्लॉयर हिमसेल्फ हु हैज हायर्ड देम. सो उन्हें उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पेमेंट्स ऑफ वेजेस के लिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रॉम सेक्शन 4 ऑफ द सेम एक्ट related to the fixation of the wages. So the Payment of Wages Act 1936 regulates the payment of wages to employees, including the frequency of wage payments, to ensure timely and fair compensation. Right? Which of the following statements is correct regarding the maximum permissible wage period under the Payment of Wages Act 1936? Now what is this wage period? Wage period वो है in respect of which wages should be paid to the employee for whatever work that he has done. जिन्होंने जो काम किया है as per the contract of the employment, उनको वो amount pay करना पड़ेगा during that particular period of time. Now वो period कितना होना चाहिए? See, फैक्ट्री हो या कोई भी हो, वॉट एवर माइट बी द केस, एस्टैब्लिशमेंट, नो वेज पीरियड शैल एक्सीड 1 month.
ओके, सो ये 1 मंथ और 30 डेज यही रहे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट वेजेस बी पेड टू एम्प्लॉयज वर्किंग इन एन एस्टेब्लिशमेंट विथ फ्यूअर देन 1000 वर्कर्स। सी, यहाँ पे हमने पहले देखा है कि वेज पीरियड क्या है ना, आफ्टर दैट व्हेन द लास्ट वर्किंग डे के बाद से अगर 1000 वर्कर्स से ज्यादा है उस एस्टेब्लिशमेंट में, तो 10th डे एक्सपायरी ऑफ द बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 10th डे फ्रॉम द लास्ट वर्किंग डे दैट दे हैव टू पे। अगर यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फ्यूअर देन 1000 वर्कर्स, सो इन दिस केस व्हेन वर्कर्स आर लेस देन 1000, देन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 7th डे ऑफ द वेज पीरियड, एंड वेज शुड बी पेड ऑलवेज ऑन अ वर्किंग डे ओनली। ओके, so here comes the next question. According to section 5, again same section say of the Payment of Wages Act 1936, the payment of wages to an employee whose employment has been terminated must be made within what time frame? अगर उस एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया है, किसी एम्प्लॉय को, कब तक उनको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा, वॉट एवर द फुल एंड फाइनल टाइप का। सो हियर इन दिस केस अगर उस तरह से है तो ऑलवेज इट शुड बी विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द टर्मिनेशन डेट। ओके, एक और चीज हम लोग भूल गए हैं कि इससे पहले क्वेश्चन में हमने किया था कि विद इन 1000 मेंबर्स वर्कर्स है तो किस तरह से 1000 से कम है तो 7th डे फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द वेज पीरियड, एंड उससे ज़्यादा है तो 10th डे। उसी तरह से जैसे डॉक ये वाफ है या फिर जेट्टी माइन वर्कर्स, उनका कभी कभी टन्नेज के बेसिस पे उनका कुछ कमीशन टाइप का भी मिलता है। अगर उस तरह से है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टनेज अकाउंट्स, वो अमाउंट भी उनको पे करना पड़ेगा जिस दिन वो टनेज अकाउंट्स क्लोजर होंगे, कंप्लीट होंगे, वहां से विद इन 7 डेज। ओके, यस, एंड हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है सेक्शन 6 से। सो सेक्शन 6 ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 स्टिपुलेट्स दैट वेजेस कैन बी डिसबर्स्ड टू एम्प्लॉयज थ्रू वेरियस मोड सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। Now, which of the following statements is correct regarding the disbursement of wages under the Payment of Wages Act 1936? Okay, so here in this case, now when we talk about wages, how it can be paid? It can be paid in current coins, notes, check, or sometimes even crediting to a bank account. But see, यहाँ पे इन्होंने दिया है करंट, ओनली करंट कॉइन्स और नोट्स। नो, दिस इज नॉट ट्रू, एंड कोई लिमिट नहीं है। एंड वेजेस कैन बी डिस्बर्स ओनली बाय चेक और बैंक ट्रांसफर, ये भी नहीं है। वेजेस कैन बी डिस्बर्स ओनली बाय क्रेडिटिंग टू ए बैंक अकाउंट, एंड ऑल्सो द बैंक, उसका जो बैंक ब्रांच है वो जहाँ पे एम्प्लॉयर है वहीं पे होना चाहिए, ये भी गलत है। बट येस, वेजेस कैन बी डिस्बर्स इन एनी ऑफ द अबव मोड्स, दैट इज करंट कॉइन या फिर करेंसी नोट्स या फिर चेक या फिर क्रेडिटिंग टू द बैंक अकाउंट, बट द एम्प्लॉयर must obtain a written authority from the authorization from the employee, and the employee must have an account in a bank. बैंक में अकाउंट नहीं है तो कहाँ से डिपॉजिट होगा, तो ऑब्वियसली, एंड ये अकाउंट नंबर है, ये सारे डिटेल्स करके एक ऑथराइजेशन लेटर तो देना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली हियर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। Now here comes the next question. Section 7 of the Payment of Wages Act 1936 enumerates specific deductions that can be made from an employee wages while prohibiting others to protect employees' interest. Like कई बार कुछ इंश्योरेंस वाला होता है, कुछ स्कीम का कुछ होता है, कई सारे होते हैं, या फिर कुछ पेनल्टीज टाइप का कुछ भी होता है, दैट नो कई सारे उन्होंने एक लिस्ट दिया है, बेस्ड ऑन दैट ओनली वो डिडक्शंस कर सकते हैं। Okay, now which of the following deductions is impermissible under the said act as it violates the principle of protecting employees' wages from unfair deductions? So in this case, agar deductions for absence from duty as specified in the employee's contract of employment, definitely वो deduct कर सकते हैं, so this is not impermissible, it is permissible. Deductions for recovery of loans from welfare फंड्स विद द एम्प्लॉयज रिटर्न कंसेंट, क्योंकि उसी के बेसिस पे उनको मिला होगा, तो यस दिस इज ऑल्सो परमिसिबल. डिडक्शंस फॉर पेमेंट ऑफ ट्रेड यूनियन फीस ऑथराइज इन राइटिंग बाय द एम्प्लॉय, क्योंकि स्टार्टिंग में ही जब वो ज्वाइन कर रहे होंगे उस यूनियन में तो उन्होंने लिखा होगा, तो ऑब्वियसली दिस वुड बी डिडक्टेड, सो ये भी परमिसिबल है.
Deduction for penalties related to withholding of increments imposed by the employer without due process, ये permissible नहीं है until and unless वो सही से एक process follow करके employee के साथ discuss करके उसमें explicitly अगर contract में है only then he'll be able, otherwise no. withholding of increment, reduction to lower post or suspension, ये सब इसमें deemed नहीं है, they are not deemed. So here the correct answer is D, which is impermissible in this case. Here comes the next question. As per Section 7 of the Payment of Wages Act 1936, the maximum permissible deduction from an employee's wages during any wage period for the purpose other than payments to cooperative societies is capped at a specific percentage. Now, which of the following statement is correct? क्योंकि सेक्शन 7 में अभी हमने देखा था कि किस तरह के डिडक्शंस वो कर सकते हैं, किस तरह के डिडक्शंस वो नहीं कर सकते हैं, परमिसिबल, इम्परमिसिबल, वो सब हमने देख लिया है. सो हियर इन दिस केस, रिगार्डलेस ऑफ द एक्ट्स प्रोविजंस, जो भी डिडक्शंस होंगे in any wage period from an employee persons, it shall not exceed 75% of their wages if the payments are made for payments to the cooperative societies or 50% in the other cases. ठीक है, अगर पेमेंट हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कर रहे हैं उसमें 75% तक वेजेस उतना ही, इट शैल नॉट एक्सीड द डिडक्शंस जो भी है, इससे ज्यादा नहीं होंगे. इन अदर केसेस इट वुड बी 50%. एंड वॉट एवर द एक्सेस, अगर डिडक्शन सरपास हो रहे हैं इस लिमिट से, फिर उसके लिए अलग से प्रिस्क्राइब्ड मेथड से उन्हीं के बेसिस पे एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय से वो रिकवर करना पड़ेगा. ठीक है, सो इन दिस केस द करेक्ट आंसर इज सी. द मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन इज 50% ऑफ द वेजेस एंड एनी डिडक्शन एक्सीडिंग दिस लिमिट रिक्वायर्स द प्रायर अप्रूवल ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एज पार्ट ऑफ द prescribed methods or the due diligence process that they have to follow. वही cooperative societies को कर रहे हैं तो then in that case it would be 75%. So here comes the next question. Consider the following statements regarding the imposition of fines under Section 8 of the Payment of Wages Act 1936. So किस तरह से fines impose कर सकते हैं? Yes, sometimes कुछ गलती हो सकती है, कुछ इश्यू है, कुछ डैमेज हुआ, उसके लिए फाइन तो करना पड़ेगा, लेकिन वो भी एक अच्छे से उन्होंने सब मेंशन किया हुआ है कि किस तरह से वो फाइन वो कर सकते हैं. The maximum fine that can be imposed on an employee during a wage period is limited to 3% of their total wages for that period. उससे ज़्यादा नहीं फाइन कर सकते हैं. 2 fines imposed on an employee must be recovered within 180 days from the date of imposition. Third statement क्या है? Fines collected from employees must be for funding the losses made by employee towards the establishment. Now you have to tell me which of these statements are correct. Okay, so in this case yes, 3% से ज़्यादा उनका फाइन नहीं होना चाहिए, ये तो ट्रू है, this is true. Now fines imposed on an employee must be recovered. कितने दिनों में वो रिकवर कर सकते हैं? आज उन्होंने किया है तो from the date of imposition it should be not 180 days but 90 days. So ये भी गलत स्टेटमेंट है. Fines collected from employees must be used for fulfilling losses made by the employee towards establishment. No, कुछ उन्हीं के लिए वेलफेयर कुछ प्रोग्राम्स है या फिर कुछ बेनिफिट है एम्प्लॉयज के लिए, उसी के लिए एक्सक्लूसिवली दिस फाइन, द अमाउंट that has been taken as fine should be utilized. So in this case only statement 1 is correct, rest are wrong. So here comes the next question. Under Section 9 of the Payment of Wages Act 1936 regarding deductions for absence from duty, which of the following statements is or are correct? Now Section 9 के हिसाब से अगर वो absence है कोई एम्प्लॉई या फिर एम्प्लॉईज कलेक्टिवली, अगर उनके लिए क्या उन पे मतलब डिडक्शन कर सकते हैं. So in this case the first statement says deductions are permissible only for the absence of employee for an employee from the designated workplace during the specified working hours as per the employment terms, based on the employment terms only. अगर वो वहाँ नहीं है then the employer has every right to deduct amount जितना भी उस
पर्टिकुलर पीरियड के लिए होगा. If 10 or more employees collectively absent themselves without proper notice or valid reason collectively, deductions may include compensation of up to 8 days wages. उनका 8 days wages तक वो डिडक्ट कर सकते हैं, unless अगर कुछ और स्पेसिफाई नहीं किया है by the appropriate government based on the industry in which they are, which we have already discussed. In this case, if you look at the answer, both these statements are true. So as per section 9 जो deductions for absence from duty जो आता है वो individual के लिए ये है, मतलब अगर वर्क प्लेस पे नहीं है as per the employment terms उस टाइम पे नहीं है तो then they have every right as per the time and everything that they can deduct. And अगर 10 or more employees collectively absent होते हैं, okay, without any proper notice or valid reason, so in that case 8 days तक उनके wages ये लोग डिडक्ट कर सकते हैं. और अगर कुछ और उस टाइम पे उस इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने कुछ बोला नहीं है तो 8 डेज का तो ये लोग कर सकते हैं डिडक्शंस. तो फ्रेंड्स अभी तक हमने क्वेश्चंस किया है कुछ 9 to 10 सेक्शंस में, बाकी सेक्शंस का हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट. सो अगर आप लोग यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी के लिए या फिर ईओ और एओ 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो वी हैव 3 options for you as part of your preparation to help you out in your preparation or to guide you out in your preparation. एक तो है मास्टर कोर्स जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, लाइक योर वीडियोस रिकॉर्डेड, द कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ्स, चैप्टर वाइज क्विजेस, उसके बाद प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग यू विल गेट एज पार्ट ऑफ द मास्टर कोर्स. ये उनके लिए है जो बिल्कुल अभी तैयारी स्टार्ट किए हैं और उनको सब कुछ कंटेंट एक जगह पे चाहिए. अलोंग विद दैट एक वीकली गाइडेंस सेशन भी होगा आप लोगों के लिए विद कुलदीप सर. उस टाइम एवरी वीक थर्सडे के दिन होगा, तो उसमें आपको वो जो भी आपके क्वेरीज है या क्वेश्चन है एवरीथिंग ही विल बी लुकिंग इनटू. नेक्स्ट आता है टेस्ट सीरीज प्लस. इसमें थोड़ा सा कंटेंट वीडियोस एक्सेट्रा उसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, सो दैट ये उनके लिए ऑलरेडी कुछ कंटेंट उन्होंने मैंने थोड़ा प्रिपरेशन किया है, बट येस दे वांट अगेन कंटेंट अलोंग विथ द टेस्ट सीरीज सो दैट दे कैन चेक आउट देमसेल्व्स कि वेयर दे स्टैंड इन देयर प्रिपरेशन. नाउ थर्ड एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज उनके लिए है कि ऑलरेडी उन्होंने प्रिपेयर कर लिया है, बट नाउ दे वांट टू टेस्ट चेक देमसेल्व्स वेयर दे स्टैंड इन देयर प्रिपरेशन. तो उनके पास पूरा कंटेंट उन्होंने प्रिपेयर कर लिया, सो उनके लिए टेस्ट सीरीज बेस्ट ऑप्शन है जहां पे वो अपने आप को चेक कर सकते हैं कि where they stand in their preparation. So all these courses exclusively for the upcoming UPSC EPFO both APFC and EO/AO के लिए, that is for 2025, wherein we are expecting the notification sometime in Feb or March. So thank you very much for being with me. So फिर मिलेंगे next part में part 2 of the same topic, that is Payment of Wages Act 1936. Hello friends, welcome to EduTap and also welcome to the series that we have launched, that is 15 MCQs a day related to UPSC EPFO 2025, because we are expecting the notification of UPSC EPFO very soon. And as part of which part 1 हमने complete किया था earlier of labor laws of payment of wages act 1936. आज हम लोग उसी में part 2 करने वाले हैं. So friends, part 1 में हमने section 9 तक कुछ questions किए हैं. Whatever the revision that we have done related to the content, we have done is in the form of MCQs. So today also we'll be doing in the same manner, and उसमें आज हम लोग और 15 questions करने वाले हैं. So the number 1 question for today is, consider the following statements regarding section 10 of the Payment of Wages Act 1936 related to deduction for damage or loss. अगर उन्होंने कुछ डैमेज किया, लॉस कुछ किया है, उसके लिए डिडक्शंस किस तरह से करना है. तो उसमें 3 स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ दिया है एंड आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. सो a deduction for damage or loss caused by an employee's negligence or default shall not exceed the actual amount of the damage or loss. Deductions can be made without providing the employee an opportunity to show cause against the deduction as long as the employer follows the prescribed procedures.
थर्ड स्टेटमेंट ये है कि ऑल डिडक्शंस एंड कलेक्शंस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन रजिस्टर मेंटेन्ड बाय द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर वेज पेमेंट्स. सो ये तीनों स्टेटमेंट्स में फर्स्ट यस इट इज ट्रू, ओके, जितना लॉस हुआ उतना ही डिडक्ट करना, ऐसा नहीं कि कुछ ज्यादा कर रहे हैं, ओके. एंड दिस इज फॉल्स बिकॉज चांस उनको देना चाहिए एम्प्लॉय को कि क्यों हुआ है, वो रियल में बड़ा एरर था या फिर कुछ और एक्सीडेंटल या कुछ हुआ है, दैट दे हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर अप्लाइंग द डिडक्शन फॉर द लॉस और डैमेज. तो ये फॉल्स है. थर्ड, yes, all deductions and collections must be recorded in a register maintained by the person who is responsible for all these wage payments. फैक्ट्री में कोई मैनेजर हो सकता है, किसी और इसमें एस्टेब्लिशमेंट में कोई सुपरवाइजर हो सकता है या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हो सकता है, जो भी उस पर्टिकुलर काम के लिए है, जो वेज पेमेंट्स करता है. ठीक है. सो इन दिस केस ओनली 1 and 3 आर ओनली करेक्ट. So here comes question number 2, which says consider the following statements regarding section 11 of the Payment of Wages Act 1936 related to deductions for services rendered. किस तरह के services? Statement ये कहता है, statement 1, deductions for services rendered such as house accommodation or amenities can only be made if the employee has explicitly accepted these services as part of their employment terms or otherwise. 2, second statement है, the value of deductions for such services must not exceed the market rate for similar services available to the general public. जो general public के लिए है उसी market rate से होना चाहिए. थर्ड स्टेटमेंट ये कहता है, the deduction amount shall not exceed the equivalent value of the house accommodation, amenity or the service provided. So in this case the first one it is true until and unless employee accept करेगा तब तक they can't deduct any amount for such services. 1, the value of deductions जो services है it should not exceed market rate. market rate का कुछ यहाँ आता ही नहीं है, okay. it only says the amount shall not exceed the equivalent value of the house accommodation, amenity or service that has been provided. जो भी उन्होंने रेट तय किया था, it's not that वो market rate के हिसाब से ही होना चाहिए, nothing like that. So this statement 2 is false, only statement 1 and 2 are true here. So the correct answer here is B, 1 and 3 only. Next comes, as per section 12. Now what is section 12 of the Payment of Wages Act 1936 related to deductions for the recovery of advances. Advances given before employment must be recovered from the first payment of wages for max of what period except for advances related to travel expenses. So अगर कभी कभी होता है कि ज्वाइन करने से पहले ही कुछ एडवांसेस लिया है, राइट, तो उस टाइम पे उन जो भी एडवांसेस दिया है उसको किस तरह से रिकवर किया जाए, व्हेन, ओके. सो इसमें ये दिया है कि इट मस्ट बी रिकवर्ड फ्रॉम द फर्स्ट पेमेंट ऑफ वेजेस, जो भी उसका फर्स्ट पेमेंट होगा वेजेस का उसी टाइम पे, फॉर मैक्सिमम ऑफ व्हाट पीरियड, वो पीरियड कितना होना चाहिए. सो इन दिस केस ऑलवेज इट वुड बी फॉर अ कंप्लीट वेज पीरियड, जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था एक बार लास्ट सेशन में कि वेज पीरियड क्या है. सो वेज पीरियड ऑलवेज इट शुड नॉट बी मोर देन अ मंथ. सो ऑब्वियसली द कंप्लीट वेज पीरियड यहाँ पे इसका मतलब होगा 1 month ही. ठीक है. Now here comes question number 4. Under section 13A of Payment of Wages Act 1936, regarding the maintenance of the registers and records, which of the following statements is or are incorrect? Okay. Now employees are required to maintain registers and records detailing employee information, work performed, wages paid and deductions. These records must include receipts and other particulars prescribed by the appropriate government. Employees are exempt from maintaining records for employees earning above a certain threshold as prescribed by the central government. All records must be preserved for a minimum of 3 years from the date of last entry. So इसमें yes they have to maintain records, which is very much true. उनका काम क्या है, किस तरह का wages pay किया है, deductions कुछ किया है, fines, everything they have to maintain. And the records must include receipts and any other particulars prescribed by the appropriate government based on the industry they are up to.
Third, employers are exempt from maintaining such records for certain threshold, above certain threshold, etc. This is not true, because it is applicable for everyone, and all records must be preserved for a minimum of 3 years from the date of last entry. वो entry हमेशा जो भी entry होगा वो at least 3 years तक उनको record maintain करना पड़ेगा. So here comes the next question, question number 5, under section 14 of the Payment of Wages Act 1936 regarding inspectors. Okay, जिनको अपॉइंट करती है appropriate government, so that जो time to time जो checking वो सब हो सके, वो सब ये कर लेंगे. Which of the following statements is or are incorrect? Inspectors of factories under the Factories Act 1948 also serve as inspectors under the Payments of Wages Act 1936 for factories within their jurisdictions. And yes, this is true, क्योंकि वो दोनों तरफ से वो काम कर सकते हैं. At the same time, they are also considered as a public servant when they are dealing in such work. Okay, inspectors can seize or make copies of registered documents or relevant portions if they reason to believe that an employer has committed an offence under this act. Yes, they can do this as well. And जब ये search, seizures ये सब करते हैं, this all comes under the provisions of Code of Criminal Procedures, Code of Criminal Procedures, CCRP के अंडर 1973 का है. लेकिन आज recently this has been changed into भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS, अभी इसके अंडर आता है ये. Okay, now next, inspectors may oversee the payment of wages to individuals employed on a railway or in a factory or in an industry or an establishment. Yes, this is also true. वो कर सकते हैं उस तरह से. They have every right to do that. Inspectors have the authority to demand the presentation of registers or records to a verbal order at any location they choose. Yes, they can order the presentation, to demand the presentation of registers or records कहीं पे भी, but only through some written order. कुछ written request order के हिसाब से ही होता है. It's not based on the verbal order. So this is false. Rest of them are true. So this is the incorrect statement that we are talking about under section 14 of the Payment of Wages Act. So friends, here comes the next question. Under section 15 of the Payment of Wages Act 1936, which of the following authorities can hear and adjudicate claims arising from wage deductions or delays in wage payments? Already ये law किया ही है, ये act ये किया ही है to avoid all these, right, to give some protection to the employees in related to the wage payments or any wage deductions etc. लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाता है, कुछ complaints आ जाते हैं, then where should the claims? So all the claims arising out of the deductions from wages or delay in payment of wages and penalty for malicious claims etc. all will fall under this section 15 of the Payment of Wages Act 1936. So इसमें कुछ statements and you have to tell me which statement is true in this case, or who is the authority who can look into this. Only labor courts constituted under the Industrial Disputes Act 1947. Any commissioner for workmen's compensation, regional labor commissioner or assistant labor commissioner with at least 2 years of experience. Only civil courts having jurisdiction over the area where the employer is located. Any officer of the central government not below the rank of deputy secretary. So in all this, B is the true one. Any commissioner of workmen's compensation, regional labor commissioner or assistant labor commissioner, but they should have at least 2 years of experience in order to look into this kind of complaints. Okay. Moving on to our next question from the same section. Section 15 of the Payment of Wages Act 1936 stipulates that applications for redressal of grievances related to unauthorized deductions or delayed payment of wages must be submitted within a specified time frame. Okay, एक time देते हैं और कुछ procedure होता है that they have to follow. Now considering that, एक scenario दिया है, based on that you have to answer a question. Now scenario इस तरह से है. Ramesh, an employee, alleges that his employer deducted rupees 5,000 from his wages without authorization 10 months ago. Ramesh's trade union representative Rohan wants to file an application for redress on Ramesh's behalf.
Now, which of the following statements is correct regarding Rohan's application for redress? First, Rohan can file the application within next 2 months, as the 12-month period for submitting applications has not yet expired. Rohan cannot file the application as a 10-month period for submitting applications has expired. Rohan can file the application but will be considered only if Ramesh provides a written authorization to Rohan within the next 30 days. 10 months हो गया है, अभी next 30 days में उसको देना है, तब भी वो कर पाएगा. Rohan can file the application even after the expiry of the application but before 90 days, and if the authority is okay that if Rohan demonstrates a sufficient cause for the delay in applying, then he can do that. Okay. Now, if we'll look at one statement each. So Rohan can file the application within the next 2 months, as a 12-month period for submitting application has not expired. So first thing you have to understand is application, ये कंप्लेंट या एप्लीकेशन कौन कर सकता है रिलेवेंट अथॉरिटी से? वो अफेक्टेड एम्प्लॉय खुद कर सकता है, और अ लीगल प्रैक्टिशनर हु इज रिप्रेजेंटिंग द that employed person, or an official of a registered trade union. So in this case, Rohan is an official registered with the trade union, and he has been duly authorized in writing to act on behalf of Ramesh, so he can do that. Okay, if he has been authorized, then definitely he can do that. It's not that Ramesh को ही जाके वो करना पड़ेगा. ठीक है, ये एक हो गया है. एंड अभी टाइम फ्रेम, कितना टाइम फ्रेम है? विदिन 12 मंथ्स. जब भी वो डिडक्शन हुआ वहां से 12 मंथ्स तक टाइम पीरियड रहता है इनको वो कंप्लेंट करने के लिए. सो यहाँ पे 10 मंथ्स हुआ है, सो 2 मंथ्स है. सो यस, दिस इज ट्रू. रोहन कैनॉट फाइल एप्लीकेशन एज अ 10 मंथ पीरियड फॉर 10 मंथ है ही नहीं, 12 मंथ्स कहते हैं, ये फॉल्स है. Rohan can file the application but it is considered only if Ramesh provides written authorization to Rohan within the next 30 days. No, हमारे पास अभी भी 2 months और है. So within next 2 months अगर वो दे देता है, then he can file, Rohan can file. So this is also false. Rohan can file the application even after the expiry of application but before 90 days. No, another 12 months is given in this case, provided the employee has to show some sufficient cause for delay in approaching or delay in applying or filing for the cause. ठीक है, तो ये भी false है. Okay, here comes the next question. As per section 15 of the Payment of Wages Act 1936, it provides for the payment of compensation to employees in cases of delayed payment of wages. Now, which of the following statements is correct regarding the payment of compensation for delayed wages? Okay, both. अगर डिडक्ट हुआ है तो उसे किस तरह से वो क्लियर करेंगे, एंड अगर कुछ डिडक्ट हुआ है तो उसे किस तरह से करेंगे. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द कंपेंसेशन पेएबल फॉर डिलेड वेजेस शैल नॉट एक्सीड 1500. सी, कई बार होता है कि डिले हो गया पेमेंट. ओके, डिलेड पेमेंट अगर डिलेड वेजेस में ये 1500 से ज्यादा होना चाहिए. ओके, द कंपेंसेशन दैट कैन बी प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन द ऑफिशियल जो भी वो डील कर रहे हैं एंड गिविंग द डायरेक्टिव टू द एम्प्लॉयर. सो इट शुड नॉट बी लेस देन 1500 बट नॉट मोर देन 3000. सो दिस इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स. ओके, नेक्स्ट ये हो गया हमारा डिलेड वेजेस में. डिडक्टेड वेजेस में द कंपेंसेशन पेएबल फॉर डिडक्ट वेजेस शैल नॉट एक्सीड 5 times the amount of wages delayed or wages deducted. So in this case it's not 5 times, it is 10 times. 10 टाइम्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए जो कंपेंसेशन वो पेएबल है बेस्ड ऑन द डिडक्टेड वेजेस. कई बार ऐसा होता है कि वो कंप्लेंट करने गए हैं, अप्लाई कर दिया है, बट इन बिटवीन उनका वो डिडक्टेड अमाउंट जो भी है वो आ गया है. इवन इन दैट केस कंपेंसेशन 2000 तक वो उनको मिल सकता है, नॉट मोर देन दैट. सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो ये फॉल्स हो गया हमारा. Claims made under this act should ideally be resolved within 6 months from the date of registration of the claim by the authority, as long as it is practicably feasible to do so. ये 3 months का time है. Within 3 months they have to do that, they have to resolve this. But अगर दोनों parties, the employer and the employee, अगर मान रहे हैं तो उसे और आगे उसको लेके जा सकते हैं for an extension. They can go beyond this 3 months.
period as well, but not more than that. So this is also false. So only this statement is true in this case. Moving on to our next question from the same section again. Under section 15 of the Payment of Wages Act 1936, in case where an application is found to be malicious or vexatious, ईदर पार्टीज की तरफ से अगर कुछ गलत हुआ है, जानबूझ के उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं या ऐसा कुछ है, malicious intent, in that case what is the maximum penalty that can be imposed on the person who is presenting that application, जिसने भी अप्लाई किया है? In that case it is rupees 375. That is a penalty that is imposed on the person presenting the application in a malicious or vexatious manner. Yes friends, moving on to the next question. Section 17 of Payment of Wages Act provides for appeals against orders or directions issued under the act. अगर कुछ उनको लग रहा है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है या कुछ, they want to appeal against whatever that they have received the order, they can do that. Now, which of the following statements is correct regarding the appeal mechanism under section 17 of the Payment of Wages Act? The first thing, an appeal against an order in direction can be filed within 60 days from the date of order or the direction. As I said, yes, they can do, but not 60 days, it is 30 days. ठीक है. Next आता है, in a presidency town and elsewhere, an appeal is made to the district court only. Okay, it's not like that. अगर presidency town है तो then the appeal is made to the court of small causes, elsewhere it is made to the district court. So presidency towns इनके लिए it is made to the court of small causes. Okay, and elsewhere it is made to district court. So separate. So this is also not true. An employer or responsible party can file an appeal if the directed payment for wages and compensation exceeds 300 rupees or imposes a financial liability that exceeds 1000 rupees. Yes, this is true. They can do this. And an employed person can file an appeal. ये हो गया employer का. Now, an employed person can file an appeal if the total amount of wages claimed to have been withheld, जो wage delaying या फिर withheld वाला है, from them is less than 20. No, this is not less than 20, but this is greater than 20 for individuals. And अगर वो employed person एक group को belong करता है जिनके wages deduct किए गए हैं, in that case it should exceed rupees 50. In individual cases it should exceed rupees 20. In group cases, unpaid group अगर कुछ है, as part of the group his wages have also been deducted, in such cases it would be greater than rupees 50. Okay. Yes, now moving on to our next question. Question number 11. Section 17 of the Payment of Wages Act 1936 specifies the conditions under which an appeal can be filed against an order or direction issued under the Act. Who among the following can file an appeal under Section 17 of the Payment of Wages Act 1936 if the total amount of wages claimed to have been withheld from the employed persons exceeds rupees 50? So in this case, only the employed person themselves, any legal practitioner or any official of a registered trade union authorized in writing to act on behalf of the employed person, any inspector or other person acting with the permission of the authority appointed. So in this case, either of these can do. It's not that only the employed person himself can do. So he can also do, but other than that, any legal practitioner or official जो trade union authorized person होगा वो भी कर सकते हैं, and any inspector or any other person जो इन सब का वो देख रहे हैं permission जो authority के हिसाब से, they can do this. So here comes another question to brush up whatever that we have done till now. As per the provisions of section 9 of the Payments of Wages Act 1936, if 10 or more persons are absent without any due notice or without any reasonable cause, how much maximum deduction can be made by an employer? Okay, so here the amount that can be deducted in such case should not exceed each person's wages for 8 days. So 8 days का वो wages deduct कर सकते हैं.
So another question again to brush up what we have done till now. As per section 2 of the Payment of Wages Act 1936, wage does not include which of the following: bonus is not forming part of the remuneration or not part payable under an award, settlement or court order. Value of household accommodation, utilities, medical assistance or other services excluded by the government. Employer contribution to pensions or provident funds including accrued interest. Sums paid to cover special employment related expenses. Gratuities payable upon termination of employment. And we have seen that wage exclusively जो उसमें mention में है as per the explicitly mentioned as part of the contract, only that would be considered as wage, including अगर कुछ extra work किया है etc. All those. Otherwise all these that have been highlighted here, they are not considered as wage under the term wage as per the section 2 of the Payment of Wages Act. So now when we talk about the Payment of Wages Act 1936, what exactly it does, what exactly it regulates, वो भी तो important है. Yes, the Payment of Wages Act 1936 regulates the payment of wages to certain classes of employed persons. Which of the following statements is correct regarding the applicability of the Payment of Wages Act 1936? That applies to wage payments for individuals employed in factories, railways and industrial establishment irrespective of their monthly wages. Yes, it is for all this, but not irrespective. They have a certain amount. Okay, that applies to wage payments for individuals employed in factories, railways and industrial establishments only if their monthly wages do not exceed 60,000. जो amount है, but that's not 60,000. So this is also not true. The Act applies to wage payments for individuals employed in factories, railways and industrial establishments only if their monthly wages do not exceed 24,000. Now this is true. And the Act applies to all establishments including those in the service sector without any discrimination or any limit on the monthly wages. This is not true because already हमने वो देख लिया. This is exclusively applicable for factories, railways and industrial establishments where the wages do not exceed rupees 24,000. Okay. Now ये जो Payment of Wages Act है 1936 along with few other acts, okay, they have been very recently rationalized and subsumed under one of these following labor codes. Now, which among the following codes has been notified on 8th August 2019 in the provisions of the Payment of Wages Act 1936, which we have been discussing in the last two sessions, it is last one and this one. The Minimum Wages Act 1948, the Payment of Bonus Act 1965 and the Equal Remuneration Act 1976 have been rationalized and subsumed therein in one of these following codes, which is that code. And here we are talking about the Code on Wages 2019. इसमें ये चारों acts subsume हो गए हैं and they have been rationalized as well. तो फ्रेंड्स अभी तक हमने क्वेश्चंस किया है कुछ 9 to 10 सेक्शंस में. बाकी सेक्शंस का हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट. सो अगर आप लोग यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी के लिए या फिर ईओ और एओ 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो वी हैव 3 options for you as part of your preparation to help you out in your preparation or to guide you out in your preparation. एक तो है मास्टर कोर्स जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, लाइक योर वीडियोस रिकॉर्डेड, द कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ्स, चैप्टर वाइज क्विजेस, उसके बाद प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग यू विल गेट एज पार्ट ऑफ द मास्टर कोर्स. ये उनके लिए है जो बिल्कुल अभी तैयारी स्टार्ट किए हैं और उनको सब कुछ कंटेंट एक जगह पे चाहिए. अलोंग विद दैट एक वीकली गाइडेंस सेशन भी होगा आप लोगों के लिए विद कुलदीप सर. उस टाइम एवरी वीक थर्सडे के दिन होगा, तो उसमें आपको वो जो भी आपके क्वेरीज है या क्वेश्चन है एवरीथिंग ही विल बी लुकिंग इनटू. नेक्स्ट आता है टेस्ट सीरीज प्लस. इसमें थोड़ा सा कंटेंट वीडियोस एक्सेट्रा उसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, सो दैट ये उनके लिए ऑलरेडी कुछ कंटेंट उन्होंने मैंने थोड़ा प्रिपरेशन किया है, बट यस दे वांट अगेन कंटेंट अलोंग विथ द टेस्ट सीरीज सो दैट दे कैन चेक आउट देमसेल्व्स कि वेयर दे स्टैंड इन देयर प्रिपरेशन. नाउ थर्ड एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज उनके लिए है कि ऑलरेडी उन्होंने प्रिपेयर कर लिया है, बट नाउ दे वांट टू
टेस्ट चेक देमसेल्व्स वेयर दे स्टैंड इन देयर प्रिपरेशन। तो उनके पास पूरा कंटेंट उन्होंने प्रिपेयर कर लिया, सो उनके लिए टेस्ट सीरीज बेस्ट ऑप्शन है, जहाँ पे वो अपने आप को चेक कर सकते हैं कि वेयर दे स्टैंड इन देयर प्रिपरेशन। सो ऑल दीज कोर्सेस एक्सक्लूसिवली for the upcoming UPSC EPFO, both APFC and EO/AO के लिए, that is for 2025, wherein we are expecting the notification sometime in Feb or March. Thank you very much and see you all in the next session soon. All the best. Hello friends, welcome to EduTap and a warm welcome to you all to the series that we have started very recently for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination, as part of which we'll be doing daily 15 MCQs, and today we'll be doing 15 MCQs, the most important 15 MCQs on Minimum Wages Act 1948, and this would be part 1 of this act, wherein because we'll be doing another 15 questions in the next part. So here comes the first question. So before that, small introduction. See, the roots of the minimum wage laws, you can trace them back to labor movements in various countries during the early 19th or the late 19th century and the early 20th century. Because since these times, the labor movements have started, based on which only various countries they have come up with various laws associated with the wages. Okay, so the first question is, which among the following countries was one of the first countries to introduce a minimum wage law in 1894? कौन सी ऐसी कंट्री है जो पहली बार ये इंट्रोड्यूस किया है कि एक मिनिमम वेज होना चाहिए एक्चुअली? ओके, एंड यहाँ पे आता है हमारा न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड वो कंट्री है जो सबसे पहले वर्ल्ड में एक मिनिमम वेज लॉ जैसा एक लाया था in 1894. Now moving on to our question number 2. The Harvester Judgment, also known as Ex parte H.V. Mackay, was landmark labor law case that established the basis for one of the following countries' minimum wage for unskilled workers. Now ये जजमेंट हुआ था 1907 में. उस टाइम के जजेस थे जस्टिस थे हेनरी बॉन्स, एंड उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था आफ्टर न्यूजीलैंड के बाद अगर किसी कंट्री का लेबर लॉ कुछ आया है रिलेटेड टू द मिनिमम वेजेस एंड अनस्किल्ड लेबर्स के लिए, दैट वाज ऑफ दिस कंट्री, एंड ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया. ना ऑस्ट्रेलिया के बाद यूके यूनाइटेड किंगडम ने भी एक लॉ लेके आए थे, ट्रेड एक्ट करके, उन्होंने भी रिलेटेड टू वेजेस एक लॉ लेके आए थे. उसके बाद आया था यूएस की बारी. ना यूएस में क्या किया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिनिमम वेज लॉस इन द यूनाइटेड स्टेट्स, दैट इज द यूएसए. ना इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है, द डेविस Bacon Act of 1931 established a nationwide minimum wage for construction workers on federal projects, that is जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स है उस पे जो भी वर्कर्स काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, उनके लिए एक मिनिमम वेज होना चाहिए करके एक एक्ट ले आए थे. ओके, द फेयर लेबर स्टैंडर्ड्स एक्ट FLSA 1938 सेट ए मिनिमम वेज एंड एस्टैब्लिश द 40-hour वर्क वीक. उसके बाद 1938 में एक और लॉ आया था, द फेयर लेबर स्टैंडर्ड्स, FLSA बोलते हैं उसको, एंड एज पर देम दे हैव सेट ए मिनिमम वेज, एंड बोला कि हफ्ते में 40 आवर्स का ही वीक मतलब वर्क वीक होना चाहिए. थर्ड, ये सारे स्टेटमेंट्स है. नाउ यू हैव टू टेल मी विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू. थर्ड स्टेटमेंट है, फार्म बोर्ड्स एक्ट 1945 established a nationwide minimum wage for farm labor. Now you have to tell me कि मैंने पहले ही बता दिया कि यूएस का भी आया था, एंड ऑफ दीज 3 स्टेटमेंट्स ओनली 1 and 2 both are true. ओके, यहाँ पे गलत दिया है, ये डी है आंसर. बोथ 1 and 2 are correct, but third is not true. तो अभी तक हमने देखा है कि हिस्ट्री क्या है, कि मिनिमम वेजेस किस कंट्री ने दिया है, नो इन द फॉर्म ऑफ एक्ट्स, लॉस एक्सेट्रा. नाउ
कुछ तो उसका बेसिस होना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द सेम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड्स यूज्ड बाय सम कंट्रीज टू एडजस्ट मिनिमम वेजेस. ऐसा वो कौन सा देखते हैं, कौन सा वाला पार्ट देखते हैं, या फिर कौन सा इंडेक्स या कुछ जो भी है, या फिर इन्फ्लेशन, कुछ कुछ तो वो देखते होंगे ना, बेस्ड ऑन विच दे विल सेट दैट मिनिमम वेजेस. ओके, सो वो कौन सा है? So here in this case, when we talk about minimum wages are based on the tying them to increase to inflation or the cost of living. जो भी cost of living एक इंडेक्स आता है COL करके, ओके, इंडिया का भी है, एंड बेस्ड ऑन दिस दैट इज द कंपेयर कि इस जगह का जो भी मिनिमम कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना हो रहा है, मतलब रिलेटेड टू फूड आइटम्स, रेंट एंड कई सारे ऐसे आइटम्स निकाल के दे कंपेयर देम एंड अकॉर्डिंगली दे से ओके दिस इज द सिटी वेयर द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी हाई and this is a city where the cost of living is very low. So November 2024 के लिए ये इंडेक्स आता है on the range of 21 or something for India, and इंडिया में सबसे हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग जो इस इंडेक्स के हिसाब से देखा जाए तो दैट इज मुंबई, जिसका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है 25 प्लस पॉइंट्स. ओके, ऑन एन एवरेज इंडिया के 21 क्लोज टू 21 ऐसा है, एंड कई सारे स्टेट्स का या कई सारे सिटीज का तो इससे भी बहुत कम है, एवरेज से भी कम है. नाउ नेक्स्ट आता है हमारा, वी हैव सीन दैट ओके मेनी कंट्रीज हैव कम अप विद देयर ओन वेजेस एक्ट्स, लॉस जो भी है, सो दैट दे कैन सपोर्ट द वर्कर्स, स्पेशली द वर्कर्स, सो दैट दे कैन अर्न एटलीस्ट थोड़ा सा एक मिनिमम वेज होना चाहिए उनका करके. तो इंडिया में भी 1948 में ये एक्ट आया था, मिनिमम वेजेस एक्ट. ओके, इसमें कई सारे सेक्शन से क्लोज टू 16 सेक्शन है. हम हर सेक्शन का भी बहुत डिटेलली will be practicing or will be reviewing or will be revising the content in the form of MCQs only. So first question from that, consider the following statements regarding the objective of the Minimum Wages Act 1948. So उसका objective क्या है, major objective when it comes to the Minimum Wages Act 1948 of India. Now अगर इसमें देखा जाए तो the main objective of this act is to provide minimum rates of wages in scheduled employments. Now scheduled employment क्या है, ये वो employment है जो एक schedule में specified है, और any process or branch of work forming part of such employment, जैसे कि कोई फैक्ट्री वर्कर हो उनका काम, फिर उसमें कई सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जैसे कई सारे आते हैं, फार्मा है, ऐसे कई सारे एस्टेब्लिशमेंट्स है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो देते हैं ना, दैट कम्स अंडर द शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट. So coming to the next question, under section 2 of the Minimum Wages Act 1948, the definitions provided in labor laws, कई सारे definitions दिया है उन्होंने इसमें, and as part of which there are few statements that I have given here. Now you have to tell me which of these statements is or are correct regarding the classification of individuals based on their age. Okay, first statement क्या है, an adolescent is an individual who has completed 14th year of age, मतलब 14 years complete कर लिया है उसने, so in simpler terms 15 years में आ गया है, but has not completed 18th year, 18 years अभी complete नहीं हुए. Okay, an adult is an individual who has completed 18 years of age irrespective of employment status. A child refers to an individual who has not completed 15 years of age and is prohibited from any form of employment. Yes. Now as per these statements, one, yes it is true, 14 years complete हो गया, मतलब 15 to 18 years को adolescent बोलते हैं as per the labor laws in India. And adult कौन है, जो who has completed 18 years of age, 18 plus जो भी है, those are adults. And a child is referred to an individual who has not completed 14 years of age. That's why हम लोग बोलते हैं ना 14 years, till 14 years
if we employ someone, a child, it would be called as a child labor only. So in this case, only statement 1 and 2 are correct. Okay, it's 1 and 2 which are correct in this, and I'm really sorry, here it is B. Okay. So friends, coming to the next question. So जब कुछ act आ रहा है, so obviously there would be some which governs them, or जो इसको apply करता है, right? So in this case, under the same section, that is section 2 of the Minimum Wages Act 1948, the definition of appropriate government in labor laws, which of the following statements is or are correct? First one, the central government is appropriate government for scheduled employments conducted by corporations established under a central act. So that वो सारे central establishments होंगे और central enterprises होंगे. The state government acts as appropriate government for all the scheduled employments except those specifically assigned to the central government. Third, a major port and an oil field come under the purview of the state governments as the appropriate government. Now in 3 statements, you have to tell me which of the statements are true. Okay, now when we talk about appropriate government, generally जैसे कि बड़े-बड़े जो central government में आता है, जैसे railway administration, mines, oil fields, major ports, or any corporation that has been established by a central act, all these fall under central government और उसके appropriate government होगा central government. बाकी सब इन जो अभी मैंने enlist किया है उनको छोड़ के बाकी जो भी establishments होंगे that would fall under state government, and in this case the state government would be the appropriate government for implementing this Minimum Wages Act 1948. So in this case the correct answer would be 1 and 2 only, because ports, oil fields ये सारे central government के under आते हैं and not state government. Textiles, pharma ऐसा कुछ होते हैं तो that would fall under the state government. So अभी आता है next question, question number 8. The concept of competent authority, जैसे appropriate government एक है, उसके साथ साथ एक और authority है इसमें इस law में, and that is competent authority is relevant in the context of scheduled employments. Okay, this is in context of the scheduled employments. Which of the following statements accurately describes the role of the competent authority in relation to scheduled employments? Okay, it is responsible for enforcing the provisions of Minimum Wages Act 1948 in scheduled employments. Enforcement किसका responsibility है? Appropriate government की, so वो रहेगा B. So ये false है. It is empowered to adjudicate disputes arising from the payment of wages in scheduled employments. Payment of wages act already एक है जो हमने already अभी last 2 days में पढ़ा है, तो ये भी नहीं है, so ये भी false है. It is entrusted with the task of regularly determining the cost of living index for employees in specified scheduled employments. ये true है. And अभी हमने देखा था cost of living index is nothing but ये measure है relative cost of living over time और other regions. तो इससे क्या होता है, price of goods and services. Okay, हर जगह का देखते हैं and they compare that with each other कि इस जगह का कितना है, उस जगह का, अगर मुंबई and पुणे, okay, based on that cost of living किस तरह से है उस states में, okay, ये देखते हैं. तो as I've said, as on November 2024 इंडिया का as such cost of living index है, average cost of living index है 21.2 और something, and सबसे highest है मुंबई which is approximately 25, and इससे कम भी है, जैसे लखनऊ का 18 ही है. Okay, cost of living index as per November 2024. ये keep on changing क्योंकि कई बार rates, food prices ये सब change होते रहते हैं, accordingly every month ये this keeps on changing. So वो establish करना जो index है, that is the responsibility of this competent authority. And D, it has authority to grant exemption from the provisions of Payment of Wages Act in respect of schedule. इसका कुछ भी नहीं है. So this C is the correct answer in this case.
So coming to the next question, the definition same section 2 से ही अभी भी हम लोग questions कर रहे हैं. So the definition of employer under the Minimum Wages Act 1948 encompasses various entities responsible for the supervision and control of employees in scheduled employments. Now, which of the following individuals would be considered as an employer in respect of a scheduled employment carried out in a factory? Okay. The owner of the factory who does not involve himself in the day-to-day supervision and control of the employees, ये होगा employer. या the manager of the factory is responsible for the supervision and control of the employees, ये होगा employer. The production supervisor who oversees the work of the team of employees but is not responsible for the overall supervision and control of employees. The human resource officer responsible for recruitment and training but not for the supervision and control of the employees. So whenever such case employer, उसमें क्या है, any person who employs one or more employees in any scheduled employment in respect of which minimum rates of wages are fixed, वो बोलते हैं एम्प्लॉयर. सो इन दिस केस फैक्ट्री में किसको बोलते हैं, मैनेजर. व्हाई, बिकॉज ही और शी इज द वन who is responsible for the supervision and control of employees. So उसमें इसको as an employer देखेंगे. Okay, and in any scheduled employment under the control of the government of India, जो भी head of the department है उसको हम लोग employer बोलेंगे. And अगर कोई in any scheduled employment अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी लोकल अथॉरिटी, इन दैट केस जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा या फिर कोई भी अथॉरिटी होगा, अपॉइंटेड अथॉरिटी होगा, इन दैट केस दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज द एम्प्लॉयर. एंड इन एनी अदर केस एनी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयज, उनको एम्प्लॉयर बोलेंगे. सो इन दिस केस B is the correct answer because the manager is the one who is responsible for supervision and control of the employees. So here comes the next question. The definition of wages under the Minimum Wages Act 1948, it includes various monetary benefits payable to an employee. Okay. Now, which of the following is included in the definition of the wages? See, when we talk about the wages, it encompasses all monetary remuneration expressible in currency. Okay, and that would be based on their employment contract, whatever that has been explicitly mentioned in that. Okay, based on that the wages would be paid, but yes, few are included and few are excluded. In this case only HRA is included in this, otherwise contributions paid by the employer to the pension fund, provident fund, gratuity payments, ये सब इसमें नहीं आता है. Okay, that is not included in the wages. और traveling allowance और LTC ये भी इसमें नहीं आता है. और कुछ special payments कुछ है based on that, some that is some special expenses entailed on the employee. So वो भी इसमें wages में consider नहीं किए जाते हैं. Okay. So coming to the next question, again from section 2 of the Minimum Wages Act. The definition of employee under the Minimum Wages Act 1948 encompasses various categories of workers. Now, which of the following individuals would not be considered an employee under the Minimum Wages Act 1948? Now, employee ये कौन है? ये वो individual है जिसको कुछ कंपेंसेशन दे के हम लोग हायर कर रहे हैं टू परफॉर्म वर्क, वेदर वो स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, मैनुअल हो, क्लेरिकल हो, इन ए शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट विथ एस्टैब्लिश्ड मिनिमम वेज रेट्स. मतलब उस तरह की एस्टैब्लिशमेंट अगर काम कर रहे हैं वो उसको एम्प्लॉई बोलते हैं. एंड समटाइम्स इट ऑल्सो इंक्लूड्स आउट वर्कर्स हु आर गिवन मटेरियल्स और आर्टिकल्स बाय समवन एल्स फॉर वेरियस प्रोसेसेस बट अगेन रिलेटेड टू द सेम बिजनेस. ओके, नाउ इन सबको हम लोग बोलेंगे कि एम्प्लॉई ही. and additionally an employee can be declared as such by the appropriate government in the respective field. जैसे कि oil field हो गया तो central government, यहाँ पे pharma या कुछ है, textiles या कुछ है तो state government, क्योंकि वहाँ पे appropriate government वो रहेगा. Okay, but in all this
जहाँ पे यहाँ पे नीचे है, सी ए क्लर्क वर्किंग इन ए शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली इज एन एम्प्लॉई, अ मेंबर एन आउट वर्कर हु रिसीव्स मटेरियल्स फ्रॉम एन एम्प्लॉयर फॉर प्रोसेसिंग एट होम, even though he'll be considered as an employee of that company only, though that person is working from home and material भी वही provide कर रहे हैं. A supervisor working in a scheduled employment, obviously he is also an employee, but a member of the armed forces of the union, he or she is not considered as an employee under this minimum wages act. So coming to the next question. Now section 3. Section 3 of the Minimum Wages Act 1948 empowers the appropriate government to fix and revise minimum rates of wages. Okay, appropriate government is actually responsible for the fixing of minimum wage rates for employees engaged in employments, especially the scheduled employments. Now, what is the maximum time interval within which the appropriate government is required to review and revise the minimum rates of wages? Okay, but there is also a catch here. And what is that? The appropriate government may not fix the minimum rates of wages in respect of any scheduled employment जहाँ पे पूरे स्टेट में मिला के भी लेस देन 1000 एम्प्लॉयज है एंगेज हो रहे हैं उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट में. इन सच केसेस appropriate government may not, okay, fix the minimum rates of wages, rather the enterprise itself would be responsible for that. Okay, otherwise in all other cases it would be the responsibility of the appropriate government to fix and revise the minimum wage rates from time to time. वो time period क्या है? वो time period है 5 years. Every 5 years they have to do that. Now when we look at the section 3 of the Minimum Wages Act 1948 जो actually बोलता है कि appropriate government is the one जो fix करता है minimum wage rate. So it provides for the fixation of minimum rates of the wages for different categories of employees. Now which of the following is not a valid criterion for fixing different minimum rates of wages under the Act? Now if we look at the appropriate government, it may fix a minimum rate of wages for the time work. A minimum time rate मतलब इतने टाइम के लिए इतना अमाउंट देना पड़ेगा एक तरफ, और दूसरा a minimum piece rate मतलब एक पीस के लिए बनाने के लिए फॉर एग्जाम्पल एक पीस बनाने के लिए उसके लिए इतना वेज देना है, वो एक तरह का है. एंड दूसरा एक गारंटीड टाइम रेट मतलब इतने टाइम में इतने पीस बनने चाहिए, अकॉर्डिंगली इतना वेज मिलेगा, ठीक है. एंड दूसरा है ओवर टाइम रेट मतलब टाइम से ज्यादा जो ओवर टाइम करते हैं, जैसे 8 आवर्स का फिक्स्ड आवर्स है, बस उससे ज्यादा भी करेंगे तो उनको ओवर टाइम वेज मिलना चाहिए. इसके अलावा दे कैन फिक्स और रिवाइज मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस बेस्ड ऑन डिफरेंट कैटेगरीज. किस तरह के कैटेगरीज? ईदर डिफरेंट शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स, अलग अलग डिफरेंट शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स, डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्क इन द सेम शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट मतलब एक ही कंपनी है लेकिन उसमें तरह तरह के लोग काम करते हैं, मतलब तरह तरह के काम होते हैं, तो अकॉर्डिंगली दे विल बी पेड, राइट. एंड एडल्ट्स के लिए कितना, एडोलेसेंट्स के लिए कितना, मतलब अकॉर्डिंगली, बिकॉज उनका मैन पावर जो पावर ह्यूमन पावर जो यूज करते हैं वो अलग अलग रहता है. स्पेशली ये आता है मैन्युफैक्चरिंग ऐसे यूनिट्स में, सो वहाँ पे उस तरह से देते हैं. अप्रेंटिस को कितना देना चाहिए. एंड चौथा है, फोर्थ वन है डिफरेंट लोकेलिटीज मतलब या बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग, राइट, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के बेसिस पे वो मिलता है. नाउ सो इसमें ये भी है, based on this also it is done, based on different classes of work in the same scheduled employment also it's done, different localities also done, but the wages are not fixed based on the level of education or the qualifications. इसका criterion इसमें नहीं है. Now section 3 का ही अगेन एक और क्वेश्चन देखेंगे. सेक्शन 3 ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट एम्पावर्स एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू फिक्स मिनिमम वेज रेट्स फॉर डिफरेंट वेज पीरियड्स. सो हमने कई तरह के देखा है, मतलब डिफरेंट बेस्ड ऑन द कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज के लिए, और कितना करना चाहिए वो किस तरह से करेंगे बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड ऑल दैट. बट नाउ wage periods, time period. Now which of the following wage periods is not a valid option for fixing minimum wage rates under the act? Okay, ये होता है by the hour, by the day,
by the month, okay, and by such other larger wage period. month से भी ज्यादा, लेकिन वीक नहीं है, वीकली वाला इसमें पे आउट का कुछ भी नहीं है. Coming to the last question for today. Section 4 of the Minimum Wages Act 1948 provides for composition of minimum rates of wages. Okay, इतना होना चाहिए करके minimum wage. What is a term used to describe the component of the minimum rate of wages that is adjusted to accord with the variation in the cost of living index number applicable to the workers. ओके इस कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर को इसमें एडजस्ट करने की वजह से फाइनली दे विल अराइव एट द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस एंड दैट इज नन अदर दैन द कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस. क्योंकि बाकी जितना भी वो वेज रेट में डालेंगे, बट until and unless you will add this cost of living allowance because that keeps on changing and this allowance will help. अगर उसको 10 रुपीज मिल रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग उसका स्टैंडर्ड है वहाँ का 15 रुपीज, ओके, सो 5 रुपीज वहाँ ऐड करने की वजह से he'll be able, the person will be able to afford, वहाँ का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको अफोर्ड कर सकता है. सो कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस इज द वन दैट इज एडेड और दैट इज रिक्वायर्ड to arrive at the minimum adjust करने के लिए, so that they can live with in a dignified manner. So friends, अभी तक हमने questions देखा है, right? So इसके साथ साथ अगर आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हो for the upcoming UPSC EPFO APFC and EO और AO for the year 2025, जिसका हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेब मार्च तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए. उसमें 3 तरह के कोर्सेस हमने लॉन्च किया है. एक तो है मास्टर कोर्स, जहाँ पे आपको इफ यू आर नॉविस, बट मतलब अभी आपने स्टार्ट किया है प्रिपरेशन एंड यू आर वरीड कि कहाँ से कंटेंट मिलेगा, कौन आपको गाइड करेगा, फॉर ऑल दैट वन पॉइंट और वन स्टॉप सॉल्यूशन वुड बी द मास्टर कोर्स. ओके, यहाँ पे आपको पूरा कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ्स, इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड वीडियोस, इवन गाइडेड सेशंस. एवरी वीक थर्सडे कुलदीप सर आपके लिए गाइडेड सेशंस भी लेंगे, सो एज टू गाइड यू हाउ टू यूटिलाइज द कंटेंट दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल एंड हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन और टेक योर प्रिपरेशन. ये पूरा वो उसमें आपको समझाएंगे. सो यू विल गेट एवरीथिंग in the master course. Especially this is for those who have just started their preparation. नेक्स्ट है टेस्ट सीरीज प्लस. ये उन लोगों के लिए है जो कुछ स्पेसिफिक कंटेंट चाहिए होता है, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मटेरियल या कुछ टॉपिक्स स्पेशली. सो प्लस उसमें टेस्ट सीरीज भी उनको मिल जाता है, सो दैट अकॉर्डिंगली दे विल गेट दैट एक्स्ट्रा दैट कंटेंट जो भी वो ढूंढ रहे हैं, जो स्पेशल कंटेंट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए, एंड अलॉन्ग विद दैट प्रैक्टिस भी उनका हो जाएगा. ये उनके लिए जो ऑलरेडी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिए हैं, दे आर लुकिंग आउट फॉर सम स्पेसिफिक कंटेंट, स्पेशली स्पेशलिटी सब्जेक्ट्स के लिए. नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड कोर्स टेस्ट सीरीज. ये उनके लिए जो ऑलरेडी उनका प्रिपरेशन ऑलमोस्ट अच्छे से हो गया है, दे हैव ऑलरेडी गिवन good amount of time to the preparation. Now they are worried about where they stand, how to know and practice. For all that, this course would be, all those people, this would be very helpful, क्योंकि इसमें सारे टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे इन द सेम, जो एग्जाम का फील होता है उसी तरह से उसी मॉडल में आपको दिया जाएगा, so that you can practice a lot. So thank you very much friends. So see you all in the next part of the same. Hope you have enjoyed the session. All the best. Thank you. Hello friends, welcome to EduTap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 exam, wherein in every session we'll be covering 15 MCQs. एक सेशन में हम लोग 15 MCQs cover करेंगे, and as part of the same, today we are going to cover Labor Laws Industrial Employment Standing Orders Act 1946. Now when it comes to this exam, these topics, actually the ones that is related to labor laws etc. Now around close to 15 questions
आउट ऑफ 120 आर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक ओनली, इसी टॉपिक से पूछते हैं 10 क्वेश्चंस के बराबर, 15 क्वेश्चंस के बराबर. एंड इफ यू कैन कवर दीज टॉपिक्स इन डिटेल एंड अगर सही से प्रैक्टिस भी है आपका इन जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन द एग्जाम, उसमें अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्प रहेगा. एक तो ये हाई पोटेंशियल वाले, हाई स्कोरिंग पोटेंशियल रखने वाले टॉपिक्स हैं, एंड दूसरा हाई वेटेज भी है, एंड तीसरा इजी भी है. तो अगर इसमें आप सही से अपना प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली दैट वुड बी ए प्लस पॉइंट फॉर योर स्कोर. एंड इसीलिए जो ये क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, अगर ये आप करेंगे, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. जैसे एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एग्जाम जो इसी के अंडर आता है, और अकाउंट्स ऑफिसर और एनफोर्समेंट ऑफिसर, उन दोनों एग्जाम्स के लिए भी ये टॉपिक्स जो हम लोग इस सीरीज में कवर कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं. सो होप यू विल यूटिलाइज दीज सेशंस वाइजली एंड prepare yourself for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination. So friends, here comes the first question pertaining to Industrial Employment Standing Orders Act 1946. so उससे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं. देखिए, सबसे पहले जो अर्ली 14-15 सेंचुरी, उसके बाद अगर 18 सेंचुरी तक भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हमारा जो था इंडस्ट्री, एग्रेरियन इंडस्ट्री था. एग्रेरियन एस्टेब्लिशमेंट या फिर इंडस्ट्री कह सकते हैं एग्रेरियन. सो पूरा एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा था. से धीरे धीरे वहाँ से स्टार्ट हुआ था क्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स, ये सब आए थे. लेकिन वो भी इतना इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स की तरह कुछ नहीं था, मतलब छोटे छोटे से थे. उसके बाद धीरे धीरे से जैसे जैसे 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी की तरफ हम लोग बढ़ने लगे, सो तरह तरह के मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिशमेंट्स, इंडस्ट्रीज, वो सब स्टार्ट होना शुरू हुए. उसके बाद एक था कि जो भी वहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए एक बेसिक राइट्स होना चाहिए, उनके कंडीशंस, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, या फिर जिस तरह का काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा उनको सेफ्टी या स्टैंडर्डाइजेशन वो होना चाहिए. उसी के चलते चलते जो इतना सारा कॉम्प्लेक्स नेचर है, इसको धीरे धीरे से लेते जाते हुए फिर कई सारे कंट्रीज, जैसे सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन, उसके बाद यूरोप, उसके बाद एशियन कंट्रीज, कई सारे, फिर धीरे धीरे अपने अपने कंट्रीज के हिसाब से उनके इंडस्ट्रीज के बेसिस पे इन्होंने कई सारे एक्ट्स, लॉस, वो सब निकाले हैं, सो दैट वुड हेल्प द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज. ओके, नाउ विथ दिस कॉन्टेक्स्ट लेट अस लुक एट टुडेज session. Now, what is the primary purpose of the Industrial Employment Standing Orders Act 1946? जैसे कि हमने डिस्कस किया है, मेजरली ये देखता है कि एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस कैसे है और कितनी शांति की तरह से, शांति से अपना काम करते रहे. एंड एट द सेम टाइम इट्स नॉट दैट कि वी हैव टू सप्रेस वर्कर्स नो फॉर वर्किंग, और उनका जो कंडीशन है उसको बिल्कुल कंट्रोल में रखना है. नो, उनके राइट्स के लिए भी हमें सोचना है. एंड ऑल दैट दे हैव इनकॉर्पोरेटेड in this particular act. So here in this case the correct answer is to regulate and standardize employment conditions सबसे पहले. दूसरा है प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल पीस, दोनों की तरफ से ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा या फिर कुछ ना हो और आराम से काम चलता रहे. एंड तीसरा वी हैव टू एट द सेम टाइम प्रोटेक्ट द वर्कर्स राइट्स एज वेल, उनके किस तरह के कंडीशंस में वो काम कर रहे हैं. सो मेजरली टू also prevent arbitrary employment practices, जो कभी कभी होता है कि at the cost of workers rights जो हो रहा है. So this particular act ये provide करता है एक legal framework for defining and enforcing the employment conditions. It's along with that promoting industrial peace and protecting their rights, that is exclusively the workers' rights. So here comes the next question. अभी तक हमने देखा है क्यों लॉन्च किया है इस एक्ट को, क्यों स्टार्ट किया है, क्यों इनकॉर्पोरेट किया है,
एंड कैसे किया है ना, वाई एंड ऑल दैट वी हैव सीन. नाउ देखते हैं किस तरह के एस्टैब्लिशमेंट्स में ये रहेगा. नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट. The act applies only to establishments where 100 or more workmen were employed on any day during the preceding 12 months. The act applies to entire territory of India. The provisions of the act can be extended to establishments employing less than 100 persons by the appropriate government with a notice of at least 2 months. And 4, the act applies only to establishments where 100 or more workmen were employed on any day during the preceding 6 months. So 1 and 4 are contradictory. दोनों में एक ही correct होगा. ठीक है, बाकी second and third now you have to tell. Now in this case the correct answer is 1, 2 and 3. So ये act उनके लिए रहेगा जहाँ पे where 100 or more workers are working on any, मतलब employed किया है on any day during the preceding 12 months, last 12 months में होगा तो भी चलेगा. Now it is applied to entire territory and yes the appropriate government in this case, जैसे हमने पहले भी दूसरे acts में देखा था कि oil fields, mines, उस तरह के इसमें central government, बाकी industries के लिए स्टेट गवर्नमेंट, जिस तरह से इसमें भी सेम वही वाला है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब. एंड यस उनके अगर वो चाहते हैं तो देन दे कैन एक्सटेंड द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट टू दोज एस्टेब्लिशमेंट्स एज वेल जहाँ पे 100 से कम वर्कमैन काम किए है, बट एटलीस्ट उनको 2 months का नोटिस देना पड़ेगा सो दैट टू इम्प्लीमेंट एंड सबमिट ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. So friends, here comes the next question. What is a typical designation of a certifying officer under the relevant act, that is this Industrial Standing Orders Act? So इसमें जो certifying officer मतलब कौन है and क्यों है? Now this particular officer can be appointed by the appropriate government. क्यों? To carry out specific functions. जो भी functions है इस act के अंदर वो सही से लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए अ स्पेशल डेजिग्नेटेड ऑफिशियल कैन बी अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. जो हो सकता है कोई लेबर कमिश्नर भी हो या फिर रीजनल लेबर कमिश्नर. Now coming to the next question. Now who is or what is the industrial establishment? जो हर जगह पे हमें अभी जैसे ही ये एक्ट स्टार्ट हुआ तब से हम लोग देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एग्जैक्टली वो है क्या. सो हियर द क्वेश्चन आस्क्स यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट. जो यहाँ पे 4 ऑप्शन है नॉट इंक्लूडेड, जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है वो हमें जानना है. So in this case a factory as defined in the Factories Act 1948, yes, and जो owner है कोई industrial establishment के that you can say he or she can be called as the employer, and जो establishment actually है that it can be a factory that is defined in the Factories Act 1948. और इसका generally जो factory manager होता है वो designated person होगा employer की तरह. The establishment of a person who employs workmen to fulfill a contract with the owner of any other industrial establishment, वो भी हम लोग consider कर सकते हैं as an industrial establishment. A railway as defined in the Indian Railway Act 1890, ये भी हम लोग कह सकते हैं कि industrial establishment है. So exactly when we talk about this, these three they fall under the purview or the term industrial establishment, जो generally ये बोलता है कि the establishment of a person who employs workmen to fulfill contract with the owner of any industrial establishment or any industry,
उसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, जो वर्क फुलफिल करने के लिए लोगों को ले रहा है. सो हियर इन दिस केस ओनली वन इज नॉट एप्लीकेबल. जो शॉप कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है वो नहीं आएगा. बाकी जो 3 अभी हमने दिया है वो सारे इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स के तहत इसमें इनकॉर्पोरेटेड है. सो फ्रेंड्स, हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. जैसे हमने देखा है कि इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या एक्ट. सो एग्जैक्टली ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या है. नाउ स्टैंडिंग ऑर्डर्स मीन्स रूल्स रिलेटेड टू द मैटर्स सेट आउट इन द schedule that is in one of the sections of this act. So with that regard, जो matters to be provided in the standing orders, based on that consider the following statements regarding the standing orders under this act and try to answer this question. So first, standing orders must include provisions for the classification of workmen, including apprentices and bundles. Yes. Rules regarding termination of employment require only the employer to provide notice with no obligation on the workman. Standing orders must include mechanisms for addressing grievances related to unfair treatment or wrongful actions by the employers or उनके associates जो भी हैं. The guidelines for shift work and temporary work stoppages are optional under the standing orders. जैसे मैंने बताया standing orders मतलब कुछ ऐसे matters है जो एक लेजर टाइप का, एक रिकॉर्ड्स टाइप का मेंटेन करना पड़ेगा अंडर दिस एक्ट. सो उसमें सबसे 11 सच मैटर्स है जो इसमें मेंटेन करना पड़ता है. सबसे पहला आता है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कमैन, जैसे वो परमानेंट है, टेम्पररी है, अप्रेंटिसेस है या प्रोबेशनर्स है, उस तरह से. दूसरा आता है कम्युनिकेशन ऑफ वर्क आवर्स, हॉलीडेज, पे डेज किस तरह से है, वेज रेट्स क्या है, सब मेंशन होना चाहिए. गाइडलाइंस फॉर शिफ्ट वर्क, कौन से शिफ्ट में किस तरह के शिफ्ट्स हैं, टाइमिंग्स क्या है, एवरीथिंग दे हैव टू मेंटेन. रूल्स रिगार्डिंग अटेंडेंस एंड लेट अराइवल्स, अटेंडेंस लेट अराइवल्स का भी पूरा उनको एक रूल्स रखना पड़ेगा, इसी टाइम पे आना है. अगर लेट अराइवल मतलब आधा घंटा हुआ तो लेट, या फिर 1 घंटा हुआ तो लेट, उस तरह से पूरा प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए रूल्स. प्रोसीजर्स फॉर रिक्वेस्टिंग एंड ग्रांटिंग लीव एंड हॉलीडेज, किस तरह से बेसिस कर रहे हो, क्या प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो उसके लिए, दैट ऑल्सो दे हैव टू मेंशन इन दिस. रूल्स फॉर एंटरिंग प्रेमिसेस थ्रू स्पेसिफिक गेट्स एंड प्रोविजन फॉर सर्चेस, कई बार होता है सर्चेस की जरूरत पड़ती है, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो, सो दैट ऑल्सो हैज टू बी मेड as part of these standing orders. Procedures for closing sections of the establishment, temporary work stoppage का मटेरियल नहीं है या फिर कुछ और दिक्कत हो रहा है तो उसके एसोसिएटेड क्या राइट्स है एंड क्या लायबिलिटीज है ऑन बोथ एम्प्लॉयर्स एंड द वर्कमैन. ओके, वो भी इसमें मेंशन होना चाहिए. ओके, एंड टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड नोटिस रिक्वायरमेंट्स, ये होना चाहिए दोनों की तरफ से. अगर एम्प्लॉयर ने निकाला तो भी उनको एक टाइमलाइन और प्रोसीजर होना चाहिए. वर्कमैन खुद रिजाइन कर रहा है, इवन इन दैट केस देयर शुड बी प्रॉपर प्रोसीजर एंड टाइमलाइंस. कभी कभी मिसकॉन्डक्ट की वजह से सस्पेंशन या डिसमिसल करना पड़ेगा ना, क्या कौन से वो प्रॉब्लम्स है जिसको मिसकॉन्डक्ट के अंडर क्लासिफाई किया जाएगा, वो क्या है वो भी पूरा उनको सही से डिफाइन करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा. ओके, मैकेनिज्म्स फॉर वर्कमेन टू सीक रिड्रेसल, अगर कुछ उनको लग रहा है कि उनका सुपरवाइजर कुछ उनसे ज्यादती कर रहा है या फिर अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहा है, ऑल दैट उसके लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि किसको अप्रोच कर सकते हैं, किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, कैसे उसको रिड्रेस कर सकते हैं, ग्रीवेंस रिड्रेसल, वो भी बिल्कुल पूरा मैकेनिज्म मेंशन करना चाहिए. इसके अलावा कुछ और मैटर्स है, टाइम टू टाइम अगर एज पर द लॉ वॉट एवर दैट इज बीइंग प्रिस्क्राइब्ड वो भी इसमें ऐड करते रहना चाहिए. सो बेस्ड ऑन दीज 11 स्टैंडिंग ऑर्डर्स, द मैटर्स रिलेटेड टू स्टैंडिंग ऑर्डर्स अगर देखेंगे तो हमारा 1 and 3 ही करेक्ट है. ओके, 2 क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो भी होगा दोनों की तरफ से होगा, बोथ वर्कमैन एंड द एम्प्लॉयर. Okay, and the guidelines for shift work and temporary work stoppage are optional. No, they are not optional as per the standing orders. वो compulsory उसमें mention करना चाहिए बिल्कुल पूरे procedures और guidelines के साथ. So coming to our next question, which of the following statements regarding the submission of draft standing orders under the act is or are correct? जैसे हमने बोला कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स ये हमने जो 11 एनलिस्ट किया है, दैट जो एस्टैब्लिशमेंट है, जिस एस्टैब्लिशमेंट में ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स लागू होते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं, दे हैव टू सबमिट ऑल द डिटेल्स टू द
सर्टिफाइंग ऑफिसर की हमने ये सारे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एंड दीज आर आर स्टैंडिंग ऑर्डर्स, उसके अंदर दीज आर व्हाट वी हैव प्रिस्क्राइब्ड, राइट, जैसे कि टाइमिंग्स हो गया, शिफ्ट हो गया, कितने वर्कमैन किस तरह से है, दैट ऑल दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर सेक्शन, ठीक है। नाउ यू हैव टू टेल मी विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू. Now here employees are required to submit the draft standing orders to the certifying officer, जो लेबर कमिश्नर या रीजनल लेबर कमिश्नर होगा, within 6 months of the act becoming applicable to their industrial establishment. ठीक है. The draft standing orders must conform exactly to the model standing orders provided with no deviation allowed. Third statement है a statement accompanying, एक accompanying statement. The draft must include details of the employed workmen including their trade union affiliations, अगर कुछ है, ठीक है. अगर इन 3 स्टेटमेंट्स देखा जाए तो फर्स्ट कब सबमिट करना है, एंड यस 6 मंथ्स के अंदर जब भी इनके ऊपर वो ये जो एक्ट लागू होता है, इमीडिएटली विद इन 6 मंथ्स दे हैव टू सबमिट द ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स उनके एस्टेब्लिशमेंट के रिलेटेड टू द सर्टिफाइंग ऑफिसर. तो ये ट्रू है, करेक्ट है ये. द ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स मस्ट कन्फर्म एग्जैक्टली मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स प्रोवाइडेड. ऐसा कुछ नहीं, कुछ डिविएशन हो सकता है क्योंकि हर एक इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट पे एज पर द सेक्टर इन विच दे आर वर्किंग ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है इधर उधर. तो यस मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स है तो उनको फॉलो करना पड़ेगा, नो डाउट इन दैट, बट अगेन एज पर द रिक्वायरमेंट दे कैन सबमिट, सो डेविएशंस आर अलाउड. ओके, सो ये फॉल्स है. अ स्टेटमेंट अकम्पनिंग, दैट इज अकम्पनिंग स्टेटमेंट, यस वो भी इनको सबमिट करना पड़ेगा, एक ड्राफ्ट जहां पे जितने भी वर्कमैन है उनका डिटेल्स तो दे ही रहे हैं स्टार्टिंग में, अलॉन्ग विद दैट वो किस ट्रेड यूनियन से एफिलिएट करते हैं वो भी इनको इसमें मेंशन करना पड़ेगा. सो ओनली 1 and 3 आर ट्रू हियर इन दिस केस. सो करेक्ट आंसर इज B. Actually it is B is the correct answer in this case. तो अभी हमने देखा है कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स का उन्होंने जो भी है सर्टिफाइंग ऑफिसर को उनको अप्लाई करना मतलब सबमिट करना पड़ेगा, एंड आई फॉरगॉट टू ऐड दैट 5 कॉपीज उनको सबमिट करना पड़ेगा ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर्स. ओके, नाउ based on that only what are the 2 essential conditions for standing orders to be eligible for certification. सर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट में ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स सारे सही से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या फिर एप्लीकेबल है. Okay, under the Industrial Employment Standing Orders Act 1946. Now you have to tell me what are those 2 essential conditions required for the certifying officer to provide them, this particular industrial establishment, with a certificate. Okay, so in this case the standing orders must be approved by the trade union. ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, so this is wrong. The standing orders must include provisions for all matters listed in the applicable schedule. जो 11 matters जो हमने discuss किया था, all that should be mentioned properly with all the relevant details. And yes, this is true. ये one of the essential conditions of the 2 essential conditions. ये तो एक हो गया. The standing orders must comply with the labor laws of the state. ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी mention नहीं है as per this act, so ये भी wrong है. The standing orders must be ratified by the workers. ऐसा कुछ भी नहीं है. Okay, the standing orders must comply with other provisions of this act. अगर कुछ और provisions है then it has to comply with that as well. And yes, this is true क्योंकि ये एक्ट के अंदर चल रहा है तो इसमें जो भी प्रोविजंस है, जो भी लॉस है, जो भी उन्होंने एनफोर्समेंट करने के लिए बोला है, एवरीथिंग दैट हैज टू बी डन. इन सच केसेस द सर्टिफाइंग ऑफिसर और द एपेलेट अथॉरिटी वो रेस्पॉन्सिबल होंगे ये इवेल्युएट ये सब करने के लिए कि कितना रीजनेबलनेस है इसमें, कितना फेयरनेस है. अकॉर्डिंगली दे कैन प्रोवाइड अ सर्टिफिकेशन टू द रिलेवेंट इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट अंडर दिस एक्ट. So here comes the next question. Which of the following statements regarding the certification of standing orders under section 5 of the act is or are correct? तो procedure क्या है ये एक बार देख लेंगे. The certifying officer must notify the trade union or workmen and allow them 15 days to raise objections to the draft standing orders. Now industrial establishment ने अपना submit कर दिया है certifying officer को. Now certifying officer क्या करेगा? ओके, वो एक बार चेक करेगा एंड देन नोटिफाई
जिस इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में जो वर्कमैन है या ट्रेड यूनियन है उनको नोटिफाई करेंगे कि ये हमें रिसीव हुए हैं ड्राफ्ट। अगर आप एक बार चेक कर लीजिए एंड इफ यू हैव एनी ऑब्जेक्शंस जस्ट लेट अस नो, सो अकॉर्डिंगली दे विल डू सो। उसके लिए 15 डेज टाइम देंगे। दूसरा, द सर्टिफाइंग ऑफिसर कैन मॉडिफाई और ऐड प्रोविजंस टू द ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स टू एंश्योर कंप्लायंस विद द एक्ट बिफोर सर्टिफिकेशन। ठीक है। सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स मस्ट बी सेंट टू द एम्प्लॉयर एंड द ट्रेड यूनियंस और द वर्कमेन्स रिप्रेजेंटेटिव्स विद इन 15 डेज ऑफ सर्टिफिकेशन। If there is no trade union in the establishment, the draft standing orders cannot be certified. So in this case, the certifying order must notify the trade union. अगर ट्रेड यूनियन नहीं है तो जो भी वर्कमैन है उनको वो नोटिफाई करना पड़ेगा एंड देन ही हैज टू गिव देम 15 डेज ऑफ टाइम। अगर उनको कुछ ऑब्जेक्शन है उस रूल्स में, जैसे कि इन्होंने शिफ्ट का कुछ और बताया होगा वर्कमैन को, उसमें कुछ और मेंशन किया होगा, सो दे कैन रेज देयर कंसर्न्स। एक हो गया। द सर्टिफाइंग ऑफिसर कैन मॉडिफाई एंड ऐड प्रोविजंस। यस, अगर स्टैंडिंग ऑर्डर्स में से उनको लग रहा है कुछ मिस आउट कर दिया इन्होंने, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट ने, एम्प्लॉयर ने, तो डेफिनेटली वो ऐड और कुछ चेंज कर सकते हैं उसमें बिफोर सर्टिफिकेशन। दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स मस्ट बी सेंट टू द एम्प्लॉयर। एक बार वो सब होने के बाद फाइनल हो गया है, अब सर्टिफाइड ऑर्डर्स आ गए हैं। नाउ दैट इट मस्ट बी सेंट टू द एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन और द वर्कमेन्स रिप्रेजेंटेटिव्स विद इन 15 days, not 15 days, here it is within 7 days they have to send it. Okay, so this is false. If there is no trade union in the establishment, the draft standing orders cannot be certified. ऐसा कुछ भी नहीं है, जो वर्कर्स है उनको भेज के वो अपना कर सकते हैं, जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स है, even if not there is a union. So only 1 and 2 are true in this case. So coming to the next question, consider the following statements regarding the appeals process under the section 6 of the act. Now certification authority ने certification वो दे दिया है, इसके बाद उनको लग रहा है कि नहीं इसमें तो कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहिए, फिर कुछ दिक्कत है इनमें, ठीक है, उस अपील तो करना पड़ेगा। सो इवन उनसे जो हायर अपेलेट अथॉरिटी है उनको ये अपील कर सकते हैं। नाउ रिलेटेड टू दैट दीज आर द स्टेटमेंट्स। अपील्स अगेंस्ट द सर्टिफाइंग ऑर्डर्स, सर्टिफाइंग ऑफिसर्स ऑर्डर कैन ओनली बी फाइल्ड बाय द ट्रेड यूनियन और वर्कमेन्स रिप्रेजेंटेटिव्स. Appeals must be filed within 30 days of receiving copies of the certifying officer's order. The appellate authority's decision is final and may include amendments or modifications to the certified standing orders. The appellate authority must notify its decision to the certifying officer, employer and trade union or workmen's representative within 15 days. So यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट यस, विद ये अपील्स जो है ना एम्प्लॉयर भी कर सकते हैं, एम्प्लॉयर, वर्कमैन, ट्रेड यूनियन, प्रिस्क्राइब्ड रिप्रेजेंटेटिव। सो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अपील्स मस्ट बी फाइल्ड विद इन 30, यस, जो एक बार सर्टिफिकेट आने के बाद विद इन 30 days दे कैन अपील कि नहीं नहीं ये हमें सही नहीं है हमारे लिए, सो फॉर दैट वी आर अपीलिंग करके कर सकते हैं। सो दिस इज ट्रू। द अपीलेट अथॉरिटीज डिसीजन इज फाइनल। नाउ इन दिस केस अब एक बार अपीलेट अथॉरिटी के पास गया मतलब उनका फाइनल रहेगा। सो यस दिस इज ट्रू, और वो चेंज भी कर सकते हैं उसमें से कुछ अकॉर्डिंग टू द एक्ट, उसमें प्रिस्क्रिप्शंस किस तरह से है, लॉ किस तरह से है एंड द अपील जो भी है उसके बेसिस पे। The appellate authority must notify the decision to the certifying officer, employer and others. जो final उनका जो decision है within 7 days they have to mention. So this is also false. So in this case only 2 and 3 are true, that is only B. So moving on to our next question, which of the following statements regarding the date of operation of standing orders under section 7 of the act is or are correct? So the standing orders certified by the certifying officer become operational immediately upon authentication and distribution of copies. ये actually true नहीं है, okay? And ये false है. If an appeal is filed, the standing orders come into effect 7 days after. See, हमने दो तरह के conditions है. First thing, अगर उन्होंने standing orders certify किया है certifying officer ने and उस पे ऊपर कोई अपील नहीं है, राइट अगर कोई अपील नहीं है तो विद इन 30 days दैट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द एस्टेब्लिशमेंट. सो ये ट्रू है. स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाइड बाय द सर्टिफाइंग ऑर्डर टेक्स इफेक्टिवली 30 days आफ्टर ऑथेंटिकेटेड कॉपीज आर सेंट टू द एम्प्लॉयर एंड वर्कमेन्स रिप्रेजेंटेटिव प्रोवाइडेड नो अपील इज फाइल्ड. उसमें उस केस में
30 डेज ही उनका टाइमलाइन है उसको इम्प्लीमेंट करने का. सो दिस इज ट्रू. अगर अपील हुआ है, अपील होने के बाद अपीलेट अथॉरिटी ने कुछ जजमेंट पास किया है, इन दैट केस द स्टैंडिंग ऑर्डर्स शुड बी इमीडिएटली, दैट इज विद इन 7 days दैट कम्स इनटू इफेक्ट. ओके, सो ये भी ट्रू है. इफ एन अपील इज फाइल्ड 15 डेज का टाइम लगेगा, नो इट्स नॉट 15 days, इट्स 7 days. ये सेकेंड एंड थर्ड आर ट्रू इन दिस केस. Coming to the next question, which of the following statements regarding the duration and modification of standing orders under section 10 of the act is or are correct? Now अब implement हो गया है. जो भी अगर अपीलेट हायर अथॉरिटीज के पास गए, अपील किए, नहीं किए, इन ईदर केसेस, अपील किए तो 7 days में एंड अपील नहीं किए तो विद इन 30 days, दैट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड. नाउ इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी कभी कभी कुछ मॉडिफिकेशंस करना पड़ता है, कुछ चेंजेस करना पड़ता है स्टैंडिंग ऑर्डर्स में, राइट? सो उस केस में क्या क्या व्हाट यू विल से सही है, ओके, या फिर क्या क्या पॉइंट्स है दैट दे हैव टू टेक केयर ऑफ. So the first statement says standing orders can only be modified through an agreement between the employer and the workmen trade union or their representatives. No modification to the standing orders is allowed within 6 months of their implementation or the last modification. And the restriction on modification within 6 months does not apply to industrial establishment in Gujarat and Maharashtra. वहाँ से कम टाइम में भी कर सकते हैं. The certifying officer has authority to unilaterally modify the standing orders in case of disputes. Disputes तो हायर appellate authorities के पास होगा, कि इसके पास कहाँ से होगा, certifying officer के पास. ये तो straight away ये false है. बाकी तीनों में देखा जाए तो all the three statements are true. Yes, अगर कुछ भी modify करना है तो that has to be, an agreement has to be reached out between the employer and the workmen or the trade union or their representatives. True. No modification मतलब 6 months से पहले कोई भी modification एक बार implement हो गया है, उसके बाद at least 6 months उनको time देना पड़ेगा to modify कुछ भी उसमें standing orders में modify करने के लिए. And 3, yes, गुजरात एंड महाराष्ट्र में वो जो 6 months वाला क्लॉज है मॉडिफिकेशन के लिए, ड्यूरेशन एंड मॉडिफिकेशन के लिए, दैट डज नॉट अप्लाई टू इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स इन गुजरात एंड महाराष्ट्र. So here comes the next question. Consider the following statements regarding the payment of subsistence allowance under section 10 of the act. जैसे कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कुछ उनके ऊपर इंक्वायरी है वर्कमैन के ऊपर, तो उस टाइम पे जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उस टाइम पे किस तरह की सबसिस्टेंस अलाउंस, लाइक थोड़ा सपोर्ट करने के लिए उनको देना पड़ता है ना, फुल सैलरी नहीं देते हैं बट सम अलाउंस विच इज कॉल्ड एज सबसिस्टेंस अलाउंस इज गिवन. वो किस तरह से डिजाइन किया गया है. Now, a suspended workman is entitled to receive 50% of his wages for the first 90 days of suspension, regardless of the reasons for suspension. But this particular clause is applicable only in case of pending investigation of misconduct against the workman. Okay, so अगर उससे कोई और बड़ी गलती हुई है इस केस में, this is not applicable in that case. So this is straight away false. For suspension beyond 90 days, the allowance increases to 75% of the workman's wages if the delay in disciplinary proceedings is not caused by the workman. So अगर workman की वजह से ये जो disciplinary वाला action जो है, मतलब जो investigation है वो pending नहीं है and it is because of the employer's inaction, so उस केस में 90 days के बाद उनको 75% ऑफ दिस, जितना भी वो पहले वेजेस कमाते थे उसमें 75% उनको मिल जाएगा. सो दिस इज ट्रू. अगर वर्कमैन की वजह से वो कुछ पेंडिंग हो रहा है, वो टाइमली नहीं आ रहा है जब बुला रहे हैं इंक्वायरी के लिए, इन दैट केस दिस इज नॉट एप्लीकेबल. ओके, ओनली इन केस if the disciplinary proceedings is not, the delay in disciplinary proceedings is not caused by the workman, then this is applicable. So true. If a dispute arises over the subsistence allowance, it can only be resolved by the certifying officer under the act. अगर डिस्प्यूट हो रहा है जो भी सब्सिस्टेंस अलाउंस, मतलब 50% 75, इस पे भी कोई वर्कमैन चाहता है कि कुछ करे, दैट्स नॉट अंडर द हैंड्स ऑफ द सर्टिफाइंग ऑफिसर, उससे भी अपीलेट अथॉरिटी, ऊपर वाला अथॉरिटी के लिए. सो दिस इज फॉल्स. इन स्टेट्स वेयर अनदर लॉ प्रोवाइड्स ए हायर सब्सिस्टेंस अलाउंस,
that law will override the provisions of this section. And yes, as per the Industrial Labor Code constituted under the Industrial Disputes Act 1947, it says that अगर किस स्टेट जिस स्टेट में है वहां पे वो सबसिस्टेंस अलाउंस ज्यादा है, फॉर एग्जांपल यहाँ 50% दिया हमने, वहां पे उन्होंने 60% है एज पर द स्टेट लेबर लॉस, अगर उस तरह से है देन दैट 60% विल बी एप्लीकेबल इन दिस केस. Okay, that will override the provisions of this particular act. So here both 2 and 4 are true in this case. So moving on to our next question. Which of the following statements regarding the penalties and procedure under section 13 of this act is or are correct? An employer failing to submit draft standing orders, draft मतलब उनके एस्टैब्लिशमेंट में ये इम्प्लीमेंट करना है, बट स्टिल he or she failed to submit the draft standing orders to the certifying officer, may be fined up to ₹5,000 with an additional fine of ₹200 per day for a continuing offense. तो हमने टाइमलाइन जो दिया है उसके अंडर वो सबमिट नहीं कर रहा है तो 5,000 रुपीज, एंड फ्रॉम दैट डे जो लास्ट डे है वहां से अगेन डेली आई मीन पर डे अगेन 200 रुपीज फाइन भरना पड़ेगा. एंड यस, दिस इज ट्रू. फेलियर टू कंप्लाई विथ सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स, अगर सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स आ गए हैं, आने के बाद सर्टिफाइंग ऑफिसर ने जो रिलीज किया है उसके बाद अगर उसने वो इम्प्लीमेंट नहीं किया है विद इन द फ्रेम्ड टाइमलाइंस, दैट इज विद इन 30 डेज, और अगर अपील किया है तो विद इन 7 डेज, इन दैट केस 500 तक फाइन लगेगा उसको. एंड उस डे तक जो लास्ट डे है उसके बाद से उसको विथ ₹50 पर डे कंटिन्यूसली जितने दिनों तक वो नहीं करेगा उतने दिनों तक वो फाइन पे करना पड़ेगा. बट हियर दिस इज फॉल्स. व्हाई? बिकॉज ये 500 तो ट्रू, नो डाउट, बट हियर 25 रुपीज पर डे दे हैव टू पे, नॉट 50 रुपीज. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आता है, एंड ऑल्सो ये फाइन 100 रुपीज का ही है, नॉट 500 रुपीज, ये 100 रुपीज का फाइन रहेगा. ठीक है. एंड नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पॉइंट. प्रोसिक्यूशन अंडर दिस सेक्शन रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. यस, जिस बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री, अगर फॉर एग्जांपल ऑयल फील्ड है, माइंस है, डिफेंस है, देन उस तरह के इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट पे जो भी प्रोसिक्यूशन करना पड़ेगा, that they are not following the standing orders, जो भी certification है, in that case they have to take approval from the appropriate government, in this case central government. Others like textile है, कुछ और farm है, ऐसा कुछ है तो state government इसे. Okay. Offences under this section, so this is true. Offences under this section can only be tried by the court of a judicial magistrate of first class. No, metropolitan का जो judicial magistrate है वो भी कर सकता है, और judicial magistrate of the second class, दोनों ही कर सकते हैं. So this is false. So 1 and 3 are true in this case. So 1 and 3 are true in this case. 2 and 4 are false. क्यों है ये भी मैंने बताया, ये 500 नहीं है, ये 100 रुपीज का फाइन है. ओके. So coming to the next question, in case of a dispute regarding the interpretation or application of a certified standing order, अगर कुछ है, डाउट है या कोई dispute है, whom shall they approach? Which authority can the employer, workman or the representative body approach for a final and binding case? So here in this case we are talking about the appellate authority, right? So appellate authority is none other than the labor court under the Industrial Disputes Act 1947. So labor court में जाएंगे. ये सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड, बट implied in another manner. What is the maximum fine that an employer may face for failing to submit draft standing orders or making modifications otherwise than in accordance with the provisions of the Industrial Employment Standing Orders Act 1946? अगर वो सबमिट नहीं कर रहे हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स वाला जो ड्राफ्ट है वो, और मॉडिफिकेशंस अगर कुछ किया है उसका ड्राफ्ट अगर सबमिट नहीं कर रहे हैं, इन दैट केस वी हैव ऑलरेडी सीन दैट 5,000 का फाइन लगता है ऑन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट.
जैसे ये सारे ये क्वेश्चन तो स्पेशली हमने पहले ही किया था, बट थोड़ा सा डिफरेंटली हमने इसको प्रेजेंट किया है। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया है, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए एपीएफसी के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे और यूजफुल रहेंगे, एंड ऑल्सो फॉर ईओ और एओ फॉर द अपकमिंग 2025 एग्जामिनेशन। सो इसके अलावा आपको अगर कुछ और कोर्सेज के बारे में, अगर कुछ कोर्सेज का हेल्प चाहिए, तो डेफिनेटली करेंटली एट EduTap वी आर ऑफरिंग 3 kinds of courses for 3 different sets of students who are preparing for these examinations. फर्स्ट है मास्टर कोर्स, जिसमें आपको सब कुछ सारे सब्जेक्ट्स का जो कंटेंट है इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ्स, वीडियोस, चैप्टर क्विजेस एंड इवन वीकली मेंटरशिप, मतलब हर वीक कुलदीप सर आपसे ऑन क्लास लेंगे, एंड देन ही विल गाइड यू ऑन हाउ टू यूटिलाइज द कंटेंट प्रॉपरली एज पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। एट द सेम टाइम आपको जो भी डाउट्स है वो सब क्लैरिफाई करेंगे, वन थिंग। सो कंप्लीट 1 स्टॉप सॉल्यूशन है ये। उसके बाद आता है, ये उनके लिए है जो नॉविस है, मतलब अभी नया नया अपना प्रिपरेशन शुरू किया है, एंड दे रिक्वायर सम हेल्पिंग हैंड। टेस्ट सीरीज प्लस, इसमें कुछ टॉपिक जैसे ऐसे होते, कुछ सब्जेक्ट्स स्पेसिफिकली आपको चाहिए कि मुझे कंटेंट चाहिए या फिर हेल्प चाहिए, वो मिलेगा अलोंग विथ टेस्ट। ये उनके लिए है जो ऑलरेडी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिए हैं एंड स्टिल दे आर फॉल्टरिंग समवेयर इन केस ऑफ फ्यू सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स, उनके लिए ये बहुत हेल्प रहने वाला है। एंड थर्ड है एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज, जिनका प्रिपरेशन ऑलरेडी अच्छे से हो गया है, बट स्टिल दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वेयर दे स्टैंड इन देयर प्रिपरेशन। सो एग्जाम रेलेवेंट, बिल्कुल एग्जाम की तरह ही आपको फील मिलेगा, एंड यू विल गेट द टेस्ट सीरीज वेयर इन यू कैन प्रैक्टिस वेरियस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट are asked in this UPSC EPFO APFC and EO और AO examination. So ये 3 तरह के कोर्सेज है जो करेंटली अभी अवेलेबल है एन EduTap। अगर आपको कुछ डाउट है और जानकारी चाहिए तो ऑब्वियसली यू कैन reach out to any of our representatives and get the information accordingly. You can make an informed decision. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स कि आपने बहुत अपने पेशेंटली यहाँ तक देखा है। थैंक्स अ लॉट एंड होप यू लाइक दिस सेशन and all the best. Hello everyone, welcome to EduTap and a warm welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 exam, as part of which we'll be doing 15 MCQs a day on various topics, and currently we are doing it on labor laws, and as part of today's session we'll be covering the Factories Act 1948 part 2. part 1 हमने already किया है, part 2 हम इसमें करेंगे. Now why these topics are important? See, when you look at the previous year papers, close to 15 questions out of 120 are asked in APFC or EO or AO examination from these components, which actually is a very good number. Moreover, these are हाई स्कोरिंग पोटेंशियल क्वेश्चंस और द टॉपिक्स कि एक बार अच्छे से करके प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसान है, एंड दूसरा वेटेज भी हाई है इनका. सो ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर ईदर एपीएफसी और एओ और ईओ एग्जाम, ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है. सो डोंट मिस आउट ऑन दीज सेशंस, ओके, क्योंकि इसमें हम लोग टॉपिक्स का जो भी कंटेंट है दैट ऑल वी आर कवरिंग द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज. ओके, तो आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा, एंड मोर ओवर वी आर एक्सपेक्टिंग द यूपीएससी ईपीएफओ नोटिफिकेशन वेरी सून. सो ये सब आपके लिए बहुत ही यूज रहने वाले. सो डोंट मिस आउट ऑन दीज सेशंस. So moving on to the first question of this session. See, consider the following statements regarding the provisions for drinking water and sanitation, जो latrines है या फिर urinal facilities है उनके बारे में, and along with that spittoons also. Okay, under the Factories Act 1940, which of the following statements given here are true? Okay, now in factories with over 250 workers, cooling arrangements for drinking water are mandatory during hot weather. Yes, this is true. एंड ये कंपलसरी है, इनको करना चाहिए. लैट्रिन एंड यूरिनल फैसिलिटीज एंड फैक्ट्रीज मस्ट ऑलवेज बी केप्ट क्लीन एंड सैनिटरी, ऑब्वियसली, विथ सेपरेट एकोमोडेशंस फॉर मेल एंड फीमेल वर्कर्स. अलग अलग होने चाहिए जो भी टॉयलेट फैसिलिटीज है. अलॉन्ग विद दैट, अगर वो टॉयलेट या फिर जो भी फैसिलिटीज है, इफ दे आर अप टू हाइट ऑफ 90 सेंटीमीटर, जो हाइट में है, तो डेफिनेटली वहाँ पे स्मूथ पॉलिश्ड सर्फेसेस एंड मेंटेनेंस, क्लीनलीनेस, एवरीथिंग
everything has to be done thoroughly. Drinking water points should be located within 6 meters of the contaminants provided the factory manager approves it. No, वो 6 meters के बाहर ही आना चाहिए जहाँ पे भी contaminants मतलब जो फैक्ट्री के वर्क की वजह से जो contaminants आ सकते हैं, अगर उस तरह का कोई चांस है तो डेफिनेटली वाटर ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट्स आउटसाइड 6 meters होना चाहिए. अगर इंस्पेक्टर अगर उनको लग रहा है कि उसमें वहाँ कंटेमिनेशन की कोई दिक्कत नहीं है, इन सच केस दे कैन, बट अगेन दैट इज ऑन द डिसीजन ऑफ द इंस्पेक्टर ओनली. Okay, so here only 1 and 2 are correct, not the third one. Along with that spittoons होने चाहिए फैक्ट्री में, एंड जो भी स्पिटिंग वाला है दैट शुड बी प्रोहिबिटेड कम्प्लीटली इन द प्रेमिसेस. एंड जहाँ पे भी अगर स्पिटिंग वाला आदत है लोगों को तो वहाँ पे definitely they have to use the spittoons. Violators who violate this rule can face a fine up to 5 rupees as per this act. Moving on to our next question. Consider the following statements regarding the provisions for machinery safety under the Factories Act 1948. Now, which of the following statements given below are true or that is are true? So in this case, when we look at section 22 and 21, wherein fencing of machinery and cleaning of the work or cleaning of the machinery in motion. So in that case, what are the precautions that need to be taken? See, all machinery in a factory must be securely fenced with appropriate safeguards to prevent accidents. Obviously, जहाँ पे भी machinery use हो रहा है, definitely there has to be various precaution that needs to be taken. One of that is the fencing, and yes, this is true, that has to be done. ये section 21 में आता है. Now, only trained adult male workers appointed by the factory are permitted to work on or near the machinery in motion during inspection. That's true, क्योंकि वो ऑलरेडी काम कर चुके हैं एंड देन वो उस तरह के स्पेसिफिक क्लोथिंग में रहते हैं. Okay, because of which only males are allowed there. Trained adult male members are allowed there. Women workers are permitted to clean or lubricate prime movers or transmission machinery in motion if they are adequately trained. No, women and young persons, as per the definition that we have already discussed in the earlier session, they are not allowed to clean or lubricate prime movers or transmission machinery in motion. No, this is not true. This is false. So only 1 and 2 are true. That is A is the correct answer in this case as per the section 21 and 22 of the Factories Act 1948. So moving on to our next question. Consider the following statements regarding the provision on employment of young persons, emergency power cutoffs and self-acting machines under the Factories Act 1948, of which of the following statements are correct. So here we are talking about section number 23, wherein employment of younger persons on dangerous machines. Section number 24, striking gear and devices for cutting off power, which is very much required, especially where electrically powered factories are there, and self-acting machines, those which work by themselves once they own it. So here young persons can be employed on dangerous machines only after receiving proper instruction on risks and precautions as well as adequate training or supervision. That's true, they can do, but again that should be under strict supervision of an experienced professional. Okay, so this is true. Power cut-off devices are only required in workrooms with machinery powered by electricity. No, जहाँ पे भी electrically powered factories है, so उस कंडीशन में हर एक वर्क रूम में पावर कट ऑफ डिवाइसेस होना ज़रूरी है. इन केस ऑफ एनी अनटूवर्ड इंसिडेंसेस इमीडिएटली पावर कट ऑफ कर सकते हैं किसी भी वर्क रूम से. सो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स. सेल्फ एक्टिंग मशीन्स इंस्टॉल्ड बिफोर द एक्ट, ये एक्ट से पहले अगर कुछ है इंस्टॉल्ड है, दे कैन कंटिन्यू टू ऑपरेट इफ दे रिसीव सेफ्टी अप्रूवल फ्रॉम द चीफ इंस्पेक्टर. That's true, but their parts or material should not traverse within 45 centimeters of fixed structures where people pass. So जहाँ पे जैसे एक मशीनरी एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर पे फिक्स्ड है एंड यहाँ से वो काम कर रहा है सेल्फ एक्टिंग मशीन, सो इट शुड नॉट, यहाँ पे पैसेज है, सो इसके बीच में एटलीस्ट 45 सेंटीमीटर्स का
डिस्टेंस होना चाहिए 45 सेंटीमीटर्स के ऊपर ही होना चाहिए डिस्टेंस. सो यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो इन दिस केस 1 and 3 आर ट्रू, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर. Moving on to our next question. Consider the following statements regarding the provisions under the Factories Act 1948. Which of the following statements given is or are correct? Any revolving component such as set screws, bolts or keys must be effectively guarded to prevent any danger, either by encasing them or sinking them. थोड़ा सा अंदर कर सकते हैं या फिर उनके ऊपर कुछ केस लगा सकते हैं सो दैट उसकी वजह से किसी को कोई डेंजर या इंजरी ना हो. सो दिस इज ट्रू. Okay, and this again is under the section 26, casing of any new machinery. Women and children are completely prohibited from working near cotton openers with no exception. See, cotton openers क्या है, बड़े बड़े टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में जो कॉटन पहले उसको और फ्लफी बनाने के लिए, उसको लिंट वो सब सीड से अलग करने के लिए बड़े बड़े मशीनरी यूज करते हैं. ओके, एंड वहाँ पे यस, वुमेन और चिल्ड्रन आर नॉट, दे आर प्रोहिबिटेड वर्किंग नियर देम बिकॉज नो, बच्चों को तो उनको पता नहीं, बच्चे मतलब यंग पर्सन इन दिस केस, नॉट चाइल्ड लेबर. ओके, वुमेन क्या है, उस हम इंडियन कल्चर के हिसाब से जो ड्रेसिंग हम लोग करते हैं उसकी वजह से कभी कभी हो सकता है कि उसमें फंस जाए साड़ी ऐसे कुछ, सो दे ट्राई टू अवॉइड दैट. बट इफ अगर वो जो मशीनरी है उसके लिए अलग सा रूम है, मतलब जहाँ से कॉटन ओपनर, जिसमें से कॉटन फीड करते हैं, वो फीडर नहीं है एंड फीडर एक रूम में है एंड बाकी कॉटन वाला जो फ्लफी कॉटन जो निकलता रहता है वो अलग रूम में है, वो मशीनरी मतलब उसी का पार्ट है ओपनर का ही, उस तरह से है तो देन दे कैन अलाउ द वुमेन टू वर्क इन दैट केस. अदरवाइज ए स्ट्रिक्ट नो नो, अ बिग नो नो टू द वर्किंग ऑफ वुमेन और चिल्ड्रन there. So exceptions है, so this is false. Lifting machines and tackles must be examined by a competent person every 12 months and the working load must be prominently displayed. अगर मशीनरी का किस तरह से हो रहा है काम and all that, regular maintenance, everything, and expert examination should be done every 12 months so that उससे कोई untoward incident ना हो फैक्ट्री में. Okay, so here in this case B 1 and 3 are the true, so here B is the correct answer. So moving on to our next question, consider the following statements regarding the provisions under the Factories Act 1948. Which of the following statements are true? So here in grinding factories, it is mandatory to display notices specifying the maximum safe working speed of grindstones और एब्रेसिव व्हील्स. जहाँ पे ग्राइंडिंग स्टोन्स काम पे है या फिर एब्रेसिव व्हील्स काम पे है एज पार्ट ऑफ द मशीनरी इन एनी फैक्ट्री, वहाँ पे वो कितने स्पीड से रोटेट होना है एंड क्या क्या केयर लेना है, एवरीथिंग हैज़ टू बी मेंशन्ड थरोली एज पार्ट ऑफ डिस्प्ले नोटिसेस. एंड yes, this is true. The state government can prescribe rules to limit the maximum weights that workers of different categories may be required to lift, carry or move. So here also yes, when it comes to weights etc, एक लिमिटेशन होती है. स्पीड है तो उसका स्पीड का भी एक लिमिटेशन होती है. सेफ्टी मेजर जैसे यहाँ पे है रोटेशन ऑफ द व्हील्स, उसका कितने टर्न्स होना चाहिए, क्या क्या केयर लेना चाहिए, वो भी होता है. एंड येस, रूल्स कैन बी सेट बाय द स्टेट गवर्नमेंट व्हेन इट कम्स टू द मैक्सिमम वेट्स फॉर लिफ्टिंग, कैरिंग, मूविंग लोड्स बाय डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. प्रोटेक्टिव equipment such as screens or goggles is only required in processes involving excess light exposure. No, जहाँ पे भी ग्राइंडिंग होती है, जहाँ पे भी हो सकता है कि कुछ फ्रैगमेंट्स कुछ जनरेट हो रहे हैं एज पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विच कैन फ्लाई ओवर, इन सच केसेस ऑल्सो वहाँ पे भी स्क्रीन्स या गॉगल्स बहुत ज़रूरी है. सो इन बोथ द केसेस, जहाँ पे भी एक्सेसिव लाइट एक्सपोजर होता है वहाँ पे भी, एंड जहाँ पे भी पार्टिकल्स, श्रेड्स या फिर फ्रैगमेंट्स एज पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या फिर वहाँ का प्रोसेसिंग में उड़ने के चांसेस है, वहाँ पे भी गॉगल्स चाहिए, गॉगल्स या फिर स्क्रीन. सो हियर ओनली 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर, सो दैट इज A is the correct answer here. So moving on to our next question, consider the following statements regarding the safety measures of factories under the Factories Act 1948 and based on which you have to tell me which of the following statements are true.
Okay, now here workers cannot enter confined spaces in a factory unless those spaces are equipped with manholes or other effective means of egress. एंड येस दैट इज ट्रू, जैसे कुछ चेम्बर्स है, बहुत कन्फाइंड स्पेसेस है, वहाँ पे अनटिल एंड अनलेस, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पे गैस या फिर फ्यूम वेपर या डस्ट वो होने के चांस रहता है. सो अनटिल एंड अनलेस effective means of egress, that is removal, are there in such cases, the persons or the workers cannot enter such confined spaces in any case. So yes, this is true. Portable electric devices with voltage exceeding 24 volts are strictly prohibited in all factory environments. इट इज़ प्रोहिबिटेड, नो डाउट, क्योंकि फायर कैच होने के उन सब के चांसेस रहते हैं, बट इफ़ प्रॉपर सेफ्टी डिवाइसेस है, इफ़ प्रॉपर फ्लेम प्रूफ लैम्प्स या फिर लाइट से ऐसे कुछ है, तो डेफिनेटली दे कैन बी यूज. सो विथ सम प्रिकॉशंस एंड रिक्वायरमेंट जहाँ पे भी है वहाँ पे ये सारे प्रिकॉशंस के साथ वोल्टेज electric devices with voltage exceeding 24 volts can be used, portable devices especially. So this is false. Sorry. The chief inspector has authority to mandate additional fire safety measures if the existing provisions are deemed inadequate. See, कई बार ऐसा होता है कि as per the section 38 जो state government है that establishes the fire safety rules in factories and some specific categories, but अगर लग रहा है कि वहाँ पे और भी extra care लेना चाहिए, okay, in such cases chief inspector has complete authority to mandate additional fire safety measures if he feels that the existing measures are inadequate or insufficient in that particular circumstances. So definitely this is true. So here 1 and 3 only are true. So A is the correct answer. So coming to the next question. In factories where at least 1,000 workers are ordinarily employed or where certain manufacturing processes involve risks to health, safety or well-being of workers, which of the following statements regarding the appointment of safety officers is correct? Now अगर state government mandate करता है तो definitely that particular establishment or the factory they have to employ a safety officer. Now safety officer का role क्या होता है, जो safety measures है वो check कर लेता है, he or she ensures compliance with the regulations and this will enhance the worker safety and all that, so for which it is required. So here the occupier must employ safety officer if required by the state government. अगर वो mandate करता है तो definitely they have to go for the appointment of a safety officer through an official notification. एक official notification निकाल के उसके हिसाब से उनको hire कर सकते हैं. So coming to the next question. Which of the following statements regarding the constitution and functions of the site appraisal committee is correct? Now site appraisal committee क्या है? That will evaluate applications for establishment or expanding factories with hazardous process. बहुत careful होगा तो they have to do that. And who appoints them? The state government forms the site appraisal committee. Okay, now ये कमिटी में कौन कौन रहता है? It includes chief inspector of the state as a chairman, and there would be representatives from the central board for the prevention and control of water pollution. Central board से ही एक और member रहेगा for prevention control of air pollution. Representative रहेगा state board का भी, कोई वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट का अगर कोई बंदा है तो उनको भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं. स्टेट बोर्ड का ही प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन से भी एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से भी एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, ऐसे. एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड एक्सपर्ट ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड वो भी एज अ मेंबर इस टीम में रहेंगे. एंड दे विल check, they will inspect the process and किस तरह का हैजार्डस मटेरियल वो कैसे यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज बंदा भी इसमें मेंबर होता है इस कमेटी में. सो ऑन द होल अगर जहाँ पे भी हैजार्डस प्रोसेसेस होंगे इन द फैक्ट्रीज, whether they are establishing them or expanding them, definitely this appraisal committee, site appraisal committee would be established with all these members and that would work out. So in this case the committee has 90 days to examine an application
for the establishment of a factory involving hazardous process and make its recommendations to the state government, whether yes or no. अगर yes है तो अगर कुछ और इनके conditions है तो वो भी उसमें वो डाल सकते हैं. So here B is the correct answer. Members कौन है, chairman कौन है, ये हमने discuss कर लिया. The committee consists of only representatives. No, everything, both. And the site appraisal committee is not required to have an expert in occupational health hazard member. No, that also is there. So this is, all these are false. This is only true. So B is the correct answer in this case. So coming to the next question, there is a statement. Now you, after reading that, you have to tell me which options are best suited to that statement. So here, as per the statement, it goes like this. The Factories Act 1948 mandates factories to provide various facilities for the welfare of workers, including washing facilities, storage and drying facilities for clothing, sitting arrangements and first aid appliances. Now, which of the following statements regarding the facilities is or are correct? First, factories are required to provide only washing facilities and first aid appliances. No, drying facilities भी होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे भी वर्क होता है कई बार वॉश करना पड़ता है क्लोथिंग को. सो वेट, वो कपड़े कहाँ सुखाना है, ड्राइंग ऑप्शंस and washing options, sitting arrangements, first aid appliances, everything they have to maintain. So this is false. The state government may exempt certain factories from providing storage and drying facilities for clothing. It's not like that. उनको basically वो provide करवाना चाहिए होगा. So this is also false. In factories, for every 150 workers, there must be at least one first aid box or cupboard available. And factories employing more than 500 workers, they must have an ambulance room. This is very much true. Okay. Suitable arrangements for sitting are required to be provided only for workers who are obliged to work in a standing position for more than 4 hours at a stretch. ऐसा कुछ नहीं है. Seating arrangement should be provided to the workers so that जो humane conditions है that should be maintained as part of the working conditions or the working environment as per the Factories Act 1948. So this is also false. So only C is true in this case. So C is the correct answer. So moving on to our next question. With reference to the provisions for working hours and weekly holidays under the Factories Act 1948, consider the following statements. No adult worker shall be required to work more than 48 hours in a week. Okay. Yes, this is true. As per section 51, this works. And a weekly holiday can be substituted, but no worker shall work more than 10 consecutive days without a full day of rest. वीक में जो सबसे पहला दिन होता है दैट इज संडे, दैट शुड बी ऑलवेज ए हॉलीडे. ओके, अगर बाय चांस कहीं पे हो नहीं रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस कि काम ज़्यादा आ गया एंड देयर इज़ नो अदर सब्सटीट्यूट, तो कभी कभी थोड़ा सा लंबा भी वर्क डेज हो जाते हैं, मतलब वर्क वीक हो जाता है. बट इन दैट केस ऑल्सो 10 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए विथ 1 day ऑफ फुल रेस्ट. ओके, दिस इज ऑल्सो ट्रू. If a worker loses their weekly holiday due to exemption from section 52, वही जैसे कभी काम ज़्यादा आ गया है, वर्कलोड है या फिर कोई सब्सटीट्यूट नहीं है तो एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, इन सच केसेस compensatory holidays must be provided within the same month or the following month compulsorily. That working day ऑफ के दिन वर्क कर रहे हैं तो compensatory holiday नेक्स्ट उसी मंथ में या फिर फॉलोइंग मंथ में उस पर्टिकुलर वर्कमैन को देना ज़रूरी है एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट. Okay, especially under section 52. So friends, here comes the next question based on sections 54 and 55. So with reference to the working hours and rest periods, okay, for adult workers under the Factories Act 1948, consider the following statements. No adult worker shall be required to work more than 9 hours any day. This is very much true. Adult workers must be given at least half an hour rest interval after working for 5 hours, extendable to 6 hours with state government exemption. जहाँ पे भी ज़रूरत है 5 hours में एक 5 hours के बाद हाफ एन आवर तो ब्रेक होना चाहिए. अगर state government exempt करता है then that can be extended to 6 hours but not more than that. Yes, this is also true. The daily spread over period including rest intervals cannot exceed 10.5 hours. कई बार ऐसे ओवर टाइम ऐसे कुछ करना पड़ता है. पहले हमने देखा 9 hours से ज़्यादा नहीं कर सकते, बट अगर स्प्रेड ओवर भी हुआ है तो दैट कैन नॉट बी मोर देन 10.5 hours.
Okay, but if the chief inspector may extend it to 12 hours with written justification, अगर कुछ justification मिल रहा है कि हम लोग उनको बीच में अच्छे से रेस्ट दे रहे हैं, या फिर ये मिनिमम टाइम के लिए मतलब कुछ ही दिनों के लिए होगा, या वीकली वंस और ट्वाइस ऐसे होगा विथ प्रॉपर कंपेंसेशन एंड ऑल दैट, अगर सही से उस तरह का जस्टिफिकेशन है तो डेफिनेटली दैट कैन बी एक्सेप्टेबल, बट अगेन based on the inspectors, chief inspectors decision only. So this is also true. So in this case 1, 2, 3 all are true, so D is the correct answer. Moving on to our next question. A worker in a factory works for 10 hours a day for 6 days a week. What is a worker entitled to according to the act? Now, as per the section 59 of the act, wherein extra wages have to be paid for overtime, it says that if a worker in a factory works for more than 9 hours in any day or exceeds 48 hours in a week, then they are entitled to overtime wages at a rate twice their ordinary wage rate. जो भी उनका regular wage rate होगा उससे उनको डबल मिलेगा. सो हियर इन दिस केस 10 hours a day मतलब जो 9 hours है उससे ज़्यादा किया है, and greater than 9 hours a day, and it is greater than 48 hours per week, that is 6 days. So obviously overtime wages at the rate twice their ordinary wage rate should be paid to that worker. Moving on to our next question. With reference to the provisions under the Factories Act 1948 regarding young persons, consider the following statements. These are as per the section 67 and 68 of the act, where prohibition of employment of young children, section 67 बोलता है, and 68 बोलता है कि नॉन एडल्ट वर्कर्स जो बच्चे मतलब एडोलेसेंट्स है 14-15 years to 18 years वालों को किस तरह से वर्क देना चाहिए. So here children below the age of 14 years are prohibited from working in any factory. That's true. So this is very much true. Adolescents with a valid certificate of fitness are deemed adults for factory employment. Yes. अगर adolescents है that is 15 to 18 years but they have got a fitness certificate granted, then they can work. जो adults की तरह काम है वो कर सकते हैं. So this is also true. A male adolescent under the age of 17 years or a female adolescent cannot work in a factory outside the hours 6 a.m. to 7 p.m. outside of only यही टाइम पे उनको काम कर सकते हैं. अदर दैन दिस दे कैन नॉट वर्क. नाइट टाइम वर्क करना या अदर दैन दिस टाइमिंग्स करना. मेल एडोलेसेंट अंडर द एज ऑफ 17 that is 15 to 17 years and female adolescent that is from 15 to 18 they can't work under this case. So this is also true. So here D 1, 2, 3 are true in this case. Moving on to our next question. So here I'll give you a statement. As per the statement, you have to tell me which of the following options is true. So according to the Act, children are entitled to certain protections and restrictions regarding their working hours. Which of the following statements is or are correct regarding the working hours of children? So please kindly understand, children means 14 years age के अंदर नहीं है. It is above 14 years, that is 15 to 18 years. So young force that you can say young workmen. So वो यहाँ पे mentioned है. As per that they used the word children, so हम भी यहाँ पे ऐसे यूज कर रहे हैं. Okay, so children can work for more than 4.5 hours a day if they are employed in a factory that operates only during daytime. It is not work more than, it is less than. They cannot work for more than 4.5 hours a day. So this is false. Children are forbidden to work at night, which is defined as a period of at least 12 consecutive hours including interval between 10 p.m. and 6 a.m. Morning 6 a.m. to evening 7 p.m. तक वो काम कर सकते, but not during the night time, and this is very much true. Female children can work in a factory at any time. No, they can't work in the night. Daytime also only 2 shifts में वो काम कर सकते हैं, which does not exceed 5 hours each. So this is false. Children can work in multiple factories on the same day. No, उस तरह से वो नहीं कर सकते हैं. This is false. So here only B is the correct answer. B is a true statement, मतलब correct statement. So B is the correct answer here. Coming to the next question. Again here I'll give you a statement, and according to the options you have to tell me which is the correct statement, correct option. According to the Act,
that is the Factories Act 1948, factory workers are entitled to annual leave with wages. Which of the following statements is or are correct regarding the eligibility and calculation of the annual leave? A factory worker who has worked for 200 days or more in a calendar year is entitled to leave with wages in the following year. This is partially true. Why? Because it is not 200 days but 240 days or more. Okay. So this is false. An adult worker is entitled to 1 day of leave for every 20 days of work performed in the previous calendar year. So this is true. And if it comes to the children or that is young force, then it would be 1 day leave. They are entitled to 1 day leave for every 15 days of work performed in the previous year. Okay, जो annual leave होता है. So this is true. A worker whose service commences on the 15th of January is not entitled to leave with the wages in the same calendar year. It's not like that. Agar 2/3 of the days, total number of days, he has worked in the remaining days of the calendar year, so definitely he or she will be eligible for the leave, that is leave with wages in the next year, in the same calendar year. So this is also false. Okay. A fraction of leaves of less than half a day is considered as a full day's leave. A fraction of leaves of more than half a day leave, अगर हाफ डे से ज़्यादा है उनका लीव, देन फ्रैक्शन में मिला के देन दैट वुड बी कंसिडर्ड एज फुल डे. अगर फ्रैक्शन में लेके वो लेस देन जैसे आवर्स ओके होता है, सो उससे लेस देन हाफ डे हो रहा था, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फुल डे लीव. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. सो हियर ओनली बी इज द करेक्ट आंसर. सो बी इज द करेक्ट आंसर हियर. So coming to the next question again from the same section 79, annual leave with wages. According to the Act, factory workers are entitled to carry forward unused annual leave. That's true. Which of the following statements is or are correct regarding the carry forward of unused annual leave? Yes. See, adults can carry forward up to 30 days of unused leave, while children can carry forward up to the same number. No, this is not true. Adults can carry forward 30 days and children, that is young persons, they can carry forward their leave if not utilized to 40 days. Okay, up to 40 days तक वो next इसमें कर सकते हैं. So this is false. There is no limit to the leave that can be carried forward if a worker applied for leave but was refused. This is very much true. अगर उसने वर्कर के पास लीव्स है बट फिर भी उसने अप्लाई करने के बाद उसको डिनाई किया गया है, इन दैट केस जितने भी लीव्स एक्यूमुलेटेड हुए हैं दैट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड. ओके. वर्कर्स कैन कैरी फॉरवर्ड अनयूज्ड लीव फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 years. 2 years तक नहीं, दिस इज फॉर 3 years तक वो एक्सटेंड कर सकते हैं. Okay, a worker can request leave in writing form from the factory manager of at least 15 days before the desired leave start date. For those in public utility services, this notice period is extended to 40 days. This is not for 40 days, but it is extended to 30 days. Okay, so this is also not true. So only B is true. That is a true option here for the statement given in the question. Moving on to our next question. So how the wages are paid during the leave period? So here under section 80 of the Factories Act 1948, which of the following components are included in the calculation of the wages for the worker during their leave period? Dearness allowance, that is DA, cash equivalent of benefits from discounted food grains. कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे food grains PDA से नहीं मिल रहा है, so they'll give some cash. वो overtime wages paid during the preceding month, उससे पहले जो ओवरटाइम वेजेस है वो, बोनस पेड, अगर बोनस कुछ है लास्ट टाइम जितना पे किया उतना. सो इन दिस केस ओनली 1 and 2 आर ट्रू. ओवर टाइम एंड बोनस पेड इफ एनी, जो प्रीसीडिंग इन द प्रीसीडिंग मंथ, क्योंकि इस टाइम तो किया ही नहीं, तो ऑब्वियसली दैट वुड नॉट बी पेड फॉर द लीव पीरियड. ओनली द डियरनेस अलाउंस, कैश एंटाइटलमेंट एंड द रेगुलर वेजेस जो है, बस उतना ही, जो वो भी उनके एवरेज डेली अर्निंग्स जो है वही उनको मिलेगा. सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, बहुत अच्छे तरीके से हमने किया है सेशन 1. अब इसी का कंटिन्यूएशन हम लोग करेंगे अगले सेशन में. बिफोर दैट आई वुड लाइक टू एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि
currently at EduTap, they're offering 3 courses for those students who are preparing for the upcoming UPSC EPFO APFC and EO or AO examination. So for which they are offering 3 courses. उसमें सबसे पहला कोर्स है मास्टर कोर्स. ओके ये उन बच्चों के लिए सही है जो बिल्कुल अभी स्टार्ट किए हैं प्रिपरेशन एंड दे वांट एवरीथिंग एट वन प्लेस लाइक द कंटेंट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, लाइव सेशंस, कुछ डाउट क्लियरेंस के लिए वो सब इसमें मिलेगा. एंड इवन एवरी वीक थर्सडे के दिन कुलदीप सर आपको खुद ऑनलाइन आपका क्लास लेंगे देर वेर इन ही विल टेल यू हाउ टू यूटिलाइज द कंटेंट दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड इन द कोर्स अलॉन्ग विद दैट जो भी आपके डाउट्स है वो सब वो क्लैरिफाई करेंगे. दूसरा कोर्स है 2 टेस्ट सीरीज प्लस. ये उनके लिए है जो स्पेसिफिक कुछ सब्जेक्ट्स का कंटेंट उनको चाहिए एक्सक्लूसिवली वो प्लस सम उनका जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो सब उनको मिलेगा. मतलब जो ऑलरेडी कुछ कंटेंट उन्होंने पढ़ चुके हैं कुछ सब्जेक्ट्स के लिए उनको हेल्प चाहिए. नाउ थर्ड कोर्स है टेस्ट सीरीज. ये उनके लिए जो ऑलरेडी अच्छे से पढ़ लिया है मतलब अपने खुद के सोर्सेस से बट नाउ दे वांट टू टेस्ट देमसेल्व्स वेयर दे स्टैंड फॉर विच दे नीड टू हैव लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड टेस्टिंग देमसेल्व्स टेस्ट that is mock test etc. So for them this test series would be of great help. And if you have any queries related to any of these courses you can reach out to the team members, any of the team members from EduTap, and accordingly you can make an informed decision कि कौन सा कोर्स आपको लेना है. Thank you very much. Hope you have liked this session. See you all in the next session. Hello friends, welcome to EduTap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 wherein we'll be doing 15 MCQs a day. एक सेशन में हम लोग 15 MCQs करेंगे. तो अभी करेंटली वी आर फोकसिंग ऑन लेबर लॉस एज पार्ट ऑफ विच आज हम लोग करने वाले हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 पार्ट 1. Now why this is important? See, when it comes to these topics, labor laws, industrial relations, close to 15 questions out of 120 questions are asked both in APFC exam और AO और EO एग्जाम. दोनों में भी ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं कोई एक एग्जाम के लिए है. सो एंड मोर ओवर ये टॉपिक्स ऐसे है कि सही से एक बार पढ़ के थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो वेरी इजीली आप अचीव कर सकते हो जो जितने भी मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं. एंड मोर ओवर ईजी भी है क्वेश्चंस मतलब कंटेंट भी ईजी है ग्रास्प करने के लिए. And the second important point is we are expecting the UPSC EPFO notification for both APFC and AO or EO very soon. So those who want to score high in these topics, I suggest you to please go through these sessions thoroughly without missing these sessions so that your preparation for the exam of UPSC EPFO 2025 would be foolproof. So moving on to the first question here. Which of the following statements correctly describes the key features and aspects of the Trade Disputes Act 1929? As I have said earlier also in earlier acts that we have already discussed, India एक agrarian country है but again when Britishers came to India they started commercializing India sectors especially agriculture. As part of which उन्होंने क्या किया सबसे पहले ये जो टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री है ये जूट इंडस्ट्री है उस पर उन्होंने फोकस किया था. सो बट व्हेन दे स्टार्टेड कमर्शियलाइजिंग उसमें कुछ डिस्प्यूट्स आए. वर्कर्स आल्सो दे स्टार्टेड forming the associations and then opposing the kind of inhumane conditions in which they were forced to work. And as part of which उन्होंने ये एक डिस्प्यूट्स एक्ट वाला निकाला था. ओके अर्लियर उन्होंने फैक्ट्रीज एक्ट एंड ऑल अदर ट्रेड यूनियन एक्ट उस पर भी वर्क किया था. अकॉर्डिंगली ये डिस्प्यूट्स द ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट 1929 उन्होंने लॉन्च किया था. बट हियर द मेजर फोकस वाज this act required a minimum 14 days notice before strikes in public utility services. मेजर ये था एंड थोड़ा सा डिस्प्यूट्स रिजॉल्विंग के लिए था. सिंपैथी स्ट्राइक्स एंड जनरल स्ट्राइक्स वर एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिटेड. ऐसा कुछ नहीं है इसमें. सो दिस इज फॉल्स. The act introduced a system of compulsory arbitration and reconciliation in industrial disputes, ensuring that disputes were settled promptly without work stoppages. ऐसा कुछ भी नहीं था. Okay, the act specifically targeted public utility services and did not universally prohibit strikes or lockouts in all industries. No, they have done this in all. So this is also false. So only C is the correct statement here. So C is the correct answer here.
Moving on to our next question, what was one of the main reasons for the enactment of Industrial Disputes Act 1947, replacing the Trade Disputes Act 1929? जैसे मैंने हम पहले क्वेश्चन में देखा था 1929 में ही ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट था, बट आफ्टर दैट उसमें बहुत सारे शॉर्ट कमिंग्स थे, बहुत कुछ उन्होंने उसमें कंसिडर ही नहीं किया था ओइंग टू द देयर रिक्वायरमेंट. लेकिन फिर 1946 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बिल लेके आए थे. उसको after it was introduced in the legislature, this was referred to as select committee. Based on the recommendations of the select committee, various amendments were done in the industries disputes bill. Then it was launched in the legislature, which was passed as industrial disputes bill 1947. उसी को एक्ट की तरह लेके आए थे from 1st April 1947. Okay, that way it came into force, and this was majorly to address the shortcomings of the provisions of the Trade Disputes Act 1929 and provide a comprehensive framework for resolving industrial disputes. For that they have replaced 1929 का जो बिल था उसको replace करके 1947 में एक Industrial Disputes Act लेके आए थे. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट तो लेके आए थे, लेकिन अब उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सो हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 एम्स टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स? मेजरली तो इसका था टू मेक प्रोविजन फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, बट उसके अलावा भी कई सारे ऑब्जेक्टिव्स थे. So to promote measures establishing cordial industrial relations between the employees and the employers. Yes, this is true. To minimize the differences and solve the disputes through settlement machineries, जो भी mechanism चाहिए उसके लिए to resolve the disputes, that should be there. Yes, that is true. To provide suitable machinery for investigation and fine settlement for industrial disputes, this is also true. To prevent illegal strikes and lockouts by employees and employers, this is also true. To establish rules and regulations to provide relief to workmen for layoffs, retrenchments, अगर कुछ है इसके लिए. Yes, this is also true. To set guidelines for fair labor practices. Obviously, once that happens, the disputes will almost come down. So this is also true. To promote collective bargaining. Yes, all these are true in case of objectives under the Industrial Disputes Act 1947. So here D is the correct answer, all of the above. So here comes the next question. As per the section 2, that is important definitions under the Industrial Disputes Act 1947. Yes, which of the following statements regarding average pay is correct? Okay, now average pay for a monthly paid workman is calculated over 3 complete calendar months preceding the date it becomes payable. So जब भी last 3 months का जो भी कंप्लीट कैलेंडर मंथ्स में जो भी मंथली अमाउंट पे किया गया है ऑन दैट एवरेज, फॉर एग्जांपल 20 के एक मंथ में हुआ था, 22 के एक मंथ में हुआ था एंड 21 के एक मंथ में हुआ था. ओके, सो इसका एवरेज कितना होगा? ओके, 21 होगा. सो दिस हैज़ टू बी पेड एज एन एवरेज पे टू दैट वर्कर whenever it becomes payable future. Next, average pay for daily paid worker. अगर daily payment होगा तो इसका that can be calculated based on the wages for 12 full working days preceding the date it becomes payable. तो इससे पहले जो 12 वर्किंग डेज में जो भी इनकम पेमेंट्स है ऑन एन एवरेज उसका जो भी निकाला, दैट वुड बी द एवरेज पे फॉर ए डेली पेड वर्कमैन. जैसे हम पूछते हैं ना कि एवरेज पे यहाँ पे मंथली कितना है वर्क, सेम उसी बेसिस पे है. So average pay for a weekly paid workman is calculated based on the wages for the 4 complete weeks preceding the date it becomes payable. So all of these are true in this case. So it is all of the above. D is the correct answer. ये हो गया average pay. Now what does wage means in this particular act? So now this means all that remuneration capable of being expressed in terms of money and that would be paid to the employee, and it includes allowances also like your DA etc. या फिर कुछ हाउस एकोमोडेशन है, सप्लाई ऑफ वाटर है, मेडिकल अटेंडेंस है, या फिर कंसेशनल सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स है, कुछ ट्रैवल कंसेशन है, अगर प्रमोशन ऑफ सेल्स या बिजनेस पे कभी कभी कमीशन भी पे करते हैं दैट,
ये सब वेजेस में ही इंक्लूड किया जाता है, बट इन वेजेस इट डज नॉट इंक्लूड, बोनस इंक्लूड नहीं होता है, जो पेंशन फंड या प्रोविडेंट फंड के लिए जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है दैट वुडंट बी कंसिडर्ड एज अ वेज, और द ग्रेच्युटी दैट इज पेएबल ऑन द टर्मिनेशन ऑफ हिज सर्विसेज, ये सब उसमें कंसिडर नहीं किया जाता है. So moving on to our next question, what does the term award signify in the context of industrial disputes? So industrial disputes में award मतलब judgment होता है. So here a final judgment of a civil court in an industrial dispute, जो भी industrial dispute में जो final judgment आता है, that is called an award here. So coming to the next question, which of the following statements correctly define the terms? Section 2 of the Industrial Dispute Act actually कई सारे terms है उसमें. ओके, सो इसमें से कुछ टर्म्स मैंने यहाँ पे दिया है. सो यहाँ पे टर्म्स है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, लॉकआउट, क्लोजर, स्ट्राइक. इसका मतलब क्या है, इनका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? तो यहाँ पे मैंने ABCD ऑप्शंस दिया है. तो उसमें से an industrial dispute includes disagreements connected with employment, terms of employment or labor conditions among employers, workmen or both. ओके, डिस्प्यूट किसी भी तरह से हो सकता है, एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स के बीच में हो सकता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में हो सकता है, कभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में भी हो सकता है. सो एवरीथिंग इज कवर्ड हियर. एंड उसका रीजन क्या है, एम्प्लॉयमेंट का हो सकता है, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का हो सकता है, और लेबर कंडीशंस का हो सकता है, कुछ भी. सो ट्रू हियर. अ लॉकआउट इज द टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ ए वर्क प्लेस और सस्पेंशन ऑफ वर्क बाय द एम्प्लॉयर. कभी रॉ मटेरियल नहीं आया है या फिर कुछ और रीजन है या मेंटेनेंस का है, कुछ भी है, तो अ लॉकआउट कैन बी डिक्लेयर्ड. अ क्लोजर इज द परमानेंट शटिंग डाउन ऑफ ए वर्क प्लेस, कंप्लीट शट डाउन हो जाएगा. एंड अ स्ट्राइक इज कलेक्टिव सीजेशन ऑफ वर्क बाय द वर्कर्स, वो स्ट्राइक बुलाए हैं मतलब वो काम नहीं करेंगे, and they will refuse to work also. So here B is the correct answer when it comes to the definition of the terms industrial dispute, lockout, closure and strike. Coming to the next question, two more terms will be covering here in this question. Which of the following statements correctly differentiate layoff and retrenchment as per the Industrial Disputes Act 1947? Now here layoff मतलब क्या है, temporary inability of an employer to provide work due to reasons like raw material shortages, machinery breakdown etc. उसको layoff बोलते हैं, वो काम नहीं दे पा रहा है किसी भी रीजन की वजह से. That can be called as layoff. While retrenchment involves the termination of a workman's service for reasons other than disciplinary action. Okay, and also it excludes voluntary retirement, superannuation and ill health. इन reasons के अलावा कुछ और reasons की वजह से बिल्कुल उनका काम मतलब जो जॉब है that terminate कर रहे हैं, in that case that's called as retrenchment.
Moving on to our next question. Now here in this case, consider the following statements under section 2A of the Industrial Disputes Act 1947. Which of the below statements is or are correct? An individual workman's dismissal, discharge, retrenchment or termination is deemed an industrial dispute even if no other workman or union is involved. Yes, that can be considered as industrial dispute and they can be taken to the conciliation officer, or अगर वहाँ से भी नहीं हो रहा तो they can even go to the labor court also, क्योंकि वहाँ पे अगर कुछ रीज़न सही नहीं है या फिर जो एम्प्लॉय मानता है, okay, so कई सारे रीजन है तो they can go. Yes, this is true. A dismissed workman must first apply to the conciliation officer जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, एंड इफ द डिस्प्यूट रिमेन्स अनरिजॉल्व फॉर 45 days दे कैन डायरेक्टली अप्रोच द लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल. यस, ये हो सकता है. दिस इज ऑल्सो ट्रू. The workman must file an application to the Labour Court or Tribunal within 5 years from the date of dismissal, discharge, retrenchment or termination. Here they should go to the tribunal. यहाँ से 45 days में तो नहीं हुआ है. Then उनको 3 years तक, within 3 years from the date of dismissal, discharge, retrenchment or termination, the workman has to reach the Labour Court. Otherwise, it's not valid. So here only 1 and 2 are true. So A is the correct answer. So here comes the next question. Consider the following statements regarding the Works Committee under Section 3 of the Industrial Disputes Act 1947. Which of the following statements is or are correct? Okay. Now a Works Committee is required in industrial establishment employing 100 or more workmen on any day in the preceding 12 months. Yes, this Works Committee is very much essential, wherein in such establishment where they employ more than 100 workmen. Okay, so this is true. The number of representatives of workmen on Works Committee must be equal to or greater than the number of employer representatives. So दोनों तरफ से उसमें रहेंगे, so that कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसको एमिकबली रिजॉल्व करने के लिए, या फिर कुछ भी मेटीरियल डिफरेंस है इन ओपिनियन एक्सेट्रा, इन सच मैटर्स ऑल्सो दे विल कमेंट अपॉन सच मैटर्स एक्सेट्रा एंड ट्राई टू रिजॉल्व दोज डिस्प्यूट. सो यस, बोथ वर्क्स कमिटी मतलब उसमें एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी रहेंगे और एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी रहेंगे. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. The primary duty of the Works Committee is to resolve individual grievances. No, this is not for the individual grievances, but for the disputes among the employees and employees, and for the जो भी उनके resolution है that they would try to work upon. So here only 1 and 2 are true. So here C is the correct answer. So moving on to our next question. With reference to the section 4 of the Industrial Disputes Act 1947, consider the following statements regarding conciliation officers, and which of the following statements is or are correct. Now conciliation officers are nothing but they are like mediators or facilitators who are appointed by the government majorly to help resolve the disputes between the employers and the employees in workplaces or the industries. So here it's not that वो एक ही पार्टी को सपोर्ट करेंगे, वो दोनों ही पार्टीज को सपोर्ट करेंगे टू फाइंड ए कॉमन ग्राउंड एंड रीचिंग एन एग्रीमेंट. ओके, so with this introduction, let's look at the options. Conciliation officers are appointed by the appropriate government through a notification in the official gazette. This is very much true. Their primary role is to mediate and promote the resolution of industrial disputes between the employers and employees. So whenever required, this would be done. So this is also true. A conciliation officer may be appointed for a specified area or for a specified industries in a specified area or for more than one or specified industries, and either permanently or for a limited period. This is also true. एक इंडस्ट्री के लिए नहीं, कई सारे इंडस्ट्रीज के लिए, एंड कभी कभी टेम्पररी के लिए या फिर परमानेंट के लिए भी, एज पर द रिक्वायरमेंट वहाँ किस तरह से है, दे कैन बी done. So this is also true. So here in this case 1, 2, 3 all are true. So D is the correct answer. So here comes the next question. As per section 5 of the Industrial Disputes Act 1947, it provides for the constitution of Board of Conciliation.
to promote the settlement of industrial disputes. Now, which of the following statements regarding the composition and functioning of the Board of Conciliation is or are correct? Now, ये Board of Conciliation appoint करेगा appropriate government whenever and wherever it is required. इसमें 2 to 4 members होंगे, chairman independent होगा and जो conciliation होगा वो that would be done with the help of this board. Okay, so the Board of Conciliation shall consist of a chairman who is independent and an equal number of members representing the parties जो भी dispute में हैं. उसमें employees हो सकते हैं, employees employers हो सकते हैं, equal number में वो represent करेंगे इस board को. Accordingly they will try to come to a common ground and resolve the dispute. So here B is the correct answer. So coming to the next question. So here is a statement based question, a statement and then some options. The Industrial Disputes Act 1947 as per the section 6 of the said act provides for the constitution of a court of inquiry to investigate matters related to the industrial disputes. Appropriate government can constitute this court of inquiry whenever required. Which of the following statements regarding the composition and functioning of the court of inquiry is or are correct? Okay, so here a court of inquiry shall consist of only one independent person. ऐसा कुछ नहीं है. अगर ज़रूरत पड़ी तो as per the appropriate government whatever it may think fit they can go for more also. The court inquiry can function and take decisions even if the chairman or any member is absent. This is true actually. Yes, they can take. अगर set quorum ये सब set हो गया है तो definitely they can take action and can function. The court of inquiry shall have an odd number of members to ensure majority decision. ऐसा कुछ भी नहीं है. Even in the absence also they can work. The court of inquiry can only be constituted with the consent of the parties involved in the industrial dispute. No, अगर appropriate government it feels like they require this, then definitely they can go ahead with that. So here only B is the correct answer in this case. So friends, here comes the next question. See, the appropriate government may constitute one or more labor codes for the adjudication of industrial disputes relating to any matter specified in the second schedule and for performing such other functions as may be assigned to them under this act. Okay, now before reading the next part of the question, let me clear you one thing. When it comes to the ये जो फैक्ट्री जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है इसमें 5 स्केड्यूल्स हैं. ठीक है, पहला स्केड्यूल ये बोलता है कि इंडस्ट्रीज दैट कैन बी डिक्लेयर्ड टू बी पब्लिक यूटिलिटीज. पब्लिक यूटिलिटी वाले जो इंडस्ट्रीज है उनको डिक्लेयर करने के लिए जो भी रेलेवेंट रूल्स है रेगुलेशंस है वो सारे हमें फर्स्ट स्केड्यूल में मिलेंगे. सेकेंड स्केड्यूल आता है मैटर्स विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लेबर कोड. लेबर कोड के अंदर जो भी मैटर्स आएंगे वो सारे इनकॉर्पोरेटेड है सेकेंड स्केड्यूल में. थर्ड स्केड्यूल में आता है मैटर्स विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स. उससे भी कुछ बड़े कुछ डिस्प्यूट्स है दैट विल गो टू ट्रिब्यूनल्स तो वो उसमें आएंगे. फोर्थ स्केड्यूल में आता है कंडीशंस ऑफ सर्विस फॉर विच नोटिस इज टू बी गिवन. ऐसे कैसे कंडीशंस में सर्विस में नोटिस दे सकते हैं उनका जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फोर्थ स्केड्यूल में आएंगे. एंड फिफ्थ स्केड्यूल में आएंगे अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस जो भी कुछ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स में होते हैं. उन कौन से ऐसे चीज़ों को हम लोग अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस बोलते हैं उनका जो भी लिस्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फिफ्थ स्केड्यूल में आएंगे. नाउ फ्रॉम दिस फिफ्थ सेकेंड स्केड्यूल किसके लिए है? लेबर कोड्स के लिए है. वॉट एवर द मैटर्स विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लेबर कोड्स उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है. So here consider the following statements regarding the jurisdiction of labor courts as per the second schedule of the Industrial Disputes Act 1947. Which of the following statements is or are correct? Now when we talk about this labor courts as such, okay, उनमें कई सारे हैं जैसे कि लीगैलिटी ऑफ एन ऑर्डर पास्ड बाय एन एम्प्लॉयर अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर्स. वो किस तरह से लागू हो रहा है, वो सही से हो रहा है कि नहीं वो देखना है. द एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर्स, जो भी ऑर्डर्स उन्होंने दिया है उसका एक बार देखना है. डिस्चार्ज और डिसमिसल ऑफ द वर्कमैन इंक्लूडिंग रीइंस्टेटमेंट या फिर कुछ रिलीफ देना है या फिर वर्कमैन को रॉन्गफुली अगर उन्होंने निकाल दिया है उस तरह के केसेस भी देखेंगे. विड्रॉल ऑफ एनी कस्टमरी कंसेशन और प्रिविलेज, अगर कुछ दिया है अगर वो गलत है तो उसको किस तरह से वापस लेना है वो लेबर कोड्स में देखेंगे. इलीगैलिटी और अदरवाइज
कोई लॉकआउट हुआ है गलत तरीके से, मतलब एम्प्लॉयर अपना फायदा देख के जो एम्प्लॉयज़ या वर्कमैन है उनका नुकसान करते हुए अगर लॉकआउट डिक्लेयर किया है, या फिर एम्प्लॉयज़ ने गलत तरीके से स्ट्राइक डिक्लेयर किया है, उन सब में लेबर कोड देखेगा, मतलब उसमें वो डिस्प्यूट रिजॉल्व करेगा। ऑल मैटर्स अदर दैन दोज, जो भी थर्ड स्केड्यूल में दिया है उनको छोड़ के, क्योंकि वो ट्रिब्यूनल वाला है, राइट, सो उनको छोड़ के जो भी मैटर्स रहेंगे ऑल विल बी लुक्ड आफ्टर अंडर द लेबर कोड्स ओनली। Okay, now labor courts can adjudicate on the propriety or legality of an employer's order under the standing orders. Yes, this is true. Matters related to the discharge or dismissal of workmen, including their reinstatement or relief, they fall under the jurisdiction of the labor courts. This is also true. ये हमने देखा है already. Only third जो schedule है उनको छोड़ के सभी इसी में आएंगे, and also discharge or dismissal ये भी इसी में है ही already. Illegality or otherwise of a strike or lockout, दोनों केसेस में इसमें आएगा. So here D 1, 2, 3 all these are true. So here D is the correct answer. So before winding up this question as such, labor court में होता क्या है? Now labor court, it consists of generally one person only, that too appointed by the appropriate government. And ये कौन होगा? He or she must be a judge of high court. ओके, एंड कंपलसरी उस लेवल के बंदे को ही लेंगे. क्यों? क्योंकि उस लेवल के बंदे को जनरली ही विल हैव मोर दैन 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एज ए डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, और ही मस्ट हैव हेल्ड एट एनी जुडिशियल पोस्ट. अगर वो नहीं है तो एटलीस्ट कोई जुडिशियल पोस्ट में लेस देन 7 years तो उनको सर्व करना ही पड़ेगा. ओके, अगर नहीं तो एटलीस्ट एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर या लेबर कोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है स्टेट ने या प्रोविंस ने, वहां पे भी वो एटलीस्ट मिनिमम 5 years तो उनको सर्व करना पड़ेगा. और he or she has been the deputy chief labor commissioner सेंट्रल और जॉइंट कमिश्नर ऑफ द स्टेट लेबर डिपार्टमेंट, वहां पे भी एटलीस्ट उनको एक लॉ का डिग्री होना चाहिए एंड 7 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंक्लूडिंग उस 7 years में एटलीस्ट 3 years कंसिलिएशन ऑफिसर की तरह एक्सपीरियंस होना चाहिए. इन दैट केस जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है दे कैन अपॉइंट दिस पर्टिकुलर पर्सन एज द हेड और द एज अ लेबर कोर्ट. सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी थोड़ी देर पहले हमने सेकेंड स्केड्यूल का देखा है और थर्ड स्केड्यूल हमने क्लियरली बोला है कि दैट विल गो टू द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स. ओके, सो उनको छोड़ के बाकी सब इनके पास रहता है, लेबर कोर्ट्स के पास. नाउ स्केड्यूल 3 में किस तरह के मैटर्स ऐसे हैं जो ट्रिब्यूनल्स के पास जाएंगे? देखिए, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू एनी मैटर whether specified in the second schedule or the third schedule and for performing such other functions as may be assigned to them under this act. Okay, now which of the following matters fall under the jurisdiction of the industrial tribunals as specified in the third schedule of the industrial disputes act 1947? कई बार हमें क्वेश्चन इतना लंबा देके थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं, कई बार ये होता है. सो हियर द एंटायर क्रक्स ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड स्केड्यूल में क्या क्या है ऐसे जो उसके अंडर आते हैं, कौन से ऐसे मैटर्स है जो उसके अंडर आते हैं. नाउ इफ वी लुक एट द थर्ड स्केड्यूल ऑफ द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स का जो है, यहाँ पे आते हैं disputes related to wages including the period and the mode of payment अगर उसमें कुछ problem है, compensatory and other allowances, hours of work and rest intervals, leave with wages and holidays, bonus, profit sharing, provident fund, gratuities के related कुछ भी problem हो that will come under the tribunals only. शिफ्ट वर्किंग अदरवाइज दैन इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडिंग ऑर्डर. स्टैंडिंग ऑर्डर्स में होता है ना क्या क्या वो पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट सब फॉलो करेगा, अगर उसके अलावा कुछ और शिफ्ट्स में वो काम करवा रहे हैं, अगर उसमें कुछ डिस्प्यूट है तो डेफिनेटली द ट्रिब्यूनल्स कैन टेक देम अप. क्लासिफिकेशन बाय ग्रेड्स, रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, रेशनलाइजेशन, रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कमैन एंड क्लोजर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट अगर कभी होता है कि वो बिल्कुल बंद हो गया हो, एनी अदर मैटर दैट मे बी प्रिस्क्राइब्ड रिलेटेड टू द वंस विच आई हैव हाईलाइटेड, वो सारे आते हैं हमारे थर्ड स्केड्यूल में. नाउ विद दिस कंटेंट the correct answer here as per the 4 options would be wages, hours of work, bonus and closure of establishments. अब बाकी देखेंगे proprietary of employment order, standing orders interpretation, dismissal of workmen, ये सारे आते हैं किसमें?
सेकेंड शेड्यूल में। इलीगैलिटी ऑफ स्ट्राइक्स वो तो सेकेंड शेड्यूल में है ही। रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कमैन, लीगैलिटी ऑफ स्ट्राइक्स अगेन सेकेंड शेड्यूल। सो थर्ड शेड्यूल में सिर्फ ये आता है, सो हेंस बी इज द करेक्ट आंसर हियर। सो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था रिलेटेड टू शेड्यूल 2, हमने उसी टाइम पे देखा था कि लेबर कोड्स में उनका किस तरह से कॉम्पोजिशन होता है एंड व्हाट इज द एक्सपीरियंस दैट इज रिक्वायर्ड और एसेंशियल क्वालिफिकेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्सन टू बी एज पार्ट ऑफ द लेबर कोड, राइट। तो अभी इसमें हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स। देखिए, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स वो है जो मेजरली देखते हैं those disputes which are of national importance. Okay, so here which of the following statements regarding the national industrial tribunals is correct? Now national tribunals में क्या होता है? It consists of one person only. But here, since it is of national importance या national tribunal है, it would be appointed by the central government. And इसमें qualification क्या होगा उस person के लिए? He has to be a judge of high court, no doubt in that. Okay, and along with that, the central government may appoint two persons as assessors. Okay, those who can assess the situation, जो भी वो dispute है, and advise the national tribunal in the proceedings that follow. ओके, तो दो असेसर्स को भी वो अपॉइंट कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम डिस्प्यूट ज्यादा बड़ा हो। नाउ एज पर द सेक्शन 7C ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, disqualification for the presiding officers of labor courts, tribunals, national tribunals, वो सब आता है। and जो person who has been appointed as a presiding officer of a labor court और ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल तीनों का है, क्योंकि लेबर कोड को हमने देखा है, ट्रिब्यूनल भी इसी तरह से है, बट अगेन दैट वुड बी बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। लेकिन नेशनल ट्रिब्यूनल जो होता है दैट वुड बी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस के रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं दैट वुड बी रिजॉल्व इन वॉट एवर केस। In these three cases also, the person who is being appointed should be an independent. He or she should not be related to either the employer of the dispute or the employee of the dispute. Okay, independent होना चाहिए and their age should not exceed 65 years and they should have relevant experience as required by the rule or the regulation as per the act to be appointed for them to be appointed as labor court the presiding officer। लेबर कोर्ट के लिए हमने बोला सिंगल पर्सन लेबर कोर्ट है, तो ऐसा नहीं कि उनको लेबर कोर्ट बोलेंगे, उनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलेंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेबर कोर्ट और द ट्रिब्यूनल और द नेशनल ट्रिब्यूनल। ठीक है, नाउ विद दिस द करेक्ट आंसर इन दिस केस इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर of the national tribunal must be or have been judge of the high court, ये compulsory है। Okay, the national industrial tribunal can be constituted by state governments, no, this is wrong। the national industrial tribunal consists of 3 members, no, कंपल्सरी नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो 2 मेंबर्स को एसेसर्स को वो करेंगे, सो ये कंपल्सरी नहीं है, इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स। ओके, the National Industrial Tribunal can adjudicate only those disputes that are confined to one state. No, this is also wrong. National importance related. So C is the correct answer in this case. So here comes the last question for today's session. So consider the following statements regarding section 9A and section 9C of the Industrial Disputes Act 1947, based on which of the following statements are true. Now the first is, when we talk about 9A, before giving you the options, let me take you through some little bit basic notes of or content of these 2 sections. 9A focuses on notice of change. See, an employer, he cannot change the work conditions, okay, which have been already listed in the 4th schedule of the standing orders without taking proper steps। उनको पहले एक proper notice देना पड़ेगा कि ये working conditions change होने वाले हैं वर्क में, एंड आफ्टर दैट एटलीस्ट 21 डेज का वेटिंग पीरियड होगा, उसके बाद ही जो भी उन्होंने बोला है कि ये चेंजेस होंगे वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, ये हो गया सेक्शन 9A का। सेक्शन 9C बोलता है कि सेटिंग अप ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी और द कमिटी, मैकेनिज्म किस तरह से होगा अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो। सो फॉर विच एवरी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट वेयर देर आर मोर दैन 20 एम्प्लॉयज और वर्कमैन, दे शुड हैव एटलीस्ट 1 और मोर ग्रीवेंस मशीनरी और कमिटी जो
कभी कभी एम्प्लॉयज के बीच में जो ग्रीवेंसेस होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए. And the composition of this grievance committee should consist equal number of members from the employer and the workman. Okay, दोनों का equal होना चाहिए and the member should not be it's not that should not be but at least 6 तो होना चाहिए. ओके, शुड नॉट एक्सीड मोर देन 6 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए. एंड उन 6 में हमने देख लिया है कि इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. एंड अगर उसमें सिर्फ 2 मेंबर्स ही है, ग्रीवेंस कमिटी हैज़ 2 मेंबर्स, उसमें एटलीस्ट एक तो वुमेन मेंबर होना चाहिए. अगर ज़्यादा मेंबर्स है, जैसे 6 तक हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली द नंबर ऑफ वुमेन मेंबर्स शुड बी इंक्रीज्ड इन द ग्रीवेंस कमिटी. Okay, now with this basic information, let's look at the options. An employer cannot alter work conditions listed in the 4th schedule without providing prior notice and waiting for 21 days after issuing notice. Yes, that has to be done. So this is true. Every industrial establishment employing 20 or more workmen must establish a grievance redressal committee with equal representation from employees and workmen. This is also true. The decision of the grievance redressal committee is final and a workman cannot appeal the decision under the Industrial Dispute Act. This is not true because he has every right to do so. So this is false. The total number of members in the grievance redressal committee must not exceed 6 and at least 1 member must be a woman if the committee has more than 2 members. So yes, this is also true, which we have already discussed. So 1, 2 and 4, these are the correct options. So B is the correct answer in this case. सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, बहुत अच्छे तरीके से हमने किया है सेशन 1. अब इसी का कंटिन्यूएशन हम लोग करेंगे अगले सेशन में. बिफोर दैट आई वुड लाइक टू एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि currently at EduTap they are offering 3 courses for those students who are preparing for the upcoming UPSC EPFO APFC and EO or AO examination. So for which they are offering 3 courses. उसमें सबसे पहला कोर्स है मास्टर कोर्स. ओके, ये उन बच्चों के लिए सही है जो बिल्कुल अभी स्टार्ट किए हैं प्रिपरेशन एंड दे वांट एवरीथिंग एट वन प्लेस, लाइक द कंटेंट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, लाइव सेशंस, कुछ डाउट क्लियरेंस के लिए, वो सब इसमें मिलेगा. एंड इवन एवरी वीक थर्सडे के दिन कुलदीप सर आपको खुद ऑनलाइन आपका क्लास लेंगे देर वेयर इन ही विल टेल यू हाउ टू यूटिलाइज द कंटेंट दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड इन द कोर्स. अलॉन्ग विद दैट जो भी आपके डाउट्स है वो सब वो क्लैरिफाई करेंगे. दूसरा कोर्स है 2 टेस्ट सीरीज प्लस. ये उनके लिए है जो स्पेसिफिक कुछ सब्जेक्ट्स का कंटेंट उनको चाहिए एक्सक्लूसिवली, वो प्लस उनका जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो सब उनको मिलेगा. मतलब जो ऑलरेडी कुछ कंटेंट उन्होंने पढ़ चुके हैं, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए उनको हेल्प चाहिए. नाउ थर्ड कोर्स है टेस्ट सीरीज. ये उनके लिए जो ऑलरेडी अच्छे से पढ़ लिया है, मतलब अपने खुद के सोर्सेस से, बट नाउ दे वांट टू टेस्ट देमसेल्व्स वेयर दे स्टैंड, फॉर विच दे नीड टू हैव लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड टेस्टिंग देमसेल्व्स, टेस्ट that is mock test etc. So for them this test series would be of great help. And if you have any queries related to any of these courses, you can reach out to the team members, any of the team members from EduTap, and accordingly you can make an informed decision कि कौन सा कोर्स आपको लेना है. Thank you very much. Hope you have liked this session. See you all in the next session. Hello friends, welcome to EduTap and welcome to the second part of the Labor Laws Industrial Disputes Act 1947. So this is the series that we have launched exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 exam, wherein we'll be covering 15 MCQs a day. So why is this so important? See, kindly understand that we are expecting the notification of UPSC EPFO very soon. So for that, this would be helpful for all those who have been preparing for this exam. And not only that, when we talk about these topics that we have exclusively selected for this series, these would be helpful for your UPSC EPFO exam, that APFC पोस्ट एंड ऑल्सो फॉर AO और EO पोस्ट. सो दोनों के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है. एंड मोर ओवर ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से एटलीस्ट मिनिमम 15 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं 120 क्वेश्चंस में इस एग्जाम के लिए, UPSC EPFO एग्जाम के लिए. सो ऑब्वियसली
स्कोरिंग सब्जेक्ट है, दैट इज स्कोरिंग टॉपिक है, एंड वंस यू प्रैक्टिस ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट भी है. सो आई एक्सपेक्ट जो स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज यू कैन यूटिलाइज दीज सेशंस फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन फुल प्रूफ, क्योंकि पूरा हम लोग हर एक एक्ट और लेबर लॉज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस का हर एक एक्ट या लॉ जो भी है बहुत एक्सक्लूसिवली हम लोग पढ़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ MCQs, सो दैट आपका प्रिपरेशन मतलब प्रैक्टिस का प्रैक्टिस हो जाए एंड एक बार पूरा रिवीजन भी हो जाए. So friends, here comes the first question. Now there is a statement. मैं आपको ये पढ़ के सुनाऊंगी एंड आफ्टर दैट जो ऑप्शंस दिया है उसमें कौन सा करेक्ट इस स्टेटमेंट के साथ बैठेगा आपको ये मुझे बताना पड़ेगा. सो हियर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 ये आता है एज पर सेक्शन 10. ओके, सेक्शन 10 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947. इट प्रोवाइड्स अ वॉलंटरी रेफरेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स टू आर्बिट्रेशन. मतलब बीच में ही एक person middleman type come in, he or she will be able to resolve the dispute. Now which of the following statements regarding the voluntary reference of disputes to arbitration is or are correct? ठीक है, एक एक हम लोग अभी ऑप्शन पढ़ के देखेंगे. The arbitration agreement can be made only after the dispute has been formally referred to a labor court, tribunal or a national tribunal. No, even before that this can be done. 2. The arbitration agreement must be in writing and a copy of the agreement must be followed to the appropriate government and the conciliation officer. Yes, this is true until unless it is in written. Written में नहीं होगा तो ये इसको मानेंगे नहीं. So this is true. The appropriate government cannot prohibit the continuation of the ongoing strike or lockout related to dispute after the reference is made to arbitration. No, they have every right and every क्या बोलते हैं उनका एक हक है to do that. So this is false. The arbitrator or arbitrators can be appointed by the appropriate government without the consent of the parties. That cannot happen. दोनों को consent से ही हो, क्योंकि that person has to deal with both the parties and उन दोनों को एक solution की तरफ ले जाना है. So obviously that person should be of मतलब दोनों की तरफ से okay होना चाहिए. So this is also false. So only option B is true. So here B is the correct answer. So moving on to our next question. Consider the following statements regarding section 10B and 10C of the Industrial Disputes Act 1947. Which of the below statements is or are incorrect? Okay. First one, section 10B allows an employer and a representative union to submit present or future industrial disputes to arbitration through a written agreement, and this agreement is called as submission. And yes, this is very much true. जो हमने earlier देखा था that 10A में क्या है जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि किस तरह से उनके क्या क्या रूल्स है अगर आर्बिट्रेशन के लिए जाना है, तो वो बेसिकली उसमें कवर्ड है. अब 10B एंड 10C में क्या है, उसमें क्या क्या न्यूएंसेस है और तो वो देखेंगे. सो यस, दिस इज ट्रू, वेरी मच ट्रू. बी क्या बोल रहा है, एवरी सबमिशन मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग इट इन ए प्रिस्क्राइब्ड मैनर. यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू, वो होता है, दे हैव टू डू दैट. ओके, सो ये भी ट्रू है. एज पर सेक्शन 10C ऑल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स फॉर द फ्यूचर डिस्प्यूट्स आर इररिवोकेबल. वो वापस भी ले सकते हैं अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. ऐसा नहीं है कुछ रीजन है ओके दैट कैन बी कैंसल्ड. यस, दैट इज ट्रू, बट एक उनको एक रीजन देना पड़ेगा एंड कैंसिल कर सकते हैं गिविंग अ 3 month रिटर्न नोटिस. 3 months का एक रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा टू द अदर पार्टी इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट, देयर बाय दे कैन डू दैट. बट अगेन पूरी तरह से ट्रू नहीं है ये स्टेटमेंट, सो दिस इज फॉल्स. सो 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस, क्योंकि हम यहाँ बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट. So moving on to our next question. Which of the following statements regarding the proceedings in arbitration under the Industrial Disputes Act 1947 is correct? ठीक है, अब इसमें क्या है, as per 10D and 10G इसमें क्या है, when we talk about the arbitration वो
आर्बिट्रेशन जो भी होगा कैसे अपॉइंटमेंट होगा एंड ऑल दैट, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी हमने देखा था इन प्रीवियस सेक्शंस, बट वो मेजरली फॉलो करता है बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, उसी के बेसिस पे होता है, एंड द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल दैट शैल हैव द पावर्स एक्सरसाइजेबल बाय ए सिविल कोर्ट। ओके, तो वो पूरा दैट वुड बी बेस्ड ऑन द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 में जो भी नुआंसेस है उसके बेसिस पे रहता है। एंड अगर इफ देर इज नो प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर इन एनी सबमिशन, जो सबमिशन किया है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर, और अगर किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट भी नहीं हो पाया है, इन सच केसेस वो डिस्प्यूट स्टेट गवर्नमेंट referred, that would be referred by the state government for adjudication, जो आगे के प्रोसेस होगा that would be done by the industrial tribunal based on the, जैसे मैंने बताया है, based on the recommendation of the state government. ठीक है, so here the correct answer is D. सो फ्रेंड्स, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक हमने देखा है कि जैसे अगर कोई आर्बिट्रेटर है या फिर नहीं होने के चक्कर में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रेफर कर सकता है इस पर्टिकुलर केस को टू द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन टू एन आर्बिट्रेटर्स अवार्ड, अगर है, इन केस है, नहीं है तो ठीक है, अगर है और उसने कुछ बताया भी है, मैंने रेजोल्यूशन भी दिखाया है, दैट इज व्हाट कॉल्ड अवार्ड। ओके, व्हेन what happens to arbitrators award when state government refers an industrial dispute to the industrial tribunal for adjudication. So in this case, in such cases जहाँ पे भी होता है, then the arbitrators award जो भी होगा that stands cancelled, वो automatically वो cancel हो जाता है, and now the case is under the adjudication of the industrial tribunal. So here in this case C is the answer. So moving on to our next question, consider the following statements regarding the publication and commencement of the awards. जो भी award मिला है, मतलब जो भी उनको एक hearing मिला है, judgment मिला है, उसके basis पे under section 17 and 17A of the Industrial Disputes Act. Now which of the below statements is or are correct? Now सबसे पहले every award of a labor court, tribunal, national tribunal or arbitration must be published by the appropriate government within 30 days of receipt. Yes, this is true. इनको 30 days के अंदर उसको publish करना पड़ेगा, ठीक है। An award becomes enforceable immediately upon its publication in the official gazette. No, immediately नहीं होता है ये 30 days और 30 days इनको time मिलेगा वहाँ से, जब भी publish हुए वहाँ से enactment के लिए. So this is false. 3. The appropriate government or central government can prevent the enforceability of an award beyond 30 days on public grounds such as national economy or justice. Yes, this is also true. अगर कुछ है तो definitely they can go for this. Okay, true. Within 90 days of publication, the government can modify or reject the award and present it to the appropriate legislature. Yes, this is also true. Okay, अगर इसके बाद कोई डेट मेंशन नहीं है तो ऑब्वियसली जो भी उसमें डेट, आई मीन जिस दिन से पब्लिश हुआ है वहां से 30 days के अंदर डेफिनेटली दैट हैज टू बी implemented, that whatever the award that has been handed over. So for this, so 1, 3 and 4 ये तीनों correct है, so A is the correct answer. So moving on to our next question, this comes from the 17A section. So यहाँ पे एक statement है, based on that there are 4 options for you to choose. So that the Industrial Disputes Act 1947 provides the period of operation of settlements and awards. Which of the following statements regarding the period of operation of settlements and awards is or correct? Once a settlement या जो भी award उनको मिला है, okay, that comes into operation, okay, जो भी डेट उन्होंने एग्री किया है ऑफ दैट डिस्प्यूट, अगर कोई डेट नहीं दिया है देन द डेट ऑन विच द मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट इज साइंड बाय द पार्टीज ऑफ डिस्प्यूट दैट वुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. क्योंकि एक बार एक अवार्ड मतलब एक सेटलमेंट या फिर अवार्ड जो भी रूल उनको बताया गया है दैट दे हैव टू फॉलो, सो फॉर दैट ऑल्सो दे हैव टू साइन एन एग्रीमेंट. ओके, सो एज पर दैट उस डेट्स के हिसाब से वो कर लेते हैं. So what a settlement comes into operation on the date on which the memorandum of settlement is signed by the parties and remains binding for a period of 1 year. This is false because this would be binding only for a period of 6 months. Okay, जब भी वो memorandum of agreement जो भी वो sign करेंगे कि हम ये अवार्ड को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, एंड वी विल इम्प्लीमेंट अपॉन इट बाय सो एंड सो डेट, वॉट एवर दैट दे हैव मेंशन्ड, सो अकॉर्डिंगली उसका लाइफ रहता है 6 months. सो दिस इज
ये 1 year है, so this is false. An award remains in operation for a period of 1 year from the date on which it becomes enforceable, but the appropriate government can extend its operational period by up to 3 years. Yes, this is true. ओके जब भी एक अवार्ड रिमेन्स इन ऑपरेशन जो चल रहा है अगर 1 ईयर से सो फ्रॉम द डेट ऑन विच इट बिकम्स एनफोर्सेबल, जिस डेट से वो एनफोर्सेबल है मतलब वो एग्रीमेंट में जो लिखा है डेट उसके हिसाब से वो एनफोर्सेबल होगा. सो जिस डेट से एनफोर्सेबल है 1 ईयर तक वो लाइव रहेगा, चलता रहेगा. अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है एनफोर्स करने में देन द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी है दैट कैन एक्सटेंड दैट फॉर 3 years एज वेल. सो दिस इज ट्रू. A settlement can be terminated by either parties giving 3 months notice. No, here 2 months notice ही देना पड़ेगा in writing. Okay, so this is false. D none of the above तो false है ही. So यहाँ पे हमने बोला which of the following statements is or are correct. So यहाँ पे B is the correct answer. Moving on to our next question. Consider the following statements regarding Section 20 of the Industrial Disputes Act 1947 related to the commencement and conclusion of proceedings. Okay. Now which of the below statements is or are correct? So देखते हैं. Conciliation proceedings begin when the conciliation officer receives a strike or lockout notice under Section 22 or when a dispute is referred to a board. Yes, this is true because उसी तरह से process शुरू होता है. Conciliation proceedings conclude when a settlement is signed or the report of the conciliation officer is received by the appropriate government if no settlement is reached. Settlement हुआ तो ठीक है conciliation officer के through है, अगर नहीं हुआ है तो that has to be reported. Okay, so yes, this is also true. Proceedings before a labor court, tribunal or national tribunal conclude once the award becomes enforceable. So obviously ये भी true है, वही तक ही होंगे proceedings. The initiation of conciliation proceedings automatically invalidates any references made to a labor court, tribunal or national tribunal. This is false क्योंकि जब तक वो enforceable नहीं होगा उनका जो भी बताया है और जो भी रूल किया है award दिया है that will be invalid only. So here this is false. So 1, 2, 3 these three are the true statements when it comes to the section 20 and section 22 as per this question. Moving on to our next question. Again यहाँ पे एक statement है and options है. आपको कौन सा ऑप्शन इस स्टेटमेंट के साथ बहुत सही फिट बैठता है वो आपको बताना पड़ेगा. सो हियर गोस द क्वेश्चन. द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 imposes certain restrictions on strikes and lockouts in public utility services. Which of the following statements regarding the prohibition of strikes and lockouts is or are correct? A workman in public utility service can go on strike without giving any notice to the employer. ये गलत है. At least 6 weeks का notice इनको देना पड़ेगा. So this is false. An employer in a public utility service can lock out workmen without giving them notice if conciliation proceedings are pending. अगर conciliation proceedings pending है then at least 7 days का notice तो उनको देना पड़ेगा. So this is also false. A workman in public utility service must give at least 6 weeks notice before going on strike and an employer must give similar notice before locking out workmen. And this is very much true. जो हमने already discuss किया है, दोनों तरफ से notice compulsory है at least 6 weeks का. The restrictions on strikes and lockouts do not apply during the pendency of conciliation proceedings. No, कर सकते हैं. जैसे मैंने बताया 7 days का उनको notice period देना पड़ेगा either strike या lockout के लिए even during the conciliation process. So here the correct answer is C. So moving on to our next question. Consider the following statements regarding section 23 of the Industrial Disputes Act 1947 related to the general prohibition of strikes and lockouts. Which of the below statements is or are correct? सबसे पहले strikes और lockouts are prohibited during the pendency of conciliation proceedings before board and for 7 days after the conclusion of such proceedings. This is true. Okay, तब तक वो कर नहीं सकते कोई भी strike. During the pendency of arbitration proceedings and for 2 months after their conclusion, strikes or lockouts are prohibited. ये भी true है. Okay. And the strikes or lockouts are prohibited during any period when a settlement or award is in operation. So बिल्कुल नहीं कर सकते जब वो settlement या award
जो टाइम पीरियड है कि उसको उनको इम्प्लीमेंट करना है या इन्फोर्सेबल होगा उस पीरियड पे दे कांट गो ऑन ए स्ट्राइक आउट. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. अ स्ट्राइक डिक्लेयर्ड इन रेस्पॉन्स टू एन इलीगल लॉकआउट शेल ऑलवेज बी डीम्ड इलीगल. सी, a lockout declared in consequence of an illegal strike or a strike declared in consequence of an illegal lockdown shall not be deemed illegal, क्योंकि वो गलत तरीके से कर रहे हैं. ओके, इलीगल तरीके से करे, सो दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड इलीगल. वो उनका राइट दे आर एक्टिंग अपॉन कि उन्होंने गलत तरीके से लॉकआउट किया तो हम स्ट्राइक करेंगे. इन्होंने गलत जैसे कि एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर ने गलत तरीके से लॉकआउट किया है तो यूनियन स्ट्राइक कर सकता है, दैट इज एम्प्लॉयज स्ट्राइक कर सकते हैं. अगर एम्प्लॉयज गलत तरीके से स्ट्राइक किए तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयर को लॉकडाउन लगाने का चांस है, एंड दैट इन बोथ केसेस वो इलीगल नहीं होगा, लीगल ही होगा, क्योंकि एक पार्टीज एक दूसरे के जो एग्रीमेंट किया है उसको वो फॉलो नहीं कर रहे हैं. ठीक है. Moving on to our next question, statement. Again, statement based question. I'll be giving you a statement, and based on the options you have to give me the answer. So, statement. The Industrial Disputes Act 1947 provides for compensation to workmen laid off by their employers. Okay. Now, which of the following statements regarding the right of workmen laid off for compensation is or are correct? Okay, so here the statement goes like this: a workman with less than 1 year of continuous service is entitled to compensation for layoff. No, this is not true, क्योंकि at least 12 months उनको complete करना पड़ेगा वहाँ पे. So this is false. The compensation for layoffs equivalent to 75% of the combined basic wages and dearness allowance. No, this is false. ये 75% नहीं है. If a workman experiences a total layoff exceeding 45 days within a 12-month period, compensation must be paid. No, ये भी false है. Only after 12-month period it would be applicable. The same thing would be applicable. A workman is entitled to compensation for layoff at the rate of 50% of the combined basic wages and dearness allowance except for intervening weekly holidays. And yes, this is very much true in this case. So D is the correct answer here. Moving on to the next question. Consider the following statements regarding Section 25E and Section 25F of the Industrial Disputes Act 1947. Which of the below statements is or are correct? So, a workman laid off is not entitled to compensation if they refuse alternative employment offered in the same establishment. अगर मिल रहा है alternative employment, then he or she will not be entitled for the compensation. So, this is very much true. A workman who has not worked continuously for at least 1 year with the employer is not eligible for retrenchment compensation under the act. So, obviously इससे पहले भी हमने देखा है अगर compensation या फिर जब laid off हुआ है या फिर कुछ काम नहीं है, whatever cases, if the person is being removed from his or her services, so definitely वो at least 1 year वहाँ पे काम करना चाहिए. So this is true. At least a year they should be working. Retrenchment compensation includes an amount equal to 15 days of average pay for each completed year of continuous service, जितने साल भी किया है, and any part thereof जो exceeding 6 months. So this is very much true. Okay. Now last, a strike in another part of the establishment does not affect the entitlement of laid off workmen to compensation. This is false, क्योंकि वो effect रहता है, क्योंकि अगर कहीं उसी इसमें establishment में दूसरे part में अगर कुछ strike हो रहा है उसकी वजह से production पे तो impact पड़ेगा. अगर production पे impact पड़ेगा तो obviously the employer will not be able to make that much money that he or she used to make. So obviously that would कंपेंसेशन के ऊपर पेमेंट, टाइमली पेमेंट यहाँ दिए हैं दैट दे हैव टू पे विद इन दिस टाइम लाइन्स, वो नहीं हो पाएगा. राइट. सो यस, दिस इज ट्रू, इट अफेक्ट्स द एंटाइटलमेंट. सो उनको वहाँ वेट करना पड़ेगा अपने कंपेंसेशन रिसीव करने के लिए. सो हियर ओनली 1, 2 and 3 आर ट्रू हियर. सो यहाँ पे एक अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, बेस्ड ऑन विच कौन सा ऑप्शन सही है उस स्टेटमेंट के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा. The special provisions relating to layoff, retrenchment and closure under Chapter 5B of the Industrial Disputes Act apply to industrial establishment that meet certain criteria. वो कौन सा criteria है? Based on that you have to tell me. The provisions apply to all industrial establishments regardless of the number of workmen employed. नहीं, based on certain number only ये applicable रहेगा. So this is false. The provision applies to industrial establishments with 50 or more workmen employed on an average
per working day for the preceding 12 months. No, ये भी गलत है. Okay, the provisions apply to industrial establishment with 100 or more workmen employed on an average per working day for the preceding 12 months, excluding seasonal and intermittent establishments. This is very much true. इसी के basis पे ये सारे applicable होंगे provisions relating to layoff. क्योंकि अभी तक हमने देखा है ले ऑफ में क्या किस तरह से उनको कंपेंसेट करना है, क्या टाइमलाइंस एंड एवरीथिंग वी हैव सीन. अब कौन से इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स पे ये एप्लीकेबल रहेगा, इन दिस वी आर डूइंग. The provisions apply only to industrial establishment in the public sector. No, this is false. This will be applicable to all those where 100 or more workmen are employed in the preceding 12 months, excluding seasonal and intermittent establishments. Moving on to our next question. With reference to section 25M of the Industrial Dispute Act, जो पढ़ता है chapter 5B में, consider the following statements. Which of the below statements is or are correct? So पहला statement है, an employer cannot lay off workmen listed on the muster rolls of an individual establishment without prior permission from the appropriate government or its designated authority except for badli or the casual workmen, because वो temporary होते हैं. And this is very much true. They have to take compulsory prior permission before in laying off. ठीक है. Now, and within 30 days they have to apply for this. जब layoff का work start होता है, the employer must within 30 days of the layoffs start, they have to apply in a specific manner to the appropriate for the appropriate permission to prolong the layoff. If the employer applies for the permission to continue a layoff and no decision is communicated, उन्होंने 30 days में अपना वो दे दिया है कि we are continuing with the layoff and all that, appropriate government के लिए for permission, and no decision is communicated within 60 days, the permission will be deemed granted. Yes, it is true. अगर 60 days के अंदर कोई भी response नहीं आया वहाँ से कि go ahead या no go ahead कुछ भी नहीं आया तो then they can go ahead with the decision of laying off, and this is very much true. Any layoff without obtaining prior permission or failing to apply to within the specified time, जो 1 month का मैंने बताया 30 days का, is considered illegal. Yes, it is illegal, and the affected workmen are entitled to full benefits as if the layoff has not occurred. So yes, this is true. अगर किया है उन्होंने तो definitely they can go ahead for the with the जो भी हायर अथॉरिटीज़ को वो कर सकते हैं, कंसिलिएशन ऑफिसर एंड देन द एंटायर, जो अब हमने देखा है कि किस तरह से डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं, वो उसको फॉलो कर सकते हैं. The decision of the appropriate government or authority on granting or denying layoff permission is final and cannot be reviewed. ये false है, क्योंकि अगर उनको लगा कि उन्होंने गलत डिसीजन दिया है या गलत परमिशन दिया तो डेफिनेटली द रिव्यू कैन बी डन, एंड द रिव्यू कैन बी इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ, जो उन्होंने पहले परमिशन दिया है, द एम्प्लॉयर और एनी वर्कमैन. ऐसा नहीं है कि किसी के पास राइट नहीं है, ऑल दीज दे हैव राइट. ओके, एंड वेयर अ रेफरेंस हैज बीन मेड टू ए ट्रिब्यूनल, अगर ट्रिब्यूनल के पास गया है, इट शैल पास एन अवार्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच रेफरेंस. जब भी वो ट्रिब्यूनल के पास जाएगा ये रिव्यू के लिए, then from there within 30 days they have to pass an award. They can't keep it just like that. Okay, yes. So here comes the next question. Under chapter 5 is the same chapter of the Industrial Disputes Act 1947, what are the conditions precedent to the retrenchment of workmen जिनको निकाल दिया गया है कोई भी रीजन की वजह से, डिसिप्लिनरी एक्शन या फिर कुछ और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से, वॉट एवर माइट बी द रीजन, ऑल दैट ऑफ वर्कमैन इन एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट विथ 100 और मोर वर्कमैन. ये आता है सेक्शन 25N में. ठीक है. द एम्प्लॉयर मस्ट गिव 3 months नोटिस
in writing to the workmen and obtain prior permission from the appropriate government or specified authority, which shall be deemed granted if not communicated within 30 days. बाकी सब तो ठीक है, okay, but it's not within 30 days, it is within 60 days. ठीक है, तो ये false है. The employer must give 1 month's notice. यहाँ तो starting में ही गड़बड़ है, मतलब 3 months notice देना है, 1 month notice. This is false. The employer must give 3 months notice in writing to the workmen and obtain prior permission from the appropriate government or specified authority, which shall be deemed granted if not communicated within 60 days. This is true. जो अभी ले ऑफ का हमने देखा ना, सेम ऑलमोस्ट दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर द रिट्रेंचमेंट एज वेल. द एम्प्लॉयर मस्ट गिव 6 months नोटिस इन राइटिंग, ये नहीं है, 3 months नोटिस काफी है. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. सो हियर इन दिस केस सी इज द करेक्ट आंसर. Moving on to the next question. Under Industrial Dispute Act 1947, what is the maximum penalty that can be imposed on a workman or an employer who initiates or carries an illegal strike? So in this case, imprisonment for up to 1 month and a fine of up to 50 rupees. A workman who initiates this will be awarded, and both दोनों भी कर सकते, मतलब जेल भी होगा एंड फाइन भी उनको भरना पड़ेगा. सो हियर यहाँ पे 300 रुपीज रॉन्ग. एम्प्लॉयर 1 month एंड नो, एंड एम्प्लॉयर हु इनिशिएट 6 months नो, इनका भी सेम है 1 month एंड 50 रुपीज. Coming to the next question, under Section 33 of the Industrial Disputes Act 1947, what is the implication for an employer during the pendency of proceedings in respect of an industrial dispute? See, इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में सेक्शन 33 के अंडर
क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं अगर पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स, जो भी प्रोसीडिंग्स एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो हुआ है उसके बेसिस पे जो प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं. The employer can take disciplinary action against any workman, including protected workmen, without any restrictions. This cannot be done. Now, who are these protected workmen? See, every company में industrial establishment में जहाँ पे registered trade union है और ये सारे जो वर्कमैन है उसमें रजिस्टर्ड मतलब जो मेंबर्स है उसमें एटलीस्ट मिनिमम 5% मिनिमम 1%, एटलीस्ट 1% प्रोटेक्टेड वर्कमैन होंगे ऑफ द टोटल वर्कमैन. वो कौन है? वो है जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के ऑफिशियल मेंबर्स, ओके, एंड या फिर उनके जो एग्जीक्यूटिव्स है यूनियन के, सो उनको वो उनके ऊपर कोई वो एक्शन, डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकते हैं व्हेन द प्रोसीडिंग्स आर हैपनिंग. ओके, एंड फॉर एवरी एस्टेब्लिशमेंट मिनिमम 5 प्रोटेक्टेड वर्कमैन होंगे और मैक्सिमम 100 प्रोटेक्टेड वर्कमैन होंगे बेस्ड ऑन द साइज ऑफ दैट इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट. ठीक है, सो ये हो गया हमारा. सो दिस इज नॉट डन. The employer can retrench or discharge any workman except protected workmen during the pendency of proceeding. This is also not true. क्योंकि they can't take up any such things, retrenchment or discharge any workman during that time period. Okay, the employer cannot take any action against any workman including non-protected workmen. ये भी false है. Okay, the employer cannot take any action against protected workmen but can take action against other workmen during the pendency of proceedings. Yes, this is true. So here the correct answer is D. So फ्रेंड्स, बिफोर वाइंडिंग अप एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि एडुटैप ने ऑलरेडी 3 तरह के डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च किया है एक्सक्लूसिवली फॉर ऑल दोज who are targeting UPSC EPFO APFC and EO exam for the year 2025. Very soon the notification is about to be released. Okay, सो उसमें 3 कोर्सेज कौन से? एक तो मास्टर कोर्स है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं एंड दे आर लुकिंग आउट, स्काउटिंग आउट फॉर वेरियस कोर्सेज की कहाँ पे पूरा उनको कंटेंट सही से मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, चैप्टर मीन हर चैप्टर का एक टेस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट होगा. एंड यहाँ पे तो कुलदीप सर एवरी वीक एवरी थर्सडे आपसे मिलेंगे ऑनलाइन एंड he'll give पूरा आपको समझाएंगे कि किस तरह से ये जो भी कंटेंट मिल रहा है उसको किस तरह से अच्छी तरीके से यूटिलाइज करके आप अपना प्रिपरेशन सही तरीके से फुलफिल कर सकते हो. अलॉन्ग विद दैट आपको इवेंट टेस्ट एग्जाम जो भी टेस्ट होंगे वो सारे भी इसमें मिल जाएंगे. ठीक है ना. दूसरा आता है टेस्ट सीरीज प्लस. इसमें ऐसे बच्चे ये कोर्स ले सकते हैं जो ऑलरेडी कुछ प्रिपरेशन चल रहा है लेकिन उनको कुछ एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स चाहिए, जैसे कि पॉलिटी हो गया, जैसे लेबर लॉस एंड IR इंडस्ट्रियल रिलेशंस का कुछ अलग सा कंटेंट उनको चाहिए, एक्सक्लूसिवली बस वही कंटेंट चाहिए, बाकी उनके पास ऑलरेडी है. ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दैट टेस्ट सीरीज जो वो अपने आप को चेक कर सकते हैं वेयर दे स्टैंड एज पार्ट ऑफ देयर प्रिपरेशन से, ये उनके लिए है. एंड थर्ड आता है एक्सक्लूसिवली टेस्ट सीरीज जो ऑलरेडी पूरा अपना प्रिपरेशन अपने तरीके से कंप्लीट किए हैं. नाउ दे आर लुकिंग आउट फॉर सम ऑप्शंस वेयर दे कैन गो फॉर सम टेस्ट, मीन अपने आप को चेक करने के लिए, फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड ऑल दैट. ये उनके लिए बहुत यूजफुल रहेगा. सो ये 3 तरह के जो कोर्सेस है हर तरीके के स्टूडेंट को कैटर करने के लिए एडुटैप ने लॉन्च किया है. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू द टीम मेंबर्स, एनी ऑफ द टीम मेंबर्स, एंड आप इन कोर्सेज के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. Thank you very much friends. So hope you have liked this session. See you all with the next session very soon. Hello friends, welcome to EduTap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO exam 2025, wherein as part of today's session we'll be doing 15 MCQs on labor laws, that is the Child and Adolescent Labor Prohibition and Regulation Act 1986. Okay, now when it comes to these labor laws, this particular topic, it's important not only for APFC but also for AO or EVO. So whatever questions that we are doing as part of this series,
if you can practice them well, again that would be helpful for both the cases. If you want to score really high, I suggest that you should watch these sessions regularly. Why? Because when it comes to the number of questions that are asked from this particular topic, they are close to 15 questions from labor laws itself, which is really a very good number out of 120. And since a component has high weightage and also has high scoring potential, see, because if you practice well, obviously that will become scoring very easy to score marks. So these topics, whatever that we are going to cover as part of this series, would be helpful for both APFC and AO or EO examination equally. So friends, here comes the first question. Which of the following statements accurately reflects the status and focus of the International Labour Organization's conventions on child labor? See, convention क्या है? Agreement sort of होता है जो सारे जो भी उस मेंबर कंट्रीज होते हैं जनरली रैटिफाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें आईएलओ ने, सी हाउ इट ऑल स्टार्टेड इज कि 1920th सेंचुरी में वी ऑल नो दैट जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था उसको सपोर्ट करने के लिए वी हैव वेरियस गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वेरियस कंट्रीज हैव बीन लुकिंग इनटू एनैक्टिंग वेरियस लॉस सो दैट वो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है दैट शुड go smoothly and at the same time they should abide by some laws, right? So उसी के चलते हुए even ILO has come up with one such convention which was also known as the worst forms of child labor convention. ये adopt हुआ था 1999 में and this is nothing but the convention number 182 it's called, which addresses the prohibition and immediate elimination of the worst forms of child labor and has achieved universal ratification by the ILO member states. And it was the first ILO convention to be universally ratified. मतलब सभी countries ने जो member countries है उन्होंने ratify किया, मतलब उन्होंने agree किया है कि that we are going to follow this, whatever the goals that have been set, whatever the objectives that have been set under this convention. उसमें क्या क्या आते हैं? Majorly to remove children from the worst forms of child labor, to rehabilitate and reintegrate children who have been involved in child labor, जैसे कि कुछ education में या फिर कुछ और तरीके से उनको support करना, to address the needs of the families of the children who have been involved in child labor. कई बार ऐसा होता है कि families को support करने के लिए करते हैं. So if वह जो मेन प्रॉब्लम है उसको हम सॉर्ट आउट कर दिया तो देन चाइल्ड लेबर प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली विल गेट सॉर्टेड आउट. सो उस एंगल में भी वन ऑफ द गोल्स ऑफ द कन्वेंशन सेज दैट दे हैव टू एड्रेस द नीड्स ऑफ द फैमिलीज ऑफ द चिल्ड्रन, देयर बाय आगे फिर इस तरह की प्रॉब्लम ना हो. सो हियर द करेक्ट आंसर इज सी. So friends, here comes the next question. The Child and Adolescent Labor Prohibition and Regulation Act 1986 in India seeks to address child labor by. So अभी सभी countries ने कर लिया है अपने अपने तरीके से. So इंडिया ने भी एक एक्ट निकाला था अंडर द लेबर एक्ट एंड दैट इज द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर, दैट इज प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में. सो इसमें मेजरली ये था कि द मेजर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड this act is to prohibit the engagement of children in all occupations. कहीं पे भी children काम नहीं करेंगे. and regulating the employment of adolescents, मतलब जैसे 14 years तक हम लोग बोलते हैं कि they are children, they can't be employed anywhere. 15 to 18 years तक हम लोग बोलते हैं they are adolescents. तो उनको young age, young youth और young age we can also call, उनको कुछ जगह पे काम पे रख सकते हैं, बट दैट शुड नॉट फॉल अंडर द हैजार्डस ऑक्यूपेशंस लाइक माइंस हो गए या फिर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट डिक्लेयर करता रहेगा कि एज हैजार्डस है, उसमें नहीं, बस ओनली नॉन हैजार्डस में एडोलेसेंट्स को कर सकते, बट नॉट, बट चिल्ड्रन तो कंप्लीटली इन ऑल ऑक्यूपेशंस यू नोबडी कैन use them. So here B is the correct answer. So friends, here comes the next question. Under section 2 of the Child and Adolescent Labor Prohibition and Regulation Act 1986, the definitions provided which of the following statements is or are correct regarding the classification of individuals based on their age. Now ये जो Factories Act में mentioned है
ऑलमोस्ट क्या वही है. So here in this case an adolescent is an individual who has completed 15th year of age but not completed 18th year of age, that is 15 to 18 years के बीच में. Adult is an individual who has completed 18 years, 18 years के ऊपर. And child refers to an individual who has not completed 15th year of age and is prohibited from any form of employment. So all these statements are true, and here the correct answer is D. So friends, here comes the next question. Consider the following statements regarding the definition of day and week under labor laws. That is under the Child and Adolescent Prohibition of the Labor, the Act 1986. Which of the following statements is or are correct? Now here in this case, a day is defined as a period of 24 hours beginning at midnight. Okay, and a week is defined as a period of 7 days beginning at midnight on Saturday night or such other night as may be approved in writing for a particular area by the inspector. See, in this case, based on this only the wages, the working times, schedules, etc., shifts, etc. are to be done. So here the correct answer is C, both 1 and 2. So moving on to our next question. Consider the following definitions under the labor laws. Which of the following given statements is or are correct? Okay. Now, as per them, there are few definitions that have been given. Establishment. It includes a shop, commercial establishment, workshop, farm, residential, hotel, restaurant, eating house, theatre or any other place of public amusement or entertainment. Yes, when we talk about establishment, ये सारे भी इसमें आते हैं क्योंकि child labor यहाँ कहीं पे भी they can't employ. So obviously this is true. Family in relation to an occupier. Now who is occupier? Occupier in relation to an establishment or workshop refers to the person who has ultimate control over its affairs. Yes, this is true. उन्हीं को occupier कहते हैं क्योंकि he is the one who he is looking after the entire affairs of the establishment as such. So family in relation to the occupier includes the individual himself or the spouse or herself, the spouse, their children only residing in the same establishment. वहीं पे रहना है, इसे कोई ज़रूरत नहीं है, first thing. And second thing, when we talk about the family, it would be the individual, that is the wife and or husband, that is spouse, as the case may be of such individual, and their children. ओके एंड ब्रदर और सिस्टर ऑफ सच इंडिविजुअल, जो भी ऑक्यूपायर है उनके ब्रदर और सिस्टर वो भी फैमिली में ही कंसिडर किए जाएंगे. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो इन दिस केस ओनली 1 and 3 आर ट्रू. सो ए इज द करेक्ट आंसर हियर. So moving on to our next question. The Child and Adolescent Labor Prohibition and Regulation Act prohibits the employment of children in certain occupations and processes. Now there are few exceptions there also. Yes, when we talk about the child labor, yes, there are few exceptions that we are going to see in this, and this is as per the section 3 of the said act. Now which of the following statements is or are correct regarding the prohibition of employment of children? So here in this case, see, when we talk about section 3, no child shall be employed or permitted in any occupation or process. Okay, but yes, they can be, अगर इफ वो हेल्प करे अपने फैमिली एंड फैमिली एंटरप्राइजेस में, ओके, लाइक फार्म एक्सेट्रा, बट अगेन दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एन हैजर्डस ऑक्यूपेशन. ओके, एंड इसके अलावा हैजर्डस ऑक्यूपेशन में क्या क्या आते हैं? माइंस आते हैं, एंड द फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर जो भी मेंशन है हैजर्डस ऑक्यूपेशंस, उन सब में बिल्कुल चाइल्ड लेबर नहीं रख सकते, even if it's family enterprise. Okay, and third, yes, the child can work as an artist in the audio visual entertainment industry, including entertainment, but again with proper care, like TV, movies, any sports activities, etc. But again, there is an exception that they can't work in a circus. Okay, so here in this case it is B, that is the correct answer. Children are permitted to work as artists in audio visual entertainment industry subject to certain conditions and safety measures. Okay, yes, moving on to our next question. So friends, अभी हमने देखा था कि as per section 3 hazardous में even if it is a family enterprise, child labor is not at all allowed. ओके, नाउ ये हैजर्डस ऑक्यूपेशंस क्या है? जैसे मैंने बताया, माइंस एंड वेरियस अदर ऑक्यूपेशंस एज एंड व्हेन जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट वो डिक्लेयर करती है, एंड जनरली दे फॉलो द फैक्ट्रीज एक्ट. ठीक है, नाउ
Next आता under section 4 of the relevant legislation. Which of the following statements is or are correct regarding the power of the central government to amend that schedule of hazardous occupations list? Okay, now here the central government has authority to add or to omit any hazardous occupation or process from the schedule after providing a notice of at least 3 months. Okay, yes, this is true, they can do that. Once an amendment is made to the schedule by the central government, it does not require any further approval to be considered effective. So immediately अगर उन्होंने बताया है, बोल amendment कर दिया है, मतलब उतना ही, उसके बाद उनको कुछ और करने की जरूरत नहीं, that would be added directly to the schedule, that hazardous occupation. Okay, so this is also true. Amendments of the schedule can only be made after consulting the state governments. This is false because central government का अपना एक मतलब से है, ओके, एंड अपना एक पावर है दैट दे कैन अमेंड दिस, बट वहाँ पे उनको स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है exclusively, especially as per the section 4 of this act. So here only 1 and 2 are true. Moving on to our next question. Now हमने बोला है कि वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स है, ठीक है, हैजार्डस ऑक्यूपेशंस का लिस्ट और वो सब चेंज करने के लिए, उसके लिए भी उसको कुछ एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है. सो द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मैंडेटेड टू कॉन्स्टिट्यूट ए टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी टू रिकमेंड एडिशंस ऑफ द ऑक्यूपेशंस एंड प्रोसेस टू द स्केड्यूल. जो हम लोग मान सकते हैं कि अभी पहले नॉन हजार्डस में उसे हमें हजार्डस में डालना है, हजार्डस से निकाल देना है, ऐसे कुछ जो भी है, बट अगेन ये मैंडेटेड नहीं है, दे मे अपॉइंट, सो दिस इज फॉल्स. Okay, but yes, they may appoint a technical advisory committee for the same. Next, the committee can have maximum of 10 members excluding the chairman appointed by the central government. This is very much true, उतना होना चाहिए. The committee has authority to regulate its own procedure and can form subcommittees that may include non-members for specific matters. Yes, कई बार ऐसा होता है कि knowledge technical group है, generally टेक्निकल उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करना है तो टेक्निकल पीपल को लेंगे एज ए मेंबर, बट अगर कहीं पे कुछ ज़रूरत पड़ी तो एक नॉन मेंबर फॉर द स्पेसिफिक मैटर, डेफिनेटली दे कैन डू दैट. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो हियर इन दिस केस बोथ 2 and 3 आर ट्रू. Now moving on to our next question. Now when we talk about this, the Child and Adolescent Labor Prohibition and Regulation Act 1986 में जितने भी sections हैं, they have been put under 4 different parts and each part का अपना एक objective या work है. ओके, सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट कि कितने पार्ट्स है एंड ऑल दैट. सो हियर मैच द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द Child and Adolescent Labor Prohibition and Regulation Act 1986 with their respective objectives. So in this case, part 1, part 2, part 3, part 4 ये list 1 है, list 2 में उनके objectives, and you have to tell me which of these codes given below are correct with the above one. See, let's have a quick look. पार्ट 1 क्या है, ये देखता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, डेफिनेशंस रिलेटेड टू द एंटायर एक्ट. सो यस, दिस इज दिस वन हो गया आपका 4. पार्ट 2 देखता है हमारा प्रोविजंस रिलेटेड टू प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, जो भी प्रोविजंस है उसके लिए है, सेट किया है, ऑल दैट विल फॉल अंडर दिस पार्ट 2. तो ये हो गया हमारा B1. थर्ड, पार्ट 3. नो पार्ट 3 देखता है रेगुलेशन ऑफ एडोलेसेंट एम्प्लॉयमेंट इन हजार्डस प्रोसेस. किस तरह के जो अभी हमने सेक्शंस किए थे, they all fall under this only. So part 3. पार्ट 4 में क्या आता है, मिसलेनियस प्रोविजन से इंक्लूडिंग पेनाल्टीज, फाइन्स, अगर कुछ उन्होंने गलत किया है, अगेंस्ट किया है तो उसके लिए. सो पार्ट 4 इज 3. सो दैट इज D is 3. So here A4, B1, C2, D3. This is the correct answer. So here A is the correct answer when it comes to the 4 different parts of the Child and Adolescent Labor Prohibition and Regulation Act 1986. Now comes the section 7 of the Child and Adolescent Labor Prohibition and Regulation Act 1986. And as per this, which of the following statements is or are correct regarding the provisions of the said section? So here, an adolescent cannot work for more than 3 hours continuously without a mandatory rest interval of
एटलीस्ट 1 आवर, यस एटलीस्ट 3 आवर से ज़्यादा वो काम नहीं कर सकते एक बार में, एंड 3 आवर्स के अंदर ही ऑलमोस्ट उसी 3 आवर्स के कंप्लीट होने से होते ही उनको एक 1 आवर का ब्रेक ज़रूरी है, एंड यस दिस इज ट्रू. The total working hours of the adolescent, including rest intervals, waiting period, and all that put together, that cannot exceed 6 hours in a day. Yes, this is also true. 6 hours से ज़्यादा वो काम नहीं कर सकते, including their rest hours, waiting period, etc. Adolescents are prohibited from working between 7 p.m. and 8 a.m. Yes, this is also true. वो इसमें काम नहीं कर सकते, that is night shift में, to be precise. An adolescent is not permitted to work in multiple establishments in a single day, even if the total working hours do not exceed the prescribed limit. Yes, अगर उन्होंने एक जगह पे काम किया 2 hours and एक establishment में, he can't go and he or she can't go and work in another establishment saying that मेरा तो mandated hours 6 hours है, वो मेरा complete नहीं हुआ. They can't say that. So yes, this is also true. So here 1, 2, 3, 4, all of these are true. So moving on to our next question, this is from section 8. Section 8 of the Child and Adolescent Labor Prohibition and Regulation Act 1986. Okay, ये majorly deal करता है weekly holidays कब देना है, कैसे देना है, and all that. Now, which of the following statements correctly reflects the provisions under section 8 of the said act regarding the weekly holidays for the adolescents. Now, जैसे मैंने बताया कि adolescents 15 to 18 years. Now here, every adolescent employed in an establishment must be allowed 1 whole day as a weekly holiday. Yes, this is very much true. They require that. Now, this is true, the specified weekly holiday for an adolescent cannot be changed by an occupier more than once a year. नहीं, कई बार वो चेंज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में, बट नॉट ईयर में एक ही बार, ऐसा नहीं है. दिस इज फॉल्स. The specified holiday for an adolescent must be clearly displayed in a conspicuous place within the establishment. Yes, वो दिखना चाहिए कि weekly holiday कब है adolescents के लिए. Yes, this is true. The occupier may alter the specified weekly holiday of an adolescent more than once in 3 months. No, only once in 3 months they can do. Okay, so 4 times on an average they can do. They can change the वीकली हॉलीडे, स्पेसिफाइड वीकली हॉलीडे को वो ऑल्टर कर सकते हैं, मतलब संडे से मंडे से, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट. ओके, सो this is also false. So 1 and 3 are only true here. So A is the correct answer. So friends, here comes the next question. अभी हमने देखा है section 7, 8 etc. अभी देखेंगे 9. But इन तीनों में एक common ये है कि Section 7, 8 and 9 of the Child and Adolescent Labor, that is the Prohibition and Regulation Act, it regulates the employment of adolescents in establishments, requiring occupiers to maintain a register of adolescents, display a notice prohibiting employment of children, and provide notice to the inspector within 30 days of employing an adolescent or commencing such operations respectively. And उस नोटिस में उनको ये देना पड़ेगा कि एस्टेब्लिशमेंट का नाम क्या है, लोकेशन क्या है, नेम ऑफ द पर्सन इन चार्ज ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, द एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन विद द एस्टेब्लिशमेंट, द नेचर ऑफ द वर्क और प्रोसेस दैट इज कैरिड आउट इन द एस्टेब्लिशमेंट. दिस मेजर 4 डिटेल्स उनको उस रिटन नोटिस में देना पड़ेगा एज एंड व्हेन दे हैव स्टार्टेड एम्प्लॉइंग द एडोलेसेंट फॉर एनी वर्क. सो विद इन 30 डेज उनको ये देना पड़ेगा. ठीक है. Now, which of the following establishment are exempt for provisions under section 7? इस तरह का जो notice ये देना है, information and all that, this is avoided or this is exempted for few industries. So वो industries है establishments where any process is carried on by the occupier with the aid of his family. अगर उनके family के साथ वो कर रहे हैं तो definitely they should not be उनको देने की ये information देने की ज़रूरत नहीं है inspectors को. And one more thing, but again वो hazardous industry नहीं होनी चाहिए, वो तो earlier section के हिसाब से. So here B is the correct answer.
सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने देखा कि वी हैव बीन डूइंग गुड अमाउंट ऑफ MCQs ऑन वेरियस लॉस एक्सेट्रा. नाउ आई हैव अ स्मॉल अनाउंसमेंट. Currently EduTap is offering courses, 3 various courses exclusively for all those aspirants who are preparing for the upcoming UPSC EPFO, both APFC and E or AO examination for the year 2025. Now what are the 3 courses? फर्स्ट कोर्स जो आता है वो तो है मास्टर कोर्स, मतलब जो बच्चे में बिल्कुल अभी स्टार्ट किए हैं प्रिपरेशन अपना, एंड दे स्काउटिंग फॉर सम नो पूरा एक्सक्लूसिवली कंटेंट सब एक ही जगह पे, कंटेंट लाइव क्लासेस हो या फिर मेंटरशिप हो एंड टेस्ट सीरीज, मतलब टेस्ट चैप्टर वाइज टेस्ट, MTs, mock test, etc. उन सब के लिए master course would be the best one because you'll get everything here. Along with that, every week एक strategy session होगा आप लोगों का कुलदीप सर के साथ, every Thursday especially, जहाँ पे वो आपको स्टूडेंट्स को समझाएंगे कि इतने सारे कंटेंट को किस तरह से वो अपना यूटिलाइज कर सके अपने प्रिपरेशन में. अलॉन्ग विद दैट जो भी स्टूडेंट्स के डाउट्स है, ऑल दैट वुड बी क्लैरिफाइड इन दैट सेशन. सो वन ऑफ द बेस्ट एक्चुअली. नाउ नेक्स्ट इज अ टेस्ट सीरीज प्लस. कई बार बच्चों का रहता है कि एक टॉपिक उनको एक ही सब्जेक्ट चाहिए या एक ही कुछ सब्जेक्ट चाहिए उस पर्टिकुलर, क्योंकि इसमें तो कई सारे सब्जेक्ट्स हैं. किसी को सिर्फ पॉलिटी चाहिए, किसी को सिर्फ लेबर लॉस एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस चाहिए. ऐसे बच्चे उस तरह के टॉपिक्स सब्जेक्ट्स ले सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट यू विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड विद द टेस्ट सीरीज, क्योंकि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है. एंड ऑल्सो यू if they wanted to know where they stand in their preparation, this would be the best option. ये उनके लिए है जो ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं एंड कुछ सब्जेक्ट्स के लिए है उनको हेल्प चाहिए. नाउ लास्ट आता है टेस्ट सीरीज. ये उन बच्चों के लिए है ऑलरेडी उन्होंने पूरा प्रिपरेशन अपना कंप्लीट कर लिया है, ओके, बट नाउ दे वांट समथिंग थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, या फिर दे वांट टू अंडरस्टैंड वेयर दे स्टैंड एंड अकॉर्डिंगली दे वांट टू स्ट्रैटेजाइज फॉर द प्रिपरेशन. ऐसे बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज कोर्स बेस्ट रहेगा. सो ये 3 कोर्सेज अभी EduTap में अवेलेबल है. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन रीच आउट टू एनी ऑफ द मेंबर्स जो हमारे हैं, एंड यू कैन गेट योर डाउट्स क्लैरिफाइड. Hope you have liked this session, friends. So I'll meet you soon with the next part of this same act. Thank you very much once again for being so patient and being with me till the end. Thank you and all the best. Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to the series that we have started up exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 exam, wherein we'll be doing 15 MCQs in a session so that you'll have ample number of questions for practicing and getting yourself prepared for the examination. Now as part of that, today I'll be taking you through the topic labor laws, the Child and Adolescent Labor Prohibition and Regulation Act 1986, and this is part 2 in this session. And if we look at the series that we have started exclusively, this is majorly for both APFC, UPSC EPFO, APFC exam and also for AO or EO. Because if you see the number of questions that are being asked from this particular topic, that is labor laws and IR, they are close to 15 questions out of 120. And वो कभी कहीं से भी कम नहीं होते. And since this component has good weightage and good scoring potential, if you want to really score high in this examination, watch these sessions regularly so that आपका एक जो practice वाला जो पार्ट है वो अच्छे से हो जाए, एंड एट द सेम टाइम एक रिवीजन भी हो जाएगा आपका इन सारे टॉपिक्स का. So friends, here comes the first question. Now under the Child and Adolescent Labor Prohibition and Regulation Act, how is a dispute regarding the age of an adolescent employee resolved? See, dispute age का कब आएगा? Whether that particular person who is working is a child, ओके, एंड अगर उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट सॉर्ट ऑफ, या फिर एज प्रूफ सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं है, इन दैट केस एज पर द प्रोविजंस एज पर सेक्शन 10 of this act, the dispute is referred to the prescribed medical authority for decision, so that वो डॉक्टर्स जो है वो अपना जो भी prescribed medical authority है that will be able
वो समझ उनको पता चलेगा एज पर द टेस्ट एंड ऑल दैट आर कंडक्टेड कि इस पर्टिकुलर पर्सन का एज कितना हो सकता है. So friends, here comes the next question. Which of the following is true regarding the maintenance of a register under section 11 of the Child and Adolescent Labor Prohibition and Regulation Act? Now here in this case, under this particular section, every occupier जो मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है दे शुड मेंटेन अ रजिस्टर फॉर एडोलेसेंट्स एम्प्लॉयड और परमिटेड फॉर वर्क, क्योंकि चाइल्ड लेबर और एडोलेसेंट्स का एंड वी ऑलरेडी नो दैट कई सारे हैजार्डस ऑर्गेनाइजेशंस में या फिर जहाँ पे भी हैजार्डस रिलेटेड वर्क होता है, बीट फैमिली ऑल्सो देयर एडोलेसेंट्स ऑल्सो कांट बी एम्प्लॉयड. ओके, सो ये सब चेक करने के लिए ऑलवेज द ऑक्यूपायर मस्ट मेंटेन ए रजिस्टर फॉर एडोलेसेंट्स एम्प्लॉयड और परमिटेड टू वर्क अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन बाय एन इंस्पेक्टर ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स. कभी भी इंस्पेक्टर आएंगे ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, इफ he or she demands that register, definitely the occupier has to produce that to them. Moving on to our next question. Consider the following statements regarding section 13 of the Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986. Which of these statements given here is or are correct? Now the first statement says the appropriate government is empowered to make rules for the health and safety of children working in certain establishments. Yes, this is very much true. These rules may include provisions for waste disposal, lighting and ventilation, but exclude training on operating dangerous machinery. Now when it comes to the rules that are included as part of these safety measures, health and safety measures to be taken for adolescents etc. when they are employed, they include cleanliness. ओके, एक तो है क्लेनलीनेस, दूसरा है आपका वेस्ट डिस्पोजल, लाइटिंग, प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए, फायर सेफ्टी मेजर्स होना चाहिए, आई प्रोटेक्शन. ओके, कई बार ऐसा होता है कि हेवी लाइटिंग की वजह से भी इट माइट हर्ट द आईज और डस्ट इन द एयर एक्सेट्रा, सो फॉर दैट दे हैव टू टेक प्रॉपर केयर. Spittoons, they have to be provided. Ventilation, proper ventilation should be there. Rules for ensuring safety of the children who are working near machinery, वो बिल्कुल करना चाहिए. Like fencing होना चाहिए, वहाँ पे proper training देना चाहिए when they are working or operating on dangerous machinery, and एक particular distance maintain करना चाहिए. So all that they have to look into this as part of the health and safety of children who are working in. Children here in it means adolescents. Okay, now supervision भी होना चाहिए. rules that ensure children are being supervised while working. ऐसा नहीं कि उनको बिल्कुल अकेले छोड़ रहे हैं काम करने के लिए. So all these they have to follow, and the appropriate government can make these rules by publishing them in official gazette. कई बार ऐसा होता है कि कुछ additions deletions भी करना पड़ता है, so that the appropriate government has the power, and they have, whenever they do that, they have to publish them in the official gazette. So here training on operating dangerous machinery जो exclude बोल रहे, it is also included, so this is false. The rules made under section 13 must be published in the official gazette. Yes, this is very much true. So here only 1 and 3 are true, so B is the correct answer. Moving on to our next question. Here this question is from section 14A of the Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986. Now consider the following statements related to the 14A section of the said act. Which of the following statements is or are correct? Now the first statement that says is section 14A overrides the provisions of the Code of Criminal Procedure 1973. That is, it supports. Yes, it's very much true, क्योंकि as per this अगर कुछ भी offenses किया है, they are as per this section, under this section जो भी offenses होंगे, that all would be cognizable under the Code of Criminal Procedures. So this is true. Offenses committed by an employer under section 3 or 3 are classified as cognizable. Yes, this is also true. Okay, and the provision ensures that offenses under section 3 and 3A can be dealt with promptly by law enforcement authorities. Obviously, अगर क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स के थ्रू वो प्रोविजन ओवरराइड कर रहा है, तो डेफिनेटली दिस ऑल्सो वुड बी ट्रू. दैट इज एनफोर्समेंट अथॉरिटीज दे कैन एक्ट अपॉन. सो ऑल ऑफ दीज आर ट्रू. नाउ व्हेन इट कम्स टू सेक्शन 3 एंड 3A, इसमें क्या है, हमने कल इससे अर्लियर सेशन में हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में. 3 एंड 3A में प्रोविजंस फॉर चाइल्ड लेबर. ओके, उसमें क्या है, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि फैमिली इंडस्ट्रीज है, तो देयर children can work, but again they should not fall under
द एनी ऑफ द हैजार्डस, इसमें एक शेड्यूल है जिसमें हैजार्डस ऑक्यूपेशंस क्या है और उसमें चिल्ड्रन वर्क नहीं कर सकते, वो पूरा मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम उसी के ऊपर करेंगे। सो 3 एंड 3A में मेजरली इन्हीं सभी चीज़ों का बिल्कुल अच्छे से मेंशन्ड है। सो वो सारे ऑफेंसेस, जैसे सर्कस में काम नहीं कर सकते, दो दे कैन वर्क इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बट कांट वर्क इन द सर्कस, दे आर नॉट अलाउड। सो इस तरह से जो भी मेजर वाले हैं, सो ऑल दैट that is related to the provisions of child labor उसमें mentioned है सेक्शन 3 एंड 3A में। सो उसके तहत अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है मेजरली, जो offenses वहाँ पे होंगे, that all will be falling under the section 14A offenses which are considered as cognizable, that is वो they can be dealt promptly by law enforcement authorities. Moving on to our next question, which of the following are included in the schedule referred to section 3 of the Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986? So here अगर शेड्यूल देखेंगे तो उसमें मेजरली एज पर सेक्शन 3A माइंस, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस और एक्सप्लोजिव्स, हजार्डस प्रोसेसेस, एंड इसके अलावा एज पर द क्लॉज CB ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जो सेक्शन 63 में आता है उनका, ओके, सेक्शन 63 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट, इसमें जो भी occupations mentioned here, that is they are hazardous, in that children are not allowed to work. Okay, so here comes the mines, handling of inflammable substances or explosives, and hazardous process. So here B is the correct answer. So here comes the next question. Which of the following statements is or are correct regarding section 14B of the Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986? Let's look at the statements. A child and adolescent labor rehabilitation fund to be constituted by the appropriate government for every district or a group of districts. Yes, this is done. Okay. The fine realized from employers of children and adolescents will be credited into this fund within the jurisdiction of the concerned districts जिसमें वो establishment है. So yes, this is also true. For each child or adolescent for whom the fine is credited, जैसे कि इंस्पेक्टर ने कुछ इंस्पेक्शन किया है and he felt that okay यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो फाइन कुछ लग गया है. Now all that fine they have to credit into this particular fund जो भी उस डिस्ट्रिक्ट में है. Along with that जब भी वो एम्प्लॉयर वहाँ पे वो that is occupier in this case वहाँ पे वो जमा करेगा, the government, appropriate government shall also deposit an additional 15,000 into that fund. उस fund में वो 15,000 add कर देंगे. Okay, so this is also true. The interest accrued on the deposited amount will be directly disbursed to the child or the adolescent in whom favor the amount is credited. So after that जब भी उस पे उस लमसम अमाउंट पे जो भी इंटरेस्ट एक्रू होगा दैट वुड बी पेड टू द चाइल्ड और एडोलेसेंट इन हुज फेवर, जिनके लिए वो अमाउंट उसमें क्रेडिट हुआ है. देयर बाय एम्प्लॉयर का भी उसमें है, गवर्नमेंट का भी है, एंड देयर बाय उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो भी उस चाइल्ड या एडोलेसेंट को मिलेगा जिनके नाम पे, मतलब जिनके लिए ये अमाउंट क्रेडिट किया गया है. So friends, here comes the next question. With reference to the modified application of certain laws in relation to penalties under the Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986, consider the following statements. Okay. Now इसमें क्या है, they are saying that जो भी child labor का है different acts में वो किस तरह से work करता है. So here any person found guilty of contravening specific provisions of certain laws shall be penalized under section 14 of the Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986 instead of the penalties under the respective acts. ओके यस, क्योंकि उस रेस्पेक्टिव एक्ट्स जो भी डिफरेंट एक्ट्स है उसमें जो भी चाइल्ड लेबर रिलेटेड कोई भी सेक्शन है दैट वुड वर्क एज पर द section 14 of the Child Labor Act. So yes, this is true. The provisions covered under section 67 of the Factories Act 1948 and section 40 of the Mines Act 1952 are involved here, and yes, this is also true. Now what does section 67 of the Factories Act says, जो हमने already कर लिया है? It prohibits the employment of children under the age of 14 in factories
Only authorities licensed under the Factories Act can check if this section 67 is being violated. So वो चेक कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली जो भी पेनल्टीज या जो भी उनको अफेंस के अंडर कॉग्निजेबल या जो भी है, दैट ऑल विल अगेन फॉल अंडर द सेक्शन 14 ऑफ द चाइल्ड लेबर एक्ट. Okay, now section 40 of the Mines Act, it prohibits the employment of people under age of 18 in the mines. Normally 15 होता है, 15 मतलब चाइल्ड लेबर बिफोर 15 एंड 15 to 18 एडोलेसेंट, इन कई जगह पे उनको अलाउ किया जा सकता है, बट माइंस कम्स अंडर द hazardous occupation, so definitely there it's not going to work. However, इस पर्टिकुलर सेक्शन 40 ऑफ द माइंस एक्ट says that अगर अप्रेंटिस है या ट्रेनी है, देन 16 years old, at least 16 years plus होना चाहिए adolescent, then they can be deployed, but again that prior approval should be taken from the chief inspector. Otherwise what will happen in either case, that is child labor को लगाया है या फिर without prior permission 16 years plus वालों को भी trainee या apprentice लगाया तो 500 rupees तक fine लग सकता है. So this option is also true. Next, section 109 of the Merchant Shipping Act 1958 and section 21 of the Motor Transport Workers Act 1961 are also included under these modified penalty provisions. Yes, these are also included. Now section 109 of the Merchant Shipping Act 1958 prohibits the employment of adolescents under the age 16 on ships. Okay, and अगर young people कौन है, हमने देखा है 15 to 18 years, right? And 18 to 21 years, we call them as young people, right? But young people को भी अगर यहाँ तो 15 years तो no, 16 plus को ही लगा सकते हैं मर्चेंट शिपिंग एक्ट के तहत. एंड अगर यंग पीपल को भी लगाया है, आई मीन एम्प्लॉय किया है, दे आर नॉट अलाउड टू वर्क ऑन नाइट शिफ्ट अनटिल एंड अनलेस दे आर परमिटेड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग. वहां से प्रायर अप्रूवल मिलेगा तो ही इट विल हैपन. Okay, so this is also true in this case. So section 21 of the Motor Transport Workers Act 1961, it prohibits the employment of children in any capacity. किसी भी कैपेसिटी में वो कर ही नहीं सकते, मतलब 15 years तक, that is 15th year. So it also prohibits, along with that, not only that complete child labor को avoid करता है, the act also prohibits the employment of adolescents who are under 18 years of age unless they have a certificate of fitness from a certifying surgeon. जब तक वो fitness certificate नहीं होगा, they can't be employed, even the adolescents, that is still 18 years, that is 15 to 18 years वाले. So this is also true. So here in this case D is the correct answer because all these statements are true. So moving on to our next question. With reference to section 17A of the Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986, consider the following statements. Which of the following statements given below is or are incorrect? So here please look at this term, incorrect है ये. So the statement says the appropriate government has the authority to confer powers and impose duties on the district magistrate to ensure proper implementation of the act. Yes, this is very much true. Okay. The district magistrate is empowered to delegate specific powers and duties to subordinate officers. Yes, this is also very much true क्योंकि उनके हाथ में पूरे powers रहते हैं. The subordinate officer's jurisdiction to exercise power and perform duties must be defined within prescribed local limits. क्योंकि उसी jurisdiction में होगा, only then they'll be able to exercise their power. Yes, this is also true. क्योंकि और ये कोई भी statement गलत नहीं है. So none of these statements are incorrect. All of these statements are correct. Hence, D is the correct answer here. Moving on to our next question. With reference to section 17B of the Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986, consider the following statements. Which of the following statements given here is or are correct? So the statements goes like this. The appropriate government is required to conduct periodic inspection of places where the employment of children is prohibited. Yes, they have to do, and appropriate government has every right to do that through required inspectors, etc. Yes, it is true. Hazardous occupations and process must also be inspected periodically under this provision. Yes, this is also true. They should carry out these inspections in them as well. Yes, this is true.
The government is mandated to monitor compliance with the provisions of this act at 4 times a year. Now this is false. Why? Because ऐसा कोई फिक्स्ड टाइमिंग्स नहीं है कि इसी टाइम पे मतलब साल में इतने बार करना है. नो, एज एंड व्हेन दे डीम्ड फिट, दे थिंक दैट ओके अभी करना है तो कर सकते, कितनी बार भी कर सकते हैं ईयर में. ओके, अगेन ऑल दैट इंटरवल्स एक्सेट्रा as per they think fit, they can do that. So here only 1 and 2 statements are correct, 3 is wrong. So here B is the correct answer. Moving on to our next question. With reference to the procedure related to offences under the Child Labour Act 1986, consider the following statements. Which of the following statements given is or are correct? किस तरह से वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे. ओके, ये सेक्शन 16 में आता है. एनी पर्सन, पुलिस ऑफिसर और इंस्पेक्टर में फाइल ए कंप्लेंट रिगार्डिंग द ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट इन ए कोर्ट ऑफ कंपिटेंट ज्यूरिसडिक्शन. ओके, यस, दिस इज वेरी मच ट्रू. ऐसा नहीं है कि उसी पर्सन को करना है, सिर्फ इंस्पेक्टर को करना है, ऐसा कुछ नहीं है. जो भी इंस्पेक्टर, पुलिस ऑफिसर, एनी पर्सन हु उनको लग रहा है कि यहाँ पे चाइल्ड लेबर है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, दे कैन फाइल ए कंप्लेंट. यस, in the respective jurisdiction. So this is true. A certificate granted by a prescribed medical authority regarding the age of the child is considered conclusive evidence under this act. जहाँ पे भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है टू प्रूव द एज ऑफ द चाइल्ड, जो मेडिकल अथॉरिटी ने उन्होंने सर्टिफाई किया है कि इस पर्टिकुलर पर्सन का ये एज है, दैट वुड बी डीम्ड फाइनल. एंड यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. Offences under this act can only be tried by a court not lower than that of a metropolitan magistrate or a magistrate of the first class. This is also very much true. Offences can be tried only by these specific people, not less than a metropolitan magistrate or magistrate of the first class. So all these statements are true as per this act. So here D is the correct answer. So friends, अभी तक हमने questions किए हैं एंड हमने बहुत अच्छा प्रैक्टिस भी किया है. नाउ आई हैव अ स्मॉल अनाउंसमेंट. करेंटली EduTap is offering 3 major courses, those for all those who are targeting the upcoming UPSC EPFO, APFC, EO or AO 2025 examination. Let's have a quick look at the courses. फर्स्ट है मास्टर कोर्स. ये उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जो बिल्कुल अपना प्रिपरेशन अभी अभी स्टार्ट किया एंड देयर स्काउटिंग आउट फॉर सम कंटेंट. एक ही जगह पे सब कंटेंट मिल जाए, रिकॉर्डेड वीडियोस, PDFs, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, along with that live classes, strategy sessions, mentorship etc. इस पर्टिकुलर कोर्स में स्पेशली कुलदीप सर एवरी थर्सडे आपसे मिलेंगे, ऑनलाइन मिलेंगे एंड ही विल टेक यू थ्रू किस तरह से उस जो भी कंटेंट अवेलेबल है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन में. अलॉन्ग विद दैट जो भी डाउट्स है आपके, ही विल बी लुकिंग इनटू दोस क्वेरीज एज वेल. नाउ दूसरा कोर्स आता है टेस्ट सीरीज प्लस. नाउ कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि अरे मुझे सारे सब्जेक्ट्स नहीं चाहिए, कुछ ही सब्जेक्ट्स चाहिए. लाइक किसी को पॉलिटी चाहिए, किसी को लेबर लॉस एंड IR चाहिए. ऐसे बच्चे यहाँ पे उसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज, ताकि वो उनका प्रैक्टिस, बाकी सब्जेक्ट्स का भी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए एंड रियल एग्जाम एक्सपीरियंस भी मिल जाए. ओके, नाउ थर्ड आता है एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज. ये उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं एंड दे आर लुकिंग आउट फॉर सम सोर्सेज सो दैट दे कैन हैव सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस सो एज टू टेस्ट देमसेल्व्स कि कहाँ तक उनका प्रिपरेशन हुआ है एंड ऑल्सो फॉर प्रैक्टिस पर्पज. सो दीज आर द 3 मेजर कोर्सेज दैट करेंटली बीइंग ऑफर्ड बाय EduTap. अगर आपको कुछ डाउट है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू एनी ऑफ द पर्सन्स फ्रॉम EduTap एंड आप अपना डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि कौन सा कोर्स आपके लिए बहुत बेटर सूट करता है. Thank you very much friends for being with me so patiently. Thanks a lot and hope you all like this session. See you all with another session very soon. Thank you. Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 exam, wherein we are expecting this exams notification very soon. Okay, so what is it we are going to cover as part of this series? 15 MCQs in each session associated with labor laws and industrial relations, as part of which in today's session we are going to see
The topic labor laws, interstate migrant workmen, regulation of employment and conditions of service act 1979, and part 1 we are going to see. And why is this series important? See, around 15 questions out of 120 are asked both in APFC and AO or EO. So it means the series that we are focusing currently, that would be helpful for both your examinations, for APFC, that is EPFO का APFC जो है, and along with that for AO or EO as well. And as you can see the number of questions, so weightage भी high है and scoring potential भी high है क्योंकि ये basics है. And if you can cover this basic level also, you will be able to score, cover or easily solve 10 plus questions without any doubt. So जब ये practice sessions आप सही से use कर लेंगे अपने preparation में, तो definitely you will be able to score 15 out of 15. And so I suggest everyone who is preparing for both APFC or EO or AO exam should watch these sessions regularly. So coming to the first question of this session, what is the primary objective of the International Labour Organization's Migration for Employment Convention? Again, it was revised later, number 97, and the migrant workers supplementary provisions to the above convention number 143. See, it all started when industrialization started. 19th and 20th century में जैसे जैसे industrialization boom होता गया, वैसे वैसे to ease out the operations, to ease out the businesses, कई सारे acts आए थे. And as you know, जब भी industrialization होते, it's not that everywhere it will happen. So जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे definitely they need the workforce. तो बाहर से भी लोग आने लगेंगे. So migration is an inevitable part of industrialization. राइट. सो इन सब को नज़र में रखते हुए इंडिया ने अपने तरफ से कई सारे एक्ट्स निकाले for this industrialization as well as the migrant workmen. Along with that, International Labour Organization ने भी कुछ निकाला था. The Migration for Employment Convention जो 1949 में हुआ था, नंबर 97 ये, and 1975 का जो 143 है ये, that is the Migrant Worker Supplementary Convention. and इसके अलावा दो और recommendations भी इन्होंने किया था, like the Migration for Employment Recommendation, okay, ये 1949 में हुआ था, and the Migrant Workers Recommendation ये नंबर 151 में उन्होंने किया था, wherein जो भी required international framework है for recognition of the labor rights of migrant workers exclusively, for that these four एक तो कन्वेंशन है, दो कन्वेंशन से, बाकी रिकमेंडेशन से, that have paved the way for helping those labor which has migrated to other places for work purposes. So इसमें the major objective of either cases majorly to help them. So here in this case, to promote fair labor migration and protect migrant workers from exploitation and discrimination. Majorly इसका work यही, objective यही है, so as to help them. So in this case A is the correct answer. So moving on to our next question here. Now this question says the Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1979. This allows contractors to deduct a portion of wages for administrative cost because they're hiring people from the other areas. Now this particular act, this came into force, or the idea behind this was, many times it happened in India is during the industrialization period, and even now also, people from less developed, economically developed states, they started moving to more economically developed states for work purposes. So for which, in order to protect these migrant workers, this act was put forth. Now in this case, when we talk about these provisions, whatever that are aimed as part of protecting these migrant workers, इसमें कई सारे हैं, जैसे कि उनको wages locals के एट पार मिले, ऐसा नहीं है कि बाहर से आए तो इनको कम मिलना चाहिए, एक ही तरह से. एंड कुछ डिस्प्लेसमेंट अलाउंसेस, जर्नी अलाउंसेस या रेजिडेंशियल एकोमोडेशंस, उसमें भी हेल्प करना चाहिए, मतलब प्रोविजन होनी चाहिए.
ensuring timely payment of wages at par with locals, offering medical facilities and protective measures in hazardous occupations, जहाँ पे भी hazardous occupations है वहाँ पे उनको पूरा पूरा protection मिले, सब कुछ उन्होंने ध्यान में रख के ही ये एक्ट निकाला था. Now here in this case, if we look at the deduction part, no, this statement as given in the question is false, as the act prohibits any such deductions. कुछ भी नहीं, in fact उनका उल्टा जर्नी अलाउंस, डिस्प्लेसमेंट अलाउंस या रेजिडेंशियल अकोमोडेशंस प्रोवाइड करने के प्रोविजंस है एज पर दिस एक्ट. सो हियर द करेक्ट आंसर इज बी. सो फ्रेंड्स, इन द अर्लियर क्वेश्चन वी हैव सीन कि उसके प्रोविजंस क्या है ये एक्ट का, जो स्टेट इंटरस्टेट माइग्रेंट रेगुलेशन वर्कर्स माइग्रेंट वर्कर्स रेगुलेशन एक्ट का. अब इसमें देखेंगे हम इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है. So the Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1979 has a following primary objectives. Now आपको बताना है कौन से ये statements इसमें true है. Regulate the employment of interstate migrant workmen, obviously उसी के लिए है तो definitely yes, this is true. Provide the conditions of service of interstate migrant workmen, जैसे कि wages सही से at par होना चाहिए local workmen से, उनको कुछ और allowances भी मिलना चाहिए, provisions उसका भी होना चाहिए, और timely wage payment होना चाहिए. अगर hazardous occupation है तो उसमें भी उनको थोड़ा सा जो भी locals के at par जो भी वहाँ स्पेसिफिक प्रिकॉशंस वो सब ले रहे, सब इनको भी मिलना चाहिए, वो सब है. इसके साथ साथ यस, प्रोवाइड फॉर द कंडीशंस ये है. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज, मतलब जहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. सो दिस ओनली 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू. सो हियर इन दिस केस सी इज द करेक्ट आंसर. सो फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. एज पर सेक्शन 1 ऑफ द जो सेक्शन 1 में है ये, the statement I have given, and accordingly you have to pick the right options, right statements. So here, regarding the applicability of the Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment Conditions of Service Act 1979, which of the following statements is or are correct? First statement, the act applies to the entire territory of India. Yes, this is true, it applies to entire territory of India. It is applicable to establishments employing 5 or more interstate migrant workers at present or during any day in the preceding 12 months. This is also true. Okay, contractors are exempt from the provisions of the act irrespective of the number of migrant workers employed. This is false. Contractors वो है जो help करते हैं to provide work for these workmen in various establishments. Okay, और कभी-कभी contract पे work लेके वो करते हैं in the establishment. So एम्प्लॉयर या फिर ऑक्यूपायर एंड कॉन्ट्रैक्टर में सटल डिफरेंस है. सो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स दे आर नॉट एग्जेम्प्टेड. सेम उसी तरह से उनके ऊपर भी ये लागू होता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल्सो हैव टू follow this. It is applicable to those contractors also who are employing 5 or more interstate migrant workers at present or during any day in the preceding 12 months. So only 1 and 2 are the correct statements here. 3 is not true. So A is the correct answer. So moving on to our next question. In the context of the Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1979, which of the following statements correctly defines the term appropriate government? Now section 2 में सारे definitions है. Okay, उसमें appropriate government means either central or state government. Central government उन एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए जो इधर कंट्रोल्ड इंडस्ट्री है उनके अंडर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, और लाइक रेलवेज, कंटोनमेंट बोर्ड, मेजर पोर्ट्स, माइंस, ऑयल फील्ड्स, और एनी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी, ये सारे एस्टेब्लिशमेंट्स आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर. बाकी जो है बाकी सारे इंडस्ट्रीज आपके आते हैं, जैसे टेक्सटाइल्स हो गया या फिर फार्मा का हो गया, ऐसे इंडस्ट्रीज सारे आपके स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं. सो इन दिस केस द सेंट्रल गवर्नमेंट इज appropriate government for establishments and industries under its authority, including railways, cantonment boards, major ports, mines, oil fields, and banking or insurance companies. Rest of the sectors fall under the state government. So in this case, B is the right statement to be chosen. So B is the correct answer. So moving on to our next question. Consider the following statements regarding key definitions under the section 2 of the Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1979. Which of the following statements is or are correct?
Now, a controlled industry refers to any industry whose regulation by the union has been declared through a central act. Yes, this is true. कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज वो है जैसे कि एटॉमिक इंडस्ट्रीज, मिनरल इंडस्ट्रीज, ऑयल रिफाइनरीज, कोल माइंस, नॉन कोल माइंस, शुगर इंडस्ट्री, ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज है बिल्कुल वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं. एंड बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट. इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के तहत कुछ कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज है जिनका बिल्कुल जो पब्लिक इंटरेस्ट के इसमें है, दैट वुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो वंस फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी मच ट्रू. An establishment includes only offices or departments of the government and excludes private businesses and trades. No, this is not true. क्योंकि सभी as a part of establishment आते हैं. Okay, and interstate migrant workman is a person recruited by a contractor in one state for employment in an establishment located in another state irrespective of the principal employer's knowledge. Yes, ये हो सकता है. अगर principal employer को नहीं भी पता होगा तो कुछ नहीं है, but yes, contractor has to manage that. ओके, उसमें उनको डालना पड़ेगा. मतलब ही इज द वन हु इज प्रोवाइडिंग दीज टू द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, सो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो यस, 3 इज ऑल्सो ट्रू. सो हियर इन दिस केस 1 and 3 ओनली आर ट्रू but not 2. So here C is the correct answer. Now, which of the following correctly defines the term principal employer as per the Interstate Migrant Workmen Regulation or Employment and Conditions of Service Act 1979? Now, अभी हमने देखा principal employer word हमने सुना था in the earlier question. Principal employer actually means in relation to any office or department of the government or a local authority, like the head of that office, department or authority. ओके, ये हो गया मेजरली कोई ऑफिस के लिए, गवर्नमेंट ऑफिस एंड ऑल दैट. सो ऑन देयर बिहाफ ही और शी विल बी द राइट पर्सन टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजंस एट द राइट टाइम. सो ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है. वही फैक्ट्री में किसको बोलते हैं? द ओनर और द ऑक्युपायर ऑफ द फैक्ट्री, जो वो रन कर रहे हैं. एंड अ पर्सन वेयर he has been named as a manager of the factory under the Factories Act 1948, जो हमने अर्लियर किया था, राइट? उसमें हमने देखा था ना, जो मेन है मैनेजर, उसको हम लोग फैक्ट्री ओनर की तरह देखते हैं एंड ही इज वन रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर वेरियस एक्टिविटीज, राइट? वही माइन में द ओनर और एजेंट ऑफ द माइन जिसने लिया है, एंड अ पर्सन वेयर ही हैज बीन नेम्ड एज अ मैनेजर ऑफ द माइन, दैट वुड बी कॉल्ड एज द principal employer here. In relation to any other establishment, who in such cases any person responsible for the supervision and control of that establishment will be considered as the principal employer. So in this case D is the correct answer. The principal employer for an officer department of government is the head of the office or another officer specified by the government or local authority in this regard. वही फैक्ट्री में the principal employer in a factory is only the owner or occupier. No, उसका फैक्ट्री मैनेजर को भी हम लोग प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कंसिडर कर सकते हैं एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट. सो ये फॉल्स है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइन, द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर रेफर्स एक्सक्लूसिवली टू द ओनर ऑफ द माइन एक्सक्लूडिंग एनी एजेंट और मैनेजर. नो, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. इन ऑल एस्टेब्लिशमेंट्स द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज डिफाइंड एज एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट. नो, एवरीथिंग, ऑल द एक्टिविटीज. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. सो हेंस डी इज द करेक्ट आंसर हियर. Now again one more question from the section 2 of the Interstate Migrant Workmen Act, and इसके हिसाब से the definition of workmen under the act includes includes one or more of the correct statements from the below statement. So let us see. Any person employed in a supervisory capacity drawing wages exceeding 500 rupees per month can be called as a workman. No, less than 500 and he or she should not be in supervisory capacity, only then that person can be called as workman. So here this is false. Any person employed in a managerial administrative capacity, obviously अगर उसमें है manager, factory manager होगा वो, not the workman, those who is working on a daily wage etc. So this is also false. Any person employed to do skilled, semi-skilled or unskilled manual work for hire or a reward. Yes, this definition is very much true when it comes to the definition of workman. So in this case, statement 3 is the only right option, hence C is the correct answer.
Moving on to our next question. Under Section 3 of the Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1979, which of the following is correct regarding the appointment of registering officers? तो जहाँ पे इन एम्प्लॉयर्स को अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा एस्टेब्लिशमेंट्स को. So in this case, this particular registering officer is appointed by the appropriate government. वी नो कौन से सेक्टर के लिए कौन सा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है. सो द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन अपॉइंट ऑफिसर्स एज रजिस्टरिंग ऑफिसर्स एंड डिफाइन द लिमिट्स ऑफ देयर पावर्स एंड ज्यूरिसडिक्शन. एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में है या किस तरह से है वो दे विल बी providing that jurisdiction as well. So यहाँ पे only the central government has authority? No, as per the sector. So this is false. So ये तो true है. He registering officers are appointed directly by judiciary. No, this is also false. The appointment of registering officers limited to urban areas. No, ऐसा कुछ नहीं है. Okay, so B is the correct answer in this case when it comes to the appointment of registering officers. So here comes the question from section 4. See, section 4 ये कहता है कि every principal employer of an establishment, he should make an application to the registering officer on payment of fees. Payment fees जो भी prescribed fee है वो pay करके for registering their establishment. Okay. Now, based on that, with reference to section 4 of the Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1979, consider the following statements and select the statements which is or are correct. तो देखते हैं. A principal employer is required to apply for the registration of their establishment within 1 month of its operation. Yes, this is true. Okay. Now, the registering officer is mandated to issue a certificate of registration within 1 month if the application is complete in all aspects. Yes, this is also true क्योंकि उनको within 1 month देना पड़ेगी. If not, वो return करके उनको फिर file करने के लिए बोल सकते हैं. Whatever there's comments, but that should be done. If the registering officer neither issues a certificate nor returns the application within 1 month, the principal employer can demand registration which must be granted within 15 days. ओके, सो 1 मंथ होते ही वो बोल सकते हैं कि मेरा अभी तक नहीं आया, ना तो कोई कमेंट आया है, ओके, फॉर एनी करेक्शन और एनीथिंग, सो इमीडिएटली आई नीड माय registration number and all that. So immediately within 15 days of that receipt of that application, immediately the registration officer should be he should be doing that work. So here in this case all the statements are true. So 1, 2, 3 are true. So hence D is the correct answer. So moving on to our next question. Under section 5 of the Interstate Migrant Workers Act 1979, the registration of the establishment can be revoked under certain circumstances. वो कैसे circumstances है? I have given that in the form of statements. Now you have to tell me which of those statements are true. Okay, so in this case, without giving an opportunity to the principal employer to be heard, the registering officer can revoke the registration. He can't do that. Okay, एक चांस तो देना पड़ता है, only then he can revoke. So ये false है. If the registration has been obtained by misrepresentation or suppression of any material fact, definitely he has every right to revoke that. True. Without the previous approval of the appropriate government, लेकिन यहाँ पे approval चाहिए उनको, appropriate government से approval लेना पड़ेगा. Accordingly, the registering officer can revoke the registration of an establishment. So this is also false. So in this case, only statement 2 is true and all others are false. So here A is the correct answer. Now, section 6 ये बोलता है, it prohibits against employment of interstate migrant workmen without registration by the establishment. Establishment या फिर principal employer, he can't employ until unless the establishment is registered. Okay, so here under section 6 of the said act, that is the Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Provision of Service Act 1979, which of the following statements is appropriate regarding the prohibition against employing interstate migrant workmen without registration. So यहाँ पे a principal employer can employ interstate migrant workmen without a certificate of registration. The establishment has applied for registration and the application is pending with the registering officer. So definitely ऐसा नहीं है कि उनके लिए wait करते हुए यहाँ पे बंद नहीं कर सकते. So obviously this is the true statement. The prohibition applies only to establishments employing more than 10 interstate migrant workmen. ऐसा कुछ नहीं है. So this is false. A certificate of registration is mandatory
even if the principal employer has submitted an application that is under consideration by the registering officer. ये भी false है क्योंकि उनको वो time मिलता है. The provision applies exclusively to establishments operating under the control of the central government only. This is also false. So here only A statement is correct, hence A is the correct answer when it comes to the prohibition against employment of interstate migrant workmen without registration by an establishment as per section 6 of the said act. So here comes the next section, that is section 7 of the act. Which of the following function is specifically granted to the appropriate government under the provisions of the Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1979 regarding the appointment of licensing officers? Now, who is a licensing officer? He is the one, no, licensing officer is the one who is responsible for issuing the licenses, especially to the contractors. Because the contractors have to obtain the license before recruiting or employing any migrant worker. जैसे कि principal employer or the occupier or the establishment, they have to attain a registration, okay, before employing the migrant workers. Similarly, अगर contractor को migrant workers को प्रोवाइड करना काम पे लगाना है तो डेफिनेटली ही हैज टू ऑब्टेन अ license, and that license would be provided by the licensing officer, and that licensing officer is appointed by the appropriate government. So here the appropriate government has authority to appoint officers as licensing officers and define the jurisdiction within which they should exercise their powers. Okay, the appropriate government has no role. No, ऐसा कुछ नहीं है ये. This is false. The appropriate government is responsible for defining the qualification of licensing officer but does not have authority to determine of the jurisdiction. No, they are the ones who will do that. The appropriate government can only appoint licensing officer to central government establishments. ऐसा कुछ नहीं है. So D is the correct answer here when it comes to licensing officer who issues licenses to contractors who want to recruit or employ migrant workers, and also the licensing officer would ensure that the provisions of the act are being followed thoroughly by these contractors while appointing and getting the work done by these migrant workmen. Now coming to the next section, that is licensing of contractors. A contractor can recruit persons from one state for employment in another state without obtaining a license. Okay, which of the following statement is correct? True, as long as the contractor pays the minimum wages. No, this is false. True, if the contractor has obtained permission from the establishment. No, establishment से नहीं, उनको licensing officer से license लेना पड़ेगा. False, as a license is mandatory under the Interstate Migrant Workmen Act 1979. This is very much true. True for a limited period of 30 days. No, it's not. So here compulsory licensing होना ज़रूरी है by the contractors if they want to employ or help any establishment to employ the on their behalf these migrant workmen. So here C is the correct answer. Coming to section 9 of the Interstate Migrant Workmen Act. Now अभी हमने देखा है लाइसेंस कितनी ज़रूरी है for the contractors. Now उस लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए applicant what all should the contractor provide for licensing? So under section 9 of the Interstate Migrant Workmen Act 1979, an application for the grant of license must contain one or more of the correct statements. Let us see what are the statements. Location of the establishment, obviously जहाँ पे employ करने वो तो देना ही पड़ेगा. So this is true. Nature of process, operation or work for which interstate migrant workmen are to be employed, definitely, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि hazardous occupations भी हो सकते हैं, तो वो clarity होनी चाहिए licensing officer को किस तरह के work के लिए उनको appoint किया जा रहा है. So obviously this is also true. Number of local workers employed in the establishment, इसकी ज़रूरत नहीं है उनको. Okay, only related to the employment work, किस तरह से कितने number है and all that. And one more important point, when it comes to licensing, a license granted shall be valid for a specified period and time on time. अगर 1 year है 6 months है as per the conditions, उनको वो renewal करना पड़ेगा, and जो भी उसके लिए पेमेंट फीस पेमेंट होगा वो पे करना पड़ेगा, एंड conditions जो भी prescribed है that the contractor has to meet. Only then the contractor would be given a license for appointing or taking up these interstate migrant workers for work. So here in this case only 1 and 2 are correct, so A is the correct answer.
सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा है कि क्वेश्चंस हमने किया है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस भी किया है। नाउ आई वुड लाइक टू अनाउंस वन थिंग। अभी EduTap ने कोर्सेज लॉन्च किया है एक्सक्लूसिवली फॉर द अपकमिंग UPSC EPFO APFC एंड EO 2025 एग्जाम, EO और AO 2025, क्योंकि हम लोगों का अभी ये एक्सपेक्टेशन है सभी का कि अभी जल्दी ही नोटिफिकेशन आ जाएगा इनका। नाउ व्हाट आर द 3 कोर्सेज? लेट्स हैव अ क्विक लुक इनटू दैट। फर्स्ट है मास्टर कोर्स। ये उन बच्चों के लिए यूजफुल रहेगा जो अभी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं एंड स्टिल दे लुकिंग आउट फॉर ऑप्शंस के कंटेंट पूरा एक ही जगह से मिल जाए, मेंटरशिप मिले, उनको गाइडेंस मिले, मॉक टेस्ट मिले, उनको टेस्ट सीरीज मिले, सब कुछ। सो ये मास्टर कोर्स सब कुछ 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट टाइप का 1 पॉइंट वो है ये। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कुलदीप सर एवरी वीक, टू बी प्रिसाइज एवरी थर्सडे, एक स्ट्रैटेजी सेशन लेंगे जिसमें जितना कंटेंट जो प्रोवाइड कर रहे हैं कोर्स में, किस तरह से उसको यूटिलाइज करते हुए आप अपना प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हो वो भी समझाएंगे। अलॉन्ग विद दैट जो भी आपके डाउट्स है एज पार्ट ऑफ योर जर्नी ऑफ योर प्रिपरेशन, वो भी आपको हेल्प करेंगे एंड गाइड भी करेंगे। सो वन एंड सेकेंड कोर्स है सीरीज, टेस्ट सीरीज प्लस। नो, इसमें क्या मिले, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ टॉपिक्स वो खुद कर लेते हैं। ओके, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो क्वांट रीजनिंग कर लेंगे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स हमें चाहिए। या फिर कुछ बच्चे होते हैं मुझे एक्सक्लूसिवली पॉलिटी चाहिए, एक्सक्लूसिवली लेबर लॉस एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस चाहिए। ऐसे उन बच्चों के लिए ये वाला सीरीज बहुत यूजफुल है, क्योंकि उस कंटेंट के साथ साथ which would be in the form of PDFs, videos, etc. उनको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, दैट इज प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट उनके लिए बिल्कुल, सो दैट दे कैन टेस्ट देमसेल्व्स वेयर दे स्टैंड एंड अकॉर्डिंगली दे कैन स्ट्रेटेजाइज देयर प्रिपरेशन। नाउ तीसरा ऐसा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ऑलरेडी उन्होंने पूरा प्रिपेयर किया या फिर एक साल ऐसे उन्होंने दे दिया है या फिर देने वाले हैं। ऐसे उनको क्या है, ऑलरेडी पूरा प्रिपरेशन हो गया है उनका, लेकिन दे वांट टू गो फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड टेस्ट देमसेल्व्स। ओके, या फिर मॉक टेस्ट। for such cases this test series for such students it would be of great help। आपको बिल्कुल रियल एग्जाम का फील मिल जाएगा, along with that kind of level of questions आपको इसमें मिल जाएंगे in the test series। so these are the 3 kinds of courses, and if you have any query you can always reach out to any of the team members of EduTap and get your doubts clarified before taking an informed decision of purchasing these courses। So friends, thank you very much for being with me so patiently till here, and thanks a lot once again. Hope you all like this session. See you all in the next session very soon. Bye bye. Hello friends, welcome to EduTap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination, wherein we'll be doing 15 MCQs a day, and as part of which today we are going to see some MCQs from labor law, that is Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1979, and this is part 2 that we are going to do today. Now, why is this series important, or why are these topics important? See, when you talk about the EPFO exam, UPSC EPFO exam, be it APFC or EO or AO exam, you'll get at least or close to 15 plus MCQs from these topics exclusively from labor laws and industrial relation, which is actually a very good number. The component has very high weightage, and also it has a high scoring potential as well, as you can see by the kind of the number of questions that are being asked from these topics. So अगर आप लोग सही से बेसिक लेवल भी अच्छे तरीके से कर लेंगे, इसमें 10 क्वेश्चंस करना बहुत ही आसान है, 10 प्लस क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से कर सकते हो। सो इफ यू आर रियली प्रिपेयरिंग, और इफ यू रियली वांट टू स्कोर हाई in this exam, particularly from this particular topic, I suggest you to watch these sessions regularly, so that आपका जो ये प्रिपरेशन है वो सही तरीके से रहे, मतलब एक प्रैक्टिस भी हो जाए एंड रिविजन भी हो जाए। Okay, so let's get into the questions. So friends, here comes the first question. Under section 12 of the Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1979, what is the key duty of contractors with respect to interstate migrant workmen? See, when it comes to interstate migrant workmen, जब भी उनको ले आते हैं कॉन्ट्रैक्टर यहाँ दूसरे स्टेट में काम पे लिए, तो डेफिनेटली विद इन 15 days of the recruitment he has to सेंड ऑल दोज पर्टिकुलर्स, जो भी डिटेल्स है वो स्पेसिफाइड अथॉरिटी को उनको भेजना पड़ेगा। ये कॉन्ट्रैक्टर की ड्यूटी है। ओके, अगर
वहाँ से कुछ काम के लिए लेके आए या फिर यहाँ कुछ और काम में लगा रहे, तो वो भी उनको स्पेसिफिकली नोटिफाई करना पड़ेगा अथॉरिटीज़ को इन बोथ द स्टेट्स, जिस स्टेट से उनको लेके आ रहे हैं एंड जिस स्टेट में ये काम करवा रहे हैं। उसके साथ साथ जब भी इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन को ले आ रहे हैं तो एवरी वर्कमैन को एक पासबुक मिलेगा दैट हैज़ टू बी प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, एंड उस पासबुक में एक पासपोर्ट साइज फोटो रहेगा उस पर्टिकुलर वर्कमैन का अलॉन्ग विथ ऑल द डिटेल्स इन हिंदी एंड इंग्लिश। अगर वो अदर देन दीज टू लैंग्वेज, उनका कुछ और लैंग्वेज है समझने का, तो वो भी इसमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा टू प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स ऑफ द वर्कमैन, लाइक नेम और प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे है, नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, उनका डिस्प्लेसमेंट अलाउंस जो भी पेएबल है उन्होंने पे किया है कि नहीं, प्रपोज्ड रेट्स एंड मोड क्या है, पेमेंट ऑफ वेजेस का अकाउंट में डालेंगे या फिर हाथ में देंगे, रिटर्न फेयर उनका करवाया है कि नहीं, क्या क्या डिडक्शंस उनके वेजेस में से करने वाले हैं, ये सारे उनको फर्निश करना पड़ेगा पूरा डिटेल्स के साथ, ठीक है। एंड ये पासबुक को अप टू डेट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर का ही है। एंड हियर सो फ्रॉम ऑल दीज ऑप्शंस दैट हैव बीन हाइलाइटेड हियर, जो ये सेकंड वाला है, टू इश्यू अ पासबुक टू द वर्कमैन कंटेनिंग स्पेसिफिक डिटेल्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड द वर्कर्स नेटिव लैंग्वेज इफ एप्लीकेबल, दैट शुड बी प्रोवाइडेड, एंड इसको अपडेट करना भी कॉन्ट्रैक्टर का ही काम है। सो इन दिस केस द करेक्ट आंसर इज आंसर बी। अभी एक और क्वेश्चन फ्रॉम द सेम सेक्शन 12। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 of the Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1979, what is the time limit for a contractor to furnish particulars to the specified authority after the recruitment of an interstate migrant workman? ये अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था in the earlier question. So within 15 days from the date of recruitment ये detail specified authority को उनको देना पड़ेगा. So here in this case B is the correct answer. Again from section 12 of the said act, under section 12 of the Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1979, which of the following is not a duty of the contractor? ओके इसमें देखिए, टू इश्यू ए पासबुक कंटेनिंग डिटेल्स इन हिंदी लैंग्वेज एंड हिंदी इंग्लिश एंड नेटिव लैंग्वेज ऑफ द वर्कमैन इफ एप्लीकेबल, यस दिस इज ट्रू, ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू फर्निश पर्टिकुलर्स ऑफ द रिक्रूटेड वर्कमैन टू स्पेसिफाइड अथॉरिटीज विद इन 15 days ऑफ रिक्रूटमेंट, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। हमें यहाँ नॉट ड्यूटी वो चाहिए। टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ इंश्योरेंस, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सो दिस इज फॉल्स। टू एंश्योर दैट द पासबुक इज मेंटेन्ड अप टू डेट एंड केप्ट विद द कंसर्न्ड वर्कमैन, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर का ही है। सो हियर सी इज नॉट करेक्ट, सो हेंस सी इज द करेक्ट आंसर हियर। Now coming to the next question, consider the following statements regarding section 13 of the Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1979. Now which of the following statements below is or are correct? कौन से statements इसमें से correct है? फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द वेज रेट्स एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस फॉर एन इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन शुड बी द सेम एज दोस एप्लीकेबल टू अदर वर्कमैन परफॉर्मिंग सिमिलर वर्क इन द सेम एस्टेब्लिशमेंट। ऑब्वियसली ये सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इंटरस्टेट से आया है तो उनको ज्यादा देना है या कम देना है, ऐसा कुछ नहीं है। सो दिस इज ट्रू। If no comparable work exists in the establishment, the appropriate government prescribes the wages and conditions of service. ये appropriate government जो भी है, based on the sector, they will provide. Yes, this is also true. Wages payable to an interstate migrant workman can be paid in cash or kind as per the employer's discretion. Now here in this case, नॉर्मली कभी कभी होता है कि काइंड में भी पे करते हैं कोई, लेकिन यहाँ इन दिस केस व्हेन इट कम्स टू इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन, तो डेफिनेटली दे हैव टू बी पेड ओनली इन कैश, काइंड में पे नहीं कर सकते। सो दिस इज फॉल्स। सो इन दिस केस ओनली 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड हेंस ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, coming to section 14, which looks at the or which covers displacement allowance to these interstate migrant workmen. So the Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1979 mandates the payment of displacement allowance to interstate migrant workmen. Okay, क्योंकि वो बाहर से कहीं से आते हैं तो यहाँ सेटल होने में टाइम लगता है, तो एक अलाउंस उनको दिया जाता है स्टार्टिंग में, and that is the displacement allowance. Now which of the following statements regarding the allowance is correct?
It is payable at the rate of 25% of the monthly wages subject to minimum of ₹50. No, ये गलत है. It is payable at the time of recruitment and its amount is refundable against future. ये amount refundable नहीं होता है, non-refundable amount है, as an allowance they are paying. It is payable only to those interstate migrant workmen who have employed for a period of more than 6 months. ये भी गलत है. So it is payable at the rate of 50% of the monthly wages or ₹75, whichever is higher and is in addition to the wages payable. जो भी उनका wages है उस पे ये addition रहेगा and that has to be paid to the interstate migrant workmen so that वो उनका जो बाहर यहाँ के काम करने के लिए जो भी उनको displacement relocation सबके लिए चाहिए, that would help them a lot. So here in this case C is the correct answer and this is non-refundable in nature. Moving on to our next question. Consider the following statements regarding the Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1979. Which of the following statements is or are correct? And this is actually related to the journey allowance which falls under section 15 of the said act. Now let us have a quick look at the statements. The contractor is required to pay a journey allowance to the interstate migrant workman which should be at least equal to the fare from the place of residence to the place of work. Definitely उतना उनको देना ही चाहिए. So this is true. The journey allowance is payable only for outward journey. नहीं, आने के लिए भी और contract period complete होने के बाद जब भी वो वापस जाएंगे उसका भी amount उनको मिलेगा. So this is false. The interstate migrant workman is entitled to payment of wages during the period of journey as well. ओके जो इनवर्ड आउटवर्ड जर्नीज जब भी होंगे सो उसमें वॉट एवर डेज दैट वुड बी इंक्लूडेड इन दैट, क्योंकि वो आने जाने में जो वो 2 दिन 3 दिन जो भी लगेंगे दैट ऑल्सो वुड बी इंक्लूडेड इन द वेज पीरियड. मतलब वो काम के लिए ही आ रहे, सो दैट ऑल्सो वुड बी कंसिडर्ड एज इफ दे आर वर्किंग. सो डेफिनेटली उन 2-3 दिन या जितने भी होंगे दैट ऑल्सो वुड बी इंक्लूडेड इन द वेज पीरियड. So here the interstate migrant workmen are entitled to the payment of wages during the period of journey as if they were on duty. So this is true. So here only 1 and 3/3 statements they are true. So hence A is the correct answer here. Moving on to our next question. Now this is from section 16 of the said act, other facilities. Okay. Now under section 16 of the Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1979, which of the following is not a duty of a contractor employing the interstate migrant workmen? See, जैसे हमने इससे पहले भी बताया है कि एक और क्वेश्चन में भी हमने किया था that there are several duties of the contractor that he has to fulfill. Okay. Now statements देख लेते हैं, then we'll discuss. To ensure equal pay for equal work irrespective of sex. Yes, this is the true, because this is true because the contract, it is his responsibility to ensure that उनको equal pay मिलना चाहिए, be it man or woman. To contribute to the pension fund of interstate migrant workmen as per the prescribed dates. ये नहीं है, ये इनका responsibility नहीं है when it comes to the pension fund. To provide and maintain suitable residential accommodation during the period of employment. Yes, this is also true. उनको accommodation provide करना, proper clothing, मतलब अगर कुछ security के लिए ऐसे कुछ कभी कभी होता है ना कि इंडस्ट्रीज विच आर हैजार्डस एक्सेट्रा, इन दैट केस दे हैव टू हैव स्पेशल क्लोथिंग एक्सेट्रा. अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर टू डू दैट नीडफुल. To report fatal accidents or serious bodily injuries to specified authorities and the next of the kin of the workman. Yes, this is also responsibility of the contractor. Only suitable conditions provide करना, कुछ prescribed medical facilities जो required है, basic medical facilities free of cost, वो भी उन्हीं का responsibility है, and all that, and the rest that we have already discussed. So here in this case B is the correct answer. So coming to the next question, that is from section 17. So consider the following statements regarding the responsibility for payment of wages under section 17 of the Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1979. Which of the following statements given is or are incorrect?
Okay, the contractor is responsible for payment of wages to interstate migrant workmen employed by him. Yes, definitely it is his responsibility. Okay, जो they shall be paid, जो भी उनका wage period है, उनका requisite deadlines है, before that they have to pay. And every principal employer जो employ कर रहे हैं, they shall nominate a representative duly authorized by him, that is employer himself, to be present at the time of disbursement of wages by the contractor. ओके एंड उसका उस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव का ये ड्यूटी रहता है कि वो सर्टिफाई करे कि अमाउंट जो भी उनको प्रॉमिस किया है उतना ही पे कर रहे हैं, कुछ कम नहीं, ठीक है. एंड अलॉन्ग विद दैट जो डिसबर्समेंट हो रहा है, दैट शुड बी, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर टू एंश्योर द डिसबर्समेंट ऑफ वेजेस इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव. वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्टर का मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ कंपलसरी रहे. ओके एंड अगर कॉन्ट्रैक्टर कम पे कर रहा है, नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, जो भी उनका बाकी अमाउंट है वो पे करने का, दैट इज अनपेड बैलेंस वॉट एवर दैट माइट बी, दैट शुड बी पेड बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर. ये नहीं कह सकते कि मैंने कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, दैट ही कांट से. ओके एंड अगर अब देने के बाद उसको रिकवर करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर से, दैट ही कैन डू. उसके बाद जब भी कॉन्ट्रैक्टर को उनका जो भी अमाउंट देना है उसमें डिडक्ट करके एज अ डेट ही कैन pay that. Okay, so this is very much true. In case of non-payment of or short payment of wages by the contractor, the principal employer is not liable to make payment of wages. ये नहीं, it is his responsibility. बाकी वो अपने वसूल सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर से बाद में. The principal employer can recover the amount paid to the interstate migrant workmen from the contractor as a debt payable by the contractor. This is very much true. So इसमें एक ही statement false है, that is 2. So 2 only is the करेक्ट आंसर इन दिस केस, बिकॉज हमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट चाहिए. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Under Section 18 of the Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1979, what is the liability of the principal employer if the contractor fails to pay displacement or journey allowance to an interstate migrant workman? देखिए सेक्शन 14 बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट अलाउंस हैज टू बी पेड एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्ट्रैक्टर का पे करने का. सेक्शन 15 बोलता है जर्नी अलाउंस पे करना है कॉन्ट्रैक्टर को, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन को, राइट. एंड सेक्शन 16 बोलता है कि उसको फैसिलिटीज़ जो भी है ड्यूटीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर अंडर, उसके जो भी फैसिलिटीज़ है वो सब उनको पे दिखाना पड़ेगा, जैसे फ्री मेडिकल वाला सर्विस, उनको सही से क्लोथिंग इफ़ दे आर वर्किंग इन सम हैज़ार्डस कंडीशंस, एंड प्रॉपर एकोमोडेशन एंड ऑल दैट ही हैज़ टू प्रोवाइड. फैसिलिटीज़ जो भी रिक्विजिट फैसिलिटीज़ है, अगर ये 3 सेक्शंस में वो अपना ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहा है, इन दैट केस under section 18 which says liability of principal employer in certain cases, especially regarding the duties that has to be fulfilled by the contractor under section 14, section 15 and section 16, principal employer वो facilities या जो भी responsibilities है वो fulfill कर सकते हैं along with the wages payable, all that, and बाद में contractor से as a debt he can extract and उनसे वो ले सकते हैं, recover, he can recover that. So in this case the principal employer is required to report the matter to the specified authority but is not liable to make the payment. No, this is false. The principal employer can refuse liability and direct the workman to approach the contractor for payment. This is also false. The principal employer is only responsible for paying the journey allowance and not the displacement allowance. This is also false. The principal employer must pay the allowance to provide the facility within the prescribed time and recover the cost from the contractor. This is true. So here in this case, correct answer is option D. Now moving on to our next question. Under section 19 of the Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1979, what happens to the loan given by the contractor or principal employer to the interstate migrant workman after the completion of the period of the employment? See, whenever अगर कभी-कभी हो सकता है कि they must have given principal employer and either the contractor or the principal employer अगर कुछ लोन दिया है किसी interstate migrant workman को, it is their responsibility कि वो उसको उसी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वेज पीरियड वो उनसे ले ले. ओके, द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो भी पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसी के अंडर उनकी ऑब्लिगेशन है कि वो ले ले, एंड इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन ऑल्सो, ही हैज टू रीपे एनी डेट दैट हैज बीन टेकन. ओके, अगर वो नहीं हुआ, ओके, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, द लोन बिकम्स पेएबल इमीडिएटली? नो, टाइम पीरियड हो गया तो
The loan is renewable for further period. No, this also can't happen. The loan is transferable to another company. ये भी नहीं हो सकता. The obligation to repay the loan is deemed to have extinguished. मतलब वो पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एज पर द एक्ट सेज दैट अगर उस टाइम पीरियड एम्प्लॉयमेंट पीरियड के टाइम में ही अगर वो नहीं ले पाए वो अमाउंट और द वर्कमैन इज नॉट एबल टू रीपे दैट will be extinguished as per the law. So here the correct answer is C. So moving on to our next question of section 20 inspectors, that is inspectors की responsibility क्या है वो सब. Now here the appropriate government they can appoint these inspectors and define the local limits किस jurisdiction में उनको काम करना है to exercise their powers they can work. So an inspector appointed under section 20 of the Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1979, they can enter any premises or place without having a reason to believe that the provisions of the act are being कॉन्ट्रावेंड मतलब वो एक्ट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है दे आर नॉट बीइंग फॉलोड या फिर कुछ अगेंस्ट चल रहा है अगर ये है तो then without any reason he can go and do the inspection. Which of the following is correct? The statement is correct and the inspector has unconditional power of entry. ऐसा कुछ नहीं है until unless he has a proper reason to believe that the provisions of the act are being contravened, he cannot do so. This is false. The statement is incorrect and the inspector must have the reason to believe that the provisions of the act are being contravened. This is true. उनको रीजन की जरूरत है. The statement is correct only if the inspector has obtained prior permission from the principal employer. No, this is false. The statement is correct only if the inspector has obtained a warrant from the magistrate. No, अगर उसको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है एंड उसके पास कुछ रीजन है उसका उन्होंने कुछ प्रूफ या कुछ है तो डेफिनेटली ही कैन डायरेक्टली गो एंड इंस्पेक्ट एंड उसी टाइम पे वो जो भी रिकॉर्ड्स चाहिए वो ले सकते हैं एंड ही कैन चेक द प्रेमाइसेस एक्सेट्रा. Okay, so in this case B is the correct answer. Under the same section, under section 20 of the Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1979, an inspector has a power to seize or take copies of only the register of wages. Which of the following is correct? Now the statement is correct and the inspector's power is limited to the register of wages. This is false. Why? Because the statement is incorrect and the inspector can seize or take copies of the register, record or notice relevant to the offences under the act. जो भी उनको लग रहा है कि ये पर्टिकुलर अफेंस हुआ है तो उस पर्टिकुलर रजिस्टर या जो भी नोटिस या रिकॉर्ड है वो पूरा वो ले सकते हैं. सो दिस इज ट्रू. द स्टेटमेंट इज करेक्ट ओनली if the inspector has a prior permission. No, this is false. The statement is correct only if the inspector has obtained. No, this is also false. अगर उनके पास है रीजन कुछ प्रूफ है कुछ सुना है या कंप्लेंट कुछ भी है तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड विद दैट. सो हियर सी इज द करेक्ट आंसर. Now coming to the next question, according to section 21 of the Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1979, when is an interstate migrant workman deemed to be in employment for the purposes of the enactments that are specified in the schedule under this section? See, जब किसी का रिक्रूटमेंट होता है तो ऑब्वियसली उनके अगेंस्ट कुछ और एक्ट्स का भी एनेक्टमेंट होता है, लाइक योर वर्कमेंस कंपेंसेशन एक्ट, like the Payment of Wages Act, the Industrial Disputes Act, the Employees State Insurance Act, the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, the Maternity Benefit Act, ये सब उनके ऊपर लागू होता है. That has to be applied. Few sections of each of these acts will be applied to the वर्कमैन, राइट. तो वो कब कौन से डेट से वो लागू होगा? सो हियर वंस द रिक्रूटमेंट हैपेंस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हेन द वर्क बिगिंस वो इस पर्टिकुलर एक्ट्स के एम्बिट में आ जाते हैं. सो हियर नाउ द एन इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन deemed to be employed for the purpose of the enactment that are specified in schedule. There are 6 acts that have been specified which मैंने अभी आपको बताया है. From the date of recruitment irrespective of when the work begins. ठीक है, जब recruitment हो गया मतलब तभी से all these acts, all the sections, various sections under these acts would be applicable to the interstate migrant workman who is going to start the work. So here in this case C is the correct answer.
Moving on to our next question. Under Section 23 of the Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1979, which of the following is not a requirement for principal employers and the contractors to do related to the maintenance of the registers, etc. Okay, records, registers, etc. Now, A. Maintaining registers and records specifying the nature of work performed and the rates of wages paid to the interstate migrant workmen. Obviously, ये records उनको maintain करना ही पड़ेगा. So, this is true. It's not a false statement. Displaying notices within the premises about the works, hours of work and nature of duty for interstate migrant workmen. Definitely, this also has to be done. उनको notice पे लगाना चाहिए. Keeping registers and records accessible for inspection by authorities as prescribed. Obviously उनको ये सब maintain करना पड़ेगा. Why? जब भी inspection होगा उनको दिखाने के लिए everything is as per the act. उसके rules जितने भी sections है as per them we are doing. So definitely they have to do this. Submitting monthly reports to the specified authority detailing the number of interstate migrant workmen employed. ये इनको करने की ज़रूरत नहीं है. This is false. So here in this case D is the correct answer. सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने देखा है कि किस तरह से हमने कई सारे सेक्शंस, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, वो सब हमने रिवाइज भी किया है एंड वी हैव आल्सो प्रैक्टिस्ड क्वेश्चंस एज वेल. नाउ आई वांट टू tell you about the courses that are being currently offered by EduTap coming to the UPSC EPFO APFC and AOR EO exam for the year 2025. Now there are three kinds of courses that they are offering currently for as per the requirements of the students. So let's have a quick look at them. एक तो है मास्टर कोर्स. ये उन बच्चों के लिए यूजफुल रहेगा जो बिल्कुल अपना प्रिपरेशन अभी स्टार्ट किया है एंड दे आर लुकिंग आउट फॉर कंटेंट, मतलब इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ्स, वीडियोस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, आई मीन स्ट्रैटेजी सेशन, सब कुछ मतलब वन पॉइंट आपका कांटेक्ट रहेगा. बिल्कुल सब एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा. एंड अलॉन्ग विद दैट कुलदीप सर भी एवरी वीक थर्सडे के दिन आपके लिए एक स्ट्रैटेजी सेशन लेंगे एंड ऑलरेडी पूरा कंटेंट तो प्रोवाइडेड है ही, उसको यूटिलाइज करना भी चाहिए ना कि किस तरह से कहाँ से स्टार्ट करना है, किस तरह से करेंगे तो सबसे अच्छा सा आपका प्रिपरेशन होगा, वो सब उसमें आपको बताएंगे अलॉन्ग विथ क्लैरिफाइंग ऑल योर डाउट्स. ये हो गया एक मास्टर कोर्स का. नेक्स्ट कोर्स आता है टेस्ट सीरीज प्लस, कि कई बार ऐसे बच्चे होते हैं कि जो ऑलरेडी कुछ अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं बट स्टिल दे वांट सम स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी हो गया, लेबर लॉस हो गया, उनके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड नोट्स चाहिए उनको, थोड़ा टेस्ट सीरीज टेस्ट चाहिए सो दैट दे कैन चेक देमसेल्व्स वेयर दे स्टैंड एक्सेट्रा. उन बच्चों के लिए ये बेस्ट है. ओके, ना थर्ड है टेस्ट सीरीज. ये उन बच्चों के लिए यूजफुल रहेगा जो ऑलरेडी उन्होंने प्रिपरेशन अपना सही से कर लिया है बट नाउ दे आर लुकिंग एट सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस. वो आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस या फिर टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हैं जिसमें वो एग्जाम का फील ले सके एट द सेम टाइम टू नो वेयर दे स्टैंड, अकॉर्डिंगली दे कैन स्ट्रैटेजाइज देयर रिविजन एक्सेट्रा. ये उन बच्चों के लिए बहुत यूजफुल रहेगा. सो दीज आर द थ्री काइंड्स ऑफ कोर्सेज दैट आर बीइंग करेंटली ऑफर्ड बाय EduTap. एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट एनी ऑफ द resources from EduTap and you can get your doubts clarified before making an informed decision about purchasing these courses. Hope you have liked this session and thank you very much for being with me so patiently till end. So I'll see you all in the next session very soon. Thank you very much once again. Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination. As part of which हम लोग करेंगे 15 MCQs a day. ओके एंड उसमें आज हम लोग करने वाले हैं लेबर लॉस, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970. ये पार्ट 1 है हम जो करने वाले हैं. एंड नाउ व्हाई इज दिस सीरीज इंपॉर्टेंट? नाउ बी इट यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी का एग्जाम और इट इज ईओ और एओ का एग्जाम, दोनों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. व्हाई? बिकॉज कि टोटल 120 क्वेश्चंस में अराउंड 15 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दीज टॉपिक्स ओनली, and which is actually a very good number and given that context इसका weightage भी high है and also scoring potential भी high है. अगर सही से basic level से भी हम लोग अच्छे तरीके से ये सारे कर लेंगे तो 10+ questions आप आराम से solve कर सकते हो. Okay, so if you are really आप seriously prepare कर रहे हो तो I suggest you to watch these sessions regularly. Okay, and moreover
We are expecting the notification of UPSC EPFO 2025 very soon. So hope you utilize these sessions very efficiently. Let's get into the questions now. So यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेबर के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में. बिफोर दैट लेट्स हैव ए क्विक लुक एट इट्स हिस्ट्री. नाउ कई सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है जहाँ पे कंटिन्यूसली वर्क चलता रहता है, कई सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है जहाँ पे बिल्कुल सीजनल नेचर है, राइट. नाउ जहाँ पे सीजनल नेचर है ऑब्वियसली वहाँ पे उनको कॉन्ट्रैक्ट लेबर ही रखना पड़ेगा, वरना ईयर राउंड उनको मेंटेन करना मुश्किल होगा. सो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता रहा 19th एंड 20th सेंचुरी में, अकॉर्डिंगली धीरे धीरे टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब लेबर को किस तरह से रखना है, परमानेंट रखना है, कैजुअल रखना है, कॉन्ट्रैक्ट पे रखना है, उस तरह से अलग अलग तरीके के लेबर वो आया है. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ दोज हु आर बीइंग एम्प्लॉयड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, उनके लिए एक्सक्लूसिवली ये एक्ट बनाया गया है. सो द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970 मेजरली एम्स टू रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड प्रोवाइड फॉर इट्स एबॉलिशन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस. क्योंकि जहां पे कंटिन्यूटी है रिक्वायरमेंट, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट पे लगाना नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट अपना वो बचाने के लिए, मतलब कुछ सेव करने के लिए, जहाँ पे कंटिन्यूसली रिक्वायरमेंट है वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट पे लगा देते हैं, क्योंकि उनके कंडीशंस अलग है, उनको बोनस वो सब कम मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस तरह से रहता है. तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, मतलब लेबर को बिल्कुल अपने राइट्स का सही से यूटिलाइज हो एंड दे शुड गेट व्हाट दे उनका राइट जो है वो मिलना चाहिए, उसकी वजह से इंडस्ट्रीज में उनको रेगुलेट करना ही पड़ेगा. एंड फ्यू इंडस्ट्रीज में जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके, तो वहाँ पे इसको एबॉलिश करना पड़ेगा. सो इन दैट वे एक बैलेंस्ड नेचर के लिए दे हैव कम अप, इंडियन गवर्नमेंट हैज कम अप विद दिस एक्ट. जैसे ILO ने भी इंटरनेशनल लेवल पे अपने स्तर पे उन्होंने काम किया है रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट लेबर. सो इंडिया ने भी अपने इसमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया है. सो हियर एज आई हैव सेड अर्लियर आल्सो, इट एम्स टू रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड प्रोवाइड फॉर इट्स abolition in certain circumstances. Which of the following is not a circumstance where abolition of contract labor may be considered? Where the work is perennial in nature and is necessary for the functioning of the establishment, obviously वहां पे इसकी जरूरत नहीं है. okay, where the work is done in a core activity of the establishment, core मतलब obviously चलते ही रहना चाहिए, तो यहाँ पे भी नहीं चाहिए उनको. where the contractor is not registered or has violated the provisions of the act, उनके लिए तो है ही नहीं ये. okay, where the work is of seasonal nature and can be done by regular employees, यहाँ पे जहाँ पे भी seasonal nature है वहाँ पे ये is not a circumstance where abolition of contract labor may be considered, वहाँ पे ये चाहिए. तो hence D is the correct answer in this case. Moving on to our next question. So consider the following statements regarding the applicability of the Contract Labor, that is Regulation and Abolition Act 1970. Which of the statements given below is or are correct? So that applies to establishments where 20 or more workmen are employed or were employed on any day of the preceding 12 months as contract labor. So yes, this is true. ये true है, 20 members या उससे ज़्यादा है workmen, तो definitely it would be applicable for them. Along with that, अगर contractor भी कर रहा है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ही नहीं, दैट इज एस्टेब्लिशमेंट्स ने कॉन्ट्रैक्ट लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर को लेके आ रहा है, उनके लिए भी 20 प्लस रहेगा, तो डेफिनेटली दैट दीज ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दिस एक्ट वुड बी एप्लीकेबल फॉर देम. The act extends to establishments performing only intermittent or casual work. यहाँ पे actually abolished है, इनके लिए जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर ही चाहिए, राइट. सो इट्स नॉट कंप्लीटली अबॉलिश्ड, रेगुलेशन वाला वो यहाँ पे रहेगा. बट इट इज एप्लीकेबल टू दोज एस्टेब्लिशमेंट्स, मतलब जहाँ पे अबॉलिश होना चाहिए, मतलब फुल टाइम बड़े एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए जहाँ पे कंटिन्यूस वर्क चल रहा है. एंड इट इज एप्लीकेबल टू दीज एस्टेब्लिशमेंट वेयर इंटरमीडिएट और कैजुअल वर्क होगा, क्योंकि यहाँ रेगुलेट करना चाहिए. सो इट इज एप्लीकेबल टू ऑल. सो दिस इज द false statement. The determination of whether the work is intermittent or casual labor is decided by the appropriate government after consultation with the central or state board, and the decision is final. Yes, accordingly only they will decide. So this is true. So here both 1 and 3 are only true. B is false in this case. Okay.
So moving on to our next question. So it's from the same section 1 of the Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970, related to the nature of work that deemed to be intermittent. जहाँ पे परमानेंट है वहाँ पे एबॉलिश होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर, जहाँ पे इंटरमिटेंट है वहाँ पे रेगुलेट करना चाहिए इसको, सो दैट देयर राइट्स कैन बी प्रोटेक्टेड, राइट. सो उसी के बेसिस पे किस तरह के काम को हम लोग इंटरमिटेंट या टेम्पररी बोलेंगे, या किस तरह के काम को हम लोग परमानेंट बोलेंगे, उस डेफिनेशंस किस तरह से होंगे यहाँ पे. Okay, so work performed for more than 120 days in the preceding 12 months is not considered intermittent. Yes, because they are permanent. 120 days से ज़्यादा हुआ है कोई भी काम of any nature, then that would be considered as permanent, and वहाँ पे contract labor को नहीं लगा सकते. So this is true. Seasonal work performed for more than 60 days in a year is considered intermittent. No, seasonal work जब भी 60 days के अंदर वो खत्म कर रहे हैं by any reason, then we have to consider that particular work as intermittent, and जहाँ पे ये contract labor का regulation लागू होता है. So here only one is true, the first statement is true, so only one only is true in this case. So A is the correct answer when it comes to किस तरह के कितने days का work को हम लोग इसमें consider कर रहे हैं. Coming to the next question, a person who supplies goods or articles of manufacture to an establishment but does not undertake to produce a given result through contract labor is considered as a contractor under the Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970. Which of the following is true? So here, see, when it comes to the definitions, okay, अगर हम लोग definitions का देखेंगे, contract labor मतलब he is that workman who shall be deemed to be employed as contract labor when he is hired in such a work by or through a contractor, मतलब by the contractor or through the contractor. थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वो सब भी रहेंगे, कॉन्ट्रैक्टर वो खुद ही करवा रहा है काम. इन सच केस अगर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को जानने की भी जरूरत नहीं, विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, दैट पर्टिकुलर लेबर इज कंसिडर्ड एज द कॉन्ट्रैक्ट लेबर. Okay, and contractor in relation to an establishment is a person who undertakes to produce a given result for the establishment, okay, other than just merely supplying of goods and articles of manufacture to the एस्टेब्लिशमेंट. सो उनको कॉन्ट्रैक्टर बोलता है. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सप्लाई ही कर रहा है, बट समटाइम्स उसको रिजल्ट ड्रिवन वर्क भी करवाना पड़ेगा लेबर से. इन दैट केस ऑल्सो इज कंसिडर्ड एज ए कॉन्ट्रैक्टर. सो यहाँ पे but does not undertake, so he will undertake, actually he has to undertake to produce a given result in wherever required. Okay, so this statement is false, as the definition of contractor excludes a person who merely supplies goods or articles of manufacture, because that person also has to undertake to produce a given result through the contract labor. Okay, तो उसी ऐसे ही person को हम लोग contractor बोलेंगे as per this act. So here the correct answer is B. Moving on to our next question, which of the following statements regarding the terms controlled industry and principal employer as defined under the relevant labor laws is or are correct? क्योंकि कई सारे labor laws में हमें ये देखने को मिला था. And yes, a controlled industry refers to any industry whose control by the union is deemed expedient in the public interest through a declaration by central act. Yes, that kind of industries are called as controlled industries. Even the Industries Development and Regulation Act 1951, it defines the controlled industry where सेंट्रल गवर्नमेंट का ही से होगा, लाइक योर ऑयल रिफाइनरीज, एटॉमिक इंडस्ट्रीज, मिनरल इंडस्ट्रीज, कोल माइंस, नॉन कोल माइंस, शुगर इंडस्ट्री, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आता है, बिकॉज इट डीम्स इट टू बी द ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. ओके, सो जो फर्स्ट स्केड्यूल है ऑफ द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, वो इनका एक लिस्ट भी देता है, एंड टाइम एंड अगेन जब भी रिक्वायरमेंट होगा तो उसमें चेंजेस होते रहेंगे. ओके, सो दिस इज वेरी मच ट्रू. नाउ in relation to a factory, the principal employer is always the owner or occupier regardless of whether a manager is named under the Factories Act. जहाँ पे भी मैनेजर को हम लोग Factories Act 1948 में मेंशन कर रहे हैं, then he or she is considered as the principal employer. ओके, सो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर फैक्ट्री के लिए ओनर भी हो सकता है, ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री भी हो सकता है, और द पर्सन हु हैज बीन नेम्ड एज अ मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री.
वही कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का हो तो द हेड ऑफ द ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट विल बी कंसिडर्ड एज द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। वही हम लोग अगर कोई माइन में देखेंगे, द ओनर और द एजेंट ऑफ द माइन, एंड वेयर अगर कहीं पे कोई पर्सन नेम्ड है एज अ मैनेजर ऑफ द माइन, डेफिनेटली दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज द principal employer. In any other establishment, again the person who is responsible for supervision and control of the establishment complete, then that person will be considered as the principal employer. So this is false. For a mine, the principal employer includes the owner, agent or manager of the mine. So this is very much true. So here in this case, both 1 and 3 are true. So here C is the correct answer. अच्छा, यहाँ B भी है ना, sorry. So इसको 1 and 2 कर देते हम लोग, इसको 1 and 3 कर देते. So C will be the correct answer here. Sorry for the goof up. So moving on to our next question. As per the said act, जो अभी हम लोग करने हैं, Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970, there is a statement and you have to tell me which of the following statement, अगर statement true है, false है, and इसका explanation. So statement ये कहता है, person employed as a supervisor in a factory drawing a monthly salary of 600 and performing duties that are mainly as managerial nature is considered a workman under the relevant labor laws. True or false? See, when it comes to this kind of question, ये कई जगह पे लेबर लॉस में ये एप्लीकेबल रहेगा, जहां पे भी 500 रुपीज से ज्यादा वो सैलरी ड्रॉ कर रहा है एंड परफॉर्मिंग मेनली इन द मैनेजरियल नेचर role, then that or supervisory role, that person will not be considered as workman. So here this statement is false, as the definition of the workman excludes a person employed in a supervisory capacity who draws wages exceeding rupees 500 per person, जो भी per exercise और जो भी wage है, functions mainly in the managerial nature, that he or she will not be considered as a workman. Okay. सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे हम लोग सेक्शन 3 का कर रहे हैं, जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का जो फंक्शन है, किस तरह से वो ऑर्गेनाइज होता है, वो सब देखेंगे. सो नाउ इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट दैट शेल कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड मेजरली टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एनी मैटर्स arising आउट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट. किस तरह से करना है एंड उसको किस तरह से, अगर कुछ चेंजेस लाना है तो किस तरह से करना है, वो सब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के अंडर ही रहता है. ठीक है. एंड नाउ which of the following statements regarding the central advisory contract labor board under section 3 of the Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970 is or are correct? The board advises the central government on matters related to the administration of the act and performs functions assigned under the act. ओके, उनका रेगुलेशन ये सब वही करते हैं ना. बोर्ड का कॉम्पोजिशन क्या क्या है, एक तो चेयरमैन होगा हु इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर भी रहेगा, एंड हु हैपेंस टू बी द चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल, ही विल बी सर्विंग एज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द बोर्ड. उसके बाद मेंबर्स होने चाहिए जो इट शुड नॉट एक्सीड 17 मेंबर्स, not greater than 17 but not less than 11 as well. greater than 17 नहीं होनी चाहिए, less than 11 नहीं होनी चाहिए. टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स. ना उसमें कौन कौन रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर सकता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो नॉमिनेट कर सकता है, जैसे रेलवेज का है, कोल इंडस्ट्रीज का है, वर्कमैन, कॉन्ट्रैक्टर्स, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, वो उनको इसमें रिप्रेजेंट करवा देगा सेंट्रल बोर्ड में. एंड द नंबर ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द वर्कमैन, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ एम्प्लॉयर की तरफ से ही नहीं, ओके, एम्प्लॉयज का भी जो वर्कमैन है उनका भी उसमें बोर्ड में members होने चाहिए. So the number of members representing the workmen must be greater than the number of members representing the principal employers and contractors. ऐसा नहीं है, दोनों का equal होना चाहिए. So this is a false statement. ये true statement है, ये true statement है. So in this case, as per the statements that have been given, only 1 and 2 are true. So hence here A is the correct answer. नो, अभी हमने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का देखा है, अभी स्टेट एडवाइजरी बोर्ड देखेंगे. स्टेट गवर्नमेंट इसको
कर सकता है constitute and majorly to advise the state government on any matters arising out of the administration of the said act, and also functions सही से हो रहे कि नहीं and all that everything will be carried out by this state advisory board. Okay, the State Advisory Contract Labour Board, constituted under the Section 4 of the Contract Labour Regulation and Abolition Act 1970, has a minimum of 9 and maximum of 11. Central वाले में क्या है? Maximum of 17, minimum of 11, right? Following members nominated by the state government to represent various interests. ओके उस बोर्ड पे जैसे वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट करता है सेम यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट चेयरमैन होगा जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, लेबर कमिश्नर एक्स ऑफिशियो होगा, अगर वो नहीं है उस स्टेट में तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट एक और ऑफिसर को नॉमिनेट करेगा. नंबर्स तो यहाँ पे हमने दे दिया है. एंड रिप्रेजेंटेशन सभी से सही से होना चाहिए, मतलब अगर वर्कमैन है, कॉन्ट्रैक्टर्स है एंड द एम्प्लॉयज एवरीथिंग वर्कमैन इन दिस केस वो सब सही से होना चाहिए. नाउ हियर द नंबर ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग वर्कमैन शुड नॉट बी लेस देन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द नॉमिनेटेड टू रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स एंड द कॉन्ट्रैक्टर्स. थोड़ा ज्यादा भी होगा तो चलेगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए, ठीक है. सो इट शुड नॉट बी लेस देन द नंबर. So here C is the correct answer when it comes to State Advisory Contract Labour Board. Now coming to the section 5 of the Contract Labour Regulation and Abolition Act 1970, जहाँ पे भी requirement है, the central board or the state board they have the right to constitute committees. ओके नाउ जब भी कोई कमिटी अगर एस्टैब्लिश हुआ है उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है अंडर दिस सेक्शन 5. Now, under this section 5 of the said act, which of the following statements is or are correct regarding the constitution and functioning of the committees by the central or state board? दोनों में से कोई भी कर सकता है अपने requirement के हिसाब से. Committees may be constituted by the central or state board for any purpose it deems fit. अगर वहाँ requirement है, कुछ extra उनको information चाहिए या फिर कुछ discussion चाहिए, सही से उनको एक solution चाहिए, तो उस time पे वो different as per the industry they can constitute the committee and accordingly they can incorporate people. So this is very much true. Members of such committees are entitled to fees and allowances for attending meetings regardless of their affiliation with the government or any corporation. अगर वो already एक government corporation या government organization या institution के employee है then they will not be entitled to any fees or allowances. वही बाहर से किसी बंदे को लेके आ रहे हैं to get some information और फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर कुछ टेक्निकलिटी है, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए, उस टाइम पे अगर किसी बाहर के आदमी को अदर दैन फ्रॉम दिस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन अगर लेके आ रहे हैं तो डेफिनेटली दे हैव टू बी पेड एज पर द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स. उनको फीस एंड अलावेंसेज वो मीटिंग अटेंड करने के लिए एंड ऑल दैट हैज टू बी पेड एंड द प्रोसीजर्स जो भी ट्रांजेक्शंस होगा दैट नीड्स टू बी फुलफिल्ड. सो दिस इज फॉल्स. So the time, place and procedure for committee meetings are determined as prescribed by the rules. Obviously वो होगा तो ही वो सभी आके मिल पाएंगे. So जो भी rules laid out है as per this section 5, so वो time, place, procedure किस तरह से वो start करेंगे मीटिंग को, कौन initiate करेगा, इनकी contribution किस तरह से कहाँ पे चाहिए, and everything would be predetermined and मतलब सब discuss होने के बाद ही होगा. So yes, this is also true. So under section 5 here when we look at the rules and regulations for the regarding the constitution and functioning of the committees, then here only 1 and 3 are true. So B is the correct answer. So moving on to our next section where it looks into the appointment of the registering officers. जिनको appropriate government they may appoint such persons being gazetted officers of the government जहाँ पे भी requirement है and it is जो भी appoint करेगा they will, that is in this case appropriate government will define the limits within which the registering officer shall exercise their powers conferred on him by this act. So which of the following statements is correct regarding the appointment of registering officers under section 6 of the Contract Labour Regulation and Abolition Act 1970 जहाँ पे भी ये registration ये सब होगा so as to कौन सी इंडस्ट्रीज में आता है कौन सा नहीं है राइट तो उसके लिए रजिस्टर तो करवाना पड़ेगा. फॉर दैट दिस पर्सन विल बी द राइट पर्सन टू बी रीच्ड आउट. सो हियर द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में अपॉइंट गेस्टेड ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट एज द रजिस्टरिंग ऑफिसर्स इन दिस केस. ओके सो हियर इन दिस केस डी इज द correct answer. Moving on to our next question, section 7 for the registration of certain establishments. Under section 7 of the Contract Labour Regulation and Abolition Act 1970,
Which of the following statements is or are correct regarding the registration of the establishments under this act? Every principal employer of an establishment to which the act applies must apply for registration in the prescribed manner. जहाँ पे भी requirement है वहाँ पे करना चाहिए ये. Yes, this is true. The registering officer can entertain late applications for registration if satisfied that the applicant was prevented from applying on time. Okay. ये ट्रू है. Yes, sometimes अगर कुछ प्रॉब्लम है तो जनरली रजिस्टरिंग ऑफिसर को ये राइट रहता है कि दैट ही कैन एंटरटेन दैट. A certificate of registration is issued only if the application is approved by the appropriate government authority. यहाँ पे जो application approve करने का है, the gazetted officer as appointed by the government, right, appropriate government. So in this case the registering officer. So यहाँ पे appropriate government का कुछ वो नहीं है. So here this is false. So in this case only 1 and 2 are the true statements but not 3. So A is the correct answer. Moving on to section 8 of the Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970, the registration of an establishment can be revoked by the registration officer. कौन से ऐसे conditions में registration officer उनका जो registered वो registration है वो revoke कर सकता है? जब भी उनको लगता है कि the reason जो भी reason के basis पे ये registration हुआ है वो useless है या ineffective है और उन्होंने कुछ गलत इंफॉर्मेशन देके ये किया है, in that case definitely he can revoke that. So here the registration was obtained by misrepresentation or suppression of material facts. In that cases the registration can be revoked by the registration officer. Okay, again with the previous approval of the appropriate government he can revoke the registration. So in this case, yes, this is very much true. B is the correct answer here. Now under section 9 of the Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970, which of the following is a consequence of non-registration or revocation of registration of an establishment? See, जब भी revocation होगा या फिर कोई establishment है, no principal employer of an establishment can employ contract labor in that establishment after the expiry of the period जिसके लिए उन्होंने license लिया है और आफ्टर द रेवोकेशन. दोनों केसेस में दे कैन नॉट एम्प्लॉय एनी कॉन्ट्रैक्ट लेबर अनटिल अनलेस उसका रिन्यूअल हो जाए या फिर जिस रीजन की वजह से वो रेवोकेशन हुआ है उसको वो करेक्ट करके फिर से अप्लाई करें. If the establishment is required to be registered but which has not been registered, that is उस condition में भी they cannot employ. If an establishment whose registration has been revoked, in that condition also they cannot employ contract labor. कोई और रास्ता नहीं है, definitely they have to apply for the registration and get it licensed. So here the establishment, the principal employer is prohibited from employing contract labor in the establishment अगर उसके पास नहीं है license या registration और revocation हुआ है license या registration का और expiry हो गया है existing license का, in these 3 cases. So here in this case C is the correct answer. Moving on to our next question. Under section 10 of the Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970, which of the following factors must the appropriate government consider before prohibiting the employment of contract labor in an establishment? कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एबॉलिश कब कर सकते, मतलब उसको एबॉलिश कब कर सकते हैं जहां पे कंटिन्यूटी ऑफ वर्क हो, राइट. ओके, कंटिन्यूटी ऑफ वर्क जहां पे हो वहां पे उनको वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं लगा सकते, राइट. उनको तो कंटिन्यूअस वाला लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों के रूल्स अलग अलग है, रेगुलेशंस अलग अलग है. सो उनको क्या क्या फैक्टर्स है जो उनको देखना पड़ेगा बिफोर अप्लाइंग दैट. सो वेदर द वर्क इज इंसिडेंटल और टू डू नेसेसरी फॉर द इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चर, ऑक्यूपेशन कैरिड आउट इन द एस्टैब्लिशमेंट, अगर वो इंसिडेंटल है वर्क और टेम्पररी है वो देखना पड़ेगा. ट्रू, वेरी मच. वेदर द वर्क इज ऑफ पेरिनियल नेचर और ऑफ सफिशिएंट ड्यूरेशन कंसिडरिंग द इंडस्ट्रीज नेचर. ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं का है, इंडस्ट्री का नेचर भी उनको देखना पड़ेगा. बेस्ड ऑन दैट ओनली दे कैन कंसिडर वेदर इट इज ऑफ पेरिनियल नेचर और इंटरमिटेंट और your temporary in nature. So this is also true. Whether the work is ordinarily done through regular workmen in that establishment or another similar establishment. So simple, again the same second point only थोड़ा सा
उनको घुमा फिरा के आपको दिया है सो एज टू कंफ्यूज यू. सो ऑलमोस्ट इंडस्ट्री का जिस तरह से उसी तरह से वो देखेंगे, ऐसे नहीं कुछ एक्सेप्शंस की वजह से वो करेंगे. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. वेदर द नेचर ऑफ द वर्क रिक्वायर्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए कंसिडरेबल नंबर ऑफ फुल टाइम वर्कमैन. ओके, फुल टाइम वर्कमैन चाहिए या किस तरह से, बेस्ड ऑन दैट ओनली दे कैन टेक एन डिसीजन. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो इन दिस केस all these statements are true in considering the factors that must the appropriate government should consider before prohibiting the employment of contract labor in an establishment. They have to look into all these, only then they can say, they can consider this is prohibiting of the employment of contract labor. मतलब contract labor को prohibit कर सकती है. So in this case all these statements are true. Moving on to our next question, which of the following statements is correct regarding the appointment of licensing officers under section 11 of the Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970. Now जहाँ पे भी licensing officers आएंगे, there the appropriate government is the person that can appoint such persons being gazetted officers of the government, जो already gazetted officers है government के, as the licensing officers who can provide licenses to the establishment. So here the appropriate government may appoint gazetted officers of the government as the licensing officers, and किस jurisdiction में काम करना पड़ेगा, उनके limits क्या है, क्या what are the powers that are there, all that would be mentioned as per provided by the government, that is appropriate government only who is appointing such licensing officers. So here in this case C is the correct answer. सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा है कई सारे जो इस एक्ट का जो कंटेंट है, हमने वी हैव प्रैक्टिस्ड वेरी वेल इन द फॉर्म ऑफ MCQs. सो अभी now I would like to highlight one thing. See, EduTap has or it has launched few courses related to the upcoming UPSC EPFO 2025 examination, where students are targeting both APFC and EOR-AO or APFC or EOR-AO either. Okay, for the 2025 examination, what are the three courses that they are offering currently? Let's have a quick look at them. एक तो है मास्टर कोर्स. नाउ मास्टर कोर्स में क्या है, ये उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जो बिल्कुल नए हैं इस फील्ड में, मतलब अभी प्रिपरेशन नया शुरू किया है उन्होंने, एंड दे वांट एवरीथिंग एट वन प्लेस, लाइक द PDFs, वीडियोस, लाइव क्लासेस, चैप्टर क्विजेस, जो आपके टेस्ट क्विजेस है, सब कुछ एक ही जगह पे मिलेगा. एंड अलॉन्ग विद दिस आपको मेंटरशिप भी बहुत सही से मिलेगा, क्योंकि कुलदीप सर एवरी वीक आपसे ऑनलाइन मिलके आपके जितने भी डाउट्स है वो रिजॉल्व करेंगे. एंड देन क्योंकि इसमें बहुत सारा कंटेंट है तो कई बार हमें स्ट्रैटेजी बनाना भी थोड़ा मुश्किल होता है. दैट ऑल्सो विल हेल्प यू आउट कि किस तरह से कंटेंट को यूटिलाइज करना है आपको, सो दैट यू कैन यूज इट वेरी एफिशिएंटली. ओके, नाउ नेक्स्ट आता है टेस्ट सीरीज प्लस. नाउ इसमें क्या है, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि थोड़ा प्रिपरेशन वो अपनी तरफ से भी कर रहे हैं, बट कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो उन्होंने कभी पढ़ा नहीं होगा, तो उनको थोड़ा हेल्प चाहिए. लाइक कभी फॉर एग्जांपल पॉलिटी हो गया, फॉर एग्जांपल लेबर लॉस एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस. उसमें क्या है, बच्चे कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ले सकते हैं अलॉन्ग विद दैट टेस्ट सीरीज भी, सो दैट उनका प्रैक्टिस भी हो जाए सभी सब्जेक्ट्स का. नाउ थर्ड कोर्स है आपका टेस्ट सीरीज. ये उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी एक बार एग्जाम दे दिए या फिर पूरा प्रिपरेशन खुद से ही कर रहे हैं, बट नाउ दे वांट सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड एक रियल एग्जाम का फील मिले, उस तरह के मॉक टेस्ट. सो वो सब आपको इस कोर्स में मिलेंगे. सो ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेस आर देयर, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन रीच आउट टू एनी ऑफ द पर्सनल ऑफ EduTap and get your doubts clarified before taking an informed decision of purchasing any of these courses. Thank you very much, friends, and I hope you really have liked this session. See you all in the next session very soon. Thank you very much once again. Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination, as part of which हम लोग करेंगे 15 MCQs a day. ओके, एंड उसमें आज हम लोग करने वाले हैं लेबर लॉस, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970. ये पार्ट 1 है हम जो करने वाले हैं.
And now why is this series important? Now be it UPSC EPFO APFC का एग्जाम और इट इज EO और AO का एग्जाम, दोनों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज कि टोटल 120 क्वेश्चंस में अराउंड 15 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दीज टॉपिक्स ओनली, and which is actually a very good number, and given that context इसका weightage भी high है and also scoring potential भी high है. अगर सही से basic level से भी हम लोग अच्छे तरीके से ये सारे कर लेंगे तो 10+ questions आप आराम से solve कर सकते हो. Okay, so if you are really आप seriously prepare कर रहे हो तो I suggest you to watch these sessions regularly. Okay, and moreover we are expecting the notification of UPSC EPFO 2025 very soon, so hope you utilize these sessions very efficiently. Let's get into the questions now. So यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेबर के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में. बिफोर दैट लेट्स हैव ए क्विक लुक एट इट्स हिस्ट्री. नाउ कई सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है जहाँ पे कंटिन्यूसली वर्क चलता रहता है, कई सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है जहाँ पे बिल्कुल सीजनल नेचर है. राइट नाउ जहाँ पे सीजनल नेचर है ऑब्वियसली वहाँ पे उनको कॉन्ट्रैक्ट लेबर ही रखना पड़ेगा, वरना ईयर राउंड उनको मेंटेन करना मुश्किल होगा. सो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता रहा 19th एंड 20th सेंचुरी में, अकॉर्डिंगली धीरे धीरे टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब लेबर को किस तरह से रखना है, परमानेंट रखना है, कैजुअल रखना है, कॉन्ट्रैक्ट पे रखना है, उस तरह से अलग अलग तरीके के लेबर वो आया है. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ दोज हु आर बीइंग एम्प्लॉयड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, उनके लिए एक्सक्लूसिवली ये एक्ट बनाया गया है. सो द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970 मेजरली एम्स टू रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड प्रोवाइड फॉर इट्स एबॉलिशन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस. क्योंकि जहां पे कंटिन्यूटी है रिक्वायरमेंट, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट पे लगाना नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट अपना वो बचाने के लिए, मतलब कुछ सेव करने के लिए, जहाँ पे कंटिन्यूसली रिक्वायरमेंट है वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट पे लगा देते, क्योंकि उनके कंडीशंस अलग है, उनको बोनस वो सब कम मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस तरह से रहता है. तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, मतलब लेबर को बिल्कुल अपने राइट्स का सही से यूटिलाइज हो एंड दे शुड गेट व्हाट दे उनका राइट जो है वो मिलना चाहिए, उसकी वजह से इंडस्ट्रीज में उनको रेगुलेट करना ही पड़ेगा. एंड फ्यू इंडस्ट्रीज में जहाँ पे ये इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके, तो वहाँ पे इसको एबॉलिश करना पड़ेगा. सो इन दैट वे एक बैलेंस्ड नेचर के लिए दे हैव कम अप, इंडियन गवर्नमेंट हैज कम अप विद दिस एक्ट. जैसे ILO ने भी इंटरनेशनल लेवल पे अपने स्तर पे उन्होंने काम किया है रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट लेबर. सो इंडिया ने भी अपने इसमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया है. सो हियर एज आई हैव सेड अर्लियर आल्सो, इट एम्स टू रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड प्रोवाइड फॉर इट्स abolition in certain circumstances. Which of the following is not a circumstance where abolition of contract labor may be considered? Where the work is perennial in nature and is necessary for the functioning of the establishment, obviously वहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है. Okay, where the work is done in a core activity of the establishment, core मतलब obviously चलते ही रहना चाहिए, तो यहाँ पे भी नहीं चाहिए उनको. Where the contractor is not registered or has violated the provisions of the act, उनके लिए तो है ही नहीं ये. Okay, where the work is of seasonal nature and can be done by regular employees, यहाँ पे जहाँ पे भी seasonal nature है वहाँ पे ये is not a circumstance where abolition of contract labor may be considered, वहाँ पे ये चाहिए. तो hence D is the correct answer in this case. Moving on to our next question. So consider the following statements regarding the applicability of the Contract Labor, that is Regulation and Abolition Act 1970. Which of the statements given below is or are correct? So that applies to establishments where 20 or more workmen are employed or were employed on any day of the preceding 12 months as contract labor. So yes, this is true. ये true है, 20 members या उससे ज़्यादा है workmen, तो definitely it would be applicable for them. Along with that, अगर contractor भी कर रहा है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ही नहीं, दैट इज एस्टेब्लिशमेंट ने अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर को लेके आ रहा है, उनके लिए भी 20+ रहेगा, तो डेफिनेटली दैट दीज ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दिस एक्ट वुड बी एप्लीकेबल फॉर देम. The act extends to establishments performing only intermittent or casual work. यहाँ पे एक्चुअली abolished है, इनके लिए जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर ही चाहिए. राइट, सो
इट्स नॉट कंप्लीटली अबॉलिश्ड, रेगुलेशन वाला वो यहाँ पे रहेगा, बट इट इज एप्लीकेबल टू दोज एस्टेब्लिशमेंट्स, मतलब जहाँ पे अबॉलिश होना चाहिए, मतलब फुल टाइम बड़े एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए जहाँ पे कंटिन्यूस वर्क चल रहा है, एंड इट इज एप्लीकेबल टू दीज एस्टेब्लिशमेंट वेयर इंटरमीडिएट और कैजुअल वर्क होगा, क्योंकि यहाँ रेगुलेट करना चाहिए, सो इट इज एप्लीकेबल टू ऑल. सो दिस इज द false statement. The determination of whether the work is intermittent or casual labor is decided by the appropriate government after consultation with the central or state board, and the decision is final. Yes, accordingly only they will decide. So this is true. So here both 1 and 3 are only true. B is false in this case. Okay. So moving on to our next question. So it's from the same section 1 of the Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970, related to the nature of work that deemed to be intermittent. जहाँ पे परमानेंट है वहाँ पे अबॉलिश होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर, जहाँ पे इंटरमिटेंट है वहाँ पे रेगुलेट करना चाहिए इसको, सो दैट देयर राइट्स कैन बी प्रोटेक्टेड, राइट. सो उसी के बेसिस पे किस तरह के काम को हम लोग इंटरमिटेंट या टेम्पररी बोलेंगे, या किस तरह के काम को हम लोग परमानेंट बोलेंगे, उस डेफिनेशंस किस तरह से होंगे यहाँ पे. Okay, so work performed for more than 120 days in the preceding 12 months is not considered intermittent. Yes, because they are permanent. 120 days से ज़्यादा हुआ है कोई भी काम of any nature, then that would be considered as permanent, and वहाँ पे contract labor को नहीं लगा सकते. So this is true. Seasonal work performed for more than 60 days in a year is considered intermittent. No, seasonal work जब भी 60 days के अंदर वो खत्म कर रहे हैं by any reason, then we have to consider that particular work as intermittent, and जहाँ पे ये contract labor का regulation लागू होता है. So here only one is true, the first statement is true, so only one only is true in this case. So A is the correct answer when it comes to किस तरह के कितने days का work को हम लोग इसमें consider कर रहे हैं. Coming to the next question, a person who supplies goods or articles of manufacture to an establishment but does not undertake to produce a given result through contract labor is considered as a contractor under the Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970. Which of the following is true? So here see, when it comes to the definitions, okay, अगर हम लोग definitions का देखेंगे, contract labor मतलब he is that workman who shall be deemed to be employed as contract labor when he is hired in such a work by or through a contractor, मतलब by the contractor or through the contractor. थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वो सब भी रहेंगे, कॉन्ट्रैक्टर वो खुद ही करवा रहा है काम. इन सच केस अगर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को जानने की भी जरूरत नहीं, विथ और विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, दैट पर्टिकुलर लेबर इज कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट लेबर. Okay, and contractor in relation to an establishment is a person who undertakes to produce a given result for the establishment, okay, other than just merely supplying of goods and articles of manufacture to the establishment. So उनको contractor बोलता है. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सप्लाई ही कर रहा है, but sometimes उसको result driven work भी करवाना पड़ेगा लेबर से. In that case also he is considered as a contractor. So यहाँ पे but does not undertake, so he will undertake, actually he has to undertake to produce a given result in wherever required. Okay, so this statement is false, as the definition of contractor excludes a person who merely supplies goods or articles of manufacture, because that person also has to undertake to produce a given result through the contract labor. Okay, तो उसी ऐसे ही person को हम लोग contractor बोलेंगे as per this act. So here the correct answer is B. Moving on to our next question, which of the following statements regarding the terms controlled industry and principal employer as defined under the relevant labor laws is or are correct? क्योंकि कई सारे labor laws में हमें ये देखने को मिला था. And yes, a controlled industry refers to any industry whose control by the union is deemed expedient in the public interest through a declaration by central act. Yes, that kind of industries are called as controlled industries. Even the Industries Development and Regulation Act 1951, it defines the controlled industry where
सेंट्रल गवर्नमेंट का ही से होगा, लाइक योर ऑयल रिफाइनरीज, एटॉमिक इंडस्ट्रीज, मिनरल इंडस्ट्रीज, कोल माइंस, नॉन कोल माइंस, शुगर इंडस्ट्री, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आता, बिकॉज दैट इट डीम्स इट टू बी द ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. ओके, सो जो फर्स्ट स्केड्यूल है ऑफ द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 वो इनका एक लिस्ट भी देता है, एंड टाइम एंड अगेन जब भी रिक्वायरमेंट होगा तो उसमें चेंजेस होते रहेंगे. ओके, सो दिस इज वेरी मच ट्रू. Now, in relation to a factory, the principal employer is always the owner or occupier regardless of whether a manager is named under the Factories Act. जहाँ पे भी मैनेजर को हम लोग Factories Act 1948 में मेंशन कर रहे हैं, then he or she is considered as the principal employer. ओके, सो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर फैक्ट्री के लिए ओनर भी हो सकता है, ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री भी हो सकते हैं, और द पर्सन हु हैज बीन नेम्ड एज अ मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री. वही कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का हो तो द हेड ऑफ द ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट विल बी कंसिडर्ड एज द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर. वही हम लोग अगर कोई माइन में देखेंगे, द ओनर और द एजेंट ऑफ द माइन, एंड वेयर अगर कहीं पे कोई पर्सन नेम्ड है एज अ मैनेजर ऑफ द माइन, डेफिनेटली दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज द principal employer. In any other establishment, again the person who is responsible for supervision and control of the establishment complete, then that person will be considered as the principal employer. So this is false. For a mine, the principal employer includes the owner, agent or manager of the mine. So this is very much true. So here in this case both 1 and 3 are true. So here C is the correct answer. अच्छा, यहाँ B भी है ना, सॉरी. So इसको 1 and 2 कर देते हैं हम लोग, इसको 1 and 3 कर देते हैं. C will be the correct answer here. Sorry for the goof up. So moving on to our next question. As per the said act, जो अभी हम लोग करने Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970, there is a statement and you have to tell me which of the following statement, अगर statement true है, false है, and इसका explanation. So statement ये कहता है, person employed as a supervisor in a factory drawing a monthly salary of 600 and performing duties that are mainly as managerial nature is considered a workman under the relevant labor laws. True or false? See, when it comes to this kind of question, ये कई जगह पे लेबर लॉस में ये एप्लीकेबल रहेगा. जहाँ पे भी 500 रुपीज से ज़्यादा वो सैलरी ड्रॉ कर रहा है एंड परफॉर्मिंग मेनली इन द मैनेजरियल नेचर role, then that or supervisory role, that person will not be considered as workman. So here this statement is false, as the definition of the workman excludes a person employed in a supervisory capacity who draws wages exceeding rupees 500 per person, जो भी per exercise और जो भी wage है, functions mainly in the managerial nature, that he or she will not be considered as a workman. Okay. सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे हम लोग सेक्शन 3 का कर रहे हैं, जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का जो फंक्शन है, किस तरह से वो ऑर्गेनाइज होता है, वो सब देखेंगे. सो नाउ इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट दैट शेल कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड मेजरली टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एनी मैटर्स arising आउट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट. किस तरह से करना है एंड उसको किस तरह से अगर कुछ चेंजेस लाना है तो किस तरह से करना है, वो सब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के अंडर ही रहता है. ठीक है. एंड नाउ which of the following statements regarding the central advisory contract labor board under section 3 of the contract labor regulation and abolition act 1970 is or are correct? The board advises the central government on matters related to the administration of the act and performs functions assigned under the act. ओके, उनका रेगुलेशन ये सब वही करते हैं ना. बोर्ड का कॉम्पोजिशन क्या क्या है, एक तो चेयरमैन होगा हु इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर भी रहेगा एंड हु हैपेंस टू बी द Chief Labor Commissioner Central. He will be serving as an ex officio member of the board. उसके बाद members होने चाहिए जो it should not exceed 17 members, not greater than 17 but not less than 11 as well. Greater than 17 नहीं होनी चाहिए, less than 11 नहीं होनी चाहिए. Total number of members. Now उसमें कौन कौन रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर सकता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो नॉमिनेट कर सकता है, जैसे रेलवेज का है, कोल इंडस्ट्रीज का है, वर्कमैन, कॉन्ट्रैक्टर्स, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, वो उनको इसमें रिप्रेजेंट करवा देगा सेंट्रल बोर्ड में. एंड
द नंबर ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द वर्कमैन, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ एम्प्लॉयर की तरफ से ही नहीं, ओके, एम्प्लॉयज का भी जो वर्कमैन है उनका भी उसमें बोर्ड में members होने चाहिए. So the number of members representing the workmen must be greater than the number of members representing the principal employers and contractors. ऐसा नहीं है, दोनों का equal होना चाहिए. So this is a false statement. ये true statement है, ये true statement है. So in this case, as per the statements that have been given only 1 and 2 are true. So hence here A is the correct answer. नो, अभी हमने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का देखा है, अभी स्टेट एडवाइजरी बोर्ड देखेंगे. स्टेट गवर्नमेंट इसको कर सकता है कॉन्स्टिट्यूट एंड मेजरली टू एडवाइज स्टेट गवर्नमेंट ऑन एनी मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेड एक्ट एंड ऑल्सो फंक्शंस सही से हो रहे हैं कि नहीं एंड ऑल दैट एवरीथिंग विल बी कैरिड आउट बाय दिस स्टेट एडवाइजरी बोर्ड. Okay, the State Advisory Contract Labour Board constituted under the Section 4 of the Contract Labour Regulation and Abolition Act 1970 has a minimum of 9 and maximum of 11. Central वाले में क्या है? Maximum of 17, minimum of 11, right? Follow members nominated by the state government to represent various interests. ओके, उस बोर्ड पे जैसे वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, सेम यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट चेयरमैन होगा जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, लेबर कमिश्नर एक्स ऑफिशियो होगा. अगर वो नहीं है उस स्टेट में तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट एक और ऑफिसर को नॉमिनेट करेगा. नंबर्स तो यहाँ पे हमने दे दिया है एंड रिप्रेजेंटेशन सभी से सही से होना चाहिए. मतलब अगर वर्कमैन है, कॉन्ट्रैक्टर्स है एंड द एम्प्लॉयज, एवरीथिंग वर्कमैन इन दिस केस, वो सब सही से होना चाहिए. नाउ हियर द नंबर ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग वर्कमैन शुड नॉट बी लेस देन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द नॉमिनेटेड टू रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स एंड द कॉन्ट्रैक्टर्स. थोड़ा ज्यादा भी होगा तो चलेगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए, ठीक है. सो इट शुड नॉट बी लेस देन द नंबर. So here C is the correct answer when it comes to State Advisory Contract Labour Board. Now coming to the section 5 of the Contract Labour Regulation and Abolition Act 1970, जहाँ पे भी requirement है, the central board or the state board, they have the right to constitute committees. Okay, now जब भी कोई कमिटी अगर establish हुआ है उसके कुछ rules and regulations है under this section 5. Now, under this section 5 of the said act, which of the following statements is or are correct regarding the constitution and functioning of the committees by the central or state board? दोनों में से कोई भी कर सकता है अपने requirement के हिसाब से. Committees may be constituted by the central or state board for any purpose it deems fit. अगर वहाँ requirement है, कुछ extra उनको information चाहिए या फिर कुछ discussion चाहिए, सही से उनको एक solution चाहिए, तो उस time पे वो different, as per the industry, they can constitute the committee and accordingly they can incorporate people. So this is very much true. Members of such committees are entitled to fees and allowances for attending meetings regardless of their affiliation with the government or any corporation. अगर वो already एक government corporation या government organization या institution के employee है, then they will not be entitled to any fees or allowances. वही बाहर से किसी बंदे को लेके आ रहे हैं to get some information और फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर कुछ टेक्निकलिटी है, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए, उस टाइम पे अगर किसी बाहर के आदमी को अदर दैन फ्रॉम दिस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन अगर लेके आ रहे हैं तो डेफिनेटली दे हैव टू बी पेड एज पर द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स. उनको फीस एंड अलावेंसेज वो मीटिंग अटेंड करने के लिए एंड ऑल दैट हैज टू बी पेड एंड द प्रोसीजर्स जो भी ट्रांजेक्शंस होगा दैट नीड्स टू बी फुलफिल्ड. सो दिस इज फॉल्स. So the time, place and procedure for committee meetings are determined as prescribed by the rules. Obviously वो होगा तो ही वो सभी आके मिल पाएंगे. So जो भी rules laid out है as per this section 5, so वो time, place, procedure किस तरह से वो start करेंगे मीटिंग को, कौन initiate करेगा, इनकी contribution किस तरह से कहाँ पे चाहिए, and everything would be predetermined and मतलब सब डिस्कस होने के बाद ही होगा. So yes, this is also true. So under section 5 here, when we look at the rules and regulations for the regarding the constitution and functioning of the committees, then here only 1 and 3 are true. So B is the correct answer. So moving on to our next section where it looks into the appointment of the registering officers, जिनको
appropriate government, they may appoint such persons being gazetted officers of the government जहाँ पे भी requirement है, and it is जो भी appoint करेगा they will, that is in this case appropriate government will define the limits within which the registering officer shall exercise their powers conferred on him by this act. So which of the following statements is correct regarding the appointment of registering officers under section 6 of the Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970, जहाँ पे भी ये registration ये सब होगा so as to कौन सी इंडस्ट्रीज में आता है कौन सा नहीं है, राइट, तो उसके लिए रजिस्टर तो करवाना पड़ेगा. फॉर दैट दिस पर्सन विल बी द राइट पर्सन टू बी रीच्ड आउट. सो हियर द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में अपॉइंट गेस्टेड ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट एज द रजिस्टरिंग ऑफिसर्स इन दिस केस. Okay, so here in this case D is the correct answer. Moving on to our next question, section 7 for the registration of certain establishments. Under section 7 of the Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970, which of the following statements is or are correct regarding the registration of the establishments under this act? Every principal employer of an establishment to which the act applies must apply for registration in the prescribed manner. जहाँ पे भी requirement है वहाँ पे करना चाहिए. Yes, this is true. The registering officer can entertain late applications for registration if satisfied that the applicant was prevented from applying on time. Okay, ये true है. Yes, sometimes अगर कुछ problem है तो जनरली रजिस्टरिंग ऑफिसर को ये राइट रहता है कि दैट ही कैन एंटरटेन दैट. A certificate of registration is issued only if the application is approved by the appropriate government authority. यहाँ पे जो application approve करने का है, the gazetted officer as appointed by the government, right, appropriate government. So in this case the registering officer, so यहाँ पे appropriate government का कुछ वो नहीं है. So here this is false. So in this case only 1 and 2 are the true statements but not 3. So A is the correct answer. Moving on to section 8 of the Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970, the registration of an establishment can be revoked by the registration officer. कौन से ऐसे conditions में registration officer उनका जो registered वो registration है वो revoke कर सकता है? जब भी उनको लगता है कि the reason, जो भी reason के basis पे ये registration हुआ है वो useless है या ineffective है और उन्होंने कुछ गलत इंफॉर्मेशन देके ये किया है, in that case definitely he can revoke that. So here the registration was obtained by misrepresentation or suppression of material facts. In that cases the registration can be revoked by the registration officer. Okay, again with the previous approval of the appropriate government he can revoke the registration. So in this case, yes, this is very much true. B is the correct answer here. Now under section 9 of the Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970, which of the following is a consequence of non-registration or revocation of registration of an establishment? See, जब भी revocation होगा या फिर कोई establishment है, no principal employer of an establishment can employ contract labor in that establishment after the expiry of the period जिसके लिए उन्होंने license लिया है और आफ्टर द रेवोकेशन. दोनों केसेस में दे कैन नॉट एम्प्लॉय एनी कॉन्ट्रैक्ट लेबर अनटिल एंड अनलेस उसका रिन्यूअल हो जाए या फिर जिस रीजन की वजह से वो रेवोकेशन हुआ है उसको वो करेक्ट करके फिर से अप्लाई करें. If the establishment is required to be registered but which has not been registered, that is उस कंडीशन में भी they cannot employ. If an establishment whose registration has been revoked, in that condition also they cannot employ contract labor. कोई और रास्ता नहीं है, definitely they have to apply for the registration and get it licensed. So here the establishment, the principal employer is prohibited from employing contract labor in the establishment अगर उसके पास नहीं है लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन और रिवोकेशन हुआ है लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन का और एक्सपायरी हो गया है एग्जिस्टिंग लाइसेंस का. इन दीज 3 केसेस. सो हियर इन दिस केस C is the correct answer. Moving on to our next question. Under section 10 of the Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970, which of the following factors must the appropriate government consider before prohibiting the employment of contract labor in an establishment? कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एबॉलिश कब कर सकते, मतलब उसको एबॉलिश कब कर सकते हैं जहां पे कंटिन्यूटी ऑफ वर्क हो, राइट. ओके, कंटिन्यूटी ऑफ वर्क
जहाँ पे हो वहाँ पे उनको वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं लगा सकते, राइट? उनको तो कंटिन्यूस वाला लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों के रूल्स अलग अलग है, रेगुलेशंस अलग अलग है। सो उनको क्या क्या फैक्टर्स है जो उनको देखना पड़ेगा बिफोर अप्लाइंग दैट. सो वेदर द वर्क इज इंसिडेंटल और टू डू नेसेसरी फॉर द इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चर, ऑक्यूपेशन कैरीड आउट इन द एस्टेब्लिशमेंट, अगर वो इंसिडेंटल है वर्क और टेम्पररी है वो देखना पड़ेगा. ट्रू, वेरी मच. Whether the work is of perennial nature or of sufficient duration considering the industry's nature. ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं का है, इंडस्ट्री का नेचर भी उनको देखना पड़ेगा. Based on that only they can consider whether it is of perennial nature or intermittent or your temporary in nature. So this is also true. Whether the work is ordinarily done through regular workmen in that establishment or another similar establishment. So simple. Again the same second point only, थोड़ा सा उनको घुमा फिरा के आपको दिया है सो एज टू कंफ्यूज यू. सो ऑलमोस्ट इंडस्ट्री का जिस तरह से उसी तरह से वो देखेंगे, ऐसे नहीं कुछ एक्सेप्शंस की वजह से वो करेंगे. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. वेदर द नेचर ऑफ द वर्क रिक्वायर्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए कंसिडरेबल नंबर ऑफ फुल टाइम वर्कमैन. ओके, फुल टाइम वर्कमैन चाहिए या किस तरह से, बेस्ड ऑन दैट ओनली दे कैन टेक एन डिसीजन. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो इन दिस केस all these statements are true in considering the factors that must the appropriate government should consider before prohibiting the employment of contract labor in an establishment. They have to look into all these, only then they can say, they can consider this is prohibiting of the employment of contract labor. मतलब contract labor को prohibit कर सकते हैं. So in this case all these statements are true. Moving on to our next question, which of the following statements is correct regarding the appointment of licensing officers under section 11 of the Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970. Now जहाँ पे भी licensing officers आएंगे, there the appropriate government is the person that can appoint such persons being gazetted officers of the government, जो already gazetted officers है government के, as the licensing officers who can provide licenses to the establishment. So here the appropriate government may appoint gazetted officers of the government as the licensing officers, and किस jurisdiction में काम करना पड़ेगा, उनके limits क्या है, क्या what are the powers that are there, all that would be mentioned as per provided by the government, that is appropriate government only who is appointing such licensing officers. So here in this case C is the correct answer. सो फ्रेंड्स अभी तक हमने देखा है कई सारे जो इस एक्ट का जो कंटेंट है, हमने वी हैव प्रैक्टिस्ड वेरी वेल इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज. सो अभी now I would like to highlight one thing. See, EduTap has or it has launched few courses related to the upcoming UPSC EPFO 2025 examination, where students are targeting both APFC and E or AO, or APFC or E or AO either. Okay, for the 2025 examination, what are the three courses that they are offering currently? Let's have a quick look at them. एक तो है मास्टर कोर्स. नाउ मास्टर कोर्स में क्या है, ये उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जो बिल्कुल नए हैं इस फील्ड में, मतलब अभी प्रिपरेशन नया शुरू किया है इन्होंने, एंड दे वांट एवरीथिंग एट वन प्लेस, लाइक द पीडीएफ्स, वीडियोस, लाइव क्लासेस, चैप्टर क्विजेस, जो आपके टेस्ट क्विजेस है, सब कुछ एक ही जगह पे मिलेगा. एंड अलॉन्ग विद दिस आपको मेंटरशिप भी बहुत सही से मिलेगा, क्योंकि कुलदीप सर एवरी वीक आपसे ऑनलाइन मिलके आपके जितने भी डाउट्स है वो रिजॉल्व करेंगे. एंड देन क्योंकि इसमें बहुत सारा कंटेंट है तो कई बार हमें स्ट्रैटेजी बनाना भी थोड़ा मुश्किल होता है. दैट ऑल्सो विल हेल्प यू आउट कि किस तरह से कंटेंट को यूटिलाइज करना है आपको, सो दैट यू कैन यूज इट वेरी एफिशिएंटली. ओके, नाउ नेक्स्ट आता है टेस्ट सीरीज प्लस. नाउ इसमें क्या है, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि थोड़ा प्रिपरेशन वो अपनी तरफ से भी कर रहे हैं, बट कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो उन्होंने कभी पढ़ा नहीं होगा, तो उनको थोड़ा हेल्प चाहिए. लाइक कभी फॉर एग्जांपल पॉलिटी हो गया, फॉर एग्जांपल लेबर लॉस एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस. उसमें क्या है, बच्चे कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ले सकते हैं अलॉन्ग विद दैट टेस्ट सीरीज भी, सो दैट उनका प्रैक्टिस भी हो जाए सभी सब्जेक्ट्स का. नाउ थर्ड कोर्स है आपका टेस्ट सीरीज. ये उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी एक बार एग्जाम दे दिए या फिर पूरा प्रिपरेशन खुद से ही कर रहे हैं, बट नाउ दे वांट सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड एक रियल एग्जाम का फील मिले, उस तरह के मॉक टेस्ट. सो वो सब आपको इस कोर्स में मिलेंगे. सो ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेस आर देयर, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन रीच आउट टू एनी ऑफ द पर्सनल ऑफ EduTap and get your doubts clarified before taking an informed decision of purchasing any of these courses.
Thank you very much, friends, and I hope you really have liked this session. See you all in the next session very soon. Thank you very much once again. Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination. Now, as part of which we will be doing 15 MCQs a day, and as part of the same, today in this session we are going to see Labor Laws Payment of Bonus Act 1965, part 1. Now, why is this series important? See, close to 15 questions are asked out of 120 are asked, be it APFC or AO or EO examination from these components, which is actually very good number. And given the fact that even if you are able to go through the basic level of the content, or even if you are able to cover the basic level of the content, you will be able to clear or answer at least 10 plus questions here. Okay, which is actually very good number, and owing to the kind of scoring potential it possesses, this happens to be one of the important topics for both APFC and EO or AO examination of UPSC EPFO. Okay, so one thing, so if you can go through these sessions regularly, really this will help you a lot in scoring good marks from this section. And now coming to next important point is, see, we are expecting the UPSC EPFO 2025 notification very soon. So given the fact that the notification is going to be released and the importance that is given to these topics, I suggest you to go through these sessions seriously, so that ये sessions आपके लिए बहुत helpful रहे आपके examination में. So with this, let me start today's session. और हम लोग ये सारा content जो भी revise करने वाले हैं, that is in the form of MCQs only. So here comes the first question. The Payment of Bonus Act 1965 applies to bonus itself. जैसे कि regular wages तो होना ही है. After that, there are a lot of other aspects associated with the job or the work that one is doing while he or she is being hired by an organization, by an establishment or industry, right? Now उसके साथ साथ something extra, that comes under this bonus part, and for that government has come up with an act, and that is the Payment of Bonus Act 1965. Now this is applied to or extended to whole of India, to every other establishment. It is applied to every factory and other establishments where including factories with 20 or more persons employed on any day during an accounting year. In an accounting year, if you look at, अगर 20 से ज़्यादा persons काम कर रहे हैं किसी भी establishment में या factory, because it's applicable to all, वहाँ पे the Payment of Bonus Act 1965 would be applicable. So here C is the correct answer. So अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि एटलीस्ट 20 मेंबर्स इसमें काम करना चाहिए, राइट? नाउ अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में अप्लाई द एक्ट टू एस्टैब्लिशमेंट्स और कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉइंग फ्यूअर दैन 20 बट नॉट लेस दैन 10 वर्कमैन ऑल्सो, but they have to be given at least 2 months notice of its intention by the appropriate government की वो implement करने वाले. पहले ये देखा था हमने कि minimum 20 members होने चाहिए, but sometimes 10 से भी less 10 से ज़्यादा but 20 से कम हो सकते हैं. In that cases also, अगर appropriate government ने चाहा तो definitely that can be applied. This act can be applied to such establishments as well, but appropriate government को at least 2 months का notice देना चाहिए कि हम इस तरह से करने वाले हैं. So here in this case D is the correct answer. So coming to the next question, consider the following statements regarding the definition of accounting year. Which of the following statements is or are correct? So first statement, in relation to a corporation, it refers to the year ending on the day on which the books and accounts of the corporation are to be closed and balanced. Yes, this is true. जब ये closing होगा उस टाइम तक हम कहेंगे कि ये accounting year है starting to ending. In relation to a company, it refers to the period in respect of which any profit and loss account of the company is laid before it in the annual general meeting, irrespective of whether that period is full year or not.
yes, this is also true. जब भी उनका एनुअल जनरल AGM मीटिंग होगा एंड उसमें जब भी ये प्रेजेंट होंगे फैक्ट्स, अगर फुल ईयर कंप्लीट हुआ या नहीं, स्टिल वी कंसिडर दैट एज एन अकाउंटिंग ईयर. In any other case, it refers to the year commencing from first day of April to 31st of March next year. That would be called as accounting year. This is also true. Again, as per the किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है उसी के हिसाब से अकाउंटिंग ईयर वाला जो टर्म है, मतलब उसका मीनिंग जो है चेंज होता रहेगा. Alternatively, in cases where accounts are closed on a date other than 31st March at the employer's option, the year ending on the day on which the accounts are closed and balanced is considered as accounting year. So कई बार कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का 1st Jan से 31st दिसंबर भी होता है, बट अगेन उस ईयर में वो जब भी वो अकाउंट्स क्लोज करेंगे एंड बैलेंस उसे बैलेंस करेंगे जो डेबिट एंड क्रेडिट को, in that case that would be considered as accounting here. So in this case all these 4 statements are true when it comes to the definition of the accounting year as per the payment of bonus act. So here in this case D is the correct answer. All these statements are true. So moving on to our next question, allocable surplus for an employer being a company other than a banking company which has not made arrangements for the declaration and payment of profits within India, कितना surplus होगा तो वो करेगा. So here in this case it is 67% of the available surplus in an accounting year. Other than that, यहाँ पे दिया other than the banking company. Okay, so in any other cases it would be the 60% of such available surpluses, available surplus. Okay, other than banking, see being a company other than banking company उसमें 67% है, तो banking and other companies that would be 60%. So here C is the correct answer. So moving on to our next question, we are still in the definitions only. Consider the following statements regarding the terms employee and establishment in public sector. Which of the below statements is or are correct? An employee refers to any person excluding apprentices earning a salary or wage not exceeding 21,000 per month in any industry, performing skilled or unskilled manual, supervisory, managerial, administrative, technical or clerical work, whether employed under express or implied terms, would be considered as an employee. And this is very true. The definition is very true. An establishment in public sector refers to an establishment owned, controlled or managed by a government company as defined under the Companies Act 1956. Yes, the definition of that also is correct. That is establishment in public sector. An establishment in public sector also includes a corporation where at least 40% of its capital is held collectively or individually by the government, the Reserve Bank of India or a corporation owned by them. In this case also you can say the establishment, the definition is true. So hence in this case 1, 2, 3 all are true. So here D is the correct answer. So moving on to our next question. So which of the following is included in the definition of wages? See, when we talk about wages, it means all remuneration other than remuneration in terms of or in respect of the overtime work capable of expressing in terms of the money. Okay, but it does not include any such thing like your HRA, traveling allowance or medical concession, any bonus, be it incentive bonus, production bonus or attendance bonus, and any contribution paid or payable by the employer to any pension fund, provident fund, all these also will not be considered under wages. Only here in this case HRA, no, it's not considered as a wage. Traveling concession, no, this is not considered. Bonus, not considered. So here only dearness allowance is the one that is included in the term wage as per the Payment of Bonus Act. So in this case A is the correct answer. So moving on to our next question, this is as per section 3, establishments to include departments, undertaking and branches when it comes to the payment of bonus. See, under the Payment of Bonus Act, which of the following statements is correct regarding the computation of bonus in an establishment with multiple departments or branches? See, be it multiple departments अगर branches है फिर भी
all the departments and branches are treated as parts of the same establishment, and accordingly the bonus is calculated for those who are working in those branches and establishment as per the requisite rules and regulations जो भी उन्होंने laid out किया है. Okay, unless a separate balance sheet and P&L, profit and loss account, are prepared for each. अगर अलग हो रहा है only then otherwise that would be treated as whole as a one. Hence in this case B is the correct answer. Each department or branch treated as separate establishment. No, this is not the case. Only departments or branches situated in the same place are treated. No, this is also not true. The computation of bonus is done separately for each department or branch regardless of whether a separate balance sheet. No, this is also not true. Okay, only B is the correct answer here. Moving on to our next question. In the context of the computation of available surplus under section 5, which of the following is correct regarding the available surplus for an accounting year commencing on or after 1968? Now, in this case, the available surplus is calculated as a gross profit for the years after deducting the sums referred to in section 6. No. Okay, this is not the case. The available surplus is only the direct tax on the employer's gross profit for the accounting year. No, this is also not true. The available surplus does not include any deductions related to bonuses paid to employed. This is also not true. Actually, whatever the available surplus that we are talking about, it includes the gross profits for the year, okay, and an amount equal to the difference between the direct tax on the gross profit of the preceding accounting year and the direct tax after deducting the bonus that is paid to the employees. When we include all this accordingly as per this statement, then we get the available surplus of that establishment. Okay, उसमें जो 67% दे सकते हैं other than banking and banks and others, they can give 60% of the available surplus, right? So यहाँ पे B is the correct answer. That is, it includes a gross profit for the year, उस year का, and an amount equal to the difference between the direct tax that has been put forth on the gross profits of the preceding accounting year, पिछले साल का, and the direct tax after deducting the bonus that has been already paid to the employees. Only then will come, क्योंकि ये सारे होने के बाद ही जो भी बचेगा that will be considered as a surplus amount. So in this case B is the correct answer. So moving on to our next question. Which of the following sums are deductible from the gross profits as prior charges under section 6 of the Payment of Bonus Act? Now the depreciation admissible under the provisions of the Income Tax Act, that would be deducted from the gross profit. Okay, so this is true. Development rebate, investment allowance or development allowance that the employer is entitled to under Income Tax Act, that also is deductible from the gross profits. Yes, this is also true. Direct tax liability for the employer's income, profits and gains during that particular accounting year, that also would be deductible, that is deductible from the gross profits. So this is also true. Only sums specified in the second schedule are deductible from the gross profit. No, whatever the sums that are mentioned in the third schedule, which जो अभी हमने दिया है, like depreciation admissible under the provisions of IT Act, development rebate, investment allowance or development allowance, direct tax liability to the employees, ये सारे आते हैं third schedule में, that actually are deductible from the gross profits. ये second schedule है, third schedule में आते हैं. So this is false. Otherwise 1, 2 and 3 are correct. So here C is the correct answer. Now under section 8 clearly eligibility bonus के लिए कौन eligible होगा? Workman, employee, वो इसमें mentioned है. Under the Payment of Bonus Act, an employee is eligible to receive bonus if he has worked in an establishment for at least 30 working days in the accounting year. तब जाके वो eligible होगा bonus के लिए. Again कितने दिन काम किया accordingly the bonus would be paid. So here B is the correct answer. So अभी इससे पहले हमने क्या देखा था कि कौन एलिजिबल है, ना किसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं बोनस के लिए, दैट फॉल्स अंडर सेक्शन 9. सो अंडर सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस बाय एन एम्प्लॉय वुड रिजल्ट इन डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिसीविंग अ बोनस? फ्रॉड कमिटेड बाय द एम्प्लॉय, ऑब्वियसली अगर कुछ फ्रॉड किया है तो
they won't be eligible for the bonus. This is true. Riotous or violent behavior while on the premises of the establishment, अगर कुछ पी के कुछ हल्ला किया या फिर कुछ violent riot nature कुछ किया, मतलब कुछ तोड़ फोड़ किया and all that, तो definitely they'll not be eligible for the bonus. True. Theft, misappropriation or sabotage of any property of the establishment, this is also true. Okay, all of the above actions would result in disqualification from receiving a bonus. So this D, all of these, they are true. They, अगर इनमें से कुछ भी किया है तो they'll not be eligible for bonus. That is, disqualify कर सकते हैं even though they have worked minimum of 30 days in the preceding year. So here in this case, D is the correct answer. Coming to the next question, which of the following statements is or are correct regarding the payment of minimum bonus under section 10 of the Payment of Bonus Act? So here every employer is obligated to pay minimum bonus to every employee starting from the accounting year 1979 and for every subsequent year regardless of whether the employer has any allocable surplus, he has to pay the bonus. Yes, this is very much true as per this Payment of Bonus Act. Okay, the minimum bonus is 8.33% of the salary of the wage earned by the employee during the accounting year or 100 rupees, whichever is higher, उतना तो bonus उनको देना ही पड़ेगा. This is also true. If an employee has not completed 15 years of age at the beginning of the accounting year, the minimum bonus is replaced by 60 rupees instead of 100 rupees. This is also very much true. Okay, and the minimum bonus is only applicable if the employer has an allocable surplus in the accounting year. जब हम लोग बोल रहे हैं कि irrespective of, regardless of whether the employer has any allocable surplus or not, he has to pay. So obviously this is wrong. यहाँ पे ये true हम बोल रहे तो ये false ही होगा. So only 1, 2 and 3 are correct. So here A is the correct answer. Moving on to our next question. Which of the following statements is or are correct regarding the payment of maximum bonus? अभी तक हमने देखा है minimum bonus कितना पे करना चाहिए, right? So इसमें maximum bonus under section 11 of the Payment of Bonus Act 1965. If the allocable surplus exceeds the amount of the minimum bonus, the employer is bound to pay a bonus in proportion to the salary or wage earned by the employee during the accounting year. This is true because अगर minimum से ज़्यादा, मतलब minimum bonus जो pay करना है उस amount से ज़्यादा अगर है allocable surplus, so definitely he has to pay maximum bonus as per the wages the employee is earning. The maximum bonus payable to an employee is capped at 20% of the salary. मतलब कुछ तो कैप होना चाहिए वरना वो कभी कभी बहुत बड़ा रेंज भी बन जाता है. So 20% of the salary or wage earned during that particular accounting year. Okay, so ये भी true है, maximum इतना होना चाहिए. The maximum bonus is payable only if the employer has an allocable surplus. Yes, as per that, yes, अगर है तो definitely he has to pay. So this is true. The employer may choose not to pay any bonus if the allocable surplus exceeds the minimum bonus. नहीं, अगर minimum bonus exceed कर रहा है तो definitely the employer has to pay the bonus, that to maximum bonus वो उसे pay करना पड़ेगा, which is capped at 20%. Okay, 20% तक, ऐसा नहीं कि 20% pay करना है, no. वहाँ तक वो pay कर सकते based on the surplus that he is, allocable surplus that he has. So this is false. So 1, 2 and 3 are correct in this case. So here A is the correct answer. Moving on to our next question. Under the Payment of Bonus Act, the bonus payable to an employee is calculated with reference to the maximum monthly salary of or wage of how much? कितनी सैलरी होनी चाहिए? At least 7,000 होना चाहिए उसका minimum salary, or the minimum wage for the scheduled employment whichever is there. मतलब schedule, मतलब लिस्ट में अगर शेड्यूल में फॉर एग्जाम्पल फार्मा के लिए उन्होंने दिया है कि 8,000 है मिनिमम सैलरी, उतना वेज तो पे करना ही करना है. सो इन दैट केस 8,000 के ऊपर उनको बोनस पे करना पड़ेगा. सो हियर इट इज एटलीस्ट 7,000 और द मिनिमम वेज फॉर शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट विच एवर इज, जो भी हायर रहेगा उसी के बेसिस पे पेमेंट ऑफ बोनस रहेगा. सो इन दिस केस इट इज बी, दैट इज द करेक्ट आंसर.
सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि हमने सेक्शन 10 में देखा था पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, मिनिमम एक बोनस पे करना पड़ेगा इफ द पर्सन हैज फुलफिल द अदर क्राइटेरिया, दैट इज मिनिमम 7,000 अमाउंट उन्होंने उनका वेज है, 30 डेज लास्ट अकाउंटिंग ईयर में उन्होंने काम किया है। तो उसी टाइम मैंने बोला था कि प्रपोर्शनेट, जितना मतलब प्रो राटा बेसिस पे जितने दिन काम किए उसके बेसिस पे उनका बोनस पे होगा, राइट? सो द सेम proportionate reduction in bonus in certain cases based on the number of days the employee has worked in that establishment. So here under the payment of bonus act, if an employee has not worked for all working days in an accounting year, the minimum bonus payable to him shall be, कितना होगा ये भी हमने उसमें डिस्कस किया था, at least 8.33% or 100 rupees, और 60 in case the person has not completed 15 years of age, 14 years complete हो गया मतलब काम कर सकते हैं, but 15 years complete नहीं हुए, उसके बेसिस पे 60 rupees. So here reduced proportionately but not below 100 or 60 as the case may be. जितने दिन उन्होंने काम किया उसके बेसिस पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो उस तरह से मतलब कुछ ही 30 डेज ही काम किया, 35 डेज ही काम किया है and accordingly he is getting some 40 rupees or so, but 40 rupees नहीं कर सकते, मिनिमम तो 100 है, 100 तो पे करना ही करना है, 15 years एज क्रॉस किया है, 15 years एज क्रॉस नहीं किया तो 60 तो पे करना ही करना है. सो reduce proportionately but it can't go below that, अगर मिनिमम 40 उससे बिलो भी गया तो they have to pay that much. So here in this case B is the correct answer. सो फ्रेंड्स, अब तक आपने देखा है कि हमने किस तरह से कई तरह के एक्ट्स का हमने देखा है कि क्वेश्चंस हम लोग कंटेंट जो है वी आर डूइंग इन द फॉर्म ऑफ MCQs एंड बहुत अच्छे तरीके से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं. along with that EduTap has been currently offering 3 major courses associated with the upcoming UPSC EPFO 2025 examination for both APFC and EO or AO examination. Okay, so the first course itself is a master course, मतलब इसमें A to Z आपको सब कुछ मिल जाएगा, content PDFs, content videos, all the topics, all the subjects associated, everything, one point contact आपको है. along with that every week इसमें कुलदीप सर एक strategy session लेंगे every Thursday to be precise, and क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है तो स्ट्रैटेजी भी बनानी पड़ती है, कौन सा कंटेंट किस तरह से कैसे पढ़ना है, कैसे यूटिलाइज करना है इस कंटेंट को, वो सब वो उनमें समझाएंगे. along with that आपके जो भी डाउट्स है वो सब वो क्लैरिफाई करेंगे. सो ये हो गया ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं एंड दे आर लुकिंग आउट फॉर नो कंटेंट एट वन, ऑल एट वन प्लेस. दूसरा है टेस्ट सीरीज प्लस. ना ये ऐसे बच्चों के लिए यूजफुल रहेगा जहाँ पे कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा ऑलरेडी कुछ आइडिया है कुछ सब्जेक्ट्स तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हमने कभी पढ़ा नहीं है तो हमें लगता है बस ये एक दो सब्जेक्ट्स हमें एक जगह पे मिलेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा. तो उस तरह से बच्चों के लिए एंड अलॉन्ग विद दैट टेस्ट सीरीज ऑल्सो, तो उनका एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा, जो सब्जेक्ट्स उनके पास नहीं है वो भी कर सकते हैं. तो ये हो गया सेकंड कोर्स. थर्ड कोर्स है एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज. सो इसमें क्या है, जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके या एक बार एग्जाम दे दिया है इससे पहले भी एंड स्टिल दे आर प्रिपेयरिंग वन मोर टाइम, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि खुद से प्रिपेयर करते हैं, सो उनके लिए, लेकिन ऐसे बच्चे ढूंढते रहते हैं कि टेस्ट कुछ क्वेश्चंस हम लोग चैप्टर क्विजेस करें या फिर कुछ टेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें एंड गेट द फील, रियल फील ऑफ द एग्जामिनेशन प्रायर टू द एग्जामिनेशन. ऐसे बच्चों के लिए बेस्ट कोर्स है. सो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू एनी ऑफ द EduTap faculty or the people, and you can get your doubts clarified related to these courses so that you can make an informed decision. Okay, thank you very much for being with me so patiently till now. Thanks a lot. So see you all soon in with the next session. Till then, take care. Bye bye. Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination, wherein we'll be doing 15 MCQs a session. Okay, as part of which today we are going to see labor laws, building and other construction workers act 1996 part 1 we are going to see here. Now why is this series important when it comes to the UPSC EPFO exam, be it APFC, ओके जो APFC का है वो
or AO or EO exam, in both the cases labor laws and international relation is one of the most important topics, and इसमें से at least 15 questions आते हैं इसमें, out of 120 15 questions इसी में से आते हैं. So you can understand the kind of weightage that these topics have in these examinations. So if you want to really want to score well, अगर आप ये सीरीज सही से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका पूरा पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, एक अगर आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, और एक बार आपका पढ़ना भी हो जाएगा. एंड देन सिंस वी आर डूइंग ऑल दीज इन द फॉर्म ऑफ MCQs, आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा. मोर ओवर, we are expecting the notification of UPSC EPFO very soon, so I really hope that you will use these sessions very well for your upcoming UPSC EPFO exam preparation. So with this, let's get into the session wherein we'll be doing some MCQs associated with the said topic. आज का हमारा टॉपिक है Building and Other Construction Workers Act 1996 Part 1. So coming to the first question, the primary objective of the Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1996. जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता गया, उसके बाद one of the most important aspects of other sectors that came into picture was the कंस्ट्रक्शन वर्कर्स. सो उनके लिए भी कुछ करना था. सो इन 1996 जो आप देख रहे हो, दिस पर्टिकुलर एक्ट वाज ब्रॉट इनटू फोर्स एंड इसका मेजर ऑब्जेक्टिव था टू रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड टू प्रोवाइड फॉर द सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर मेजर्स, क्योंकि ये बिल्कुल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं एंड उनका कुछ ना कुछ ऐसा था कि that should help them in their profession. So उनके लिए to regulate that employment and conditions of their service in which they are working, उनको elevate करने के लिए ये act लाया गया था. So here the correct option is answer B. So moving on to our next question, the Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1996 applies to. Now this extends to whole of India and it's not that कि किसी जहाँ पे जिनका building construction work है उन्हीं के लिए applicable होगा ये. No, it's not like that. It is applicable to every establishment employing 10 or more building workers in any building or any construction work. So ये सभी establishments के लिए होगा जहाँ पे they have employed on any day of the preceding 12 months 10 or more building workers in any building or other construction work, उनके लिए ये applicable होगा. So here in this case C is the correct answer. So moving on to our next question, which of the following statements correctly describes the terms building or other construction work and building worker? जो सबसे हमने स्टार्टिंग किया है वहीं से किया है, बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क, यही हम लोग बोल रहे थे, एंड देन बिल्डिंग वर्कर. लेट्स सी व्हाट आर द डेफिनेशंस. सो फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है कि बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन, ऑल्ट्रेशन, रिपेयर्स, मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, एयरफील्ड्स एंड पावर जनरेशन इंस्टॉलमेंट्स. यस, ये सारे इसी में आते हैं. सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. बिल्डिंग वर्कर इंक्लूड्स एम्प्लॉयज एंगेज्ड इन मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटीज. नो, ये होते हैं स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, unskilled or manual labor, supervisory, technical or clerical work. Okay, उन सब में आते हैं, but not in connection to the what you'll say managerial or administrative capacity. So this is false. A building worker does not include a person employed in a supervisory capacity who earns more than 1600 rupees per month. Yes, this is also true in this case. The construction work specified under the term building or other construction work also include works related to dams, canals, telecommunication lines, but exclude works covered by the Factories Act. Definitely this is also true. ये सारे काम भी इसी में आते हैं. So here 1, 3 and 4, these 3 are correct, but 2 is not true. Okay, so hence here A is the correct answer. So moving on to our next question, which of the following is not included in the definition of establishment under the Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1996? So a government owned construction project, no, this falls under this. इसमें definition में आता है establishment, so this is true.
A private limited company engaged in construction activities, this is also true, ये भी इसी में आता है as an establishment. An individual who employs building workers for construction of their own residence with a total construction cost exceeding rupees 10 lakhs, ये भी आता है. Even if an individual अगर 10 lakhs के ऊपर हो रहा है उसका construction, total cost of construction even in his own residence, so definitely that would come under this. An individual who employs building workers for construction of their own residence with a total construction cost not exceeding 10 lakhs, ये इसके अंडर नहीं आता है as an establishment. Other three, these are considered as establishments under this act, that is under the Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Conditions of Service Act. So here D is the correct answer. So moving on to our next question, which of the following statements is or are correct regarding Central Building and Other Constructions Workers Advisory Committee as constituted under Section 3. Now the central government is the one that will constitute a committee to be called as the Central Building and Other Construction Workers Advisory Committee, or it can be also called as Central Advisory Committee. And why majorly this committee is constituted? To advise the central government on such matters majorly arising out of the administration of this act, किस तरह से उसको implement कर रहे हैं and all that. Now इस committee में कौन कौन रहेगा? इसमें रहेगा a chairperson who will be appointed by the central government. Okay. 3 MPs रहेंगे, that is members of parliament रहेंगे, of whom 2 shall be elected by the house of people and 1 by the council, that is MLC ऐसे कुछ बोलते हैं ना, उस तरह से council of states और members. ठीक है. And next रहेगा एक director general who also happens to be the member ex officio, and यहाँ पे जो total members होने चाहिए that should not exceed, it should not be greater than 13, okay, but not less than 9 as well. Greater than 13 नहीं होने चाहिए and less than 9 भी नहीं होने चाहिए. Okay, and in this case the members जो workers रहेंगे, members रहेंगे nominated to be present as a building workers, they shall not be less than the members nominated to represent the employers. Always उसी तरह से रहेगा ना, almost balanced रहना चाहिए. So here let us see the statements after हमने एक थोड़ा सा डिस्कशन किया है ना, उसके बेसिस पे. Now the Central Advisory Committee consists of a chairperson appointed by the central government, 3 members of parliament and a director general as a member of ex officio. Yes, this is very much true, जो अभी हमने डिस्कस किया था, right? The committee must have at least 9 members but no more than 30 nominated to represent various interests including employers, building workers and association of architects. Yes, this is also true. Okay. Now, the number of members nominated to represent employers must be greater than the number of members nominated to represent building workers. No, this is not true. Okay, ये false है. The main function of the Central Advisory Committee is to advise central government on matters arising out of the administration of the act. And yes, this is very much true. So, यहाँ पे 1, 2 and 4, these are correct and 3 is false. So, here B is the correct answer. So moving on to our next question, which of the following statements is or are correct regarding the State Building and Other Construction Workers Advisory Committee? पहले हमने Central Advisory Committee देखा, अभी इसको State Advisory Committee है, and this falls under Section 4 of the said Act. So here let's have a quick look at the statements. The State Advisory Committee consists of a chairperson appointed by the state government, 2 members of state legislature and a member nominated by the central government. Yes, this is very much true, ये ऐसे रहने वाला है. The committee must have at least 7 members but no more than 11. ये भी true है, वहाँ 9 and 13 है इनका. Okay, to represent various interests including employers, building workers and association of architects. Yes, this is also true. The members nominated to represent the building workers shall not be less than the number of members nominated to represent the employers. So yes, this is also true. Okay. The main function of the State Advisory Committee is to advise the state government on matters arising out of the administration of the act. Very much true. Okay, so all of these are true statements when it comes to Section 4 of the said Act, and yes, here in this case the correct answer is D. So moving on to our next question. Under the Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1996, which of the following statements is correct regarding the expert committees constituted by the appropriate government? See, wherever required, अगर कुछ advice चाहिए, कुछ
इंफॉर्मेशन चाहिए, ओके, असिस्टेंस चाहिए, तो डेफिनेटली द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर एक्सपर्ट कमिटीज. Okay, so here let's have a quick look at the statements. The expert committees are mandatory, ऐसा कुछ नहीं, it's not mandatory, requirement के हिसाब से होता है, so this is false statement. The members of the expert committees are entitled to fees and allowance except for officers of the government or body corporates who are paid a consolidated honorarium. ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर वो already officers of the government और गवर्नमेंट बॉडीज के कुछ एम्प्लॉयज थे, उनको कोई कुछ एक्स्ट्रा अलग से कुछ फी या फिर अलाउंस देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे आर डूइंग एज पार्ट ऑफ देयर जॉब इटसेल्फ. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. कोई एक्स्ट्रा ऑनरेरियम कुछ नहीं मिलने वाला है. द एक्सपर्ट कमिटीज हैव द पावर टू मेक रूल्स अंडर द एक्ट. नो, ओनली दे कैन एडवाइज टू द गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर इश्यू के लिए जिसके लिए ये कमिटी बिठाया गया है. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. द एक्सपर्ट कमिटीज आर एडवाइजरी इन नेचर एंड comprise persons qualified in building or other construction work. Yes, this is true, क्योंकि जहाँ पे भी expertise चाहिए उसी के लिए लेते हैं. So this is true. So hence here the correct answer is B. So moving on to our next question. Under the Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1996, who has the authority to appoint registering officers and define their jurisdiction? तो अब तक जितने भी acts हमने देखा है, almost all the cases, always it would be the responsibility of the appropriate government based on the sector in which they are, the appropriate government, which may be the central government or the state government, that would be appointing the registering officer. So here the correct answer is D in this case. So moving on to our next question. Which of the following statements regarding the registration of establishments under section 7 of the act is or are correct? Let's have a look at the statements. Employers of establishments to which the act applies must register the establishment within 60 days of the act's commencement or its application to the establishment. This is very much true. Either उन्होंने establishment मतलब work start किया है और वर्क वो ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट है, बट पहले उस पे ये एप्लीकेबल नहीं था, बट नाउ द एक्ट इज एप्लीकेबल बेस्ड ऑन इट द चेंजेस दैट हैव हैपेंड टू द एस्टेब्लिशमेंट. इन ईदर केसेस विदिन 60 days they have to go for the registration of their organization or the establishment under the said act. Okay, applications for registration made after the prescribed period can still be entertained by the registering officer if sufficient cause for the delay is provided. Yes, अगर सही reason है तो definitely he can take up that कि okay extend कर सकते. This is also true. The employer is required to inform the registering officer of any change in ownership, management or other prescribed particulars within 30 days of such change. Yes, within 30 days. कुछ भी change होता है, ओनर चेंज हुआ है या फिर कुछ और चेंज हुआ है, उसमें कुछ चेंजेस लाए हैं एस्टेब्लिशमेंट में, ओके, ऑल दैट, कुछ एड्रेस चेंज हुआ है, वॉट एवर इट इज, ऑल दैट दे हैव टू प्रोवाइड दैट टू द रजिस्टरिंग, दैट इज रजिस्ट्रार विदिन 30 days. Yes, this is also true. Okay, the registering officer must issue a certificate of registration within 15 days of receiving the application. ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें हर एक स्टेट का उस अलग अलग टाइमलाइंस होते हैं एंड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑल्सो. सो यहाँ 15 days करके ऐसा कुछ भी नहीं है, बट एज पर द रूल्स दैट हैव बीन लेड आउट फॉर दैट kind of establishment in that particular sector. So here only 1, 2, 3 are correct. This is not true. So 1, 2, 3 are correct. A is the correct answer in this case. So moving on to our next question. Under section 8 of the act, which of the following is valid ground for the revocation of an establishment's registration by the registering officer? किस basis पे वो वापस ले सकते हैं? ठीक है. Now, the registration was obtained through misrepresentation. Obviously, ये तो one of the major reasons है. Very much true. Material facts were suppressed during the registration process. This is also true. अगर गलत information देके कर रहे हैं. The provisions of the act are not being followed in the establishment's operations. Definitely, अगर कुछ ऐसा है inspection में उनको पता चला तो definitely they can revocate their license, that is the registration. The registration has become
इनएफेक्टिव और यूजलेस फॉर एनी रीजन डीम्ड वैलिड बाय द रजिस्टरिंग ऑफिसर। हो सकता है कुछ भी रीजन की वजह से अगर उनको लग रहा है कि वो रीजन वैलिड है तो डेफिनेटली ही कैन रिवोकेट। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। द एम्प्लॉयर वॉलेंटरीली रिक्वेस्ट रिवोकेशन विदाउट प्रोवाइडिंग एनी वैलिड रीजन। नहीं, बाई प्रोवाइडिंग वैलिड रीजन अगर वो बोल रहे हैं कि नहीं मैं क्लोज कर रहा हूँ एस्टेब्लिशमेंट, जो भी वॉट एवर माइट बी द रीजन, अगर वैलिड है तो डेफिनेटली ही कैन रिवोकेट। सो दिस इज ओनली फॉल्स। सो ओनली 1, 2, 3 and 4 are true in this case. So C is the correct answer. So moving on to our next question. The appellate officer under the Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1996 has the power to condone the delay in filing an appeal, but only if the appellant can prove that the delay was due to a reason beyond their control. True or false? See, any person who is aggrieved by an order that has been made to him may prefer an appeal to the appellate officer. And again, who shall be a person who has been nominated in this behalf, जो appellate authority है, by the appropriate government, and that he has to do within 30 days from the date whatever the order that has been communicated to him. Okay, within 30 days उनको अपील करना पड़ेगा। लेकिन यस, अगर कुछ वैलिड रीजन है कि वो 30 डेज में नहीं कर पाए तो डेफिनेटली द अपीलेट अथॉरिटी हैज द डिस्क्रिशन टू एंटरटेन एन अपील ओवर द 30 डेज पीरियड ऑल्सो, बट वैलिड रीजन होनी चाहिए। सो द स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिया है ये स्टेटमेंट वेरी ट्रू है। सो हियर ए ट्रू, बिकॉज अपीलेट ऑफिसर हैज अ डिस्क्रिशन टू एंटरटेन एन अपील आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द 30-day पीरियड एज वेल इफ सफिशिएंट कॉज इज शोन. So this is very much true. So A is the correct answer here. Moving on to our next question. An employer of an establishment covered under the Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1996 can continue to employ building workers even if the establishment has not been registered or its registration has been revoked. जैसे establishment स्टार्ट होते ही और इस एक्ट के परव्यू में आते ही विदिन 60 डेज उनको एज पर सेक्शन 7 ओके विदिन 60 डेज उनको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। बट अगर रिवोकेशन हुआ है या फिर उनके पास रजिस्ट्रेशन है ही नहीं या कैंसल हुआ है या एक्सपायरी हुआ है, इन एनी ऑफ दिस केसेस ही कैन नॉट work. So here the statement itself is false because the act prohibits employment of building workers in an unregistered establishment or an establishment whose registration has been revoked. So here B is the correct answer. See, as per this act, who is entitled to the benefits provided by the Building and Other Construction Workers Welfare Board from its fund? Okay, ये जो welfare board है that is under this act, and every building worker who is registered as a beneficiary under this act, he or she will be a beneficiary and get the benefits under this fund. So here C is the correct answer. So moving on to our next question. Consider the following statements regarding the registration of the building workers as beneficiaries under section 12 of this act. Now which of the statements given below are correct? A building worker is eligible for registration of the under that fund if they are between the ages 18 and 60 and have worked in construction for at least 90 days in the preceding 12 months. Yes, this is very much true. Okay. The application for registration must be accompanied by documents and fee not exceeding 50 rupees as prescribed. Yes, this is also true. उतना fees pay करना पड़ेगा उनको while applying as a beneficiary along with all the documents. An applicant dissatisfied with the decision of the authorized officer, अगर वहाँ पे authorized officer का कुछ उनको लग रहा है decision गलत है या जो भी है, he can appeal to the secretary of the board or another officer specified, जो भी specified है उस protocol में, whose decision shall be final. उनका decision फिर final होगा, आगे कोई और appeal नहीं है. Yes, this is also true. A building worker can be registered as a beneficiary even if they have not complied. No, they have to be complied with the provisions of the act and the rules made thereby. So definitely, so this is false. So only 1, 2, 3 are true. So here A is the correct answer as per the section 12, registration of building workers as beneficiaries under this act.
So moving on to our next question, who is responsible for entering the details of the building or other construction work done by a beneficiary in the identity card? See, जब भी registration होता है, okay, as a beneficiary onto the board under this act, the board shall give every beneficiary an identity card with his photograph duly fixed and कुछ space भी देते हैं so that कहाँ पे काम कर रहे हैं, किस तरह का काम चल रहा है, वो उसमें entry कर सके. And here every employer has has a responsibility of entering the details of the building or the construction workers done by the beneficiary and authenticate the same, okay, in that card, and once they enter all that, they have to return that card to the beneficiary again. ओके नाउ एंड जब भी कोई इंस्पेक्टर या फिर ऑफिसर या फिर ये बोर्ड के कुछ ऑफिसर ऐसे कुछ डिमांड करते हैं ना कि आपको अपना वो कार्ड दिखाना है, तो डेफिनेटली द बेनिफिशियरी हैज टू produce that card before them. So here in this case, as per the question, it is the employer's responsibility who will enter the details of the building or the construction work done by a beneficiary in the identity card. So यहाँ पे ये any officer of the government नहीं, ये employer है. D is the correct answer here because it is a responsibility of him to enter the details and again return it to the beneficiary. So here D is the correct answer. Sorry for the goof up. So friends, till now we have been doing good number of MCQs as part of the practice and all that. See, एक small announcement है, EduTap ने अभी 3 तरह के courses launch किया है for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination for both APFC and EO or AO examination. See, when it comes to this UPSC EPFO, based on the requirement of the students, ये courses design किए गए हैं. So एक तो है मास्टर कोर्स, जहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि हमें बिल्कुल पूरा कंटेंट एक ही जगह से चाहिए, जैसे कि PDF, वीडियोस, क्वेश्चन बैंक, mentorship, everything, all that would be provided under this master course. And every week, to be precise on Thursday, Kuldeep sir will be available in a session, in an online session, जहाँ पे वो जो ये कंटेंट किस तरह से पढ़ना है, मतलब स्ट्रैटेजी किस तरह से प्रिपेयर करना है, वो आपको समझाएंगे और आपके जो भी डाउट्स है वो क्लैरिफाई करेंगे. ना दूसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज प्लस. ना कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जहाँ ना कुछ टॉपिक्स, कुछ सब्जेक्ट्स वो खुद से पढ़ लेते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स उनको स्पेशलाइज्ड जो उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है या फिर उनके पास कंटेंट नहीं है, उसके लिए वो ढूंढते हैं कंटेंट एक्सक्लूसिव, लाइक ना फॉर एग्जांपल पॉलिटी का हो गया या फिर लेबर लॉस का ही लेते हैं, ठीक है. एंड अलॉन्ग विद उनको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी चाहिए, तो उन बच्चों के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा ये कोर्स, ठीक है. ना थर्ड कोर्स आता है टेस्ट सीरीज. कई बार कुछ बच्चे ऐसे तो एक बार एग्जाम दे दिया है, फिर वो प्रिपेयर कर रहे हैं, सो उन्होंने तो अपना प्रिपरेशन पूरा कर लिया, बट नाउ उनको प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, रियल एग्जामिनेशन का फिर से फील चाहिए, सो दैट दे कैन प्रिपेयर एंड स्ट्रैटेजाइज देमसेल्फ वेरी वेल. ओके, सो ऐसे बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज वुड बी द बेस्ट ऑप्शन. सो अभी भी आपको कुछ और डाउट्स है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू एनी ऑफ द people from EduTap and get all your doubts clarified related to whatever doubts you have related to these courses and take an informed decision. Okay, thank you very much for being with me till the end. Hope you have liked the session. See you all in the next session very soon. Thank you very much once again. Hello friends, welcome to EduTap and welcome to the series that we have exclusively started for the UPSC EPFO 2025 examination, wherein we'll be doing 15 MCQs a day. एंड उसी के बेसिस पे आज हम लोग करने वाले हैं लेबर लॉस, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 पार्ट 2 हम लोग करने वाले हैं. नाउ दिस एक्सक्लूसिव सीरीज दैट वी हैव स्टार्टेड, ये नो ऐसा नहीं है कि सिर्फ APFC के लिए या फिर EO और AO के लिए, ये दोनों के लिए है. बीट APFC, UPSC EPFO APFC का हो या फिर UPSC EPFO EO और AO का एग्जाम हो, दोनों के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्लोज टू 15 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 120 क्वेश्चंस में से इसी टॉपिक में से, लेबर लॉस एंड IR से, इंडस्ट्रियल रिलेशन से. सो यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ हाई वेटेज एंड द स्कोरिंग पोटेंशियल दैट यू कैन हैव बाय गोइंग थ्रू दीज टॉपिक्स. बेसिक्स भी अगर आप सही से कवर करेंगे, ओके, तो आप 10+ क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं. Okay, so if you really want to score high
in either of the exams, I suggest you to go through these sessions or watch these sessions regularly, क्योंकि जो भी concepts है हम लोग बहुत ही अच्छे से revise भी करवा रहे हैं and also in the form of MCQs, और आपका practice भी हो जाएगा इसी में questions का. Moreover, we are expecting the UPSC EPFO 2025 notification very soon, so I really hope that you will take good advantage of these sessions and prepare for your exams accordingly. So let's get into the session now. So moving on to our first question, consider the following statements regarding the section 14 cessation as a beneficiary under the act. Okay, which of the following statements given below are correct? Now here a registered building worker ceases to be beneficiary upon reaching the age of 60 years or if they are not engaged in building or construction work for at least 90 days in a year. तो दोनों fulfill करना पड़ेगा उनको 60 years से कम और वो 90 days वाला, तो this is true. Any period of absence due to personal injury caused by an accident arising out and in the course of employment is excluded while computing the 90 days requirement. Yes, अगर उस तरह का कुछ है तो definitely वो इसमें से exclude किया जाएगा. So this is also true. Okay, a beneficiary who has been registered for a continuous period of 3 years before attaining the age of 60 is eligible for prescribed benefits even after cessation. Yes, this is very much true. अगर ये fulfill करे continuous period of 3 years तक वो इसमें as a beneficiary है, registered है and काम भी करे तो definitely he will be considered और benefits जो है वो applicable रहेंगे even after the cessation, that is 60 years होने के बाद भी. So here all 1, 2, 3 are true in this case. So D is the correct answer here. So moving on to our next question, which of the following statements is a consequence of an employer's failure to maintain the register of beneficiaries as required under section 15 of the Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1996. Okay, so in this case the employer is liable to pay a penalty but the register can still be inspected by the board. This is not true, क्योंकि एक बार liable है मतलब गलती की है तो definitely liable to pay and उसके बाद कुछ penalty भी लगेगा. So this is not true. The employer is exempt from paying. No, ऐसा कुछ नहीं है. The employer is liable to pay a penalty and the board can also initiate prosecution against the employer. This is true. They can take up. The register cannot be inspected by the board. No, ये ऐसा नहीं है. They can. So this is false. So C is the correct answer in this case when it comes to the section 15 of the said act. Moving on to our next question, under section 16 of the Building and the Construction Workers Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1996, which of the following statements is correct regarding the contribution of building worker to the fund? The contribution rate is fixed by the central government and is uniform across all states. No, ये अलग है. It is as per the state government, वो fix करता है. So this is false. The state government specifies a contribution rate, but the building worker can opt out of the contributing to the fund after attaining the age of 55 years. No, he can't. So this is false. The building worker's contribution to the fund is mandatory until the age of 60 years, but the board may waive the payment of contribution in cases of financial hardships. Yes, this is very much true. The employer is responsible for paying the building worker's contribution to the fund and the building worker has no role. No, yes, no, अगर employee चाहता है तो और the beneficiary can authorize his employer to deduct the contribution whatever that he has to make to the board, that they can deduct and from his monthly wages and remit the same to the board within 15 days from such deduction. So within 15 days वो amount जो भी deduct इसके salary से किया है, wage से किया है, that they have to be deposit there. So yes, employer का भी है role इसमें, but not as they have given here. So here the correct answer is C. Moving on to our next question, under section 17 of the Building and Other Construction Workers Act 1996, what is the consequence of a beneficiary's failure to pay contribution for a continuous period of 1 year and what is the exception to this rule? Okay, the beneficiary's registration is cancelled but can be restored if the beneficiary pays the arrears within 30 days. There is no exception to this rule. This is false. Okay, the beneficiary ceases to be a beneficiary but the secretary of the board may allow restoration of the registration
if the beneficiary pays the arrears and shows reasonable grounds for non-payment. This is very much true. अगर reason सही से दिया है, so the secretary of the board को full power है कि उसे restore करे, but on the payment of the arrears. The beneficiary's registration is suspended for a period of 2 years and can be restored. ये false है. The beneficiary is liable to pay penalty equal to the amount of the arrears and the registration. No, this is also कोई penalty नहीं लगेगी, जो arrears है बस वही pay करना पड़ेगा उनको. So here B is the correct answer. Now coming to the next question, which of the following statements regarding the constitution of state welfare boards under section 18 of the act is or are correct? हर state अपने अपने हिसाब से बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द स्टेट बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड करके वो एक लॉन्च कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं एंड उसके कुछ फंक्शंस असाइन भी कर सकते हैं अंडर दिस एक्ट. ओके, सो द स्टेट वेलफेयर बोर्ड इज एस्टैब्लिश्ड बाय एवरी स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज पावर्स एंड परफॉर्म फंक्शन अंडर दिस एक्ट. किस तरह से उसको सही से लाना है एंड ऑल दैट वो देख लेते हैं. So this is very much true. The board consists of a chairperson, one member nominated by the central government, and a maximum of 15 members appointed by the state government. This is also true. The composition of the board includes equal representation of the state government, employers and building workers with a mandatory provision for at least one female member. So this is also true. So in this case, all of these statements are true. So 1, 2, 3 are true. That is D is the correct answer here. अब बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ है तो मीटिंग्स भी करना पड़ेगा. सो हियर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड अंडर सेक्शन 20. सेक्शन 20 में क्लियरली उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन किए गए हैं ऑफ द सेड एक्ट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू? So here the board's meetings shall be held at such time, place and in accordance with such rules of the procedures as may be prescribed. Yes, as per the rules they have to do. So this is very much true. In the absence of the chairperson, the meeting can be presided over by any member nominated by the chairperson, or in the absence of such nomination, a member elected by the members present at that time, they can take up the decision. Yes, this is also true. Decisions in the meeting are made by majority vote, and in case of a tie, the presiding officer has a casting vote. So this is also true. So based on that only they will be conducting the meetings and arriving at for whatever the meeting has been conducted. जो भी decision लेना है वो ले सकते हैं. So here in this case also 1, 2 and 3 are true. So hence D is the correct answer. So moving on to our next question, what are the functions of the board? So here which of the following is not a function of the board of function of the Building and Other Construction Workers Welfare Board under section 22 of the Building and Other Construction Workers Act 1996. Now when you look at the functions of the board, what are they do? See, whenever there is any accident or something to the beneficiary, immediate assistance वहाँ से मिल जाता है. They make pension payment of the pension of the beneficiaries who have completed 60 years, उनकी तरफ से pension भी मिलेगा. They also sanction loans and advances to beneficiary for construction of a house not exceeding the amount that has been already prescribed based on the उनके seniority, जो उनके workers है, उनके age, all that they take lot of things into consideration and then एक amount fix करते हैं. So that they can do. Pay such amount in connection with premium for group insurance scheme of the beneficiary, जहाँ पे भी they feel like that has to be done and as per the rules and regulations. Give such financial assistance for the education of children of the beneficiaries as the कुछ प्रिस्क्रिप्शन ऐसे कुछ प्रिस्क्राइब्ड ऐसा कुछ है तो दे सकते हैं. मीट एनी मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेजर एलिमेंट्स बेनिफिशियरी उनके डिपेंडेंट्स के लिए, मेटर्निटी बेनिफिट्स के लिए भी ये पेमेंट्स करते हैं. मेक प्रोविजन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ सच अदर वेलफेयर मेजर्स एंड फैसिलिटीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द एक्ट, जो भी उन्होंने मेंशन किया है. Okay, so in this case sanctioning loans and advances to beneficiaries for construction of houses, yes, based on the prescribed terms. Paying medical expenses for treatment of major ailments of beneficiaries or their dependents, yes, this is also true. Making payment of pension to the beneficiaries who have completed 60 years of age, क्योंकि वो every month वो कुछ premium भी pay करते थे, yes, this is also true. Providing financial assistance for higher education, no doubt, but not in foreign universities, बाहर education के लिए नहीं, इंडिया में जो higher education के लिए, for that they will be helping. So here in this case A is the correct answer because this is not a function of the that board. So A is the correct answer here. So moving on to our next question, consider the following statements regarding the Building and Other Construction Workers Welfare Fund under section 24 of the Act. Which of the following statements given
is or are correct. So here the fund shall consist of contribution from the beneficiaries, grants and loans by the central government and sums received from other sources as decided by the central government. Obviously इन्हीं सारे से उनका fund जो source होगा ना fund का वो होगा. So this is true. The fund may be used for the board's expenses including salaries and allowances of its members and employees and for purpose as authorized by the act. Yes, they can use this but only up to a certain extent. कितना? The board cannot spend more than 10% of its total expenses on administrative costs including salaries and allowances in any financial year. ये 10% नहीं, they can't spend more than 5% from this fund in any financial year towards administrative costs including the salaries etc. So here this is false. So only 1 and 2 are correct. So in this case the correct answer is B. So moving on to our next question. Under section 28 of the Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1996, what is the provision regarding payment for work done on a day of rest? ओके अगर एवरी 7 days में एक डे उनको रेस्ट देना ज़रूरी है, ठीक है. बट अगर उस रेस्ट डे में भी काम करवा रहे हैं देन द पेमेंट at the nominal rate of wages, no, this is false. Payment at a rate double the normal rate, this is also false. No payment is required, no, this is also false. The payment should not be less than the overtime rate. जो overtime rate के लिए fixed है rates वही इनको rest day के दिन भी applicable होंगे. So C is the correct answer here. So moving on to our next question. Under section 29 of the Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1996, what is the rate at which a building worker is entitled to wages for overtime work? तो ओवरटाइम वर्क के लिए उनको कितना मिलेगा? जो रेगुलर वेज मिलता है उससे उनको डबल मिलेगा. सो हियर ट्वाइस द ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस दे विल गेट. सो ओवरटाइम जब भी करेंगे उनको डबल वेज मिलेगा. सो हियर बी इज द करेक्ट आंसर. Moving on to our next question. The Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1996 prohibits the employment of persons with certain medical conditions in high-risk buildings or construction work, primarily to protect the safety of other workers rather than the worker with the medical condition. Okay, yes, this is true because the act prioritizes the safety of other workers over the employment rights of workers with medical conditions. अगर किसी को कोई डेफ है, डिफेक्टिव विजन है या फिर काम करते हुए गिडीनेस ऐसा कुछ आता है तो डेफिनेटली to protect the safety of other workers they should not hire for that person for such kind of work. So here A is the correct answer because this statement is true. Moving on to our next question. Under section 32 of the Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1996, what is the minimum requirement for the location of drinking water points in relation to washing places, urinals or latrines? आप फैक्ट्रीज एक्ट ऐसे कुछ देखेंगे उसमें भी यही है कि whenever such urinals है, washing place है, latrine है, compulsory at least the water drinking point should not be before 6 meters. So always it should be at least 6 meters away from these places. So that it will help to maintain proper hygienic practices. So here B is the correct answer. So under section 33 of the Building and Other Construction Workers Act 1996, what is the exception regarding the provision of separate urinals? See, it shall not be necessary to provide separate urinals in any place where less than 50 persons are employed or where the latrines are connected to a waterborne sewage system. So in दोनों cases में there is no exemption regarding the separate urinals करने की ज़रूरत नहीं है, जो latrines है उन्हीं को use कर सकते हो. So in this case less than 50% employed, this is the correct option. Moving on to our next question. Which of the following statements is or are correct regarding the provision of accommodation under section 34 of the Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1996?
So let's have a quick look at the statement. See, this is 1, 2, 3 and 4. Employers are required to provide temporary living accommodation free of charge to all the building workers for the duration of the construction work. Yes, this is true. The accommodation must include facilities for cooking, bathing, washing and lavatories. Yes, this is also true because of the basic necessities. Once the construction work is completed, employees are responsible for removing the temporary structures at their own cost and restoring the ground to a clean and level conditions. Yes, this is actually the responsibility of the employers itself. The law requires temporary accommodation to be provided only within the work site and not nearby. नहीं, दोनों तरह से हो सकता है, either within the work site or some nearby. So this is false. So here 1, 2, 3 are true. So here A is the correct answer. Moving on to our next question. Which of the following statements is or are correct regarding the provisions of creches under Section 35 of the Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1996? So the first, creches must be provided in places where more than 50 female building workers are ordinarily employed. This is true. The creches must cater to children under the age of 6 years of such female workers. This is also true. The rooms used as creches must be maintained in a clean and sanitary condition and under the charge of a trained personnel. सही person जो trained है उन्हीं के under ये होना चाहिए. Yes, this is also true. The law mandates the provision of creches regardless of the number of female workers employed. Already हम लोग ये कह रहे हैं कि 50 female members होंगे, उस building workers 50 होंगे, तो definitely creches की वो होना चाहिए. तो यहाँ पे regardless of the number we have to have, so बिल्कुल contradictory है. यहाँ पे जब मैंने true बोला है, obviously this would be false. So 1, 2, 3 they are true. So here D is the correct answer. So friends, till now we have been doing good number of MCQs as part of the practice and all that. See, एक small announcement है. EduTap ने अभी 3 तरह के courses launch किया है for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination for both APFC and EO or AO examination. See, when it comes to this UPSC EPFO, based on the requirement of the students, ये courses design किए गए हैं. So एक तो है मास्टर कोर्स, जहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि हमें बिल्कुल पूरा कंटेंट एक ही जगह से चाहिए, जैसे कि पीडीएफ, वीडियोस, क्वेश्चन बैंक, mentorship, everything, all that would be provided under this master course. And every week, to be precise on Thursday, Kuldeep sir will be available in a session, in an online session, जहाँ पे वो जो ये कंटेंट किस तरह से पढ़ना है, मतलब स्ट्रैटेजी किस तरह से प्रिपेयर करना है, वो आपको समझाएंगे और आपके जो भी डाउट्स है वो क्लैरिफाई करेंगे. ना दूसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज प्लस. ना कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जहाँ ना कुछ टॉपिक्स, कुछ सब्जेक्ट्स वो खुद से पढ़ लेते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स उनको स्पेशलाइज्ड जो उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है या फिर उनके पास कंटेंट नहीं है, उसके लिए वो ढूंढते हैं कंटेंट एक्सक्लूसिव, लाइक ना फॉर एग्जांपल पॉलिटी का हो गया या फिर लेबर लॉस का ही लेते हैं. ठीक है. एंड अलॉन्ग विद उनको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी चाहिए, तो उन बच्चों के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा ये कोर्स. ठीक है. ना थर्ड कोर्स आता है टेस्ट सीरीज. कई बार कुछ बच्चे ऐसे तो एक बार एग्जाम दे दिया है, फिर वो प्रिपेयर कर रहे हैं. सो उन्होंने तो अपना प्रिपरेशन पूरा कर लिया, बट नाउ उनको प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, रियल एग्जामिनेशन का फिर से फील चाहिए, सो दैट दे कैन प्रिपेयर एंड स्ट्रैटेजाइज देमसेल्फ वेरी वेल. ओके, सो ऐसे बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज वुड बी द बेस्ट ऑप्शन. सो अभी भी आपको कुछ और डाउट्स है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू एनी ऑफ द people from EduTap and get all your doubts clarified related to whatever doubts you have related to these courses and take an informed decision. Okay, thank you very much for being with me till the end. Hope you have liked the session. See you all in the next session very soon. Thank you very much once again. Hello friends, welcome to EduTap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 exam, wherein we'll be doing 15 MCQs a day, as part of which in today's session we'll be doing Labor Laws, Building and Other Construction Workers Act 1996. ये part 3 है. ओके, थोड़ा सा लेंदी है इसलिए 3 पार्ट्स में मुझे ये करना पड़ा. ओके, सो नाउ व्हाई इज दिस इम्पॉर्टेंट, व्हाई इज दिस सीरीज सो इम्पॉर्टेंट? सी, व्हेन इट कम्स टू बोथ APFC
यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम एंड ई और एओ दोनों में ये लेबर लॉस एंड आईआर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अराउंड 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ 120 आर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक्स है ओनली. सो अगर आप बिल्कुल बेसिक्स भी अच्छे तरीके से पढ़ के प्रैक्टिस करके भी जाएंगे ना 10+ क्वेश्चंस आप आराम से कर पाएंगे. एंड यू कैन सी द काइंड ऑफ वेटेज एंड स्कोरिंग पोटेंशियल दैट दीज टॉपिक्स हैव. So if you really want to score high in APFC or the E or AO exam, definitely I suggest you to go through these sessions regularly and practice the questions accordingly. क्योंकि जो भी हम लोग इसमें करवा रहे हैं that content is being done in the form of MCQ, so that एक रिविजन भी हो जाएगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी होगा. अगर रिविजन है तो पहली बार भी पढ़ रहे हो तो भी आपका पूरा कवरेज हो जाएगा एंड देन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी हो जाएगा. एंड मोर ओवर we are expecting the notification of UPSC EPFO for the year 2025 very soon. So I really hope that you will utilize these sessions wisely and prepare for the upcoming examination. So let's get into the session now. So moving on to our the first question for today's session. Under section 37 of the Building and Other Construction Workers Act, that is Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1996, what is the minimum number of building workers required for an employer to provide a canteen? See, जहाँ पे भी at least 250 members, 250 workers रहेंगे तो definitely there is an obligation for the employer to provide them with a canteen. Okay, so here the correct answer is C. So moving on to our next question, which of the following statements is or are correct regarding the provisions of safety committees and safety officers under section 38 of the Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1996? A safety committee must be constituted in every establishment where 500 or more building workers are ordinarily employed. Yes, this is true. जहाँ पे भी 500 से ज़्यादा workers काम कर रहे हैं वहाँ पे safety committee and safety officers की ज़रूरत है. The number of persons representing the workers shall in no case be less than the persons representing the employer. Okay, तो ये भी ट्रू है, वो कम नहीं हो सकते एम्प्लॉयर्स नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉयर्स से. अ सेफ्टी ऑफिसर मस्ट बी अपॉइंटेड इन एवरी एस्टेब्लिशमेंट रिगार्डलेस द नंबर ऑफ बिल्डिंग वर्कर्स एम्प्लॉयड. सो हियर ये भी ट्रू है कि उनको एक सेफ्टी ऑफिसर तो चाहिए बट एटलीस्ट 500 वेयर इन 500 और मोर बिल्डिंग वर्कर्स आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड. सो यहाँ पे दिस irrespective नहीं है, regardless, this is false, at least 500 होना चाहिए. So here 1 and 2 are true in this case, so A is the correct answer. It's not 1, 2 and 3, it is A that is the correct answer. क्योंकि in every establishment wherein 500 or more building workers are ordinarily employed, the employer shall also appoint a safety officer. Okay, in that case only. So here only 1 and 2 are the correct. So A is the correct answer here. So यहाँ पे गलत हुआ, I'm really sorry, मैं PDF में correct कर दूंगी. A is the correct answer. Moving on to our next question. Under section 39 of the Building and Other Construction Workers Act 1996, within what time period must the authority make an inquiry into an accident causing the death of 5 or more persons? कि अगर एक person की death हो गई या फिर work इंजर हुआ है, so in that case within 48 hours or more immediately following the accident the employer shall give notice thereof to the authority. उनको notice देना पड़ेगा. Okay, but in case of accident causing the death of 5 or more persons, so immediately जब भी notice मिलेगा, okay, उनको, so immediately the authority has to make an inquiry into the said accident and this should be done within the 1 month of the receipt of the notice. उनको तो notice मिलते ही within 1 month वो inquiry उनको complete करना पड़ेगा. So in this case B is the correct answer. Moving on to our next question. Under section 42 of the Building and Other Construction Workers Act 1996, who has the power to exercise the powers of an inspector throughout India? See, the central government may appoint a gazetted officer of the central government to be the Director General of the Inspection. Now this Director General of the Inspection, he is responsible for laying down the standards of the inspection and also exercise the powers of an inspector throughout the India.
अगर वही चीफ इंस्पेक्टर ऑफ इंस्पेक्शन करना है related to the state, then the state government will do that. Again, appoint a gazetted officer of that government to be the chief inspector of inspection. So in this case, it is a director general of inspection appointed by, he is a gazetted officer appointed by the central government, has that right. So here A is the correct answer. Now section 43 of this act, that is the Building and Other Construction Workers Act 1996, refers to the powers of the inspector. Okay, let's have a quick look at the which of the following is or are the powers of an inspector under the section 43 of the said act. Inspector premises, the inspector can inspect premises where building or construction work is carried out and examine any required registers or notices. Definitely he has every right to do that, so this is true. Questions any person present in the premises if there is a reasonable cause to believe they are employed as a building worker. Yes, this is also true. Seize or copy relevant records, wages or notices in case of suspected offences under the act. अगर एक्ट के अंदर कुछ वो सही से नहीं कर रहे हैं तो definitely he can seize them. Prosecute employers directly for non-compliance without referring to the other authorities. He has to refer to the other authorities or provide them information, only then he can prosecute. So this is false. So 1, 2, 3 are true in this case. So in this case it is B that is the correct answer. See, 1, 2, 3 only. Moving on to our next question. Under section 44 of the Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1996, which of the following are the responsibilities of an employer? Providing constant and adequate supervision to ensure compliance with the safety provisions. Yes, this is very true. Ensuring the timely payment of wages to all building workers employed by them. Yes, this is also very true. Okay. Paying compensation in case of contractor's failure to do so and recovering it from the contractor. Yes, dues में से वो recover कर सकते हैं. This is also very much true. Reporting accidents to the inspector within 24 hours. ये दूसरे section में and that too 48 hours में उनको करना पड़ेगा. Now as per the requirement. So here only 1, 2, 3 are the true statements. So A is the correct answer. Moving on to our next question. ये statement based question है. I'll read out the statement and you have to tell me which is false and the reason, or true and the reason. Statement. Under the Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1996, an employer is required to send a written notice to the inspector at least 15 days before commencing any building or other construction work. Now whether it is true or false. Yes, उनको देना तो पड़ेगा. Kind of construction work, the name, purpose of the construction work proposed, everything they have to provide it in detail, but the notice period ये गलत है. So here the statement is false because the notice period is of at least 30 days and not 15 days. So hence here the correct answer is B. Moving on to our next question. Under section 51 of the Building and Other Construction Workers Act 1996, what is the time limit for filing an appeal against the imposition of penalty? See, when it comes to the penalty imposed by the Director General, then the appeal should be made to the central government. If the penalty has been imposed by the Chief Inspector, then the appeal must be made to the state government, because in both the cases the central government and the state government respectively are the ones who have appointed them. So obviously unse upar jane to they have to go to the central and state government respectively. So in this case, within 3 months of the date of communication they can appeal to the higher authorities. So here in this case A is the correct answer. So moving on to our next question. Under section 55 of the Building and Other Construction Workers Act 1996, what is a time limit for making a complaint to take cognizance of an offence punishable under this act? अगर उनको ये higher authorities तक लेके जाना है, that is the time limit for making a complaint to take cognizance of an offence which is punishable under this act. So उसके लिए within 3 months from the date of knowledge of the offence that has to be taken forward. Okay. So here the correct answer is C. Moving on to our next question. Which of the following is a power vested in the central government under the Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1996?
So here this is the central government can give directions to state governments and boards for effective implementation of the act. ये major central government का power है and they can dictate or give direction to the state governments and the boards for effective implementation of this act. So hence here in this case C is the correct answer. Moving on to our next question. Under the Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1996, which of the following categories are excluded from the application? So ऐसे ही क्वेश्चन हमने किया था फर्स्ट पार्ट में, बट ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब थोड़ा सा ट्वीक किया गया है. Now construction projects with a total cost less than 10 lakhs, these are excluded. This is true. Individuals who employ workers in their private residence, this is also true. Supervisory personnel earning more than 1600 per month, this is also true. Persons employed in a managerial or administrative capacity, yes, this is also true, they are excluded. So here all of the above is the answer, because all these people, they are excluded from application of the Building and Other Construction Workers Act 1996. So hence D is the correct answer here. So friends, till now we have been doing good number of MCQs as part of the practice and all that. See, एक small announcement है, EduTap ने अभी 3 तरह के courses launch किया है for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination for both APFC and EO or AO examination. See, when it comes to this UPSC EPFO, based on the requirement of the students, ये courses design किए गए हैं. So एक तो है मास्टर कोर्स, जहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि हमें बिल्कुल पूरा कंटेंट एक ही जगह से चाहिए, जैसे कि PDF, वीडियोस, क्वेश्चन बैंक, mentorship, everything, all that would be provided under this master course. And every week, to be precise on Thursday, Kuldeep sir will be available in a session, in an online session, जहाँ पे वो जो ये कंटेंट किस तरह से पढ़ना है, मतलब स्ट्रैटेजी किस तरह से प्रिपेयर करना है, वो आपको समझाएंगे और आपके जो भी डाउट्स है वो क्लैरिफाई करेंगे. ना दूसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज प्लस. ना कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जहाँ ना कुछ टॉपिक्स, कुछ सब्जेक्ट्स को खुद से पढ़ लेते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स उनको स्पेशलाइज्ड जो उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है या फिर उनके पास कंटेंट नहीं है, उसके लिए वो ढूंढते हैं कंटेंट एक्सक्लूसिव, लाइक ना फॉर एग्जांपल पॉलिटी का हो गया या फिर लेबर लॉस का ही लेते हैं. ठीक है. एंड अलॉन्ग विद उनको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी चाहिए, तो उन से बच्चों के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा ये कोर्स. ठीक है. ना थर्ड कोर्स आता है टेस्ट सीरीज. कई बार कुछ बच्चे ऐसे तो एक बार एग्जाम दे दिया है, फिर वो प्रिपेयर कर रहे हैं, सो उन्होंने तो अपना प्रिपरेशन पूरा कर लिया, बट नाउ उनको प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, रियल एग्जामिनेशन का फिर से फील चाहिए, सो दैट दे कैन प्रिपेयर एंड स्ट्रैटेजाइज देमसेल्फ वेरी वेल. ओके, सो ऐसे बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज वुड बी द बेस्ट ऑप्शन. सो अभी भी आपको कुछ और डाउट्स है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू एनी ऑफ द people from EduTap and get all your doubts clarified related to whatever doubts you have related to these courses and take an informed decision. Okay, thank you very much for being with me till the end. Hope you have liked the session. See you all in the next session very soon. Thank you very much once again. Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO exam 2025, wherein we'll be doing 15 MCQs in a session, as part of which we'll be doing today in this session Labor Laws Payment of Bonus Act 1965 Part 2. We have already done Part 1 of this. Now, why is this series important? See, be it UPSC EPFO APFC exam or the AO or EO exam, labor laws and industrial relations are considered as one of the most important topics, because close to 15 plus questions out of 120 are asked from these topics, which is actually a very good number. And given your preparation, even आप basic भी अच्छे तरीके से करोगे, इसका basic concepts और basic acts etc and उनका जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एक्सेट्रा वो भी करोगे तो वेरी इजीली आप 10 प्लस क्वेश्चंस तो आराम से सॉल्व कर सकते हो, विच इज एक्चुअली हाई स्कोरिंग. सो पोटेंशियल भी अच्छा है, वेटेज भी अच्छा है एंड टॉपिक्स तो इम्पॉर्टेंट है ही. सो इफ यू रियली वांट टू स्कोर हाई in any
or both of these examination, I would suggest you to watch these sessions regularly. Moreover, we are expecting the UPSC EPFO 2025 notification very soon. So गिवन द कॉन्टेक्स्ट नोटिफिकेशन भी आने वाला है एंड उसमें ये सारे इंपॉर्टेंट भी है, तो डेफिनेटली आई सजेस्ट यू टू गो थ्रू दिस सेशंस रेगुलरली सो दैट आपका जो प्रैक्टिस है, रिवीजन है, वो भी हो जाए, प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस है वो भी हो जाए, बिकॉज वी आर डूइंग ऑल दीज एक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ MCQs. Moving on to our first question of this session. Which of the following conditions are considered when computing the number of working days for an employee under section 14? Why number of working days किस लिए important है? बोनस पे करने के लिए, right? Based on the number of working days, उसके basis पे ही वो calculation होगा. Okay, so here if the employee has been laid off during the accounting year, even then वो working days में ही compute करेंगे हम लोग, तो definitely this is true. The employee has been on leave with salary or wage during the accounting year, though the person is on leave but still वो leave उनका accrued हो गया, जो भी होगा, इसीलिए तो wage और सब कुछ pay हो रहा है. In that case definitely that will be included. अगर wage pay नहीं हो रहा है then that will not be included. Okay, the employee has been absent due to temporary disablement caused by an accident arising out of and in the course of employment. Definitely ऐसे चीज में भी, because वहाँ पे भी उस टाइम पे मेडिकल लीव टाइप का होगा, तो डेफिनेटली वो भी इसमें अकाउंट करेंगे हम लोग, number of working days even in their absence. The employee has been on maternity leave with salary or wage during the accounting year. Definitely that person will also be considered, that is the days in leave also as working days. So all of these above are correct when it comes to the computation of number of working days for these people. So here the correct answer is C. So moving on to our next question. Which of the following statements are correct, is or are correct regarding the set on and set off of allocable surplus under section 50? Now, if the allocable surplus exceeds the maximum bonus payable in any accounting year, the excess shall be carried forward and set on in the succeeding accounting years up to a maximum of 4 years for payment of bonus. ओके, सो इस साल में अगर एलोकेबल सरप्लस बहुत ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम बोनस पे करने के बाद भी बच रहा है, दैट वुड बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, एटलीस्ट 4 years तक उस अमाउंट को हम लोग बोनस के लिए यूज कर सकते हैं. सो दिस इज वेरी मच ट्रू. If there is no available surplus on the allocable surplus falls short of the minimum bonus payable, वो भी कम पड़ रहा है, in that case there is no sufficient amount that can be carried forward for set off. This deficiency shall be carried forward to be set off in the succeeding accounting years again up to 4 years. Okay, फिर उसको set off करते जाएंगे, तो लॉस की तरह ही है, तो that would be set off in the following years. सेट ऑन जब होगा जब एक्सेस होगा, सेट ऑफ जब होगा जब कम होगा. ठीक है, yes, this is also true. In calculating the bonus for a succeeding accounting year, any amount carried forward for set on or set off from the latest accounting year shall be prioritized. नो, जो अर्लियर अकाउंटिंग ईयर है उसका प्रायोरिटाइज होगा. जो नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना तब हमें ये समझ में आएगा. द अमाउंट ऑफ सेट ऑन और सेट ऑफ कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम द अर्लीस्ट अकाउंटिंग ईयर shall be considered first when calculating the bonus for the succeeding accounting year. नेक्स्ट ईयर का जब करेंगे तो अर्लियर ईयर का हम लोग कंसिडर करेंगे. सो हियर इन दिस केस दिस इज फॉल्स एंड दिस इज बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी है दोनों में. So either one should be correct, right? So here fourth is the correct. So 1, 2 and 4 are the correct statements in this. So here B is the correct answer when it comes to section 15 of the Payment of Bonus Act. So moving on to our next question. Which of the following statements is or are correct regarding the special provisions for newly set up establishments under section 16? Section 16 में कुछ special provisions है with respect to certain establishments, that is actually newly set up establishments. So for the first 5 accounting years, the bonus is payable only for the assessment years in which the employer derives profit, and the provisions of set on and set off do not apply here.
क्योंकि वो तो स्टार्टिंग में ही है, सो एक बेनिफिट है. सो यस, दिस इज वेरी मच ट्रू. In the sixth accounting year, set on or set off is done by considering the excess or deficiency of the allocable surplus for the fifth and sixth accounting years, and this is very much true. Okay. In the seventh accounting year, set on or set off is done by considering the excess or deficiency of the allocable surplus for the fifth, sixth, seventh accounting years. As you can see here, fifth year के बाद 5 years के बाद वो धीरे 1 year on year 1 year add कर रहे हैं, right? Set on and set off का करने के लिए. क्यों? By 8th year once they reach, वो 4 years वाला जो clause है ना वो applicable हो जाएगा. See. So this is also true. From the 8th accounting year onwards, the provisions set on and set off apply in the same manner as they do for other establishments. That is 4 years तक वो carry forward कर सकते हैं. So in this case, all of these statements are true. Hence D is the correct answer. Moving on to our next question. If an employer has already paid a customary bonus such as पूजा bonus etc. जैसे कि join हो रहे तो उसमें कुछ customary bonus कभी कभी मिल जाता है to an employee in a given accounting year. The employer is required to pay the full amount of bonus payable under the Payment of Bonus Act without adjusting the customary bonus paid earlier. Now you have to tell me whether this statement is true or false. Now this falls under section 17, adjustment of customary or interim bonus against the bonus payable. So here in this case, अगर कुछ कस्टमरी या पूजा बोनस जिसको बोलते हैं या इंटरिम बोनस अगर कभी पे किया है एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ने, तो डेफिनेटली द एम्प्लॉयर वो उसको एडजस्ट कर सकते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ इज फॉल्स बिकॉज द एम्प्लॉयर इज एंटाइटल्ड टू डिडक्ट द कस्टमरी बोनस पेड अर्लियर फ्रॉम द बोनस पेएबल अंडर दिस एक्ट. सो हियर बी इज द करेक्ट आंसर. ये ट्रू हो ही नहीं सकता, पार्टली ट्रू भी नहीं. ओके, बट ओनली अप टू सर्टेन लिमिट ऐसा कुछ भी नहीं है, डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टेंसेस नहीं है. He can deduct that. So here in this case B is the correct answer. Moving on to our next question. Which of the following statements is or are correct regarding the deduction of amounts from the bonus payable under section 18? section 17 में हमने देखा है कि अगर कुछ इंटरिम बोनस या फिर एडवांस बोनस कुछ पे किया तो ऑब्वियसली दैट कैन बी डिडक्टेड. और भी कुछ ऐसे डिडक्शंस कर सकते हैं क्या, वो इसमें देखेंगे. If an employee is found guilty of misconduct causing financial loss to the employer is allowed to deduct the amount of loss from the bonus payable to the employee in that accounting year, and this is very much true. Okay. Next, the employer can deduct the loss from the bonus in any subsequent accounting year if the misconduct occurred earlier. No, उसी accounting year में उनको करना पड़ेगा. So this is false. The employee is entitled to receive the balance of the bonus after the deduction of the loss caused by the misconduct. Yes, this is also true. जो भी loss हुआ है इसकी वजह से, employee की वजह से, that they have to deduct, rest they have to give it to the employee. So this is true. The deduction of loss is applicable to any amount of bonus payable under the act irrespective of the accounting year. No, ऐसा कुछ नहीं. जिस accounting year का उसी accounting year में close करना पड़ेगा, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते उस तरह की चीजों को. सो दिस इज फॉल्स. सो ओनली 1 and 3 आर करेक्ट. सो हियर बी इज द करेक्ट आंसर. Moving on to our next question. Which of the following statements is or are correct regarding the time limit for the payment of bonus under section 19? Okay, so let's have a look at the statements given. If there is a dispute regarding payment of bonus pending before any authority, the employer must pay the bonus within 1 month from the date on which the award becomes enforceable. कुछ उन्होंने award मतलब इसमें क्या है, कुछ judgment दिया है, right? Enforceable or the settlement comes into operation within 1 month, that has to be done. This is very much true. Okay. In case other than a dispute, अगर कोई dispute नहीं है, then the employer must pay the bonus within 8 months from the closure of the accounting year. This is also very much true. Within 8 months they have to pay. अगर कोई dispute ऐसा कुछ भी नहीं है तो. The appropriate government or an authority specified by it can extend the 8-month period for the payment of bonus provided the extension does not exceed a total of 2 years. Yes, this is also true. अगर कुछ circumstances ऐसे हुए हैं तो definitely they can, but not more than 2 years. So this is also very much true. The employer can unilaterally extend the payment period beyond 8 months without seeking approval from the appropriate government. Now see,
यहाँ एक्चुअली 1 2 3 4 होना चाहिए. नाउ 3 and 4 कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी, इधर इनके हाथ में होगा या फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के हाथ में होगा, or any authority specified by the appropriate government, right? So when I am saying that the third statement is true, obviously this would not be true. So this, yes, this is false. So only 1 2 and 3 are correct here under section 19. So here A is the correct answer, as you can see here. Moving on to our next question. The Payment of Bonus Act applies to establishments in the public sector. When is that happening, or कब ऐसे होगा, when that would be applicable? That would be applicable when the establishment, the public sector establishment, generates at least 20% of its gross income from sales or services in competition with the private sector. Private sector में same industry अगर है, so अगर प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले में ये एटलीस्ट 20% ऑफ इट्स जो भी ग्रॉस इनकम होगा वो सेल्स एंड सर्विसेज के थ्रू ही अर्न करेगा, देन दिस पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट वुड बी अप्लाइड टू द एस्टैब्लिशमेंट, public sector establishment. So yes, in this case it is B that is the correct answer. Okay, so moving on to our next question. See here, which of the following statements is or are correct regarding the recovery of bonus due from an employer अंडर सेक्शन 21? अगर कुछ बोनस रह गया है एम्प्लॉयर के पास, किस तरह से वो रिकवर कर सकता है एम्प्लॉय? 1, इफ एनी मनी इज ड्यू टू एन एम्प्लॉय बाय वे ऑफ बोनस अंडर द सेटलमेंट, अवार्ड और एन एग्रीमेंट, अगर कुछ है, द एम्प्लॉय और हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव में अप्लाई टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर द रिकवरी ऑफ द मनी. यस, दिस इज वेरी मच ट्रू, वही सही प्रोसेस है. In case of employee's death, his assignee or heirs can apply for the recovery of the bonus due. This is also true as per the legal proceedings. The appropriate government will issue a certificate to the collector for the recovery of the bonus due, which will be recovered in the same manner as an arrear of land revenue. अगर land revenue pending है तो किस तरह के procedure follow करके वो दे लेंगे, उसी procedure को यहाँ पे वो करके employer से वो amount employee को दिलाएंगे. So this is also true. Every application for the recovery of bonus must be made within 2 years from the date of money that became due. Now within 1 year the employee has to follow the process that we have discussed. ये appropriate government के पास जाना, वो certificate देना, ये 1 year से पहले ही उसको appropriate government के पास जाना पड़ेगा कि ये due है employer से उनका bonus. So in this case 1, 2 and 3 statements are correct. So here C is the correct answer. Moving on to our next question. Under the Payment of Bonus Act, what is the obligation of every employer regarding the maintenance of records? Let's have a quick look at the statements. To prepare and maintain registers and records in a manner specified by the employer. No, this is not true. As per the prescribed format, they have to maintain. To submit all records and registers to the government authorities on a monthly basis, ये भी true नहीं है. Only उनको maintain करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि उनको submit करना पड़ेगा. To maintain records only for a period of 1 year, no. To prepare and maintain registers, records and other documents in a form and manner prescribed under this act, जो भी procedure है उसी के basis पे उनको करना पड़ेगा, so that whenever inspector comes, वो उस records को सही से अगर कुछ check करना है तो that they can check. Okay, so under section 26, the maintenance of registers and records says that every employer shall prepare and maintain registers, records and other documents in a form and manner that has been prescribed. So here in this case, B is the correct answer. Moving on to our next question. Which of the following powers are vested in an inspector appointed under section 27 for the purpose of ensuring compliance with the provisions of the act? Okay, so here the inspector can require an employer to furnish any information deemed necessary for ascertaining compliance with that. Definitely they have to provide जो भी records है, registers है कि हमने ये bonus pay कर दिया है, उनसे जो acknowledgement लिया, वो ऐसे कुछ भी वो मांगता है तो definitely they have to provide that they are complying with the act. The inspector may enter any establishment or premises connect therewith at any reasonable time. सही टाइम पे आना चाहिए and require the person in charge to produce accounts, books, registers and documents related to employment, salary, wages or bonus. Yes, this is also true. Definitely they can look at.
The inspector has authority to examine the employer, his agent, servant, or any other person in charge of the establishment, or any other person the inspector believes to have been employed there. Definitely he has every right to do so, so that सही से information उसको मिले. The inspector is not authorized to make copies or take extracts from the documents maintained in relation to the establishment. No, उनको ये right भी रहेगा कि अगर उनको कुछ copies लेना है, ले जाके फिर उसको बाद में verify करवाना है या फिर कुछ करवाना, तो definitely he can take as per the powers that have been vested with him. So this is false. So only 1, 2 and 3 are correct, and here A is the correct answer here. Yes. Moving on to our next question, cognizance of offences under section 30. Who can take that? Okay, so under the Payment of Bonus Act, which of the following statements is correct regarding the cognizance of offences? Who can take that? No court shall take cognizance of any offence punishable under this act except on a complaint made by or under the authority of an appropriate government. Who is that person? If appropriate government, central government है, like in sectors like oil fields, mines, etc., regional labor commissioner, only he can go for this. And अगर state government है, appropriate government like pharma, textiles, etc., उसमें labor commissioner. So here only a court of a presidency magistrate or a magistrate of first class can take cognizance of an offence punishable under this act on a complaint made by the appropriate government or an authorized officer. जो हमने देख लिया सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है, अगर स्टेट गवर्नमेंट का सेक्टर है तो कौन है. So here B is the correct answer in this case. So moving on to our next question. Which of the following statements is or are correct regarding the special provisions for payment of bonus linked with production or productivity under section 31A? So the first statement says employees are entitled to receive a bonus based on an agreement or settlement linked with production or productivity in lieu of a bonus based on profits under the act. Yes, this is true, क्योंकि उनका जितना profits है based on that minimum bonus तो देना पड़ेगा. अगर नहीं हुआ तो उनको एक मैक्सिमम बोनस देना पड़ेगा. वो हमने देख लिया है इन द अर्लियर सेक्शंस, राइट. सो दिस इज ट्रू. एनी एग्रीमेंट और सेटलमेंट दैट डिप्राइव्स एम्प्लॉयज ऑफ देयर राइट टू रिसीव द मिनिमम बोनस इज वैलिड एंड एनफोर्सेबल. नो, क्योंकि मिनिमम बोनस उनको देना ही देना है. अगर किसी एग्रीमेंट में उन्होंने किया है कि नहीं, अगर हमें ये प्रॉफिट बोनस नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ है, तो दैट वुड बिकम नल एंड वॉइड अंडर दिस एक्ट. ओके, सो दिस इज फॉल्स. Third, employees are entitled to receive a bonus linked with production or productivity, but the bonus paid cannot exceed 20% of the salary or wage earned during the relevant account year. Yes, अगर excess में है तो हमने देखा है maximum bonus दे सकते. कितना होगा maximum? That is 20% of the salary or wages, right? उतना ही देना पड़ेगा. Minimum है तो 8.33% और 100 रुपीज मिनिमम देना पड़ेगा. इवन दो वो एलिकेबल सरप्लस कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट्स नहीं है, दैट वुड बी कैरिड फॉरवर्ड, राइट. सो हियर दिस इज ट्रू. सो ओनली 2 इज फॉल्स, 1 and 3 बोथ आर करेक्ट. ओनली 1 करेक्ट? नो, क्योंकि दूसरा भी करेक्ट है. ओनली 3 इज करेक्ट? नो, बोथ आर करेक्ट. सो 1 और 3 आर करेक्ट. सो हियर A is the correct answer. Moving on to our next question. Which of the following classes of employees are excluded from the provisions of this act under section 32? Okay, जहाँ पे भी social welfare institutions होंगे और like your RBI, Industrial Finance Corporation of India, or any financial corporation under established under section 3, or any joint financial corporation established under the section 3A of the State Financial Corporations Act, etc., insurance companies, etc., there वहाँ पे इनको provisions के अंडर नहीं आएंगे. Like employees employed by the Life Insurance Corporation of India, yes, this is true. Seamen, yes, this is also true. Employees employed by universities and other educational institutions established for profit, no, not established for profit. जहाँ पे भी not for profit होगा, definitely वहाँ पे this bonus payment of bonus act लागू नहीं होगा. So this is false here. Employees employed by Industrial Development Bank of India, here this is true. So here 1, 2 and 4 are true, 3 is not true. So here in this case A is the correct answer.
So moving on to our next question, which of the following statements are correct, is or are correct regarding the applicability of the act to employees under section 32? मतलब act do not apply to certain classes of employees. इससे पहले जो हमने देखा था उसी के बेसिस पे है. The act does not apply to employees employed by any insurer carrying on general insurance business. This is true. The act applies to employees employed by the Reserve Bank of India. No, this is not true. This is false. Employees employed by the Indian Red Cross Society are covered under the provisions of its act क्योंकि ये not profitable है, so definitely ये इनका नहीं, इसके ऊपर apply नहीं होगा, so this is also false. Okay, the act does not apply to employees employed by inland water transport establishment operating on routes passing through any other country. This is also true. Yes, it does not apply. So here in this case only 1 and 4 are correct. So as you can see here, 1 true hai, this is false, and it does not apply to the, yes, this is true. So only 1 and 4 are correct. So B is the correct answer. Same जो हमने इससे पहले किया था उसी के बेसिस पे थोड़ा सा in different way they have asked the question, थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए. ओके सो फ्रेंड्स, अब तक आपने देखा है कि हमने किस तरह से कई तरह के एक्ट्स का हमने देखा है कि क्वेश्चंस हम लोग कंटेंट जो है वी आर डूइंग इन द फॉर्म ऑफ MCQs एंड बहुत अच्छे तरीके से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं. along with that EduTap has been currently offering 3 major courses associated with the upcoming UPSC EPFO 2025 examination for both APFC and EO or AO examination. Okay, so the first course itself is a master course. मतलब इसमें A to Z आपको सब कुछ मिल जाएगा. Content PDFs, content videos, all the topics, all the subjects associated, everything, 1 point contact आपको है. along with that every week इसमें कुलदीप सर एक strategy session लेंगे, every Thursday to be precise. and क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है तो स्ट्रैटेजी भी बनानी पड़ती है, कौन सा कंटेंट किस तरह से कैसे पढ़ना है, कैसे यूटिलाइज करना है इस कंटेंट को, वो सब वो उनमें समझाएंगे. along with that आपके जो भी डाउट्स है वो सब वो क्लैरिफाई करेंगे. सो ये हो गया ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, दे आर लुकिंग आउट फॉर नो कंटेंट एट वन, ऑल एट वन प्लेस. दूसरा है टेस्ट सीरीज प्लस. ना ये ऐसे बच्चों के लिए यूजफुल रहेगा जहाँ पे कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा ऑलरेडी कुछ आइडिया है कुछ सब्जेक्ट्स तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हमने कभी पढ़ा नहीं है तो हमें लगता है बस ये एक दो सब्जेक्ट्स हमें एक जगह पे मिलेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा. तो उस तरह से बच्चों के लिए, एंड अलॉन्ग विद दैट टेस्ट सीरीज ऑल्सो, तो उनका एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा. जो सब्जेक्ट्स उनके पास नहीं है वो भी कर सकते हैं. तो ये हो गया सेकंड कोर्स. थर्ड कोर्स है एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज. सो इसमें क्या है, जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके या एक बार एग्जाम दे दिया है इससे पहले भी एंड स्टिल दे आर प्रिपेयरिंग वन मोर टाइम, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि खुद से प्रिपेयर करते हैं, सो उनके लिए, लेकिन ऐसे बच्चे ढूंढते रहते हैं कि टेस्ट कुछ क्वेश्चंस हम लोग चैप्टर क्विजेस करें या फिर कुछ टेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें एंड गेट द फील, रियल फील ऑफ द एग्जामिनेशन प्रायर टू द एग्जामिनेशन. ऐसे बच्चों के लिए बेस्ट कोर्स है. सो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू एनी ऑफ द EduTap faculty or the people, and you can get your doubts clarified related to these courses so that you can make an informed decision. Okay, thank you very much for being with me so patiently till now. Thanks a lot. So see you all soon in with the next session. Till then, take care. Bye bye. Hello friends, welcome to EduTap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination, wherein we'll be doing 15 MCQs a day, and here today we are going to see 15 MCQs from the Mines Act 1952 in part 1. Now, why is this series important, or why is this topic important as such? See, when we look at the questions that are asked in the UPSC EPFO exam, be it APFC or EO or AO examination, generally close to 15 plus questions are asked out of 120. Now, the component has very high weightage, as you can see here, and has good scoring potential as well. Even if you cover basics also in a good manner, you will be able to resolve 10 plus questions here. So yes, this is very
good topic and scoring potential which has, and important as well. So I suggest you to go through these sessions regularly and revise and practice these questions, because whatever the most important sections in each act we have covered in a very detailed manner in the form of MCQs, that would make your practice easy as such. Okay, along with that, we are expecting the notification for both the APFC and EOR exam in 2025 very soon. So this preparation will help you a lot in cracking this exam in the first attempt. So with this introduction, let me get into the session. So coming to the first question, the statement here says the primary objective of the Mines Act 1952 is, what is its objective? See, when it comes to the objective of the Mines Act, why it was launched, majorly to amend and consolidate the law relating to the regulation of labor and safety in mines, because we all know mines, they have to get into such kind of places also where meager oxygen and water supply would be there, and really it's very difficult. So वहाँ पे काम करना मतलब उस तरह के conditions में वो थोड़ा अलग सा है, तो उसी तरह से उनको compensation भी होना चाहिए, उसी तरह से उनको facilities भी मिलना चाहिए, उसी तरह से उनको एक obviously mines में करना मतलब safety issues, तो वो and mines it comes under the appropriate government, central government ही है. इतने दिन अगर आपको याद है, हमने इतने सारे एक्ट्स किए हर जगह पे जहाँ पे भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, ऑयल फील्ड्स, माइंस, डिफेंस, राइट, इन तीनों का स्पेशली इनका जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है दैट वुड बी सेंट्रल गवर्नमेंट. हियर आल्सो इन दिस केस इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड हियर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज only B, that is only 2, that is amend and consolidate the law relating to the regulation of labor and safety in mines. So moving on to our next question. According to the Mines Act, which of the following definitions is correct? An adult is defined as the person who has completed his 21st year. ये गलत है क्योंकि ये 18th ईयर, अगर 18 years कंप्लीट हो गया है तो then that person can be called as an adult. So ये false है. Okay, a reportable injury refers to an injury that results in the absence of the injured person from work for at least 48 hours. ये भी गलत है क्योंकि ये 72 hours है, and then कुछ serious injury हुआ है and all that, then they'll consider this. Okay, a week is defined as a period of 7 days beginning at the midnight of Saturday night or as approved by the chief inspector. ये true है, ये यही है. रिपोर्टेबल इंजरी यहाँ पे हमने बोला गलत है 48 आवर्स, और यहाँ पे दूसरा डेफिनेशन दिया है, यस दैट इन्वॉल्व्स इन्फोर्ड एब्सेंस ऑफ द इंजर्ड पर्संस फ्रॉम द वर्क फॉर अ पीरियड ऑफ 72 आवर्स और मोर. ये ट्रू है, ये हमने अभी देखा ही था जब डिस्कस कर रहे थे. सो हियर ओनली 3 and 4 आर करेक्ट, सो दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर. Now coming to the next question, which focuses on section 3 of the Mines Act 1952, wherein it says that ये एक्ट कुछ certain cases में applicable नहीं होगा. वो कौन से cases हैं? So ये according to section 3 of the Mines Act 1952, the provision of the act shall not apply to. देखते हैं statements. Mines engaged in the extraction of the कंकर, मुरम, laterite and building stone, provided the workers do not exceed below supergigantic ground. So एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली उस तरह के काम इस एक्ट में लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा माइंस मतलब एक बहुत ही अंदर जाके वो कर नहीं रहे हैं, ऊपर ऊपर से कर रहे हैं. सो दिस इज ट्रू, दैट डज नॉट अप्लाई इन दिस केस. माइंस वेयर एक्सट्रैक्शन इज मेड फॉर द प्रोस्पेक्टिंग पर्पसेस ओनली. ऐसा नहीं कि बिल्कुल ओरिजिनल काम करे, पायलट प्रोजेक्ट की तरह, मतलब एक वहाँ सैंपल्स लेना एंड ऑल दैट. Provided the depth of the excavation does not exceed 15 meters for coal and 6 meters for other minerals. So this is also very much true. Okay, जब prospecting purpose के लिए जब करते हैं तो थोड़ी बहुत उनको डिग करके देखना पड़ता है, सैंपल्स वो सब लेना पड़ता है. So उस केस में this is applicable. So the act does not apply for such cases. Mines employing more than 50 persons in open cast workings provided explosions are not used. Explosions नहीं भी use करेंगे फिर भी 20 plus है तो definitely that would apply. So this is false. Mines engaged in the extraction of ordinary sand and clay provided the depth of excavation exceeds 6 meters and explosives are used. 6 meters के अंदर है तो ही
ज़रूरत नहीं है, otherwise the act would be applicable. So this is also false. And in this case, when it comes to section 3, the act does not apply to the first two cases. So hence only 1 and 2 are the correct answers. So here A is the correct answer. So moving on to our next question, the statement says, according to the Act, under Section 5 of the said Act, who is eligible to be appointed as a Chief Inspector of the Mines or an Inspector of the Mines? Now, when we talk about this, central government, because it is appropriate government, they may appoint such a person as the Inspector of Mines or the Chief Inspector of Mines based on the prescribed qualifications that are required. Okay, and one more important point, whenever such person is being appointed, the person shall continue to hold such office who becomes directly or indirectly not interested in any mining or mining rights in India. Okay, only then that particular person will be eligible for such post, that is chief inspector, and he'll be doing the or performing the duties as per the rules and regulations that are laid out by the central government, because that is the appropriate government here, and they will be considered as the public servants within the meaning of the Indian Penal Code. So in this case, a person with the prescribed qualifications and no direct or indirect interest in any mine or mining rights in India would be appointed as the chief inspector. And in some cases, if the central government says so, then the district magistrate may exercise the powers as pertain to the chief inspector of mines and to the whatever the work that has been provided to him. Only in special cases that this happens. So here in this case, B is the correct answer. So coming to the next question, section 6 of the said act, wherein functions of the inspectors will be looking into. Consider the following statements regarding the function of inspectors under section 6 of the act. Which of the following statements given below is or are correct? The chief inspector can delegate specific powers to any inspector or class of inspectors with the approval of the central government. Yes, this is very much true. The chief inspector has authority to restrict or prohibit the exercise of powers by any inspector or class of inspectors. Yes, this is also true. In case he feels that they are misusing that, definitely he can. The chief inspector determines the jurisdiction of inspectors by declaring the local area or class of mines where they shall exercise their powers. Yes, this is true, because central government, when appoints a chief inspector, he has been bestowed by all these powers. So yes, all these are true, hence D is the correct answer in this case. Moving on to our next question. With reference to section 7 of the Mines Act 1952, consider the following statements about the powers of inspectors. Which of the following given below statements are correct? Let us see the statements. Inspectors can enter, inspect and examine any mine or part thereof at any time, including during the night. अगर काम चल रहा है तो definitely. Inspectors are authorized to examine the ventilation of the mine and the sufficiency of the bylaws in force. अगर कुछ है, क्योंकि अगर कुछ एक्सक्लूसिव टाइप का, अलग टाइप का माइंस है, तो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा लॉस या जो भी बाई लॉस होंगे वो होंगे, वेदर दे आर बीइंग फॉलोड thoroughly or not. Yes, they have every right, even though that's a special mine. Inspectors can take statements from any persons, whether on the presence of the mine or elsewhere, if deemed necessary for the purpose of that. Yes, definitely can do that. कर सकते हैं. Inspectors can impose penalties on the mine owners without prior notice or inquiry. No, until and unless an inquiry or prior notice is given, fines या penalties can't be imposed. एक उनको भी chance देना चाहिए अपनी तरफ से explanation देने को. So yes, that would be given, only then the penalty can be imposed. So here this is false. So here 1, 2, 3 only is correct. So here in this case B is the correct answer. So moving on to our next question. Under section 8 of the act, which of the following statements is or are correct regarding the powers of a special officer to enter a mine? Now any person in the service of the government can be duly authorized by the chief minister or of an inspector to work as a special officer in certain cases. In such cases, when such person is appointed, what are his or her उनके powers क्या है? Let us have a look here.
The government authorized person may enter a mine at any time, either during day or night. Yes, this is definitely true when it comes to inspectors. ये वो कभी भी जा सकते हैं. The purpose of entry is restricted to activities such as surveying, leveling or measuring the mine. Yes, generally ये क्योंकि already inspector तो है बाकी सब देखने के लिए. So other than that जो purpose है, leveling, surveying करना या फिर सही से हो रहा है कि नहीं, as per that वो 6 meters के अंदर है या उससे ज़्यादा है तो act वाला वो सब देखना है, तो उनको कुछ सब देखना पड़ेगा ना किस तरह से measurements and all वो सब है mine का, वो इनका काम है. No prior notice is required to be given to the mine manager before such entry. No, they have to be given, क्योंकि without that special officer जा सकते, कभी भी जा सकते हैं, लेकिन ये सब काम करना तो definitely they have to be provided informed priorly, so that वो अपना जैसे भी arrange करना है that they can be done. At least 3 days का notice, minimum 3 days पहले इनको notice दे देना चाहिए related to this for whatever purpose the special officer is visiting. So here only 1 and 2 are correct, so A is the correct answer. So moving on to our next question. In the event of a minor being declared medically unfit to discharge their duty due to employment related illness and no alternative employment is available, what compensation is the minor entitled to receive from the owner, agent or manager? See, kabhi kabhi hota hai no, even after taking all the precautions there might be some accidents. Okay, so in such cases what is the care that needs to be taken, or what are the facilities to be provided for occupational health servant, all that this section looks into that. Section 9A. The chief inspector or an inspector may undertake safety and occupational health survey in mine after giving a notice. उनको सही से notice देंगे तो कभी भी day and night में कभी भी वो जाके वो survey कर सकते हैं. And the time spent by any person employed in a mine who is chosen for the examination in the safety and occupational health survey shall be counted towards his working time. जो भी वो time इस survey के लिए दे रहे, that also उनको पे कर सकते हैं, पे करना पड़ेगा उनको. So however that any overtime shall be paid at the ordinary rate of wages. So अगर कुछ ज़्यादा देर भी बैठना पड़ा इनके साथ वो survey के दौरान, he'll be paid as an extra time भी बैठना पड़ा, but still the person will be paid at ordinary rate of wages but not as overtime, because काम नहीं करे they participating in the survey. And examination के बाद जब medically unfit होंगे, then any person when he is found medically unfit to discharge the duties shall be entitled to undergo medical treatment. क्योंकि उसी टाइम जब वो जॉब में थे तभी उनको that has been diagnosed, so definitely जो medical treatment होगा that all would be provided at the cost of the owner of the mine. कभी कभी agents, क्योंकि agents वो लेते हैं ना mine को लीज टाइप का लेके काम करवाते हैं वो, या फिर मैनेजर जो वहाँ कर रहे हैं will be considered as the main person there. So वो सब उनके ट्रीटमेंट उनको देना पड़ेगा at the cost of them and with full wages. ओके, जो भी उस पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट का होगा फुल वेजेस के साथ करना पड़ेगा. Now, if even after the treatment the person is declared medically unfit, then definitely उनको एक alternative employment देना पड़ेगा in the mine in for which that person is medically fit. कई बार ऐसा होता है ना, एक मेडिकल, अच्छा इनका वेट इतना होना चाहिए, इनका बीपी इतना होना चाहिए एंड ऑल दैट, ओनली देन दैट पर्सन इज एलिजिबल टू गेट इनटू द माइन फॉर वर्क. अदरवाइज वो ऑफिस जॉब, डेस्क जॉब के लिए बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो जिस चीज़ के लिए वो मेडिकली फिट है देयर दे हैव टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट. अगर नहीं प्रोवाइड कर रहे टिल द टाइम, अगर कोई इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, इन सच केसेस एक डिसेबिलिटी अलाउंस उस पर्सन को उनको देना पड़ेगा. सो हियर इन दिस केस अ डिसेबिलिटी अलाउंस अंटिल ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इज टू बी गिवन टू दैट पर्सन. सो हियर P is the correct answer. So moving on to our next question from section 11, wherein the central government may appoint qualified medical practitioners to be certifying surgeons for mines. So here this statement, एक scenario दिया है. The central government has appointed Dr. X as a certifying surgeon under this act, the Mines Act. Dr. X wants to authorize Dr. Y, a qualified medical practitioner, to exercise some of his powers under that. Yes, that can be done.
एक डॉक्टर सर्टिफाइड सर्जन आने के बाद अगर जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ी तो डेफिनेटली वो कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं वर्क के लिए, बट अगेन विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. यस, दिस इज ओके. However, Dr. X is also the owner of a mine in the nearby area. Now, what is the correct course of action in this scenario? Now, whenever a certifying surgeon is appointed by the central government, that person should not become the owner, agent or manager of a mine directly, indirectly. उसका कोई interest नहीं होना चाहिए in the process of mining and all that business में, and therefore that particular person is not eligible. Okay, connection भी नहीं होना चाहिए. So in this case, the central government should revoke Dr. X's appointment as a certifying surgeon due to his conflict of interest. So D is the correct answer. He can authorize, कर सकते हैं, as I have said and all that, but he cannot have an interest in the business of mines. So here D is the correct answer. So moving on to our next question. Consider the following statements regarding the committee constituted under section 12 of the said act. Which of the below given statements is or are correct? Now yes, the central government shall constitute a committee, whenever required in resolving कुछ काम के लिए, कुछ specialized काम के लिए, so definitely they can go for the committee arrangement. Okay, constitution. So here let's see the statements. The committee is chaired by a government appointed official who is neither the chief inspector nor an inspector. क्योंकि उनसे नहीं हो रहा तभी तो committee आ रहा है, तो definitely वो नहीं होंगे. This is very much true. The chief inspector of mines is an ex officio member of the committee, but yes, वहाँ का पूरा information ये सब उनको सबसे ज़्यादा रहता है कि किस तरह से करते हैं and all that. So definitely they should be made a member. तो member रहेगा. The committee includes equal representation from both mine owners and miners. So minimum यहाँ पे 2 people होना चाहिए from the miners, okay, interest of the owners of the mines appointed by the central government, and 2 qualified mining engineers भी होना चाहिए who are not directly employed in the mining industry. Okay, so 2 to each होना चाहिए. Yes, this is also true. Only individuals directly employed in the mining industry are eligible to be appointed as mining engineers in the committee. No, mining engineers not directly employed in the mining industry would be appointed. वो ज़रूरत है. तो yes, this is false. So here only 1, 2, 3 only are correct. So here in this case, C is the correct answer. So moving on to our next question, functions of the committee of section 13 we are dealing with, and here एक scenario दिया है and they're asking you how you will act on that. So a mining accident occurred in a coal mine in Jharkhand, resulting in loss of lives and injuries to several workers. The central government wants to investigate the incident and make recommendations to prevent such accidents in the future. Good. So what is the most appropriate course of action for the central government to investigate the incident and make recommendations? Now whenever, जैसे मैंने बताया कि committees appoint कर सकती है central government, so they consider proposals for making rules and regulations under this act, and देखते हुए उनको एक recommendation, appropriate recommendation भी कर सकते हैं central government. ये one of the important function of the committee है. Okay, and their another function is to inquire into any such incidents or accidents that may be referred to the central government from time to time, and उनके ऊपर reports भी बनाते हैं ये committee. Okay, and along with that their another function is to hear and decide any appeals or objections against notices or orders under this act. जैसे कभी इंस्पेक्टर ने भेज दिया कुछ उनको कुछ नोटिस मिल गया, कोई ऑर्डर मिल गया, तो डेफिनेटली अगर अपील करना है माइनर्स को या फिर एम्प्लॉयज को, देन दे कैन गो टू दिस कमिटी. सो हियर कमिटी के ये सारे फंक्शंस है. सो ऑब्वियसली द गवर्नमेंट विल refer the matter to an existing committee जो already है under section 13 of the act to inquire into the accident and make a report. ये already है ही. So here the correct course of action in this case is going for option B. So moving on to our next question. This is as per section 16, notice to be given for the mining operation. So एक statement है, application based है, तो आपको timeline बताना पड़ेगा. A new mining company XYZ Minerals is planning to start its mining operations in a district in Jharkhand. The company wants to ensure compliance with the relevant laws and regulations. Obviously, they have to follow. What is a minimum time period before the commencement of mining operations that XYZ Minerals must give notice in writing to the chief inspector
the controller, Indian Bureau of Mines and the district magistrate that yes, we are going to operate this mine, we are going to start mining operations here. वो उसके लिए definitely 1 month का time उनको देना पड़ेगा. So before 1 month they have to give this. So here the correct answer is C. So moving on to our next question. With reference to section 17 of the Act, the Mines Act, regarding the appointment and responsibility of the managers in mine, consider the following statements. Now, which of the following given statements is or are correct? Let's have a look at the statements. Every mine must have a sole manager who meets the prescribed qualifications, obviously, because वहाँ कुछ भी होता है तो someone should be there to look after. So definitely this is true. The manager is responsible for the overall management, supervision and direction of the mine. Yes, this is also true. Any instructions given by the owner or agent to the manager must be confirmed in writing. ऐसा नहीं कि बोल दिया है उसके बाद they can take their words back. So इसलिए everything should be the instructions, be it the owner or the agent. If manager को दे रहे, that should always be in writing. Okay. The owner or agent of a mine cannot appoint themselves as a manager under any circumstances. No, under certain circumstances they can appoint themselves as manager जो supervise, क्योंकि छोटे मोटे है तो वो अलग से क्यों करेंगे, खुद से ही कर सकते हैं. तो definitely अगर prescribed qualifications है तो definitely they can be appoint themselves as manager. So here only 1, 3, 4 are true. So A is the correct answer. So moving on to our next section, that is section 19, drinking water किस तरह से रखना है, कैसे रखना है, all that. So in a mine, what is the minimum distance required between a point providing drinking water and any washing place, urinal or latrine, unless a shorter distance is approved by the central inspector. So जहाँ पे भी ड्रिंकिंग वाटर है वहाँ बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में उनको लिखना पड़ेगा ड्रिंकिंग वाटर. जो भी लैंग्वेज वहाँ सबसे ज़्यादा चलता है उस एरिया में, वो सबसे ज़्यादा समझ सकते हैं miners and others. And always वो 6 meters के इसमें रहना पड़े, मिनिमम 6 meters होना चाहिए फ्रॉम द नियरेस्ट वॉशिंग प्लेस, यूरिनल और लैट्रिन, सो दैट जो हाइजीनिक है वो मेंटेन कर सके. अगर उस प्लेस नहीं है वहाँ पे थोड़ा सा 6 meters के अंदर उनको लाना है तो डेफिनेटली इन राइटिंग चीफ इंस्पेक्टर से इन माइनर्स को अपन अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा. ठीक है. सो हियर इन दिस केस इट इज 6 meters. सी इज द करेक्ट आंसर. सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने MCQs किया है जो आपके प्रिपरेशन को और भी आगे लेके जा सकता है. नाउ आपके प्रिपरेशन को और भी अच्छे से करने के लिए EduTap हैज़ लॉन्च 3 मेन कोर्सेज एक्सक्लूसिवली for those who are targeting the upcoming UPSC EPFO, both APFC and EO और AO examination. ठीक है. वो 3 कोर्सेज क्या क्या है? सबसे पहले आता है आपका मास्टर कोर्स, जिसमें आपको पूरा कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, PDFs, MCQs, टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, एवरीथिंग आपको इसमें मिल जाएगा. ठीक है. ये उनके लिए है जो भी अपना प्रिपरेशन अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं एंड दे आर लुकिंग आउट फॉर ना एक 1 point कॉन्टैक्ट की तरह, जहाँ से उनको सब कुछ मिल जाएगा, कंटेंट भी, स्ट्रैटेजी भी, एक्सेट्रा. एंड हियर एवरी वीक कुलदीप सर आपको एक स्ट्रैटेजी देंगे कि इतना कंटेंट है तो उसको किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो अपने प्रिपरेशन में, एंड ऑल दैट अलॉन्ग विद इट जो भी आपके डाउट्स है वो रिजॉल्व करेंगे. एवरी थर्सडे क्लास रहता है. नेक्स्ट आता है टेस्ट सीरीज प्लस. इसमें ये उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लिए हैं या फिर कुछ सब्जेक्ट्स में इनको आइडिया है बिल्कुल और कुछ सब्जेक्ट्स में नहीं है. तो एक ही अगर उनको सब्जेक्ट चूज करने, लाइक एक्सक्लूसिवली पॉलिटी के लिए उनको बिल्कुल कंटेंट चाहिए या फिर सिर्फ लेबर लॉ से IR के लिए चाहिए, इन दैट केस ये उनके लिए बहुत सही रहेगा, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कंटेंट अलॉन्ग विद दैट फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, तो आपका बिल्कुल फुल प्रूफ वो हो जाएगा. थर्ड आता है आपका कोर्स टेस्ट सीरीज. टेस्ट सीरीज में क्या है, आप ये ऐसे बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी एक बार या फिर एक बार एग्जाम देके फिर दे रहे हैं या फिर उनका बिल्कुल अपने एंड से प्रिपरेशन है लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं है, उन जैसे बच्चों के लिए ये बिल्कुल बेस्ट है, जहाँ पे आपको गुड नंबर ऑफ MCQs वुड बी प्रोवाइड इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट. तो आपको एक रियल एग्जाम का फील भी मिलेगा, एक अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगा. So if you have any doubt, कोई query है, you can always reach out to any of the personnel from the EduTap जो available है, and you can get your doubts clarified. Accordingly, you can make an informed decision. So hope you have all liked the session. So thank you very much for being with me so patiently till end, and we'll meet soon in another session very soon.
Thank you very much once again. Hello friends, welcome to EduTap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination, wherein we'll be doing 15 MCQs a day, and as part of which in this session we'll be doing labor laws, the Mines Act 1952 part 2, part 1 we have already done. Now coming to why this series or why these topics are important. See, when we look at the number of questions that are asked, the pattern or questions का देखेंगे that are asked in the UPSC EPFO exam, be it APFC or your examination both. See, in this out of 120 questions, close to 15 plus questions are asked from these topics only. So you can see the number of questions, very good number, and the component also has a high weightage and has good scoring potential as well, because आप basics भी cover करेंगे अच्छे तरीके से, you will be able to answer 10 plus questions बहुत easily कर सकते हो आप. And I suggest, if you really want to score good marks, especially in APFC or your AO examination, follow these sessions regularly, क्योंकि हम लोग इस sessions में all the acts जितने भी है labor laws के and IR के, we are doing that in a very detailed manner in the form of MCQs. इससे क्या है, आपका एक revision भी हो जाएगा and good number of practice questions you will be having. Moreover, we are expecting the notification, UPSC EPFO 2025 notification very soon. So I suggest you to follow these videos religiously. So with this, let me start with today's session. So moving on to our next question. With reference to section 20 of the Act regarding conservancy provisions in mine, urinals, latrines and all that, consider the following statements. Which of the following statements is or are correct? देखते हैं. Every mine must provide separate latrines and urinals for males and females, ensuring they are accessible at all times. Yes, this is very much true. The maintenance of latrines and urinals in a clean and sanitary condition is the responsibility of the mine management. Obviously, उनका responsibility है उनका maintenance का. Yes, this is also true. The central government has authority to determine the number of latrines and urinals based on the workforce composition. Obviously, ये भी central government prescribe कर सकती है. Okay, yes, that mandates that latrines and urinals must be constructed within 50 meters of the working area. ऐसा कुछ भी नहीं है. So this is false. So here only 1, 2, 3 are correct. So option A is the correct answer. Moving on to our next question related to the medical appliances under section 21. So under section 21 of the Mines Act, in a mine where more than 150 persons are employed, what is the minimum requirement regarding medical facilities that must be provided and maintained? See, when it comes to this section, every mine, they shall provide and maintain the readily accessible first aid boxes or cupboards, compulsory है. And एक इंचार्ज भी होना चाहिए who is responsible for such treatment and all that, and that particular person should be trained in first aid treatment, and they should be readily accessible during the working hours of the mine. Definitely, क्योंकि कुछ भी होता है तो immediately first aid मिलना ज़रूरी है. And ये सब तो है ही, but if जहाँ जिस माइन में 150 माइनर्स पर्सन से ज़्यादा काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड है, तो इन सच केस एक फर्स्ट एड रूम होना ज़रूरी है विथ प्रिस्क्राइब्ड इक्विपमेंट एंड मेडिकल स्टाफ, सब कुछ होना चाहिए. लेस देन दैट, फर्स्ट एड बॉक्सेस, फर्स्ट एड कबर्ड्स, रेस्पॉन्सिबल पर्सन विथ ट्रेंड रेस्पॉन्सिबल पर्सन टू ऑपरेट एंड ऑल दैट शुड बी देयर. ग्रेटर देन 150 फर्स्ट एड रूम ही होना चाहिए विथ प्रिस्क्राइब्ड इक्विपमेंट एंड स्टाफ. सो हियर बी इज द करेक्ट आंसर. So moving on to our next question. With reference to section 23 of the Mines Act regarding the notice to be given of accidents in the mines, consider the following statements. Which the following statements given below are correct? First, the owner, agent or manager of the mine must report accidents such as explosions, inrush of water or influx of gas and breakage of the ropes and chains immediately. Yes, this is true. A notice of an accident resulting in the loss of life must be posted on a special notice board for at least 14 days for trade union officials to inspect. Okay, yes, this is also true. उनको ये करना चाहिए. An inquiry into an accident causing loss of life must be conducted within 2 months of receiving the notice. ये भी true है, because within that timelines they have to do the जो भी inspection है that needs to be done so that further accidents can be avoided. The accident site must be disturbed
must not be disturbed before inspection by the chief inspector or inspector, except in cases where rescue operations, removal of the bodies or prevention of further accidents are necessary. Until and unless these are required, they should not disturb, क्योंकि फिर सही से उनको information नहीं मिलता है. Any accident causing enforced absence from work for more than 24 hours must be recorded in register, and a copy of the entries must be submitted annually to the chief inspector. Yes, this is also very much to कुछ भी accident होता है जहाँ पे वो injury की वजह से work को report नहीं कर पाते, no, even after 24 hours. In that case, definitely that should be entered into register, and उस तरह के incidents को every year annually लॉस ऑफ लाइफ नहीं है बट इंजरी है, सो इन दैट केस एनुअली चीफ इंस्पेक्टर को वो रिपोर्ट्स देना पड़ता है. सो येस, व्हेन इट कम्स टू सेक्शन 23, ऑल दीज आर द rules and regulations that needs to be followed, and here C is the correct answer because all these are true. 1 2 3 4 5 all are true. So moving on to our next question. A miner is deprived of his weekly day of rest due to operational requirements. कुछ काम था इसलिए. Now what is the maximum time frame within which the miner must be granted compensatory days of rest? Now this comes under section 29, okay, and section 28 कहता है कि weekly day of rest जरूरी है. 6 days उसने काम किया तो एक डे, it is in a week 1 day तो लीव हॉलीडे होना चाहिए. ओके, ये सेक्शन 28 बोलता है. नाउ सेक्शन 29 क्या बोलता है? इन केस अगर उसको लंबा काम करना पड़ा, कभी कभी होता है कि माइन में चले जाते हैं तो दे माइट नीड टू वर्क थोड़ा एक्सटेंडेड टाइम पे. इन सच केसेस विदिन द मंथ इन विच द डेज ऑफ रेस्ट वर ड्यू और विद इन द नेक्स्ट 2 months उसको कंपेंसेटरी लीव या रेस्ट देना चाहिए. सो दिस कम्स अंडर सेक्शन 29 एंड सेक्शन 28 में वीकली डे ऑफ रेस्ट. Okay, so here in this case C is the correct answer. So moving on to our next question with reference to section 30 of the Mines Act, wherein they look into hours of work above ground. Which of the following statements is or are correct regarding the working hours of adults employed above ground in a mine? First, an adult worker cannot be required to work for more than 48 hours in a week or more than 9 hours in a day except with the prior approval of the chief inspector for exceeding daily hours to facilitate shift changes. ये true है, उससे ज़्यादा वो काम नहीं कर सकते. The total spread over of work hours including rest intervals must not exceed 12 hours in a day and at a stretch 5 hours से ज़्यादा भी वो काम नहीं कर सकती. And chief inspector का permission है, then that can be extended to 14 hours but not more than that. So this is also true. Workers from different shifts are allowed to perform the same kind of work simultaneously above ground provided they take the rest intervals at different times. No, this can't be done. They are not allowed to perform the same kind of work simultaneously above ground. So this is false. So here in this case only 1 and 2 are correct. So A is the correct answer when it comes to section 30 of the Mines Act. So moving on to our next question. According to section 31 of the Mines Act, which looks into the hours of work below ground. अभी तक हमने section 30 में above ground देखा था, ये below ground है. Now which of the following statements is or are correct regarding the hours of work below ground in a mine? No adult employed below ground in a mine shall be allowed to work for more than 48 hours in any week or for more than 8 hours in any day. This is very much true क्योंकि ये थोड़ा cumbersome work है. The daily maximum hours of work can be exceeded without any prior approval to facilitate change in shifts. So here they have to take prior approval अगर कुछ change है तो definitely. So this is false. Work below ground in any mine must be carried out by a system of shifts arranged such that the period of work for each shift does not exceed the daily maximum hours. Obviously उसी तरह से उनको करना पड़ेगा, otherwise वो maximum hours तो exceed कर देंगे जो है 8 hours in a day. So definitely this is true. No person employed in a mine shall be allowed to be present in any part of the mine below ground except during the periods of work shown in the register maintained.
अगर उनको माइन में जाना है तो डेफिनेटली दे हैव टू गेट दैट एंटर्ड इनटू द रजिस्टर्ड, एंड अगेन उस शिफ्ट में उनका नाम है या नहीं, अगर नहीं है तो ही इज नॉट ऑथराइज टू एंटर इनटू द माइन एट एनी कॉस्ट, ठीक है। सो हियर एक्सेप्ट ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ वर्क शोन इन द रजिस्टर दैट इज मेंटेन, अगर उनका है तो ही, अदरवाइज दे कांट एंटर। यस, दिस इज वेरी मच ट्रू फॉर सेफ्टी। सो हियर 2 ही गलत है, बाकी 3 करेक्ट है। सो 1, 3, 4 ओनली इज द correct answer here, that is B is the correct answer. Moving on to our next question, section 33 of the Mines Act for extra wages for overtime. So under section 33 of the Mines Act regarding the extra wages for overtime, which of the following statements is or are correct? A worker employed above ground in mine is entitled to overtime wages if they work more than 9 hours in a day or 48 hours in a week. Yes, this is true, हमने देखा है 9 hours above, below ground 8 hours, right? A worker employed below ground in a mine entitled to overtime wages if they work more than 8 hours in a day and 48 hours in a week. Yes, this is also true. Overtime wages shall be paid at the rate of twice the ordinary rate of wages. Yes, this is also true. For workers in a piece rate basis, their time rate is calculated based on their daily average earnings from the previous week, excluding the overtime. Yes, this is also true. कई बार ऐसा होता है ना कि full time नहीं, कुछ एक्स्ट्रा काम है, ऐसे प्राइस रेट बेसिस पे काम लेते हैं. इन सच केसेस, यस, प्रीवियस no, the time rate is calculated based on the daily wages, that earnings based on the previous week excluding the overtime. ओवरटाइम एक्सक्लूड करके जो भी वो अर्न करते हैं उसी के बेसिस पे जो एवरेज उन्होंने कमाया है वही उनका टाइम रेट बेसिस, मतलब पर आवर या जो भी है वो कैलकुलेट करके उनको दे देते हैं. यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो इन दिस केस ऑल ऑफ दीज आर ट्रू. 1, 2, 3, 4, hence D is the correct answer. So moving on to our next question. With reference to the provisions related to the working hours in mines under section 34 and 35, consider the following statements and you have to tell me which statement is correct. Now when we talk about section 34, it is a prohibition of employment of certain persons. ओके जो ऑलरेडी दूसरे जगह पे काम कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी प्रीसीडिंग 12 आवर्स से वो काम कर रहे हैं माइन में, तो दे आर नॉट अलाउड टू बी एम्प्लॉयड फर्दर. सो दैट इज काम नहीं करवा सकते. So here a person who has already worked in one mine cannot be required or allowed to work in another mine within the preceding 12 hours. वो नहीं कर सकते, at least 12 hours होने के बाद ही they can go. So this is very much true. This pertains to section 34. Now section 35 बोलता है limitations of the daily hours of work. So here the maximum permissible working hours for a person employed in a mine including overtime shall not exceed 10 hours in a day. Okay, so overtime करके मैं 4 घंटे 5 घंटे करूँगा, that's not possible. So here this says that उतना ही वो कर सकते, 10 hours से ज़्यादा नहीं कर सकते, and this is the true statement when it comes to section 35. So yes, here both 1 and 2 statements are true. So C is the correct answer. So moving on to our next question. According to section 36 of the Mines Act, which of the following statements is or are correct regarding notices about hours of work in a mine? Okay, ये manager का responsibility होता है that they have to do. Let's look at the statement. The manager of every mine must post a notice stating the time of commencement and end of work as well as the time for each relay if a relay system is used when it comes to working in the mine, and definitely this is true. The notice must be posted at least 7 days before the commencement of work. Yes, this is also very much true. The notice must include the time of commencement and intervals for rest for persons employed above ground. Yes, this is also true. Obviously वो होना चाहिए. If any alteration is proposed in the time fixed for work or rest intervals and amended notice, क्योंकि वो ऑलरेडी जो जब माइन बनता है उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है दैट ऑल वुड बी बेस्ड ऑन दैट डिटेल्स, राइट. सो वो डिटेल्स अगर चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली दैट मस्ट बी पोस्टेड and sent to the chief inspector at least 3 days before the change. No, this is करना चाहिए but not 3 days before the change, at least 7 days का वो होना चाहिए. So here only 1, 2, 3 are the correct option, that is points here as per the section 36. So here A is the correct answer. Moving on to our next question. As per section 40 of the Mines Act, which of the following statements is correct regarding the employment of persons below 18 years of age in mine? Okay, so no person below 18 years of age is allowed to work in any time. That is very much true. ये हमने पहले भी देखा था सेक्शन 2 में जब डेफिनेशंस आया था उसमें देखा था हमने डेफिनेटली. एंड बट
एक ऑप्शन, एक कैचे है here, and that is apprentices and trainees above 16 years but below 18 years they can work under supervision, but with prior approval from the chief inspector or an inspector who can allow to do so same. So necessary approvals के साथ कर सकते हैं. So here both A and C are the correct answer, that is D is the correct option here. Moving on to our next question, women empowerment. With reference to section 46 regarding the employment of women in mines, consider the following statements and you have to tell me which statement is correct. So first देखते हैं, women are prohibited from working in any part of the mine that is below ground. ये है, this is true. Women can be employed in above ground mining operations but only between 6 am and 7 pm subject to certain conditions. Yes, this is also very much true. वो नाइट शिफ्ट में काम नहीं कर सकते. Every woman employed in a mine above ground must be given a rest interval of at least 11 hours between the consecutive work shifts. तो obviously डे टाइम किया तो नाइट पूरा हॉल्ट, फिर मॉर्निंग. सो yes, this is also true. The central government may modify working hours for women in the above ground mining operations, but employment between 10 pm and 5 am remains prohibited at any cost. Yes, this is also very much true. यही है as per the section 46 where employment of women जो है above ground ही कर सकते हैं. So here B is the correct answer because C is the correct answer because all of these statements are true. 1 2 3 4 सारे ही true है. So C is the correct answer. So moving on to our next question, with reference to section 52 of the Act regarding the annual leave with wages, consider the following statements. क्योंकि उनको rejuvenate करना है तो obviously एक annual leave देना पड़ेगा with full wages. So उसमें conditions क्या क्या है? Now which of the following given statements are correct? A person employed below the ground is entitled to 1 day of leave every 15 days of work, while other persons, employees, are entitled to 1 day of leave for every 20 days of work. Yes, this is very much true. Okay, annual leave उतना वो ले सकते हैं other than the weekly leave. To complete a calendar year's service, a below ground employee must have at least 190 attendances, while others must have at least 240 attendances in year. उतना होगा तो they'll be eligible for this 1 day of leave every 15 days of work. So yes, this is also true. Maternity leave up to 12 weeks and agreed layoffs count towards attendance but do not earn additional leave, obviously. So this is also true. Leave can be carried forward but at no time can accumulate the leave exceed 30 days except when leave was applied for but not granted, in which case there is no limit. So this is also very much true. अगर 30 days से ज़्यादा वो accumulate करके आगे नहीं लेके जा सकते but उन्होंने leave के लिए apply किया but वो approve नहीं हुआ, in that case वो सारे ही leaves use कर सकते हैं. There is no restriction to that limit. Employees must apply for the leave at least 15 days in advance and leave cannot be taken for more than 3 times in a year except in case of illness. This is also true. ये true है. So here in this case all of these statements are true. So here 1 2 3 4 5 C is the correct answer when it comes to section 52 of the Mines Act, where it deals with the annual leave with wages. Moving on to our next question. A miner has been granted 5 days of leave. What is the employer's obligation regarding the payment of wages before the leave begins? See, when it comes to section 54 of the payment in advances in certain cases, any person who is employed in mine who has been allowed leave for not less than 4 days shall be, before his leave begins, be paid the wages due, that is जो भी due है for the period of the leave that has been allowed. वो लीव पे भी होंगे तो उससे पहले ही उनका पेमेंट वेजेस कर देना चाहिए. सो हियर इन दिस केस पे वेजेस ड्यू फॉर द पीरियड ऑफ लीव दैट हैज बीन अलाउड इन दिस केस. सो हियर अगेन दिस इज फॉर नॉट लेस देन 4 days. 4 days से कम है तो वो अगली बार वो कर सकते हैं जो भी टाइमलाइन है, बट 4 days से ज़्यादा है तो डेफिनेटली अगर वो उस वेज पीरियड में पड़ता है तो दे हैव टू बी पेड. So here B is the correct answer. This is as per the section 54 payment in advance in certain cases. Moving on to our next question. A mine owner has taken proceedings against a miner for an offence under the Act
कुछ किया है, कुछ माइनर ने कुछ गलत किया है, तो he has to take that. So what is the mine owner's obligation regarding reporting the result of the court judgment, जो भी court judgment है आया है, that the person, the mine owner has to report to the chief inspector within 21 days. 21 days के अंदर जो भी judgment आया है या order आया है, that has to be submitted, sent to the report has to be sent to the chief inspector. So this is as per the section 71, where owner etc. has to report to the chief inspector in certain cases. This is one of such cases. So here A is the correct answer. Moving on to our next question. A dispute arises regarding whether a particular excavation in a mine within the meaning of the act. Okay, कौन करेगा? So who has authority to decide this question and what is the status of their decision? Okay, so when it comes to a particular excavation in a mine, so definitely it is the central government that would decide on such question, and जो certificate है, a certificate signed by the secretary to the central government shall be conclusive on the point, और कोई question नहीं उठेंगे. So here in this case C is the correct answer. So here this is for the decision of question whether a mine is under the act or not, that solely lies with the central government only. This is as per the section 82 of the Mines Act. So friends, अभी तक हमने MCQs किया है जो आपके प्रिपरेशन को और भी आगे लेके जा सकता है. नाउ आपके प्रिपरेशन को और भी अच्छे से करने के लिए EduTap has launched 3 main courses exclusively for those who are targeting the upcoming UPSC EPFO, both APFC and EO or AO examination. ठीक है, वो 3 कोर्सेज क्या क्या है. सबसे पहले आता है आपका मास्टर कोर्स, जिसमें आपको पूरा कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, PDFs, MCQs, टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, एवरीथिंग आपको इसमें मिल जाएगा. ठीक है, ये उनके लिए है जो भी अपना प्रिपरेशन अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं एंड दे आर लुकिंग आउट फॉर ना एक 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट की तरह, जहाँ से उनको सब कुछ मिल जाएगा, कंटेंट भी, स्ट्रैटेजी भी, एक्सेट्रा. एंड हियर एवरी वीक कुलदीप सर आपको एक स्ट्रैटेजी देंगे कि इतना कंटेंट है तो उसको किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो अपने प्रिपरेशन में, एंड ऑल दैट अलॉन्ग विद इट जो भी आपके डाउट्स है वो रिजॉल्व करेंगे. एवरी थर्सडे क्लास रहता है. नेक्स्ट आता है टेस्ट सीरीज प्लस. इसमें ये उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लिए हैं या फिर कुछ सब्जेक्ट्स में इनको आइडिया है बिल्कुल और कुछ सब्जेक्ट्स में नहीं है. तो एक ही अगर उनको सब्जेक्ट चूज करने, लाइक एक्सक्लूसिवली पॉलिटी के लिए उनको बिल्कुल कंटेंट चाहिए या फिर सिर्फ लेबर लॉस एंड IR के लिए चाहिए, इन दैट केस ये उनके लिए बहुत सही रहेगा, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कंटेंट अलॉन्ग विद दैट फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, तो आपका बिल्कुल फुल प्रूफ वो हो जाएगा. थर्ड आता है आपका कोर्स टेस्ट सीरीज. टेस्ट सीरीज में क्या है, आप ये ऐसे बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी एक बार या फिर एक बार एग्जाम देके फिर दे रहे हैं, या फिर उनका बिल्कुल अपने एंड से प्रिपरेशन है लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं है, उन जैसे बच्चों के लिए ये बिल्कुल बेस्ट है, जहाँ पे आपको गुड नंबर ऑफ MCQs वुड बी प्रोवाइड इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट. तो आपको एक रियल एग्जाम का फील भी मिलेगा, एक अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगा. So if you have any doubt, कोई query है, you can always reach out to any of the personnel from the EduTap जो available है, and you can get your doubts clarified. Accordingly, you can make an informed decision. So hope you have all liked the session. So thank you very much for being with me so patiently till end, and we'll meet soon in another session very soon. Thank you very much once again. दोस्तों आई होप आप लोगों ने वीडियो कम्प्लीटली देख ली होगी और आप लोगों को इस कंपोनेंट को कवर करने में इस वीडियो ने काफ़ी हेल्प करी होगी. दोस्तों अगर आप इसी तरीके से APFC और EU एग्जाम के बाकी कंपोनेंट्स को भी कवर करना चाहते हैं तो हमने आप लोगों के लिए 3 डेडिकेटेड कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, जिनमें सबसे पहले है मास्टर कोर्स. इस मास्टर कोर्स में हमने APFC और EU एग्जाम के हर एक कंपोनेंट को कंप्रेहेंसिवली कवर किया है विद द हेल्प ऑफ चैप्टर वाइज वीडियोस, चैप्टर वाइज नोट्स एंड चैप्टर वाइज क्विज. उसके साथ साथ आप लोगों को APFC एग्जाम के 5 और EU एग्जाम के 5 फुल लेंथ मॉक्स देखने को मिलेंगे, प्लस वीकली मेंटर टॉक सेशन भी यहाँ पर कंडक्ट होते हैं. तो सेकंड कोर्स है स्पेशल सब्जेक्ट का कोर्स. ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने GS एंड QRE अच्छे से कवर कर लिया है, जिनके उनको सिर्फ प्रैक्टिस MCQs चाहिए, बट वो कंपोनेंट जो APFC और EU एग्जाम में स्पेशल आते हैं लाइक आयर एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटेंसी, वो उन्होंने कवर नहीं किया, तो उनको हमने यहाँ पर कंप्रेहेंसिवली कवर किया है. और दोस्तों तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज, जो उन बच्चों के लिए जिन्होंने एक बार एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, रिवीजन कर लिया है और अब सिर्फ क्वालिटी प्रैक्टिस करना चाहते हैं. तो ये 3 डिफरेंट कोर्सेज में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आके उनका कोर्सेज का लिंक चेक कर सकते हैं और उन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.